you changed, though. Emotions chained, though. Think I'm in danger. Think I'm in danger. Venom on your lips, shawty, kiss me with death. Put me to rest. You're the worst, but you're all I have left. And now you're gone. Think I'm cursed. Ain't no lifting the hex. Think I'm in danger. Think I'm in danger. You're not the same woman that I met then. I remember me and you were the best friends. Should've known that you were trouble when you crept in, but your beauty was a trap and I stepped in. I just wanna have your love and love myself, but I'm forced to choose. Either way I try to take it, though I'm forced to lose. You bring me down for benefit and now I can't get rid of my depression that I'm living with because of you. It's like I'm always on a tightrope, heading through a hurricane on a lifeboat. Made me feel like we ain't never hit a high note. I can feel the light dying in my soul. I just want it to be done and get myself back, or at least to be numb. I never felt that. Try to build us up, but it fell flat. You put a hole in my heart and I fell back. Easy to tell that you're the one to blame. I saw the way you changed. I never would've stayed in. I would not have felt this pain. I cannot play these games. You got my back against the flames. I feel the poison in my veins. This pain is driving me insane. Like, wow, you're like a stranger. You ain't the same one. I met back in day one. Shawty, you changed, though. Emotions chained, though. Think I'm in danger. Think I'm in danger. Venom on your lips, shawty, kiss me with death. Put me to rest. You're the worst, but you're all I have left. And now you're gone. Think I'm cursed. Ain't no lifting the hex. Think I'm in danger. Think I'm in danger. You torture me until it's my last breath, till I'm laid to rest. Never show me that you love me, but I paid you your respect. Feel your fingers clenching round my neck. Is this how it ends? Love you till it killed me. Didn't know that's what until death meant. But I'm waking up and I'm still fine. Feel like I'm dead, but I'm still alive. No ill will in my will, but I'm for real. Gotta leave this girl behind. I'm addicted to your heroin eyes. Watch a hollow tip leave your barrel of lies. Feel paralyzed from there I rise. Sometimes I wish you care if I'd end up and leave, but you don't. And I realize deep down that I know I'm fine. Thought for the longest that I found a love I could hold on. It felt real divine. Lo and behold, I can see this coming from a mile away with a feeling inside. Packed up my bags and leave, and she thinks I'm joking, but I'm for real this time. Wow, you're like a stranger. You ain't the same one. I met back in day one. Shawty, you changed, though. Emotions chained, though. Think I'm in danger. Think I'm in danger. Venom on your lips. हेलो 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 हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयोस एंड भाइयोस के बहनोस। हम वापस से आ चुके हैं नहा के अपना वही पसंदीदा गेम वैलोरेंट की वॉच पार्टी VCT पैसिफिक की वॉच पार्टी के साथ। आज है डे 3 वीक 1 डे 3 और आज पहला मैच है जेनजी वर्सेस बूम। एंड वो भी जेनजी तो बहुत ही ताबड़तोड़ टीम है, ऊपर से बूम एसेंशन से आई है। एंड यू नो क्या कमाल कर सकती है क्या पता। हमने कल देखा कि कमाल करा जा सकता है, तो जेटा पहले दिन में भी देखा, जेटा जैसे T1 को हराई, तो कमाल तो करा जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं वॉच पार्टी की ओर। बट उससे पहले आप लोग बताइए कैसे हो आप सब, कैसा गया आप सभी का दिन। अगर अच्छा नहीं गया तो ये रंगीन रुक आ चुका है आप सभी का शाम और रात दोनों रंगीन बनाने। वेलकम ईच एंड एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। क्या हाल है मेरे जान के जानोस, कैसे हो, कैसे हैं आप सब बताएं। तब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैच स्टार्ट हो गया क्या? वो पहला राउंड चल रहा है, पहला राउंड चल रहा है। एक सेकंड फटाक से। हाँ लेट्स गो लेट्स गो। अर्नव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। माफ करे थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं हम आ चुके हैं। गेम स्टार्ट, मैच स्टार्ट कर चुके हैं। To know that you are getting completely and utterly surrounded. That's going to come down to timing now for Gen G. Can they not give up the isolated fights? Munchkin spotted him out, able to find him there at range with the stinger, eats it a bit of damage. पहला राउंड बूम Tucks back for the moment, but now it's all down to berserks. Regen shields. That extra little bit of HP pushes the corner, finds one. Still multiple players to try to get through, but berserks with the potential for an ace clutch to keep Boom afloat and in the lead. भाई क्या सीन है। 1v4 से 1v1 ले आया। मैंने टेक्सचर है, लेकिन टेक्सचर
but so much damage is dealt. Yeah, huge bailout here from Berserks, because this looked like it had Gen G written all over it. They do a great job early on punishing the fact that they don't have a duelist that has a dash, an escape mechanism, so they're able to catch Famous out early with the salvos. And then Berserks doing a great job isolating that first fight. Knows he has Munchkin weak, opts to take that one. Actually wide swings for the second kill. भाई बहुत अच्छा रिफ्लेक्स था. Gonna let him know it was Berserks. A lot of hype Yes, around this निकाला player. बे. Very, very talented individual coming from Boom. And one of those Indonesian players that from the get-go of Valorant, a lot of people have their eyes on. You can see right there why. He's very, very good. But Gen G, like you said, almost pulling off one of their classic thrifties. Seemed like that was what they were good for most of the time in 2024. Oh, well, Berserks keeping at it. चला स्टार मार रहा है बे आज तो बजर्क्स एकदम गोटी को तोड़ मार रहा है. 3 away from having that lockdown online. And Shiro is looking to try to clear things out over here on Cat. Will force a relocation out of suggest. इंस्टाग्राम पे डाल देता that we are live. एक सेकंड guys. All alone on that B site. Just now getting reinforced by Munchkin, who shifts over. You do have the trips there in mid, at least to keep you aware of Shiro's position. Oh, well, just strafing forward. Despite the flash, and Munchkin will get a little bit more damage across there as well. Sends out the flash. Just trying to cover. Famous. No further aggression. Oh, off guard. Notice there. Shiro able to pick him apart. So for now, player advantage in the hands of Boom. But maybe rethinking this push onto this site, but DOS9 able to find another भाई kill. BME थोड़ा ज़्यादा Down Ash once again. ये BME का पिक है. ओके Out, DOS9 finding the पहला एसेंट मैप है बाय द वे VCT पैसिफिक का. मैं अभी Going नोटिस from कर रहा हूँ. nearly getting ecoed in the second round to pulling off a bonus conversion. Karen on his lens. I mean, he's just not even going to try for it. Yeah, there's no real hope at this point. A lot of things kind of falling apart now for Gen G. A quick identification by Boom of the way that Gen G was going to try to maintain B main control. They've been really aggressive with the Tejo utility, using those salvos to try to choke you out from getting back into lobby. But this time they just kind of push up ahead of it. Take down texture. Now चलो ये Instagram का ऑलमोस्ट हो गया. मैं ये वाला डाल देता हूँ एक बार. Very slow about this. Oh, spotted him out. Needs to hit the shot. Little readjust there from Karan. Minor amount of damage taken. So Berserks does go down, his first death of the map. Still gonna be just 2 away from having that lockdown available. Famous already with a run it back. And a bonus conversion for the side of Boom. What a start here on Ascent. Yeah, really impressive stuff. And the way that Shiro plays that mid, not exactly sure when the trip was cleared, but by the time Suggest to come around the corner from the courtyard, it had already been cleared. I didn't see it on the map. So my assumption there is that Suggest assumed that Shiro was going to push forward in towards market, but Shiro actually just holds his ground and catches Suggest off guard. So you can see a little bit of trepidation in the way Suggest has been maintaining control of some of his space and kind of his understanding of the negative space that Boom is leaving open. It's not really able to kind of read their setups very well. Okay, a little bit frantic there as a tiles crunch coming out from Gen G texture. We'll go ahead, scoop up that kill. All available for the taking, and Munchkin will go ahead and grab that one for himself. Tripwire gonna be connecting, and that's gonna be Famous. To run it back, shut down. Cam gets a spot out. The Omen has already pushed forward. Molly holds off the angle here at Tree for the time. लेकिन 4v5 है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है. 5 players available for the side of Gen G, but Boom. 4 with better weaponry, still in a solid enough position. As Fragment into the corner, will force Shiro back here for a brief little moment. Pushes up into the smoke, maybe looking for a bit of a timing, and will be able to find at least one, but Karen with that stinger trades it back swiftly, maintains the player advantage, but Gen G, time working against them now as DOS9 forward into the smoke, able to find texture, Suggest taken down. Ash finding one, now just he and Karan to try to get this team over the line. The defuse now beginning, Karan holding down the door, picks up a 3K. ले ले गया पहला राउंड Gen G का. इनका कौन है? मंचकिन है, टेक्सचर है, सजेस्ट नया आया है Gen G में. Gen G में नया प्लेयर है सजेस्ट. नया रिक्रूट है. Understanding that they had to give up that sight and being really quick to be in position. Karan there being that tremendous player we know he is. No matter what gun is in his hands, the man is devastating. Was able to bail Gen G out there, because if that tree push
into the smoke from Boom had worked, had gotten another player. That round is very much Boom's, but Karan able to turn things around. Now you're going to get full rifles, a few ults to play with, but my God, they are just really curious about trying to scrap with each other at the beginning of these rounds. You can see Munchkin thinking about it, but because of the salvos from the Tejo, gonna have to back off momentarily, seed that orb over, and as a Phoenix, चलो often हो गया going to be a big part of ये मैं win डाल con देता हूँ for these story types of comps is add making to sure that story the done fundamentals that we and are Phoenix live relatively quickly. I have more thoughts about the Phoenix when we get there, but I think right now they're sorting up to maybe try some kind of A hit through tree, suggesting Munchkin, Karan over there as well. So Boom doesn't really have a lot of info on this. गोटी लेम मतलब अर्नब भाई क्या ले Armageddon out from Ash. Mowing down one texture, quick little exit over to the side, eluding damage for the time being, and Famous just cutting his losses, decides to back away, gets himself over into the site, which is very firmly in the hands of Boom. टेक्सचर को पता नहीं है फेमस का पोजीशन Famous at the ready. लेकिन अभी तो एक्सपेक्ट करेगा स्मोक आ गया तो अभी एक्सपेक्ट करेगा Pushes back up. देखो ना For the retake. वो लगा एक बुलेट तो लगा Still so many crossfires to try to break through, and they cannot get it done. A 4K for Famous, another run it back online. Gen G unable to find another round. एसेंट इनका पिक है ना बूम का है ना Is pushing into the strong side of the map for Gen G, but because they और एसेंट ये लोग प्रैक्टिस किया नहीं होगा Gen G लोग Molly and Nano salvos all thrown to this position. Exactly. That's something really interesting with this comp. नहीं एक्चुअली T1 पहली पैसिफिक टीम नहीं थी Gen G भी जीती है ना मास्टर्स तो साइफर यूटिल डंप कहाँ don't always work, but here it seems to be going really well for Boom so far. वहाँ पे तो चाहिए था जरूरत था उसमें कहाँ साइफर यूटिल डंप I mean, but you know, Munchkin is a guardian, and that's his signature weapon. केजे वर्सेस साइफर हो रहा है Double face out. Berserk's getting a bit of damage here. कितने दिनों बाद केजे को भी देखा VCT में We'd love to have this orb. He's just one away from having that lockdown after the hot start that he's had. Last few rounds has widely been tempered. And they're checking mid right now. Not much left for the Cypher util that's currently up, so they have to be aggressive a little bit to maintain some space control, but Berserks is just gonna chill out by the benches, wait inside the courtyard a little bit, try to set up for another hit. Oh! First shot not connecting. See Slashers does. Armageddon now coming across here onto the A side. Texture tucked back into health for the moment. Salvos slowing up push over here from Tree. Karan sliding forward over towards Switch. Waiting for a moment. Unable to find anything though. Popping the knives. Bye. Find Sheer before getting taken down as NC Slasher comes away with the triple. 2v2 कर दिए They're lined up as Ash able to collect the two remaining players. Overall, half by purchase works the way of Gen G. They give themselves a second round win. Yeah. Really nice stuff from Munchkin in this कैसे round. निकाल दिए बे Find that pick with the Guardian in वहाँ से तो निकलने का चांस ही नहीं था We get it in the replay. No way, dude. Okay, well, sometimes it be like that. But that knife gives away his position. It's a good play by NC Slasher here to capitalize onto that. Clear some space, but the timing there just a little bit off. Ash was really quick to back up some of the positioning. I've been keeping my eyes on Ash a little bit. He's doing a really nice job of being the guy right behind whoever's in front of him, whether it be Texture or Karan. Typically, he's being really quick to try to reinforce them to back up their positioning, and that round it really paid off. So back down to a bit of an eco for Boom Esports, and okay, well that probably just was, you know, revenge for the previous round, I guess. A little bit. Berserk's finding Texture. Dead at market. Thing reveal out onto one. Suggest we'll find NC Slasher pushing forward from bench. Well, the Sova going to be nearby enough. Munchkin waiting here at the ready. Fragment in hand to try to slow things up. अरे Munchkin F हो गया ये F बहुत भारी पड़ सकता है बहुत भारी पड़ गया वो एक नेड भारी पड़ गया रे Munchkin भाई
This will not allow for Gen G to win 2 consecutive rounds. Now up 5-2. Yeah, that's a huge mistake for Munchkin there. After a decent previous round, this round is. एक देख रहे हो guys, एक नेड कितना भारी पड़ रहा है देख रहे हो. To come as quickly as you would like for the rest of your team. Instead, they're just able to barrel their way through the site. Particularly that judge for Karan. The idea there is that he can slide back in towards Tree to get into that corner by the door switch to cover that angle to help him out. Instead, because the fragment isn't there, it allows Boom to just accelerate, to scale into the site. Not much that Gen G can do there, so little things like that can cost you rounds. Let's see what Suggest wants to do off this turret. Doesn't want to swing for the turret itself. Catches, okay, I was going to say a glimpse of the shoulder, but Berserks just absolutely nails the headshot. Ash going to be responding in kind, so lock. क्या मारा भाई ये Berserks? भाई उसको केजे क्यों खिला रहे हो भाई? उसको ड्यूलिस्ट खिलाओ भाई, वो तुम्हारे लिए एंट्री में 2 फ्रैग निकाल के देगा. 7 राउंड में तो 4 राउंड वही पहला फर्स्ट ब्लड लिया होगा मेरे को लग रहा है. सॉरी भाई मेरी स्ट्रीम 2 मिनट पीछे थी. अच्छा कोई बात नहीं. Hunter's Fury to clear your way onto this site. You have the salvos to slow it up a bit. फेमस भाई, आप तो फेमस हो गए मेरी तरह. Still just that sheriff in hand, just sheriffs remaining. For everybody here on Gen G, Paranoia going to be sent out. Don't believe it connects onto the drone, but Texture as well, not giving them line of sight, so isn't going to be spotted here for the moment. इन लोगों को पता है स्मोक के अंदर है. गलत जगह से निकली. Plant now going to be stuck. And see Slasher. Closer position going to be taken. Fragment able to get some burst of damage off of Sheer. Is going to fall down to 7, but no further kills. भाई बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आई है बे बूम. 6 round wins here on the attack half. Yeah, I'd like to see a timeout. Berserk Neon इस मैप के लिए इतना कुछ खास नहीं है. Yeah. I think there's a little bit of miscoordination. ये मैप में कहाँ Neon चलेगा? Texture decides to push out of the smoke. I think this is Munchkin's flash that hits him right in the face. I think you need to kind of talk through some of the comms here because they don't seem like they're quite on point. Even between Munchkin and Texture, who were longtime teammates, you know, trophy winners multiple times if you include Pacific and Masters. So you need to kind of figure out what exactly is going on. Things are pretty rough around the map, and Munchkin obviously going to be very vocal about it. Seems like Boom, though, really had a good read on kind of the meta that was going to be coming into this map. I think they have some good ideas with the Phoenix on how to sort of counter the Tejo, because you can kind of get ahead of where the salvos and some of the utility is likely going to end up being used. So you're kind of able to punish some of those spots that you would normally. ये टेक्सचर पहले पता अपने ग्लोबल esports में था. You know, play off your own util as a Tejo. 2023 में. The salvos and then maybe Texture pushes ahead or whatever that we saw in some of the earlier 2023 ना. And instead you're kind of able to just be a step ahead of that. 2023 की बात है. Get some kills or things like that, or at least back them out of those positions. So, but some यार बरसक का प्ले स्टाइल देखो, वो चला लेगा. अरे तो ये मैप के लिए वो एजेंट ही ये नहीं है तो चला तो वो सब लेगा. चला तो वो हर एजेंट खेलता ही होगा. स्क्रिम्स में तो हर एजेंट प्रैक्टिस करता ही होगा. बट ये मैप के लिए नियॉन पिक नहीं है ना मेरे भाई. आप वो क्यों नहीं समझ रहे हो? जो मैप के लिए जो है नहीं अभी उधर आप वो खिलाओगे. आ बच गया. Does end up falling. Berserks lurking forward. Headshot able to find it. His Texture goes down 2. Let's see Slasher responding on a 1, but right out. Oh, push comes in, but DOS9 manages to break through and Suggest just now getting ready to wrap around up towards heaven. Boom just continuing to brute force their way into the sights here. Spike planted. The plan comes in. Suggest on the prowl, but both players tucking back into hell. The cage gonna be popped. Should know both are down there now. Recon gives it away for the most part there. Rotates over. Goes for the tap. Swings back around here. Behind Jen. Couple shots just over the top of DOS9's head. Shorty at the ready. The push coming through and DOS9 to gun him down. Boom secure themselves a lead here at the half. They pick up their 7th round. Icebox में नियॉन लेना चाहिए. 3 more to be played out. Yeah, this is just तो Icebox really nice utilization. Some of the alts to Icebox का मैप पिक कहाँ है? Icebox तो बैंड है. Slasher right there to step in and shut that down. DOS9
continuing to look very good. सेकंड मैप हेवन है, थर्ड मैप Great decision there to एरो be को really देखता हूँ. patient to sit in that smoke. No, थर्ड मैप फ्रैक्चर है. make sure that he's फर्स्ट the one एसेंट, taking the spike. सेकंड हेवन जेंजी पिक, थर्ड डिसाइडर On फ्रैक्चर the है. backside of the आइसबॉक्स कहाँ है? Quick paranoia. Yeah. Salvo's gonna be sent. Shockdart try to clear out any of this util here, but now. उनका तेव नहीं है क्या? अच्छा तेव है, लेकिन Ooh, lingering, trying to look for any. तेव का और उससे तो टूट नहीं रहा ना. यस Go ahead and get यस. that pinch though. But now players going to be safe with the Armageddon. Pushes them Texture, back out बेचारा into the open. Just gonna संजय. take it down. I believe locked in place by the lockdown. Yes. Was the detain there, and Slasher finds Ash before the door can shut. As Boom are just absolutely भाई तो destroying destroy and कर दे रहा है भाई. GG, round over round. These alt cycles have been really, really good. Berserk's gonna catch Khan through the smoke. And Munchkin just left with a judge and sadness. There's not much he can do here. Yeah, I mean, they're just catching everything. They're catching util, they're catching strays. Catching everything but a break. Munchkin will make this a non-flawless round. Jumps across to try to go for the weapon, but NC Slasher a little bit fast with it. Anticipates the flash, turns, gets himself a 4K secured, and boom, stretch the lead even further. Yeah, these util dumps, really, really good. And again, the alt cycles, really well managed by Boom as well. You know, finding the right moments to utilize the Hunter's Fury to get a kill in clear space. Here, using the Armageddon in the lockdown. All of these things to just make sure that Gen G has no hope. And I love the ideas of, you know, making sure that you're investing these ults even against eco rounds, because Gen G is notorious for winning those. So really worth it to just make sure you're getting all the value you can squeeze out of this half. And now you're one away from, I believe, the run it back. Yeah, Famous almost has the run it back. This is a minor तो एक change और बुटाएगा और फेमस का रन इट बैक आ जाएगा. going within the smoke. Let's see if anybody pushes around to try to catch. भाई उसको देखो, ओमेन कितना अग्रेसिव पोजी खेल रहा है. भले ही उसको पता है कि कोई पुश क्या होगा, कुछ नहीं. Taking in to main. गॉड. As this time Munchkin not wanting to really waste any time with it. Just तो फ्रैक्चर में चला लेंगे, देखते हैं. doesn't catch any damage though. देखते हैं, नॉट श्योर. मेरे को लगा होगा इस बॉक्स. नहीं नहीं. Looking for some kind of aggression out of Gen G. Something that was working early on. Spot of the one. NC Slasher going to be taking it low. Famous gonna be taking it down. Similarly, able to find NC Slasher. I see we have Priest today. As Shiro will be able to find Ash. I must wait a moment. Ends up one of the kills, but Gen G, I mean, best position they've been in and around for quite some time. Find Shiro before he can save टाइमिंग हो गया, उतर गया वो गलती से. यहाँ पे मारता तो 3v3 का चांस था. 30 seconds left. वाह. Zerks. Understanding Pen drive. the timings. Just managed to find him a 2v3. यहाँ पे हमारे हिंदी का शब्द है पेन ड्राइव चेक कराओ भाई, ऐसे बोलते. DOS9 plays it gorgeously. Lurks within the smoke. Player The standing. texture, he's already here on the site. And that'll be the cleanup. नाइस नाइस, चलेगा. बट 2v2 लेके आए थे. Only 2 weapons surviving. Because of the streaks here from Boom, Gen G just don't have much money. Oh yeah, this is still not great for Gen G. I mean, the good news is your default finally Last round was in the able half. to give you a round win. No early aggression, nothing like that. A good fragment to buy a little bit of extra time. Texture gonna swing over to help Munchkin out here. Nice little play from him. Ash has had a couple impactful kills. Just great reads from DOS9. What a great pickup he has been for Boom. Okay, what is the buy gonna look like for Gen G coming into this? Karan thought about a judge. A lot of Guardians and a Judge. Yeah. Not But- the Phantoms. I say a lot, it's 2. Yeah, also the Blade Storm. So that's nice. That is a lot of salvos. That it is. Run it back. Used here from Famous. Bounding forward. It's able to find texture. As Ash, though, able to slow things up a bit. दो निकाल दिया क्या? नहीं. Gets the concuss across. Finds the kill to keep it even. अच्छा, रन इट बैक में एक को मारा फिर दूसरे को मारा. ओके. Cut noise. Keep it quiet. Make Gen G second guess and then get ready to strike. Still have a curveball in the wall. ब्रीच इज ग्रेटर देन तेओ. नोबडी इज ग्रेटर देन नो वन. They're trying ऐसा to bait सीन है. out contact ठीक है. there. They're खेलना a little आना worried that चाहिए somebody बस वो might be पर्टिकुलर मैप right के around the लिए. corner. They're worried about that judge, I would suspect. ये चेंज क्यों क्या गन? How much स्किन शॉपिंग हो रही है.
शॉपिंग हो रही है सजेस्ट भाई, शॉपिंग हो रही है. Ash getting caught by it, suggests getting hit by the pin. अच्छा बुलेट्स खत्म हो गए होंगे ना, वैसे भी हो सकता है. Players very much noted here on site. Munchkin starting to go for the rotate. फेम Things open. हल्यू. As he just knocks them down one after the other. 3 kills for him in the round. And Munchkin bleeding out एक on तो the बैठा floor. होगा. 30 seconds. Karen gonna try to smoke it off, trying to go for the res, but DOS9 is here with the shorty at the ready. They massacre him, and boom, are up by 6 rounds, 9-3 at the half. Yeah, you've got to be so impressed with Boom. The ideas that they've had coming into this map. भाई I क्या had some questions क्या about सोचो it. बेजेंजी मास्टर्स विन वो टीम को हरा रही है बूम, तो मतलब कितना प्रैक्टिस करके आई होगी इस मैप में कॉम्बिनेशन. That is a अगर ऐसा है तो आप डायमंड कैरी हुए तो नहीं, DOS9 has been really मतलब good समझा नहीं. at reading the positioning and the timing of his अगर ऐसा है तो आप opponents. डायमंड कैरी हुए तो नहीं, Somebody was मतलब making a समझा play नहीं. around in a smoke or something like that. DOS9 was just one step ahead. So really, really cool stuff that we're seeing, and you know, a little bit of a Boom shaky Comment start का for GG with चाकू? these new players. चाकू Maybe कहाँ, we'll see शॉर्टी से मारा उसने. change of pace that is specific. We are an attacker-sided region Yeah, for whatever reason. that's true. As we've been witnessing yesterday, especially, no one knows. मतलब मैं समझ रहा हूँ जेनजी का मैप थोड़ा सा ये वाला वीक हो सकता We है, got attack down, you know. Yeah, we got that We going. got for half us. of the game going. That's better than 100 Thieves on split. बट अटैकिंग है, देखते हैं क्या पता है क्या हो सकता है. Still a lot to be worked on. Gen G, I mean, they've pulled off miracles in the past, but Are you just right like now they're just looking out of sorts. you just was- taking a little money under the table from Rob Moore there? Just Is trying that- to move on. Just trying to move on. I'm just trying to get my dig, get out. All right. अरे भाई I suppose I'll allow the bailout. I mean, I don't know. I could see Gen G just kind of doing the same thing though on this attacker side. I mean, I think चाकू कौन सा है देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं. they're having a hard time defending. Omen I think का Sentinels in चाकू. general have a tough time with this, so I don't suspect that Berserks, for example, is going to have it much easier than Suggested. Suggest did look a little lost. It did look like at times ये he तो was जेट है. kind of getting read where his position was going to be. I mean, he got killed through smokes a few times. You could call that unlucky, but also can be just sort of your opponents are able to anticipate and read out pretty well where you're going to be. Sheriff for texture as they go for a mid push out, just looking to see if there was going to be any contestation from Boom for the courtyard space, but they're wrapping all the way through. There's a camera there. Suggest is ahead of it though. And he's ready for the first. Almost lines up the second. Can't quite make it happen, but DOS9 in range against Munchkin with that classic. अच्छा वो प्राइमोर्डियल का ही है, We'll find another प्राइमोर्डियम location. उसी का ही नाइफ है. आई मीन हाँ वही दो वाला जो Sheriff पकड़ता है slept ना behind here वही. for the side of Gen G. DOS9 with the weapon upgrade. Gen G really wanted to get those sheriffs to do some damage. And instead, they're going to be the ones paying the price. Actually able to find another current unexpected from the angle. Berserk's going to be caught unawares. Ends up falling to the wayside now. A 3v2, a post-plant situation for the side of Gen G. Still taking it a little bit slow, wary about any close members from the side of Boom. 2v3 है. Gen G looking decently poised to tie things up as far as the pistol is concerned. Paranoia's on both sides. Salvos for NC Slasher. Not sure when Ashes are going to come back online. I think pretty soon. Well, no, he used them on the execute, so no. Drop down. Ooh. DOS9 able to find Charon there within the smoke. Now the 2v2. The swing out. DOS9. Oh! And he has it! This man is unstoppable! Another ace for Boom! Another pistol! And absolutely nothing for Gen G! That is unreal from him. That sheriff that he picks up. पहला हाफ off the बरसक्स ने long इस range किया, rifle इसमें with DOS9 classic through mid. Gonna get दो the मारे first बेदर one. क्लासिक से. Wins उफ. this one against Munchkin. Scoops up the sheriff off of Suggest's dead body. Puts it to damn good use. Just drops down onto Charon. Smashes him in the head. Moves through. Unreal. 17 and 5. What a showing. Gen G के अगेंस्ट 17-5 सोचो, और ये Ascension टीम. He was good in kickoff and he's Although ये इनका मैप पिक है, बट सामने वाले भी तो खेल रहे हैं. Gen G है सामने में. Now needing to pull God. off the thrift that they Ah. almost got in the first half. Flash out though, and Famous able to collect two with that Spectre.
Classics and a Sheriff now, all the Gen G have left. Just a clear on the alarm bot. Try to shake things up a little bit here, but if you're Gen G, दो तो निकल गया उनका. get back into this round at all. Oh, it's very, very difficult. They're fishing for some 1v1s with the Sheriffs. Just hoping that, you know, maybe you could catch a one and done. Changing positions though is Munchkin. Oh boy. And Famous is right there waiting. He's lucky to stay alive. That's just the wall through. Famous repositioning top of the box. Munchkin about to get completely and utterly destroyed. As that's going to be that Spectre now down on the floor. Cash dead. ले और एक ace मार दे. Famous, I mean, he's down to 33 HP. If he turns his sights back into main, might just be able to find it. Maybe Berserks can bait for it. He's going to try, and he's going to get it. Back-to-back aces, a third for Boom. 11-3. Oh boy. That was... और कोई बचा है? You don't see that every day, that's for sure, but हैं? these curveballs, once again, catching Gen G. Munchkin just कोई really बचा है और? doesn't seem to be reading his opponents very well, has made some mechanical mistakes. Gonna pay the price there. Just not anticipating that Famous would get up on the box. मतलब स्लैशर और शीरो भी मार दो, तुम लोग भी एस मार ही दो. अब डॉस भाई मार दिए, फेमस भाई मार दिए, बर्सक्स भाई मार दिए. स्लैशर और यही शीरो ही बचे. They're getting aggressive towards lobby. Trip lets them know about the aggression. देखो उनका कंट्रोल देखो. ए बी मैन पे जाके देख कर आगे, उनको पता है अभी ये आ रहे हैं, टेओ का रोटेशन ही आ रहा है. सो अभी ये आ गए. वुमेन का कुछ देखो. अब एक आएगा टपली, टेक्सचर टपली खाएगा. यहाँ पे एफ हो गया. ओ वहाँ पे सजेस्ट ने दोनों मार दिए. वहाँ पे मारना था इसको. ये राउंड कैसे जीती? And it looks like the call is going to be for him to try to do a little bit more damage here. So why not? How well things have been going. Has to clear a lot of angles in space. At the end of the day, even if it is just going to be a save here for the side of Boom, they're in such a strong position. Gen G, they will be able to go ahead, lock down this round, stop another ace from coming through, and pick up a fourth. How many weapons do they have as they do it? That gun barrel should have been spotted, I would think, there by Karon, who's just going to be strafing across. Salvo's sent out, they're lined up, but okay, NC Slasher only able to find one. Karon going to be left on the floor. Munchkin, Ash surviving as Gen G get to 4. That's a cool little teleport there from Karon. While a lot of space is being created at the smoke at the front of A, he's able to find a great timing. Just TP right in underneath Boom's noses, find that big double kill to open up the site. Suggest still having a rough go of it on these lurks. Still trying to kind of figure out what's going on with his opponents, what's going on around on the map. We'll have full rifle v rifles. Some half armors for Gen G. Mostly full for Boom. Look at the way they're really just so aggressive towards B main. I mean, you got to be nervous about it as Gen G with the Phoenix as well. This time the Phoenix, though, slotted over onto the A side. And Gen G just really can't find an answer for the way that the Phoenix combos can control these mains. Whether it be on A, whether it be on B, we've seen them have a really tough time with that. So they're forced to kind of spread the map, work things out a little bit, try to put some more pressure in the middle. See if they can squeeze on through. Jump peeks from NC Slasher. Don't think he spotted Texture, but now the alarm bot has. Looks like he's just going to hold that tight angle maybe. No, repositions. Gen G, though, doesn't like that they gave away that info over towards B, so try to work the other side of the map. Just a spot on to suggest. That doesn't tell you much. That fragment, though, that's gonna bring NC Slasher over closer to A. Salvo's going through. Famous pushes out in front of these. He's just waiting for that cloudburst to fall, and now he strikes. Karon turning back is able to find one. Dolls 9 pushing forward. Cleans up Ash. As the dust settles, just 2 players remaining here for the side of Gen G, but
Karan continues to fight back, Suggest on this lurk, needs to win the fight, and does so. The neural depth getting the reveal, confirming that Berserks is across the map. As the plant can now come through off the back of the TP. 10 seconds left. Camera set up here. खेल दिया From बूम जीत रही ये वाला जीत रही है अगले वाले में बोल It's the सकते हैं reveal हेवन है that they're जेनजी trying to भी play off of. Berserks कोई कम is gonna backpedal, but is it a reroute or is it a टीम save? है नहीं वो भी Looks like he'll at least explore market. See if he can find anything at all. Clutching this out here would be back breaking for Gen G. It's the swing, he finds the first, but Karan peeking out from back ramp will be able to shut him down. 3K from Karan. Gen G up to 5, needing 6 to tie. They still lose out on 4 players. Yeah, it's still a really brutal round. And again, this comes down to the fact that Boom is getting really good map awareness. They're utilizing that KJ util in mid to sort of like keep track of what's going on there. Okay, they're not receiving any contact. That's going to allow, that's what allowed NC Slasher to shift over towards A little bit sooner. There was a fragment that had to clear wine because of the early A main pressure that Boom is able to create, making it very difficult for Gen G, much more difficult than they would have liked. So it's utilizing जेनजी के ओमेन का हाथ info, maybe not in the way that you were expecting. जेनजी Like के ओमेन का हाथ with मतलब Sova and at Tejo, you're going to be like droning all over the place, reconning. That's how you're going to get info. That's not exactly what they're doing. It's some passive info and some aggressive play with the Phoenix that's getting them some of this really good information. Jiggle Peak not being punished. See Slasher holding very close. He's here in the open, but if he can hit the headshot, it would be monstrous. Wow. Decent amount of damage dealt there by DOS9 as Berserks will finds the chest over and B main just pushes the corner. Bucky in hand, so just gonna be taken down. NC Slasher peeks into main, finds one, looks for a little bit more. Players here at Cat already saw Berserks. Recovered weapon, pitches it from behind. It's all crumbling to pieces. It's Karan, last one standing. Does have the spike in hand. That's about the best news. अच्छा वो वाला तो नाइफ है 30 seconds left. If anybody can do it, वो एक नाइफ का टाइप है absolutely could be Karan, but man, oh man, Boom looks so good right now. Just great decision making. And a 1v1 with the Sentinels is what breaks this open for Boom. Now they can play for full-on retake. Not a ton of util left in the back pocket, but a recon and some salvos could clear a lot of space. Make Karan very uncomfortable. You know, if he's going to try to hide him boats. Oh, they're going to use it early, though. Trying to clear this corner. Seems like Shiro just kind of trusting in his teammates here with the weaponry that they do have. Could have routed into Cat. Go ahead, grab a rifle. The final smoke of the round from Karan sent out. Spots one. They're all out into the open. Avoids taking damage until this very moment. Now falls down the 9. It needs to be clean from here. Finds a headshot. And Famous scooping up the Vandal down to 20 HP. Both of them so very low. Karan just playing time and finding it. Red Bull clutch, keeping Genji afloat, stopping Boom from getting up to map point as Karan continues to show up, begging the rest of his team to do the same. Absolutely. I mean, I said it. He's one of the best clutch players we have in Pacific. You can see right here why, folks. Good decision making. Oh, the fade away. The second bullet out of that Vandal. Reading the positioning there. Hearing the tap, but still a lot of work to do for Gen G. And that's the 20th clutch for Karan in VCT Pacific. And he's near the top of the leaderboard. He might be #1. I think he is. Because most other players are starting to kind of hit their 10th. Right. So, you know, players that have been around for a lot longer. Granted, I think the tracking does specifically, like, I think the clutch banner has to fly for it to be counted, so it is a little bit wonky. I think it, first one of the stage. Oh no. Hey, we made it through three days. We did pretty good, yeah. You know, it's been all right. Hopefully it's going to be a quick one. I think it will be. But man, what a performance from Karan so पहला टेक पॉज अपने इसका fighting indeed. कोई ना Such a talented टेक player. पॉज थोड़ा दिक्कत तो देता है I think it's just a gear issue. थोड़ा बैड वो इंप्रेशन भी डालता है बट कोई बात Anything too taxing here. Yeah, generally these are like
उसके हाथ में ही हरी बैग कौन सी है? अच्छा वो वाली, Real quick, just वो तो वो लोग पकड़ते हैं थोड़ा सा, स्ट्रेस रिलीव वाला टाइप, जैसे स्ट्रेस बॉल्स होते हैं ना, all over somebody at वैसे massive. टाइप थोड़ा सा। देखो ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर Yeah, I think it was. पकड़ते I हैं think वो। Jogabo उसके popped off and अंदर spilled his आई एम HQ नॉट over श्योर the क्या top रहता है, and बट आई गेस front. स्ट्रेस बॉल्स ही रहते हैं, It was fairly minor in the end. छोटे छोटे कुशन Was that even a टाइप्स। tech pause? But I mean, no, I think it was at the end of the map. Yeah, it was. हर after- रीजन It के was प्लेयर्स right- यूज he करते हैं popped off right at the end of the map बैग्स when को। he got into the grand final, maybe. Yeah, I think you're correct. Yeah. Either way. They're back into this one. Boom. Still in a good position. Back into a buy round, nearly pulling off a thrifty of their own in the previous. जिनका वो ऐसा हो जाता है ना, पैनिक होते ज़्यादा या काम नहीं हो पाते, नर्वस रहते हैं, तो उनको उनके कोचेस बोलते हैं कि ये आप लेके चलना साथ में। Heavy hitting ultimate ability that Boom is going to bring to तो bear. ई स्पोर्ट्स में मेंटल, ये टीम्स में भी मेंटेलिटी के बारे में भी ध्यान दिया जाता है, Pop समझ the रहे हो? smoke. Retreat using the hot hands to प्लेयर्स buy का a little मेंटल bit of extra स्टेट वो space. सब सही रहेगा तभी ना प्लेयर खेल पाएगा। वैसे NG though, just going to take a pause. अपने- I mean, with all this mid information, अपने यहाँ पे वो सब नहीं देखते भाई, खेलना पड़ेगा। really slide towards A bit quicker. Maybe make a quick rotation through tree here. Flash over the top. Paranoia still coming through, still slowing them up. Famous able to get that run it back pop before the null command could really come into effect. Swoops forward. Munchkin snaps him back away. Armageddon now to try to further flush them out. Flash is there, and I don't think, yeah, Dawson, I'm not sure if he had any idea his position or where the ult was going to be coming from. He just gets absolutely mowed over. Berserk's quick to break the वो door. सोचा एक को मार के मर तो जाएगा, लेकिन एक को मार के मरेगा, लेकिन मार नहीं पाया बेचारा। Down to 11 HP. Both these players have had their clutch moments in this map thus far. Will they be able to play this one out? Economy not going to be in a great position here for them. I think you should save. Recon about to be sent. The timing on the util is found. Munchkin able to strike him down, and yep, Berserks is going to have to just silently backpedal, creep away to hold on to this Phantom. Gen G, now 4 rounds in a row, will get themselves up to a 7th round victory. 4 rounds about to be separating the two. And now it's starting to get a little bit concerning because Boom still very much. Berserks needs to win this. He's Oh, been spotted, and Munchkin will make sure that they carry nothing forward. Yeah, I mean, this is even more concerning now. To add insult to injury, you're losing all your players. Even though you're kind of winning in the information game, you're losing in the execution game now. Something that you were absolutely dominating on throughout the majority of this map. It's now starting to get picked apart by Gen G. Starting to make less mistakes, starting to be more in gear. Poor DOS9 there. It's like he's at the end of Rogue One. Though everything's exploding around him and he's nothing he can do except just stand there and accept his fate. But yeah, this is quite interesting because I think about it and I think Boom has full control over that map, but because the execute's so good from Gen G, all the players on A side are basically dead by the time that your flanking players are there, so it didn't matter. They're just having a tough time kind of reading some of these situations. To fully corral Karen in once the spike gets planted. Do have a lockdown. Is Berserk's going to try to set that up into A main? 30 seconds Or are left. they going to set it up through tree if they decide to invest it? You might feel like you should. You know, you're very close to closing out this map. Tapping it, no one near enough to No. realistically hear that. For Karen now, how do you try to divide and conquer? Looks like for now the call is just going to be for him to tuck away in hell. Here's the footsteps. Knows that he's starting to be surrounded. The lockdown is going to be committed. Texture that much, or Karen rather, that much of a raid boss. Absolutely worth it. He's just going to go for the ult, get the cancel, fake it out, but he's going to snap back in right in front of this Phoenix. Oh no! He fully goes out over into main, but Berserks is there at the ready. Thanks. Shuts it down. Even if he gets that kill, the plant is not really for him. Can bang that box. So in the end, Cowan just put into far too difficult of a position. Boom with a round victory. Get themselves now up to map point. Yeah, really good game senses here from Boom. Have a great plan to use the operator, to use the Teho util and the ultimate to flush Gen G into bad positions.
Yeah, Gen G is able to somewhat fight their way through it, but you're able to get the आपको better of them. मेरा बफर हो रहा है In a क्या? spot where he has to dash ahead, put him in a bad spot. नहीं बफर तो नहीं हो रहा है. Look really, सही really है, सही nice है. for Boom. मुझे लगा बफर होने लग गया. Great read on that round. Still got the operator. A little bit of 18,000 cash तो और. in the back pockets for Gen G, so they can still buy up. But they only have one more round to drop, and they're out of this map. Need 4 in a row to push it to OT. This time, now they're grouping up for a big, seemingly B hit. Shiro is kind of jiggling. Only spots I'd suggest. Not going to tell them too much. The drone, however, tell them a hell of a lot more as Salvo's going to be exchanged on both sides. Texture able to find one. They'll see how willing forward. Shiro, ice back into main, finding one, finding two. भाई Transfer, Shiro cannot दो get the निकाल third, दिया. but still, solid damage dealt. DOS9. Here at boats. Gonna be out into the open. Oh! From alley, barrel stuffs Karan, takes him down. The shorty out. हो Ash गया, trying to GG हो fall. गया. Munchkin now. लेकिन मंचकिन है वो भी Be the कर one to सकता clutch है. it up. Waits for the smoke to dissipate. Dialed in, Berserk's on the swing. Takes him down to 10 HP. They know DOS9's position, Munchkin. Gonna keep it quiet. Gonna slowly drift out, but DOS9 is reading this not as a double fake, 30 a double seconds pump. left. He's immediately rotating to try to match. He's going to be in position. And Munchkin will have to hit the headshot of a lifetime if he wants to keep this ascent going. Could just come down to timing. How does DOS9 want to play it? Is he going to wait for the tap of the spike? Plant on the corner. 10 seconds He's out left. into the open. Spike there. The shots will register. The fuse will come through, and that's going to be Boom. Closing out Ascent 13-8. Probably a lot closer than they might have anticipated, than we expected, given how things had begun here. Defenders Solid enough run back from the side of Gen G. But Boom, off to a roaring start. Secure victory on their map pick. Yeah, I mean, you saw it all here from Boom. You saw individual skill. You Three saw aces. 3 aces. You saw great game planning, good utilization of their comp, playing to the strengths, and using it against Gen G very nicely. Yes, Gen G able to punch back that last round. That was a beautiful paranoia from DOS9 to buy a little bit of extra time for Famous to come through. And that op shot to slow down Gen G's momentum. So you're seeing a lot of really good things from Boom. They have really done a great job in between kickoff and now, putting together some cool ideas, some really interesting stuff here on Ascent with the Phoenix that probably catches a lot of teams a bit off guard when they first run into this in scrims, and Gen G probably running into it for the first time themselves. Had a bit of a tough time with it. Karan had some heroics, saw some good plays, but really Gen G just looked off balance from the get-go. A few misplays here and there cost them dearly. This man, DOS9, was an absolute force on the Omen. Just hitting crazy good shots, making crazy good decisions. Always has that shorty in the back pocket to punish some of those smoke plays that Gen G was trying to make happen, or set up himself up for some smoke plays. That was a lot of fun. That was a really good setup and execution by Boom Esports. Yeah, solid performance from Karan. Trying desperately, started seeing a couple of the other teammates getting warmed up. Munchkin, those multiple 3Ks he was able to find. Texture with some good entries, but still a world away from the Gen G of old. They have their map pick of Haven coming up next, but for now we'll pass things back over to the analyst just to break down Ascent. I can see why you really wanted to see Ascent. Yeah. You wanted something different. We got something different, not just in the comps, but just the outcome of this. We were talking about this earlier. This is a खेल रही है भाई. They've done really well on it. Boom though, अलग ही खेल रही है आज. usual comp here. Yes, Phoenix has been seen, but not played like this as a single duelist. Yeah, this is the power of the pocket pick, right? When you start playing different comps like this, Gen G will have almost certainly never played against that competition in scrims. So you don't have the answers pre-prepared. So when you're trying to adapt on the fly during an official game like this, it's incredibly difficult. And we saw that in the first half. Boom's comp is made for that attacker half to get the Phoenix snowballing, and they really had a great time. It slipped away a little bit towards the end, but they got a big enough lead, so they were still able to close it out. Yeah, just a shocking defense for Gen G. Way too slow to start. You saw them see them slow starts in so many games in kickoff, and again, unfortunately, that has followed them here into Stage 1 of Pacific. Boom taking
full advantage of that. They were off to a hot start in kickoff, and once again, they have brought that same fire into their initial game versus Gen G. They are not scared of these Korean powerhouse teams. Yeah, very much so. Like, they have everything to prove against these Korean teams. You know, they lost to Nongshim in the final, they lost to T1 and Nongshim in kickoff, but this is really the story of this game for me, is the individual level of these players on Boom. Berserks gets an ace round 2 to stop things from going awry, managing to not get eco'd. Then we saw DOS9 on the next pistol come out with this fantastic ace. The level of these players was just fantastic, and I felt like Gen G couldn't keep up. Yeah, another beautiful opening game from DOS9. It's just a magical thing to watch a Kazakh player here in Pacific delivering such a high level. And then you got a nice little anti-eco ace from Famous. Usually not that impactful, but when you get to run it back so early on in the half as a result of farming up those anti-eco kills, it can actually make a bit of a difference. Yeah, that's why you play Phoenix, right? It's for his ultimate. It's so strong, so him getting those anti-ecos is perfect according to the game plan. Now, this is a great little combo that we saw Boom use, and this is the strength of Teo on this map. We see how they pair it up with that lockdown from KJ. So when most people are waiting out this lockdown, they stand in the CT area, so they hit it with the Armageddon, and Gen G have nowhere to go. This is really nice util combo and a great ult round. Yeah, the ult combos are always very important to win some of those important swing rounds, and I think Teo, he actually does fulfill some of KO's roles in combination with what's good about Sova on this map. You've got some info finding as well as some stopping power and some delay. Caron was still delivering for Gen G here, and he's been the most convincing player on Gen G for me in both kickoff heading into stage 1, but you've got to give DOS9 his flowers. He had a lot more help than Caron did, but he's got a lot less experience than Caron does. Oh, he looked so good out there. I mean, I taught him everything he knows. And Let's look be at real. that, bro. But That's ice cold. I mean, he said it in the content. And he came and delivered that performance in the opening game against Gen G. That's some OG stuff, like unreal. I love this mindset. I don't really care who I'm playing against. Who are these guys? I don't know them. I'm the rookie here. You all have to respect me. And he showed exactly why in this map 1. We saw so many aces happen in this map, which was also just phenomenal. So this was a great performance from DOS9, and I don't know. Do you think he knows? बहुत अच्छा खेली भाई. I think he still has no idea after that map, to be honest. He won't have paid any attention. Look, Ash, not a terrible debut. I mean, neither one of these players have really played much of the roles that they've been playing previously to Gen G. Like, Suggest has been mostly a duelist or an init player. He's been thrown on a Senti, which true Sentis, we're talking Killjoy Cypher. He's only got like 10 career games on versus 100 plus on duelist init. Ash has got a couple on init, but he's mostly been a duelist as well. And look, honestly, their defense was a big problem, and you've got to put that down to Suggest. Not a great performance on the Senti role, but also Texture. I'm used to him being that opping presence. I'm used to him being that stopping presence on Ascent on the Jet, and he just wasn't present for that game either. You know, I think that game deserves 5 big booms. I could not agree more. You ready? Ready? 3, 2, 1. Boom! 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 Woo! Oh, yeah. I love Boom. This is why I predicted them. This is why I predicted them. They have so much underdog potential. In my mind, that game was 13-1. They got eco'd twice in that first half. A little bit cleaner. That's a 13-1 game for Boom. They won. They won. They won. There's still more maps to go, but that was a great showing. That was a great map 1. That's what I wanted to see. All right, Pilsky, now, we were going for a Gen G prediction. Yes, we are curious about the 2 newcomers or old comers coming back into the Gen G roster. And you were talking about earlier how Boom likes to choke. Or they tend to choke, but they definitely... I don't think they like to. But, okay. And that definitely didn't happen there. So surely this is not the win condition for Gen G, though. There's got to be something else. What are you going to be looking for? I honestly think there was a little bit of choke there. Like, look at the way they played those clutches in multiple scenarios, playing very, very scared when they were very far ahead in the game. I just think that Gen G dug themselves too big of a hole there. They were coming back on the attack. Hopefully now, though, heading deeper into the series, maybe especially with such a new roster on a map that they're going to pick into the series, they're going to be better prepared on it, because they did not look comfortable against that comp. Some of the players did not look comfortable role-wise. We saw even Ash, who's played a couple of games of Teo, miss some key utils. Suggest did not look comfortable. Texture was not as activated as I wanted him to. And I thought that, honestly, the core three players that we know from Gen G being on their comfort roles on Ascent was going to be more than good enough to win against Boom, and it just was not the case. So this Haven has got to be better from them, because
they've slapped 2 players on an init role and a KJ or an Ascenti role that haven't really played those roles too much into Gen G, and benched a player who can kind of play both of those roles. So if they don't find success, that's going to be an extremely questionable decision that you should look at, you know, the coaching staff, and who I respect very much, of Gen G, and think what's going on here. Yeah, I mean, again, we have to trust the coaching staff. These players are in for a reason, but I also think that when you make changes this late, you don't have enough prep time. We compare that to Boom. The core of this team has been together for a very, very long time. They only made the one change coming off Ascension. These players know each other really well, so I think that's where the experience, the friendship, as we spoke about yesterday, really manages to really take over, and that's why they look more prepared. I also think having this kind of pocket pick comp will really help a lot. So as we move towards Haven, they're going to know what Gen G are doing. So really, I'd like to see something different, but we don't know. I mean, look, Gen G, they do have the patented Viper, right? But, you know, mixing these two different players into the roster, are they going to play the same thing heading on to Haven? They might be a team that does change some stuff up as well, and they've picked it into this series after success with that Viper comp that's tried and true for them, with a little bit of a different flavor of the Neon. But there's a lot of different duelist choices at the moment. That is one of the more interesting roles to be keeping track of in this stage 1. What you saw a lot in kickoff from Gen G is that they're kind of using the template that they had from last year, and Solo was kind of fitting the new players into those roles, and Meteor's shoes are such big shoes to fill, but it looks like that might not be working anymore. The meta has already changed from last year, so yeah, I would expect, and I hope that the coaching staff has evolved a lot of the ideas that they had originally, and I think this including newer agents that they didn't use at all last year. I think they need to, but that's just not very Gen G, is it? They're a team that is famous for doing the same thing and playing the same comp over and over again on maps, and making small adaptations, making reads, having individual players who can read the game well, having a fantastic IGL. So I don't think that that is what we're going to see, if you were to ask me personally, but I would love to be proven wrong. At least they did play a couple of different agents. I mean, the Cypher seen some popularity, but then again the Teo instead of the Sova on that last map. Yeah, I also think it might just take a little bit more time for Ash and Suggest to get warmed up into this system. Like, Gen G have a very specific way that they play. Like you said, it's a lot more slower iteration, so it might just take a while to come together. It could have just been nerves on map 1. We don't know yet. I would agree with that, but at the same time, we talk about this round robin stage. This is the guaranteed win that you want against Boom. Well, not so guaranteed anymore as we go into the Haven Agent Select. And I'm a little bit curious how this is going to pan out, and things change a little bit. I mean, yeah, Gen G, this is exactly what we expected from them. This is exactly what we got on Ascent, more or less. Just the Sova subbed out for a Teo, and the whole comp is exactly the same. They're going to trust what has worked for them in the past. Yeah, Boom also sticking with something a little bit more standard. You know, Breach Sova has been around forever on this map. Having the Cypher, having the Neon is slightly different, but not enough. So I think this is a composition Gen G डबल कंट्रोलर खेल रही है Gen G, और ये डबल इनिशिएटर खेल रहा है Boom. Isn't there. Now it's all about execution for Boom. I'm interested to see how Teo goes without being paired on a Breach. And then, of course, Boom, as opposed to some other teams, have not gone for the Teo change over the Sova in combination with the Breach. So actually, both of these teams not really trying to combo agents together, but just trying to trust a good selection of agents. All right, well, Haven is our next destination, and our casters Achilles and Paperthin are going to be the ones to take us there. That we are! Let's go ahead and jump into Haven. Gen G starting to rally back, starting to find the groove a little bit there on Ascent, but it was too far gone, needing a stronger start here on Haven. Their map pick widely sticking with the same composition. Ash, though, bringing the Teo up to bear. Yeah, and I think you're starting to see another reason that Gen G is bringing Ash in is that his ability to play the Teo, they seem to trust in a little bit more. You know, normally it'd be Yeoman on the Sova previously. Of course, that's the biggest change up for them. Meanwhile, Boom. This is just out in front. Timing हो गया. Quite wide, but he ends up getting taken Timing हो गया. Or not, rather, no, it's decay. Never mind, no damage found. Famous, going to find Munchkin. There's Karon. Who else is able to answer one back? Finds himself a second. Famous gonna be dropped there, but not before he's able to find 3, and Berserk around. Let's go ahead and bring the raid boss down. Texture on his lonesome now. Oh, what a paranoia. And yep, slides forward. Shots not quite being lined up. और reload आ गया texture का. Ends up getting taken down, and Boom
go 3 for 3 on the pistols. ओ पैसा नहीं मिला. This is starting 300 to रुपए get नहीं मिले. for in particular suggest on these. भाई रिलोड आ गया वरना ऑलमोस्ट ले ही लिया था टेक्सचर. What's going on here? Just a timing thing, I guess. Suggest what is this? I don't know, but I'll give him Turn the for contact. And Yep. pushing in front of it. Yep. It must have been a timing to try to move a little bit further forward and try to play off the contact that way, but just got caught in a bad timing. He's going to be setting up the turret in a similar position, playing a little bit further forward, but Boom seemingly have their eyes set on to B early. Nothing that Texture can do, just gets gunned down. Yep. Just absolutely destroyed. Charon down in sewer. Cycling a smoke forward here onto the B site. Nothing further to greet them though. Let's push forward. Ash catching a glimpse. Famous just holding this corner as the jiggle peak just further confirming. Yep, he's still there. Charon about to have to try to put this Bucky to use, but Famous able to slide back. Gets himself here within the smoke. Fault line at the ready from NC Slasher. Slow up the approach. Pinch here. Opposite side from that C connector, not really possible. As Famous finding one. Charon hopping over to the classic. Ends up falling down. Ash, the last one to fall, will get dropped 2-0 on the start here for the side of Boom. Now looking for yet another bonus conversion to start off the map. And it's another flawless anti-eco. Saw this on Ascent as well. They're really, really dialed in. The way that they understand their utility, very impressive. You know, they've got the breach fault line, and it kind of misses a little bit of a corner, so they use the aftershock to clear that corner. Karnas to shift over to the other side. He's dealt with pretty quickly. And this is really looking good for Boom. They're in cruise control. We're going to go for a Vandal here for DOS 9. Took me a second. I was like, right. I was like, flawless anti-ecos. They almost got thrifty. I'm like, yeah, second half. Second half. Yeah. First half did not, yeah. That one was a little bit crazier. They still ended up winning that bonus. No, they did. And the round after. Charon gonna be blinded up, cannot escape. Sure, able to find him. Unexpected timings here. Over that A connector. Well, the dot set over DOS 9. What a transfer! Oh, baby! That is absolute filth. Oh my god. Now the smoke gonna be dissipating, just out into the open, and it's gonna happen again. Ash, nothing more to be done other than to silently tiptoe away and tuck away into heaven. Good God. Boom. Another bonus conversion to start off the second map. And that's kind of consequences of being able to have so much extra room in terms of your economy to buy up to that Vandal. Hello. Yep, just split the attention, just jump around and take everything out of their hands. 4 weapon upgrades carried over. Boom. बोनस भी जीत गई. बूम अलग खेल रही है भाई. Maybe calling a very early timeout, and I think they absolutely have to. I agree. I mean, this is just disgusting. God, the audio. I know, the audio can't even keep The audio up. was as disgusting as the play was. I mean, good God. भाई लकी वहाँ पे जो नियॉन और दोनों पे जो लग गया शॉट्स. लकी या skills. I mean, maybe after this round, you'll take the timeout, but just crazy. Again, consequences of not being able to do any damage in the eco. Get that 5-0 होने पे टाइम आउट लेंगे, अभी तो नहीं लेंगे. DOS 9, and my God, you put it to good use. Munchkin trying to take a kind of cheeky position right outside of the window. There's no cam to spot him out, so he's able to kind of work that spot for free. Shiro is able to find one, wary about the approach from the side. A little bit of damage dealt. Little bit. Pretty wrecked. भाई वो 25 HP हो गया little bit. What is that voice cloud? Munchkin. Yeah. You know. Yeah, it happens. Yeah, we all got a little Forsaken in us from time to time. Sometimes you just gotta say, oops. Oopsie daisies. Missed the lineup. Let's see if it comes into play.
As Paranoia gonna go across DOS9, tucked in behind the box. Couple players clustered up here. Texture able to find a headshot, finding a body shot there to finish off Famous. Sliding forward, DOS9. Enemy remaining. Now here, against Whoa! able to find it. Finds the 4K. As Boom find the 4th round win. Solid attempt once again here from Gen G to try to get themselves a thrifty. It just narrowly eludes a grasp. DOS9, 8-0-1. He's just so good. Just show us, like, somebody, did anybody catch the lineup in the replay? I wish. I don't know what. He must have thrown it from mid or something. I don't know how you get it up there otherwise. That's disgusting from DOS9. Look, he is fragging out of his mind today. It's like when you're a kid and you're playing, I don't know, catch or something, like Frisbee with your friends. You get stuck on your and you just throw it, roof. Yeah, this is on the roof or in a tree. It's 30 feet to the right of where your friend was at. Day's just ruined. Oh, and then you go inside and play video games. Yeah. Look at his stack. Just again, oh my God. trying to take a very aggressive angle. Well, he plays it right this time. And is able to just absolutely cut tail and just duck out of there. I was going to say, I'm kind of curious what they're going to do off the back of this. Took some space, but not really able to get the kill or scale up much off of it. So over towards B, and Karan answers with a smoke right in front. So we're going to have to use a little bit of util to clear the site, but has been left relatively wide open. Stun here, Texture, nice slide in. What a read. Yeah, able to find DOS9, delivering his first death of the map thus far. Finding a third, and Sharon Slash are both going to be eliminated. Mr. 4K online. Famous here at the ready. Texture. Neon versus Neon. That's to beg the question, do you even want the ace given the win record? He's going to take it. Texture joins the club here today, getting Gen G an ace of their own in the series. But I believe the team is 0-4 in matches when Texture picks up an ace. That is correct. In Pacific. In Pacific. In Pacific. Well, I was going to say, are you sure you even want to get the ace? Yeah. I mean, but at that point. You can't suffer more losses. Yeah. Well, starting to be hey, it's the ace, yeah. Worked up a little bit more here. 10-4-0 for Texture as he takes over the lobby. Brings a bit of warmth to my heart. See him get the ace after last year. Just, poor guy. Well, that round didn't go so good. Just a great read by Texture. I mean, understanding off the back of the TP that they would be up on top of the box. There was a fault line there as well that caught onto DOS9. Slide out. Famous re-swinging. Really wanting to keep them contained, not give the space over long. That's really nice, though. You're able to bait out the relay bolt. Texture keeps his. So a good exchange there for Gen G. Little things kind of वो केजे को देख नहीं पाया वो. throughout the round. That immediately sends Neon, I mean, not KJ, Neon. Further scaling off the back of that. Something that you and I were just talking about before the map started, about how it might be a little difficult for Gen G to get info without the Sova there. And you can see they're making bad reads right now because they don't know what's going on in A main, and they're assuming that that's going to be the direction that Boom is going to go. Patient play there from Munchkin. Slow creep up into his own poison orb. Perfectly placed this time. Clears out that tripwire. Still out on a wide angle. Managing to find a second elimination. Even taking NC Slasher down to 46. Rolling Thunder is going to be used. There's no one here to receive this. As 4 players from Gen G start working their way across. Shiro out, finding a timing. Cleans up one, but Texture through the wall. Takes down the enemy Sova, and now the delays come through. Overdrive going to be pop. Texture spotted out the slide, but it's just dancing around him. Zaps down DOS9. Gen G will win their second round. Get ready. Just a little bit of a, I'm not going to say unfortunate, just a nice outplay from Munchkin. Kind of breaks this round open for Gen G. Forces out the Rolling Thunder because he's able to find 2 big kills. They can't scale quickly into the site. There's no Neon there to kind of use as a human drone, so they have to rely on some of that big utility to clear that space because they don't know what's going on behind that. They too had very little information on that round, and they were just kind of gambling that they could get through towards C, and Munchkin not having much of it. Famous. Ooh, DOS9 is just so good today. Texture a bit off there with the aim. Some damage dealt. A couple players tagged up on the side of Boom. Down the Neon, certainly going to hurt them.
I know exactly Just searching for the camera, able to find it right as the neural depth does come through. Ash bouncing that concuss over the side. The pit now in play here on the A site. Ping reveals out, just looking to try to make this unassailable. Looks like Boom agree that it is. Too quickly start backpedaling over. As Ping's coming down, suggests pivoting back over onto the C site. The alarm bot, the only thing that he really has here. He's looking to try to play an aggressive position similar to Munchkin the round before. Comes away with one. Still player advantage here, but tons of damage dealt here to the players of Boom. Push under the corner. Oh. Spray, I believe a bullet connecting there onto NC Slasher, taking him even lower. Swing out, headshot, not going to be countered. पहले वाले में Keeps them in with the advantage. Gives them a better opportunity. South wants to try to clear out. Ash pushed away, taken low. Munchkin getting ready to arrive from behind, but as you say, the tripwire is there. Last player standing. Nope. It's a nice attempt. It's like watching somebody mess up in one of those parkour videos. Oh, yeah. Jump through this gap and then just get annihilated. It's an absolute fail at the high jump. Well, Boom. Solid reply back, not allowing for Gen G to get within touching distance. Stretch it back to 3-round lead. Yeah, just good, quick decision making really is what wins Boom this round. Obviously taking texture out of the equation early, very helpful considering how destructive he's been. Toss9 has been just tremendous here today. Hits a great paranoia as well. Kind of back off Gen G's initial attempt. Try to get in towards the C site. That aggressive positioning, Karan knows it's there, but when he swings that corner, I don't think he had stopped his movement, so his spray looked really wild there at the beginning, so just kind of pulled the trigger a bit early. take flight. Use that drone, catches Ash. We're gonna use that. Yep. Stun connecting, no further aggression to be seen. Op from texture situated over at C, so not really in any danger. Here are Boom. They made a lot of noise there. So that's getting a couple players from Gen G to move over towards A as Boom slides the other direction. Quite a great use of knowing how much information they gave over. Getting out wider and wider here. Oh, that Nano. All the way down C, but like you said, Nano just holding them at bay. Damage not going to be suffered. Just waiting for that alarm bot to go off so he can just start spamming through the wall, but it's not going to be triggered. Instead, turn their eyes over towards B site. Stray shots out, nothing to be found there. Hunter's Fury opened up from Shiro. Hunting here for Suggest, but he's able to scatter back far enough. Not going to get caught. Armageddon now going to be sent in. Forcing them away from the B side. 30 seconds now remaining here. There's another smoke gets cycled into the front here. Push out, Famous. Able to open some space, but Texture quick with a shot. Able to find one. 1-for-1 trade as this fight can be planted this time around. Recon spotting nothing. Frick quickly cleared Flash going as the smoke dissipates, but Ash able to find two. दोनों को मार दिया. Slasher Berserks both could be eliminated. DOS9 here at backside. Let's get it for the moment, but Karon so snappy with it, shuts him down. दो को नहीं मारना था वहाँ पे. Here from Gen G to right the ship, get back into the driver's seat, get a third round win. Yeah, they're really patient on this. Great job by Suggest, just buying a little bit of extra time. Allows Gen G to get a little more comfortable for this retake. Texture with an operator, one of those big win conditions that they could never really get into on Ascent. Great turn of that flash by Ash. That won them that round. The other two players were fully blinded from the breach flash. If he doesn't bail them out there, it could be a very different situation. It's a very nice individual play from the newcomer. A rookie for Pacific. Find some big impact. His first two kills of the map as well. Yeah. One Sheriff in hand here for Shiro. It's Famous Slasher just waiting. Slow creep up. Looks like it might just be a very pacey 5-man push into this A site. Switch around from Ash. Gonna look for the jiggle peek out. Spots one. He's a shot. Relay bolt gonna be sent, but Munchkin is here. Finding that kill. That's just that tip of the spear. Cut off. And now Boom, scatter to the winds. Shiro rotating over to try to check out this C long angle. You
Got to suspect the ops here. Oh, well, the timing. Timings absolutely saves him. Toxin screen down. As push up. Oh, and Munchkin very off on the spray. Push her on the back. Ash going to be good for one, but then falls, and suddenly this round is absolutely twisted. Well, it looked like it was going to be so good for Gen G. Falls apart because of one whiff spray. And yep, so just already noted the recon. Able to find the ping, tucks back. He and Texture on the same angle of approach. Did that on purpose to try to bait for Texture. Fastlane going to be set, but Paranoia's out. Texture pushing forward, able to find that shorty kill. Dawson going to be taken out, but it feels out, and that's going to be Suggest now. Eliminated Texture. A Phantom recovered. A double tuck away. Into the cup E here by Sewer. Push out, they nearly line up for him, but Texture is unable to find the shots. 6 rounds locked in here for Boom. It was such a good early play from Ash and Munchkin there to use their util to shut down Famous and completely nullify that initial fast attempt. Quick hit from the side of Boom. And then he whiffs a spray on the follow through. Things just kind of crumble off the back of that Berserks with a 4K. Yeah, I don't speak Indonesian, but he's got to feel pretty good about that one. Won't claim to know. So far, a very rough go of it here for Suggest. 1 and 8. Shock Dart clearing out the alarm bot. Nano already going to be used. Munchkin goes for the spray, but maybe enough spotted. Either way, DOS9 trades it back. Karan nearby, waiting. Shiro, however, up close, and Karan's just not ready for that, not anticipating it at all. It's just now picked apart, it's thrown over the top. Just a glimpse there onto Ash. Extra finding one. Weapon swapped over. Cleans that up, slides forward, looks for a little bit more. Tap of the spike to try to bait, try to get some peeks out here, and gets a headshot through the corner. Berserk's gonna be taken low, gonna be taken down. Ash able to find NC Slasher. DOS9 no. Bringing it into the 1v1. Texture low, trying to close the distance, and he does. The 3K from Texture bails him out. Gen G claw their way back into the round. Now just 2 rounds separating. That was a tough one for Boom. They don't have any util there for the post plant. They have to rely just on gunfire, and they decide to double stack Cubby going up against a Tejo. Yeah, he was so seen. Yeah. But going against a Tejo, I question this a little bit. Also not using the neural theft here from Berserks. He had an opportunity, decided not to invest it. Could have maybe got a better read on the positioning of Gen G. I barely know any. Okay. Merci, bonjour, je ne sais pas. That's about all I got. What is the color? That's the other thing I know in French. As Ash finding one off screen, DOS not going to be taken down. The Carmine Corp fans will. Oh, is that their chant? Ah, okay. Oh, oops. Okay. That a fast lane did not do what it was supposed to. Oh well. Texture not going to be able to find the shot there, but Karan watching Garage, and it seems like Gen G very much is having a bit of a download on the playbook here in round 11. Very quickly cleaning things up, mopping up Boom, and now one away from tying things up at the half. Multitude of ultimates available here for both teams.
Yeah, absolutely. I think at this point you're pretty happy with how this half turned out as Gen G. Just reading them at every twist and turn. Yeah, going against Nico, sure. But the positioning there, very nice from Karan. Texture continuing to hold down the fort wherever he's at. And now they're going to try another big A push, but Texture and that operator are going to be there to greet them. Suggest is going to grab a shotgun, the judge. Oh, relay bolt gonna connect, and Famous arriving just fast enough now. The stun here onto Ash, desperately trying to send in the ultimate. Slow up the approach, but it's far too late. Karan, however, still alive. Drops the spike here at Sewer. Is very much surrounded, trying to fight his way out of the corner. Swings out, he's able to find one more. Famous, however, there to collect. 3 kills for him, lockdown still gonna be in play. This ushers them out and away from the A site. As DOS9 cannot escape now. They're into a 2v2 with Famous getting caught. Did it intentionally. I mean, they have to suspect that this is going to be watched, and it is! And Suggest trying to aggress, trying to find that kill. Ends up falling to the wayside. Munchkin, however, quickly rotates all the way around into Garage, and look where Boom are going. How has he done this? How has he gotten this read? They're going to go pushing into him, but they will rotate in towards that B side. But do they suspect at all? Look at this, that he's going to be in this angle? I don't think they do, but Munchkin himself trying to get the read, spots one, tries to play it patiently, does so, and gets the interrupt. Spike down B. Famous peeks and wins it, however. Munchkin perhaps overstaying on the angle, cannot get the clutch despite the solid read. Boom will close out their attacking side, 7-5. Man, oh man, that was a wild half. A lot of back and forth from both teams. Famous here, doing a great job using all that util to flush Texture into the back corner. Throws the fast lane to isolate the fight. Pops the ultimate, gets a kill on the entry onto Ash, who's just trying to get the hell out of all that spam. Big round for Famous. And that was a much needed one for Boom if they're gonna try to close this map out in 2. You would think, or close this match out, I should say, but you would think 5 is probably good enough for Gen G, I would normally assume, but I don't know. Boom's been really solid today, so. Yeah, it feels like it should be enough here on Haven, but who knows? I mean, right now, 3 for 3 on pistols are Boom. If they're able to pick up another one, get that snowball going against Gen G once more, that could just be the death sentence here for the team. Be another loss on this stage for Suggest, who has never gotten a victory in this arena. Was on, of course, the DFM roster and famously went 0-9 here in the Songan Coliseum. Now is back on the stage once again. I think you can kind of see the nerves working against him here a bit. Still some hope, however, as we get ready to go into this second half and see if Gen G are going to be able to deliver that third and final map of Fracture, or if Boom can roar their way back into stage 1. I guess I should say howl. I like that too. Yeah, that'd be good. The Wolves. Yeah, that'd be apt. Also, for the analyst desk, sure. If you're going to chant boom, let's say they close this out. Yeah. How are you not going to do it in the form of the Banger Boys? Yeah. Boom, boom, boom. Yeah, like, come on now. All right, well, Texture going to be taken down. Ash able to find one. 4v4, things slowed up a bit. Suggest going on the approach up through Garage. NC Slasher able to note him, however. Will be pushed away. Famous, however, on the swing. Suggest able to find the headshot, traded back. Slasher finding that kill, but does he suspect that Munchkin's also going to be here? The answer is no. Munchkin is instantaneous with the snap. Finds that kill. Now DOS9 Shiro. 2 players remaining. Trying to stop Gen G from finding the pistol win, and Ash is going to be taken down. Spike not yet planted. God, DOS9 again. Just making this so much more difficult for Gen G. They're going to try to double up, but Karan and Munchkin have flanked out high-low in terms of positioning on the map. Karan, oddly, a bit whiffy. Munchkin on his lonesome. And Shiro, low on HP, and Munchkin hits a transfer for the Red Bull clutch. Was looking dicey, but he barely manages to get it done. Gen G start the half off right and get their first pistol of the set. Yeah, it's a great round for Munchkin.
reading through these defenses. I was a bit surprised that Boom decided to try to accelerate through the window to catch Gen G off guard. It turned into a 1-for-1 trade, which they immediately gave up that space. Munchkin re-clears it, finds a freebie. He's able to lock it down, catching Boom off guard by going all the way to long. But I like this change up. Famous. Oh yeah, this worked yesterday for DRX. Yeah, the Outlaw Force. Try to catch them off guard. Or 2 days ago. It was yesterday. Oh yeah, it was yesterday. Yeah. Yeah. That's right. I know what day it is, I swear. Yeah. It's understandable, you know, the meds that the nurses get. Yeah, It makes it all yeah, everything just kind of, Yeah. the older you get, the less relevance time has. Just kind of pinned to the corner. Some reinforcements coming through. Texture trying to bail them out. Do they read? Yes, they absolutely do. The DOS sign is scaled forward. Kill's going to be found. Site broken open. Famous going to have a much more difficult time trying to put this Outlaw to use on a retake. See if he can get it done. That's the first shot. Munchkin going to be dropped. Marshall on the floor here for now. Still a hell of a lot more to try to work through. There are a couple full armors as well here for Gen G, so that Outlaw, it's going to be a little bit tough, potentially, even if you're able to find much. Salvo's forcing him back. As Caron just going to be hounding him down. Just running gun. I thought maybe he would have some interest in scooping that Outlaw for themselves, but looks like he will leave it on the floor, at least for now. Okay, there you go. Now picks it up. Juggles it back, keeps it away, out of their hands. And now the back pedal will come through. Fault line to try to slow up the approach. TP down into sewer though, and all of Gen G should be able to escape the blast radius. As Berserks and NC Slasher will go down. We are tied up at 7-7. Gen G looking to take the lead if they can get a bonus conversion. He's just such a smart player. Gotta love ensuring that that Outlaw isn't gonna be a problem in the next round. And just running and gunning with the Spectre. A lot of value out of that for sure. Nicely handled by Gen G. Gonna see if they can take us to map 3, to Fracture. Munchkin is gonna grab an Outlaw of his own this round. Couple Spectres held over. Let's see what they can do. चलो I'm back guys. क्या हुआ भाई, क्या क्लच किया भाई वो हमें मंचकिन 1v2 हैं शेरिफ से. Yes, okay. Just finding one. Famous down here being Munchkin. Given the peek in the lobby, not in a position to try to get the punish there onto NC Slasher, so he is able to silently drift away. DOS 9 trying to hold here. Just that Sheriff in hand. Flash not going to connect, so just able to turn from it, dodges out of the fault line. Gets भाई क्या मार रहा है सजेस्ट सजेस्ट ना मान रहा, जाग गया. Welcome back to the stage, Suggest. I missed Looking that. alive and well now. Yeah, I missed that. Ace unlikely given Munchkin's position. And Shiro not really going to look to try to go for anything here as well. That is going to be a bonus conversion. Gen G looking to take hold and take control. As okay, Suggest getting closer. Shiro down in sewer. Can he make it happen? Can we have a 5th ace in the series? Stealth drone to try to check. Nothing going to be spotted there at long. Ping not found. He's up close. And the ace is confirmed. 5 ace हो गया इस एक मैच One में. away from the lockdown. A second ace for Gen G, trying to catch up in all metrics here, it would seem. And good guy Ash. Gonna set him up for it in the long run, but this here, the tapping. भाई ये तो क्या ही मारा भाई स्लैशर को. Filth. Absolute filth. I think you can see him starting to pop off as well. As soon as he cleaned things up in garage. Yeah, he popped off after the 4K. Back to the eco, go boom. Another shotgun there for Berserks. Sheriffs and then Famous, just the classic. Looking to spread the map a little bit. Shiro gonna try to jiggle the long A angle. Munchkin loves to work off the back of this toxic screen to try to keep his opponents guessing where and when it's gonna be. It's almost a C. Spike is there. Huh? Sometimes you're just lucky. Well,
if there's anything that makes you believe in a higher power, it's Munchkin. It might be that right there. Unbelievable. Well, stealth drone gonna be able to spot out. Famous does not get the suppression. It's just gonna be a change of direction though. Yeah. Munchkin's cleared so much space, hasn't really heard much. He knows of the breach likely over here because of the flash earlier. DOS9 is starting to change directions, as is Famous. Sheriff set up and Shot. just this time not quite going to be as snappy with it. The weapon not going to be recoverable though. As Paranoia goes through, NC Slasher just having to stay tucked away. We know exactly where he's at. They just need to try to flush him out. But Slasher finding one. Munchkin now being surrounded. भाई ये कैसे हार गए? Ash now all alone. 10 seconds remaining. 3 players and he can't find one of them. कैसे? From Boom. Off the back of the ace from Gen G. Get things tied up at 8-8. Gen G far from out of the woods. Just felt a little sloppy there from Gen G in terms of the timing and the coordination. You know, Ash opts to go for utility when if he had stepped around that corner, he probably could have saved Munchkin's life. He made this a bit of a different look to the round. Some great shots from Boom though. Just putting themselves into position to cover each other nicely. And they just kind of outwork Gen G in that round. Yep, so they've got themselves right back into this. It's going to be an op for Famous as well. He's at long C, so trying to figure out ways to deal with this toxic screen. Drone catching nothing. DOS9's hidden down there. Paranoia out, Shiro absolutely dead to rights. DOS9, he's got a TP port. They have no idea. Now he strikes, finds 2, looks for the third, cannot make it happen. Suggest able to mitigate some of the losses here. Lockdown going to be used, but it's very shallow. क्या प्ले था ये और तीसरा सजेस्ट ऑलमोस्ट निकल गया था ना तो मैच खत्म. Around the back. Turret is set up. We'll get a spot out. Swing though. Munchkin able to hold down. 2 remaining players. This pit now going to be invested. Swap over. It's Famous. Just getting in, trying to avoid taking damage for the most part. Is fine. Has that regen shield. Is able to shrug off what the turret put out. दोनों ही लो हैं. लेकिन ये भी पिट के अंदर घुसेगा तो 1 HP. No, he's here on the site. Suggest playing far disconnected, not giving any kind of angle over, not wanting a stray to catch him. And Munchkin is able to find the final kill. 3 for him. It's Gen G. Stay around. Get back into the lead. Munchkin just has such great. भाई ऑलमोस्ट अच्छा प्ले बन गया था बे. देखो ना और टूम ये भी निकल गया था ना. Trying to use that toxic screen against Gen G the whole way. Basically does. Tucking himself into that corner, trying to use that backside of where the toxic. Few teams who could figure that out. Now, obviously a very different comp that Boom is running, but Gen G, you can see why they wanted to pick this map. They're very, very comfortable on it. And they are showcasing some individual skill along with some good game planning. Even though Boom has really brought it today, they've looked so strong. Tiny chip damage on the Munchkin, but nothing that he's going to be too bothered by. Tripwire set up on the entrance to B. Stealth drone, check forward. NC Slasher not getting caught by this. दो स्मोक क्यों? कोई स्मोक के अंदर आ रहा है कि नहीं? Very damage avoided. Suggests very दिमागी. trying to be the hero, break things open at garage. Just wait on a linger, try to play off that turret in case any contact comes through. They're going to try to
इनको पता है ये पे कोई नहीं है, सोवा का ड्रोन आया था. This is scary. Double setup, paranoia. Available for DOS9 texture. Bounding forward, slides in. DOS9 on the peak, able to find two. Looks for that third. Can't quite steady in the fine texture, but does take him down to 30. Berserk's able to avoid the relay bolt, but just doesn't read that texture's just gonna push right up onto him. Kill found, shock dart, not gonna connect. Munchkin staying safe, relatively unscathed. This texture gonna try to slide forward, but just gets barrel stuffed there by Shiro. Guardian to the temple, pulls the trigger. Kill found, so just gonna be noted on that right side here at C long. No post plant util available. For either side. Yeah, the bite, gone. Just gonna be, the jiggles out. Recon cleared by Munchkin. The swing coming through, they find the first. Shiro now, a 1v2. Concentrate, Sova. Peak after peak, just alternating left to right. Now together, Gen G will get it done, denying away a victory after the timeout call as they hit a 9th round win. This is wild, dude. This is often coming down to just individual moments to change a round's destiny. 10th round हुआ ना, 9th कैसे? 10th round win, sorry. Yes. If Texture isn't just jumping all over the place there, and DOS9 can find that kill, probably a boom win. Wait. Hello, scoreboard? Because that adds up to 17. And we're in round 19. You're correct. So, all right. A little bit delayed on that is Charon. Not even going for the TPs here. He's actually scaling forward. That third final pump. We'll get a hit there. As, yep, looks like we might have just get a quick little refresh on the UI. Apologies. Surely that one ends up in the right spot. All right, well, Bucky going to be scouted here as Shiro trying to fight things out. Over here, at long is able to find the first. The stun connecting, but blinded is Texture. Aftershock holding him back here. Just decides to cut away. Getting a read, getting an idea that this A site is very heavily stacked. Great util there from NC Slasher. Making it really difficult for Gen G to get through the defenses. Has to change directions completely. You'll know it once the cam is cleared, but there's nobody here to really do much about it. So I have to assume that just got to play for a full retake right now as Boom. You've got the numbers advantage. Go for that spray, that's fine. Have a recon for the attempt at the retake here. Overdrive around the back, Famous about to make contact here with Suggest, who's over in the cubby. Slide forward, looking for the kill. Suggest able to find the headshot. NC Slasher draws the classic. Texture gonna be finished off. DOS9! He just TPs forward and just puts a Marshall right in Ash's face. Suggest now has to do the clutching. He finds the first but cannot find the follow-up. Berserk's in range. We'll find the headshot. 3 players surviving on the side of Boom. As they will go ahead and answer one back. Still going to be 1 round separating. We know more than we did before. 10-9, right? Yes. Pretty sure. What a play here from Shiro. Just decides to stick it through the relay bolt, trusting that his teammates will bail him out with their utility. And they do. अरे भाई. DOS9, man. Yep. So fun to watch this guy play. Fortunately, we don't have a little iPad where we can draw on the screen, as it's still 18 does not add to. Yep, it's still somehow lingering behind by 1. If I did have it, you know, then I'd be doing my best slugging. What if the round tracker's wrong, and it's actually 9-9? Nope. Nope. It's all right. It's just a test of our skill. Can we cast without the UI? Can we tell everyone what's going on? No. The answer is yes. Oh. ठीक तो हो गया 9-10 हो गया. As okay, it's going to be suppressed. DOS9 able to find one, finds the second. Oh. Just continues to shut them down. Finds a nice little bit to tuck away and finds. Oh! They're trying to run him down, but he is just beating them back. Ash with a sliver of HP. One final bullet from Shiro. DOS9, bro. Stuck here, dead. Famous out from window to find the kill, and now we're going to be tied up. Yes. My God, he is crazy good. His micro positioning around this B site is so nice, and his understanding of the timings of the util, when he can step into a fight, when he can't. Absolutely beautiful. No other words to describe DOS9 right now. Look at that. He sticks around just long enough before the relay bolt's about to hit. Waits around for the Armageddon, moves ahead of it right as it's going to start coming through.
like some of these big executes that they've been trying to break through the Boom defensive Hey, it with. says 10-10. Yeah. Is that correct? Yes. Okay. Then we're good. Scanning ahead. But I think you need to slow down the pace a little bit. You need to let Munchkin work the map. Toxin screen down. Some of these ideas are just getting shut down. You're just getting outplayed at the point of attack. So, time to be a little bit more cautious, a little bit more patient. ओ कोई बताया नहीं क्या? Stun? Aftershock? Stun into the aftershock? Maybe. Couldn't get out of the drone fast enough and then get away from it. Ah, yeah. Yeah, you can see he's away from the wall. He tried to move. It's just a great little on-the-fly combo saying, like, yeah, he's right here in this corner. Texture now completely pinned in unless he finds a timing with Famous. I mean, yeah. So, he's right here. Wait for the fault line and then I mean, Texture's just surrounded. There's the fault line. Jump into the window. Berserk's able to find one. Karan answers that kill back, but Shiro refills the नाइस, क्या ही रीड बे. This timeout call is not delivering for Gen G. Boom. Regaining the lead 30 seconds left. as they look to close out this round. God, they're outthinking him now too. You know, even though Gen G is sort of playing with a slower pace, just had a really good read on this round at NC Slasher. His breach util has been 10 stellar. seconds left. He has had so many impactful moments. A couple big ones there with the aftershock and then the follow-up fault line to deal with Texture. Even though Suggest is kind of aware of it and trying to cut off that attempted play, there's still enough Boom members who are able to slide over to help out, make sure that that's dealt with. Really good stuff from them. 11 to 10. Yes, yeah, there you go. Couldn't get out of it. Just done in. Boom, great adjustments. Now back into a winning position, 2 rounds to go. What's the money like? I don't know. We'll find out when we start looking at the weapons in their hands. See if Munchkin's able to find the lineup. As Orb gets ready to get lobbed in. Okay. Well, most of them have rifles. भाई ये तो जेंजी का मैप पे क्या बे? उसमें भी ऐसा सीन है. Still the op here though, for Famous. Towards sewers. Not sure if it went. पता नहीं चला इनको. Catch a glimpse of the neon here at long. उनको अंदाजा तो है. Be suspicious of it. I think they're aware. Jiggle Peak's not wide enough. Famous gets the adjustment. Take down Munchkin. Repeats not यही तो. able to hound him down with the judge in hand. Really both gonna be sent. आदत जंगली जी, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. भाई क्या हाल है, कैसे हो भाई? Dolstein gets flushed out. Berserk's last one standing. Versus 2. थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया. Bot can go forward, quickly cleared. Spike planted. They know that he's close. They're gonna look to try to challenge out. A dink there onto Ash. The line. Berserk's collects them both. Freezes in his tracks. Has to get the pop-off moment. And as the defuse comes in, Boom will get up to match point. Clutch. He's so patient. These are nothing. And Gen G just, these 2 new players kind of play this in a way they don't really need to. They can be much more patient behind that box. You can wait for them to push Suggest angle, and then Ash can swing out. Instead, they try to double face him and line up. Texture doing everything he can with his judge. Gets a 3K. Unbelievable. Yep. That let him know. Yes, I think they said that's game. No, not yet. It's Gen G, boys. Well, on their last legs. I have to suspect that Money's probably not in a fantastic position. भाई मतलब ये भी बहुत तगड़ी टीम है क्या? ग्लोबल स्पोर्ट्स को इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना. भाई जेंजी को हरा रही है भाई, और क्या मतलब. Texture waiting. Tripwire going to be cleared out. Off shot. Famous looking for the peak. Has the back pedal to relay bolt. ओए नाइस, ये बहुत अच्छा स्मोक है भाई. मंचकिन नाइस शॉट. ये तो भाई हो गया. और एक राउंड मतलब
blink and you miss it assault on वो this site. एक आया था ना पिक. The lone player alive for Boom. That was just explosive stuff from Gen G. Munchkin again, coming up big on these entries. Ah. This is troublesome now. Yep, not able to make it. And okay, down to 10, but staying alive for the moment. Desperately sprinting away. Not going to be able to clutch this out. Not going to be able to bring this to a conclusion quite just yet. Gen G will get one round away from taking this into overtime as they officially hunt for this Omen, trying to take him down. Drop into hell. A final shot is all it takes, but DOS9 does manage to find Suggest. So some further damage dealt, because you got to imagine Gen G's economy still not going to be in a fantastic position. But they do persevere. Nice overview. Using all that util to clear the भाई front ये of sight. बहुत सही पिक था भाई. Forces Famous back. Oh, that is nasty, Ash. Right before that flash was going to bloom. It's two just disgusting shots. Shiro one away from a Hunter's Fury. Let's see if that one comes into play, and Gen G just... Oh, this is fast. Yeah, looking for the dubstep setup here. And it looks like they're going to stick around, though, pushing up in towards window. Alarm bot is there. A stealth drone is cleared through sewer, so yeah, I was going to say, Suggest needing to go for the deeper lockdown. Has it, like you said, that Hunter's Fury not yet online, so no real way to try to clear this one out. Smoke gets cycled forward here onto Heaven. Pumping the brakes for Gen G, a rotate around. Trying to get this Neon into position. Detain's not going to be found. Relay Bolt's going to be sent, as well as the Salvos, just trying to buy some space while they can go for the plant. And Ash is able to find Berserks. Just going to be him dead. Drop there in Heaven. The pit now layered in on top. Everything in the kitchen sink, you might as well send it here. As the Armageddon will similarly come through, but is it too early? That's my question. TP over in towards long. Ends up getting canceled. Caron there for the break. Shock Dart's not connecting. Another smoke cycled onto Heaven for Boom. How do you try to get back into this one? It's going to have to happen very swiftly, but as they drop down, there's a judge in their face. Texture pushing forward. They all fall to the wayside. And this series, this map, it's not done yet. We're going into OT. Oh boy. Just a really crazy round there. All it takes is just a little bit of space created, and Gen G can use those ults to just take any hope for Boom out of the round. I wasn't sure if maybe there was a Rolling Thunder in NZ Slasher's hands. There was not. They just tried to make a drop down work, and it's so difficult to clear that pit. Why is DOS9 always just in Ash's face? Every time Ash like turns, there's just DOS9 is is there. This time he gets the kill. There's no Marshall there. Going to overtime. Not sure if there's going to be an op out of texture or not. Haven't been able to catch that. That's kind of one of my bigger points about this. Hard to say. Ooh. Smattering of damage from Caron going to be pushed out here onto these players. As Ash, they're not up there for a brief little moment, but Boom, not able to really advance forward from here. Not too much space taken. Self-turn at the ready. It's going to be sent. And catches a glimpse onto at least one, maybe a brief pixel of DOS9 noted. They haven't had any other contact in other parts of the map, so they're just going to keep assuming that they can brute force their way through here. They hear the drone coming up, and there's 4 players nearby. Texture can get into position quickly enough. That's fast line going to be sent. The push forward coming in. Caron trying to play up into the front, but ends up getting taken down. Ash, however, there. The bite, able to find Famous. Very nice, nice. Zero, however, continue to break things open. 3v2 है. Just and Texture now, last one standing for Gen G. To try to stop. Retake हो सकता है. Texture है वो भाई. World डालेगा, दौड़ेगा. Cage going to be waited out. Tripwire awaiting them. Another cage now cycled in. Just Texture slowly creeping forward, waiting. Fast lane going to be popped. They both scale forward off the back of this. Slasher repositioning, tries to pull forward. And they're going to take it down. They pick their targets. They nail them. And Gen G, they take the round. They get themselves up to map point. What a reaction from Gen G.
I thought that was थोड़ा wall के और पीछे आना था ना. It's going to catch him completely off guard. Instead, they just snap their fingers and wipe the 3 remaining players of Boom off the board. Last night, well, this time it was Karan. Karan, I thought, might have been able to trick Boom there, sneaking between those smokes. Yeah. I had my eyes on the map on him, but he was able to be identified. Just tremendous stuff from Gen G, and now it's their turn on this attacker side. Try to end this map. Create a little bit of attention. Oh, we've got to be so careful. Oh. Munchkin. They just knew. IGLing from beyond the grave. DOS9 perched up on the box there inside a garage. Bit of a change up. That op now very far forward. Stealth drone wisely going to be used to try to just scout this out. Texture's going to try to break the aim, maybe. So risky, and Famous nails the flick. 3 peaks, finds Ash. As he's just on an absolute tear. Would have been a hell of a one, but now has the overdrive in play. Karan getting a decent bit of damage here. NC Slasher finding just at the same time. And Karan now needing to ace clutch at 15 HP, but the wall bang shots from Berserks will put him down. Tied up once again. Match point lost. We get a reset. I thought he was going to get that last one there. That last flick looked like it just missed. Great setup from Shiro. Nice quick scope. Nice everything from Famous. No, this is just phenomenal opping. I almost wanted to see the whiff just to see how close it was. Because I thought he had it for a second. I just thought, oh, he's got this. He looked too dialed in. We go again. This time Gen G gonna really overstack mid. They're getting aggressive. Really bold set. I mean, Texture is just, there's no ambiguity here. They're just looking for a crunch, but DOS9 is able to shut it down. Texture, Munchkin both gonna get dropped. The slide forward from Famous, and whatever Gen G had in their minds for this round, it's just been blown out of the water. हो गया भाई 2-0. 2-0 हो रहा भाई 2-0 हो रहा. In overtime. Unless Suggest and Karan can pull off a 2v5. Smoke dissipating, Suggest having to backpedal. इतना सारा यूटिल है कैसे होगा? देखो बीएमई पे वो थोड़ा कांटेक्ट हुआ कि नहीं वो? The turret cleared out. Every little advantage that Gen G tries to get is taken away, and Famous. A 3K. It's Boom now, 14-13. Look to bring this to an end. I think the average distance on a DOS9 kill is about 2 inches. Look at this again. They're just walking into him this time. I mean, it's like, hey, I can't miss if I just get right up in front of him. Yeah. Just make the game easier for yourself, you know. Simplify. I guess if you're a chamber with a headhunter, it can be a little bit more difficult. a bit more difficult for you, but nobody, you know, not thinking of any players. Yeah, nothing specific. Yeah. Karan, down to the corner, slides out, does get the TP in time. The relay pull. To try to keep Texture alive, he is narrowly holding on by able to find another. Gen G looking, trying to persevere and Suggest writing the aim. साला डिफेंस Berserks on the attempt at the flank. हो ही नहीं रहा है. Sensi Slasher alone on this A site. DOS9, they're in garage. I think getting a good read here. अब 2v5 तो much attention on the other side of the map, so B or C, pick your poison. They're gonna guess correctly that B is the one that. अगर ये 2v5 हो गया तो बूम डिजर्व करती है जीतना पे. टेक्सचर ऑलरेडी लो है. सजेस्ट फीचर्स 30 लो है. Don't allow the post plant util to be available. NC Slasher trying to get ahead of the game, but Ash is so aware. Oh, okay. Shot is found. Try to make a go of this one here. Karan tucked down below, dinked, finished off, looking forward, NC Slasher, surely not. Rolling Thunder crashing across. Texture relocating, Munchkin waiting. And the time is just not going to be there for him. 3 HP, a shorty around the corner. He knows that it's done. Widely's just playing, trying to stat pad here. But Munchkin will find the 3K and he will keep this going. 14 each हो गए.
As Gen G and Boom, maybe they have their eyes on that OT record that was set by the two teams that are in the next match. I mean, you're just trying to get that Uto crunch in the lobby to work. Gen G couldn't do it 2 rounds ago. Boom can't do it this round. Both teams just so reliant on trying to create that A pressure, force things to the other side of the map. You know, it feels like once you can get the A plant down, your chances of winning skyrocket. It's so hard to retake that site, but now we're going to slow things down just a bit. Boom. Got the pre-fire. They know he does this every single round. Just taking a moment. But man, Gen G's got a good read on this round. Early push out from Texture. Couple players playing hard angles on B. Suggest right outside of the door. Alarm bot not cleared. Cleared. She goes a little bit too deep. Slide forward though, and Suggest still just gonna be overwhelmed. Famous, too clean, too quick. This Texture in a very deep position. We'll have potentially this crossfire setup, but Boom, after getting that elimination, more than happy. Just kind of leave Famous on his lonesome. Rotate over, reinvestigate this A side. I thought maybe with all that space taken, they'd at least take an attempt. But maybe they're just trying to hide Famous. The traps haven't, the tripwires haven't been cleared, so this might catch. Okay, the relay that gives it away. Yeah, it gives it away. Texture not seeing anything. But Gen G's read this. They know that it's a fake. There hasn't been enough other stuff going on. The question is, can they still win out the fights? Boom have been deadly in some of these executes. Calvus at the ready. Texture able to find one. Ash from the corner finding Berserks. DOS 9. Just good for the singular kill. Shiro, NC Slasher, now needing to persevere. Munchkin swings out, NC Slasher fights back! And suddenly it's just Texture now. Still the operator in hand. दो मार दिए वहाँ पे. The relay bolt to work with. But NC Slasher, another Rolling Thunder. This time, almost certainly will find some value. Texture not wanting to make a peep. Slow creep down. Trying to pick the angle. The gun barrel about to be spotted. Sees him. Hits the shot. Swaps the weapon. The tap to come through. Creeps forward. The Rolling Thunder. Oh, the patience. Considered. Oh, and so well read. He knows he's not sticking it. The fault line out on the back. The sun connecting. NC Slasher losing the time in the round prior. Now look at the takedown Texture by the same metric. He finds it and boom. Persevere to regain the lead. Back-to-back rounds. Absolutely brilliant from NC Slasher. So good on this breach. This looked like it was just going to be Gen G. They had the crossfires. They had this push shut down. And then NC Slasher follows up. A little bit of a delay compared to the rest of his team. And just knocks 2 players down. Might be... attack this round. They've had some success trying to get through garage a bit. Well, Suggest had some success. Oh my god. Oh, Here we go look at this again. crunch again, but just lined it up. He's just gonna be absolutely destroyed. Suggest, can he get away? The answer is no. Oh So भाई क्या trade. another kill. उनका main Back at these aftershock setups. Sentinel चले गया. That's the relay Another duelist किया. shock that time. Really interesting. Might have been a happy accident either way. Short Tuber bro, welcome to the stream. Hello, what's up newbie? Hello Short Tuber भाई, स्वागतम. क्या हाल है भाई, कैसे हो? Texture checking out the cubby.
can find the timing. There's no more util to watch the flanks. So if I'm Berserks or NC Slasher, I'm really considering trying to get Pocket का star by welcome to the stream भाई. क्या हाल है? But they have no information. I mean, Shiro's got the drone and the relay dart, but he's tucked back. He's just waiting. They're just trying to play hidden. They're trying to sell it that they're not actually holding this A site, or they're just going to fall back. I'm not sure. Salvo sent Shiro here. Oh, हो गया. GG. Way too far forward. GG हो गया. Spotted out dead. 30 seconds remaining. टेक्सचर गया मतलब GG हो गया. ना एंट्री होगा अभी ना बैकस्टैप देखा जाएगा कुछ नहीं. GG. Looks like B site gonna have to be the target, just given the time remaining. Smoke onto the C link. 15 सेकंड में. Getting really for no one. Viper wall is set up for Munchkin. Drops it, takes a peek. यहाँ पे अगर मंचकिन 2 पिक निकाल दिया तो एक बात है. Oh! Oh! Needs a backpedal swiftly. Does tuck back away. As Ash goes for a quick little reposition. Caron out into mid, now going to be smoked off from the rest of the squad. The recon not catching anyone. Shock dart sent. Hit not found. Munchkin able to find one. Caron thinking about a timing. Goes forward, but Berserks has the angle covered. Munchkin and Ash, however, hold it down. And it's not done yet. 15-15. We're going to keep going. And Boom there just saying, look, if they're going to go A, we're going to end the map. But the problem becomes is that they have no other info really what's going on the other side. They all commit, including Berserks, on the Cypher to the other side. He's hanging out in defender spawn half the time. कैसे 2v5 हो गई. Retake or attempted denial of the plant. That opens up a ton of space on the map, and Munchkin's so patient there with the timing. Waits for the first two players to come through. That's when he strikes, takes out Shiro. And then him and Ash are just kind of able to play ring around the rosy a bit on the B site. Take things down, and now it's going to be Gen G's turn for a timeout. This has been absolute madness. I mean, another huge overtime here in Pacific. Every team in this region is so damn good. So they're a round up or a round behind. Calling it here, tied 15-15. Point. And maybe enough being noticed about these defensive rounds that they want to try to point out. Munchkin, though, catching up the texture. Besting him now. 29 kills for the IGL. Goodness. Same for Dawson on the opposite side. Up to 31. It's a bit of a different position for that alarm bot. Don't think I've seen it quite in that spot yet. You can see Suggest just waiting to play off of it. I mean, that's been a lot of Suggest's game on the defensive side with the Killjoy. It's just trying to use his util to get those one and dones. Kind of get those free picks. Generally, though, Bloom has done a pretty good job of being wise to those. This one, Suggest actually backing off. Oh, Munchkin. Oh boy. Catching a glimpse there in Berserk. मारा क्या कुछ भी नहीं यार. A lot of the opportunity to go ahead and bounce out of garage. Shiro's just trying to use his util there to sell a fake, and it actually has got Gen G leaning in the wrong direction. Shots towards Ash. Back out of the alarm bot to try to hold back this approach here from Sewer. This fault line at the moment, though. तीन लोग आ गए. Fake took too long. थोड़ा सा गलत रीड है मेरे को लग रहा है. Glimpse there. Salvo's going to be sent out. Famous not getting caught. Nano to try to delay the approach here from main. Now the rotation's starting to come through. Famous stuck in position though. And no, just a pump fake back. Now the re-aggress coming through. Texture's still so far away. Push forward out of the smoke. Henry looking for the transfer. Only getting good for one. Suggest looking for more. Finds it. But now a 2v2 with the site open. दिक्कत ये है टेक्सचर पे ऑफ है. Munchkin the closest. Rotation coming in. Texture about to arrive. Although उस पे शील्ड नहीं है. As the smoke dissipates. But is he going to be ready for Berserks? Just directly down below. Gun barrel just a hair off being spotted. And there it is. Head goes out. Texture goes down. भाई मंचकिन भी भाई 1v2 किया था वो शेरिफ से भाई मेरे को भरोसा नहीं है बंदे पे भाई. ये कांटेक्ट पे पीक लेगा. The crossfire setup is going to be there. Shots coming his way and Berserks. चलो. Johnny on the spot.
finds it. Boom, once again, in a position to bring this series to its end. Gen G gets a pretty good read on this, but you know, they're able to stall this hit. They're able to use the toxic screen to kind of wait this out, get an extra player to rotate over, but still, Boom's able to flood through well enough, and everybody kind of covering their angles, trading well. They get it to the 2v2. Just that one little cheeky off angle there for Berserks, catches Texture unawares. Another chance for Boom to close this map out, or is Gen G gonna send us? Boy. They miss. No. ओह भाई ये कोलाट हो जाता लिटरल कोलाट था। उफ, टेक्सचर और मंचकिन दोनों जाते हैं भाई। Advantage to Gen G. They've just been trying to really pressure this angle, trying to get through grass. Texture though. Oh, this is. Thought maybe he was going to try to chase in, get a timing there onto the Sova, but opts to just back away. Push coming in, and DOS9 onto the headshot as a shock dart from Shiro lands at Texture's feet. 2v4 वापस नहीं बोल सकता मंचकिन और सजेस्ट फिर से भाई एकदम नहीं 2v4 लास्ट टाइम में निकाल दिए थे लोग मैं नहीं कुछ बोल रहा भाई मैं चुप रहूंगा कोई जीजी नहीं बोलूंगा मैं This surely looks to be the end. Unless Gen G can conjure up a miracle. Orb down. Suggest needs to be the hero. 30 seconds left. How good Munchkin has been on this map. Can he dial up another huge multi-kill? Or Suggest. The flash in, tries to turn from it. But it's not enough. Completely blinded up. Munchkin now. A 1v4. क्या ये GG है guys? Already into the site. The window being watched. And DOS9 will be the one to bring Let's it go! to the conclusion of 4K as Boom close out the map. 17-15, close out the series 2-0. The young squad coming up via Ascension, in quotations, will get a victory over Gen G. Man, oh man, what a day for this team. They are so well prepared for Gen G. They've got their own game plans on Ascent that look brilliant. The Phoenix comp coming in, really giving Gen G some problems. Gen G, a couple new players, still looking like there's a little bit of shakiness, getting Ash and Suggest integrated into the roster. Some big moments from both of them, some big moments from everybody across the board, but huge stuff. Famous on the Neon was great on Haven. DOS9 was just brilliant all day. I mean, what a treat it is to watch him play. He is something special. Yeah. Great early control. Let's go. Boom across both of these maps. Some solid rallies back from Gen G, showing, you know, a tease of what this roster is going to be capable of. I think we saw a very rocky start for Ash and Suggest. First time on this stage for Ash. First time back for Suggest in a damn long while. I think there is some hopes here. Of course, for Gen G, just need to keep the gears working, but certainly not the series that they were looking for here back at stage one. Certainly not the one that we were expecting. I think given the victory and given his prediction, I think that big time. थोड़ा पीछे जाओ फोटो लेने दो पीछे जाओ He's a lad. I think he can get it done. So when we get back onto the analyst desk, you guys have that to look forward to. But of course, we also have a winner's interview to look forward to from the players of Boom, and I have to imagine that they're going to be elated. So we'll send it down to Jen, who's waiting by on the stage. Hear from our winners. Congratulations, Boom, on your first Pacific win. DOS9, I'm gonna get you over here. रेड फॉर द आरआरक्यू में से पता नहीं यार देखेंगे जो मैच में होगा वही हम बोलेंगे आई थिंक आरआरक्यू इज पावरफुल मतलब यहाँ पे भी जेनजी पावरफुल थी जेनजी मास्टर्स विनिंग टीम थी तो एसेंशियल टीम अगर मास्टर्स विनर टीम को हरा सकती है तो एनीथिंग इज पॉसिबल ऊपर से आरआरक्यू तो कभी गई ही नहीं है pretty good. 은근 괜찮은 것 같다고 얘기를 하는데요. 아니 도대체 이 붐 esports 어떤 점에 भाई ये रूकी है भाई इसका पहला VCT भाई कैसे मतलब क्या डोमिनेट किया है बंदा भाई अलग लेवल डोमिनेशन है
उसने क्या ही मारा है भाई. 두 번째 맵까지 पहले मैच में एस. 능력을 잃지 않으면서 보여줬는데 भाई पहला मैच अगर कोई देखा नहीं है तो भूम का जाके देखो एसेंट मैप पे 3 एस मारे वो लोग. एक DOS9, एक बर्सर्क और एक on Haven and even कौन with था? this map when it went overtime after Famous. overtime, you guys तीन. look like the whole तीनों team मारे. was फेमस so up. So फिनिक्स लिया था. I think we just work on बर्सर्क our केजे में मारा our, और main इसमें mistake शायद was ओमेन में that ही we मारा. cannot adapt to the enemies what they do and we cannot counter enemies default their strats. So now we work on them and I think you can see the result. 사실 그동안 좀 약점이라고 판단됐던 부분이 You can see the result. 유연하게 상대에게 대처하는 부분이 좀 많이 부족했다고 판단이 나와서 그런 부분에 있어서 많이 집중을 했었고 그리고 이제 상대를 पूरी 만났을 때 어떻게 좀 디폴트나 상대의 전략에 ग्लो कर रहे बे. ग्लैमर. 부분을 많이 보완했기 때문에 또 समझ 좋은 रहे हो? 모습을 보여줄 수 있었던 भाई 것 같다고 얘기하는데요. 근데 또 궁금한 부분이 커뮤니케이션은 어떻게 이루어지는지도 물어봐야 될 것 पूरा वो जो 같습니다. एनिमे में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना पूरा वैसे कैरेक्टर जैसे दिख रही है एनिमे 선수들이 कैरेक्टर्स. 인도네시아어로 또 소통을 했었는데 또 카자흐스탄 है ना? 출신이잖아요. 좀 소통 그리고 콜은 어떻게 하고 있는지도 물어보도록 할게요. So what's going on with the communication? Before you joined the team, they were all full Indo roster speaking in Indonesian language, right? So are you guys coming in English or what does communication look like? Yeah, we come in English, but in the situation where I'm not committed in this situation, in the fight, they might talk in Indo, so it's like more comfortable for them. But the main language is English here. Still gets the job done. Comfortable for you. Yeah. 보통 대부분은 영어로 하는데 뭐 도스나인 선수가 좀 필요 없는 싸움이나 상황 속에서는 또 인도네시아어로 선수들끼리 소통을 하는데 딱히 이 언어 장벽은 느껴지지 않는다고 얘기를 하는데요. Nice, nice, nice. GE입니다. Good to see. Ascension team winning. 좀 좋아진 모습을 보여주고 अच्छा लग रहा है. 패트리쿠 선수는 누군지 알고 있겠죠? 또 각오 들어보도록 하겠습니다. Next up is GE. They're looking better with Global Esports के साथ अगला मैच. Surely you know who Patrick is, right? 모른다고 하네요. All right, no, but what's the mindset heading into that matchup? You gotta know your enemies, man. Okay. Okay, you're gonna look them up tonight. No, Okay, don't need to know if you're gonna win. for sure. Okay. 어차피 이길 거기 때문에 상대가 누가 있을지도 걱정하지 않아도 돼서 지휘에 누가 Hello boom, 있을지 Jamal 걱정하지 stream. 않겠다고 हैं? Jamal stream. 얘기했습니다. 이렇게 해서 도스나인 선수 만나봤습니다. Thank you, 도스나인. 감사합니다. And good luck in the next matchup. Thank you. All right, see you guys later. देख रहे हो भाई एक बार तो लैन पे जाना है. मास्टर्स चैंपियंस किसी के एक लैन पे जाना है. Few words, but so much aura, and how cool are you to be like, I don't even need to know who my enemies are. That's DOS9 for you. I mean, if I had to sum up Boom's performance today, it would also be pretty good. I क्या think ही that खेली है that भाई. was a solid explanation मजा आ गया. of what Boom managed to pull off today. This Haven was back and forth. This was a fantastic map to watch, but I felt like in those crucial moments, Boom managed to close it out. This is why Boom are such an exciting team to watch, because there's so much talent there. They do genuinely tend to have a good approach, and even DOS9 mentioning that they're able to counter their enemies a little bit better. But what also makes them very good to watch is their ability to, As a viewer or as a player, as a content creator, struggle in the late round, maybe throw away as some an Indian shots. content We gotta creator. keep the game close big time. We got to keep it interesting. We can't win too cleanly. I want to put a positive spin on this. That means that this isn't even Boom's ceiling. Once they get more composure and they're able to be a lot more confident in these late rounds, stop getting clutched on so much, we're going to see an even better level from Boom. This just means there's more room for growth as far as I'm concerned. Pretty sure I've heard that same thing from Indonesian fans on the forums for like multiple years now, but sure, I'll agree with you. It's happening now. It is. He did say it. DOS9 did say it. They specifically worked on the ability to be more adaptable, and that includes figuring things out on the fly. So you could be right. I'm always right. I'm always right. That's what we're learning. Are you always right? In Pacific 2025. I mean, today So far. you're right. So far. 100% predictions, right? Yeah, so we got far. one wrong. I've got them all ये right. जो Hopefully, क्रीम वाले पैंट्स में है जो चश्मा पहना है. one perfect. All right, but in the Do you first guys know round, him? we did see कोई Cash जानता है? have some mighty good moments. Yeah, for sure. I mean, look, he aced and they lost, so
I don't believe in जब superstitions. VCT वाले स्ट्रीमर्स को बुलाते हैं, यस, I mean, a bit of an underwhelming first map टू from Gen G, तो एक्सपेंस वो उठाते हैं ना, यस यस and I यस. think the players that really showed up for Gen G today were इनविटेशन उनके तरफ से आती है तो सब कुछ वो देखते हैं. जैसे ये मास्टर्स के टाइम पे अपने यहाँ पे स्ट्रीमर्स को बुलाए थे. हाइड्राफ्लिक गया, मतलब बिंग्स भाई इन लोगों को बुलाए थे, लेकिन इनका शेड्यूल टाइट था बोल के ये गए नहीं थे. तो हाइड्राफ्लिक एंड हर्ष खेल रहा है, ये लोग गए थे. एंड आप देखे भी होंगे, हर्ष खेल रहा है हाइड्राफ्लिक, ये लोग टेंस के साथ वीडियो भी बनाए थे और कंटेंट शूट किए थे. तो वो सब राइट स्पॉन्सर करती है. सारे एक्सपेंस उठाती है भाई, रहने से खाने से लेकर सब कुछ. इस बार तो वो हुआ था ना, बैंकॉक में हुआ था, अभी टोरंटो में होगा, तो एनए रीजन में हो रहा है. भाई ये वाला तो एपिक था भाई. Like a nothing to lose mentality the way that he plays. He's not afraid to aggress in the mid round. He'll TP directly behind you. He'll take risks. He'll cut corners and he'll position himself perfectly. 1.9 की KD, 300 की ACS. In tier 1 as a rookie, this man is stepping up and delivering every single time, despite language barriers, despite not coming from a region that's well defined in the game so far. This man is unbelievable. Yeah, I mean, we spoke about it in the pre-game, right? We compared him to Karen. We said if Boom needs to go far, he has to have Karen-esque performances, and that felt like vintage Karen to me, if not even better from Dust9. That was wonderful gameplay to watch, a well-deserved match MVP. Wow, if not better than Karen. I mean, Karen had some really fantastic plays too. Let's win a tournament first before we go that far. Yeah. Let's win a tournament first. Just saying he played good. He did, yeah. And despite the language barrier, like you said, he doesn't even need to know Indo and those moments to be that Kazakh fragger. Yeah. Now, we did have predictions, and now we do have to give credit where credit is Boom due. time. Boom time. And are you gonna sing your clap. song? Boom, 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 boom. I want you in my room. I can't do the whole song. We don't have enough time for All right, the whole song. but I'm you so know impressed. what? But you know what you deserve? You deserve 5 big I can't do 5 big booms again. But no, I'm gonna veto that one. I had Boom winning this game 2-0. I felt like they had so much confidence going into the game. You know, वो बीच वाला कौन है? Ex Esports athlete. And he seems so confident in this team. Pacific region का ही. That partly informed my predictions. I feel like they felt good coming in the kickoff, and you know it was a shakier Gen G. I have to say so, but very well played from Boom. Such a deserved win. Well, this is going to be really exciting to see Boom face off Global Esports next, and then Gen G is going to be facing Paper Rex. So this, a lot of story there. But before any of that, we're going to go on a quick break, and when we come back, we're going to see the other Ascension team facing off RRQ for perhaps the longest match of our lives. I don't know. We'll have to wait and see. So guys, don't go too far away. Pulsar by Naomi. Pulsar by Jenny. Oh, baby. Ooh, there it is. Oh, I'm so happy with it. Look at this. Isn't this perfect? It even has my name on the side. 마우스 누가 만들었는지 알려주는 것도 같이 들어있고. Thanks, Joshua. This mouse is ready for a fashion show. It's Pulsar by me. It's by me. It's by me. It's by me. It's Pulsar by you. पल्सर ने भी टेंस के साथ कोलैब करके वो किया है, वे निकाला है.
भाई वो माउस क्या ही दिख रही भाई, अलग दिख रही भाई एकदम। लेना है मेरे को वो माउस। बीच वाला कौन है? अच्छा बीच वाला तो बोल दिया, ये ला चैट पढ़ लिया। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। हैं? हाँ वही बोलो भाई। हाँ 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 हाँ। ओ भाई यार तुम पैसे कहाँ से कमाते हो ब्रो? देखो ये तो हम नहीं बता सकते भाई, कि कहाँ से कमाता हूँ कैसे कमाता हूँ, cause एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तीन चार है, तो कांट कमेंट ऑन दिस। आप अपने तीन चीज कभी आप पब्लिकली शेयर नहीं करोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत बेटर जाएगी। एक है आपके, आप हाउ यू अर्न, ऑब्वियसली नॉट इन इलीगल वे, आई एम नॉट टेलिंग दैट, लीगल वे में हाउ यू अर्न, योर रिलेशनशिप्स एंड योर फ्यूचर प्लान्स। ये तीन चीज आप किसी से शेयर नहीं करोगे ना, बहुत हेविली इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ को इन अ पॉजिटिव वे, समझ रहे हो? आई गेस 2022 के बाद एम लैब्स वापस से इस बार स्पॉन्सर कर रही है वीसीटी, शायद से, नॉट श्योर, एनए रीजन पे, क्योंकि मैं कल देख रहा था एनए रीजन वाला, तो उधर मेरे को एम लैब्स दिखा था ये वाले सेक्शन में जहाँ पे अभी इंटेल लिखा हुआ है ना, वहाँ पे वो सेक्शन में। तो मेरे को लग रहा है 2022 के बाद 2 साल गैप लेने के बाद ये तीसरा साल में वापस आए हैं वो लोग, नॉट श्योर दो, देखना पड़ेगा। बट ये पल्सर अगर इंडिया में मिलता ना मैं पक्का से लेता यार, लेकिन ये पल्सर इंडिया में नहीं आता है, और ये इंपोर्ट कराने में इंपोर्ट ड्यूटीज इतना देने पड़ते हैं कि भाई छोड़ दो, भूल जाओ। रेप चिचा पेपर खत्म, आइए ब्लेस भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्लेस भाई। हुर्रे! अभी तो भाई मतलब एकदम पूरा धंग तंग तंग धंग तंग 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 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज ब्लेस, माय नेम इज ब्लेस, करता हूँ ऐसे पूरा नाचो। पेपर खत्म होने की खुशी तो भाई मेरे से बेटर कौन ही जानता होगा भाई। ओहो हो,
ऐसा लगता था मैं आज धरती मेरे पैरों तले है और मैं आसमान में ऊंचाइयों में उड़ रहा हूँ भाई। लिटरल ऐसा फीलिंग होता था भाई। प्रेडेटर प्रेडेटर नॉट दैट गुड बट गुड है। गुड भाई स्पॉन्सर है भाई, क्या नॉट गुड? गुड भाई, गुड है भाई, बहुत अच्छा है। मजाक है क्या भाई? ये पल्सर का रुको तो देखते हैं क्या सीन है इंडिया में। क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या कहीं से? मेरे को टेंस वाला माउस लेना है भाई। अबे देख, पल्सर मारता हूँ तो बाइक आ जाता है। ये इंडिया का यही सीन होता है भाई। VCT Pacific Stage 1. This is Victoria together with Pilski and Big Time. Now we just saw a Korean-Indonesian matchup and we're about to see one more. It's going to be RRQ and Nongshim Red Force. Nongshim had an amazing Ascension Pacific run and they also had an amazing debut here in Pacific. Yeah, they set their expectations very, very high. They saw Ascension as merely a stepping stone, and although they could have lost there, they did make their way into Pacific and they did turn a few heads. I don't even think they necessarily बोला ना इंडिया में नहीं है। kickoff. And look, they might have caught lightning in a bottle with their patented style that got them all the way through challenges. लेकिन वो मकीज में मिलेगा मेरे को। मकीज में Change their identity a little bit and find different comps and new ways to play. So I'm interested to see with the current change of the meta and a lot of new agents. आउट ऑफ स्टॉक है क्या? Map pool shifts as well. How Nongshim is going to be looking going into stage 1. Yeah, so they're still running that neon, or at least they were in kickoff. बोला ना We definitely saw it change. इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है। It wasn't as focused 13,000 पड़ेगा यार। मैं वो 13,000 का माउस लूँ या की हाई ग्राउंड का कीबोर्ड लेना है मेरे को। पूरे मजे। 10th भी खत्म, बोर्ड्स भी आए। ये आज तो शैंपेन ऐसे ऐसे उड़ेगी है ना। मेरे को पल्सर और 10th वाला का क्या सीन है? पल्सर 10th एडिशन। यही है क्या? हाँ 10th एडिशन यही तो है। Coming to notify me when is RRQ. You know, they had the addition of Warbirds joining as an assistant coach, and they did one more swap here, opting in with Crazy Guy now on their roster. But their kickoff performance also showed a lot of promise. It did, yeah. Not only in terms of their results overall, they very nearly could have beaten Nongshim. That was a very tight series the last time around, and I'm sure we'll highlight that going forward. Jemkin was probably the best. कितने में आएगा ये? क्या लगता है आपको? Absolutely unreal statistically, not only on the duelist but also on the 10th का सिग्नेचर एडिशन है भाई। डिजाइन एंड शेप्ड बाय 10th। उफ भाई साहब। But he's got a lot of experience even going back before Valorant came out. He's got a bit of a storied history behind him. And I'm interested now that he's gone back into tier 2. ओह Ryzen 5 और हायर चाहिए अगर डोंगल लगवाओगे तो। नाइस नाइस। 32,000 DPI, 8,000 पोलिंग रेट, 750 IPS। नाइस। चलो मैं जा रहा, चैन की नींद, रात को मिलते हैं। ओके ब्लेज भाई, loves you, thank you for coming। भाई मोनी है, ये भी एक एक्स ग्लोबल esports का प्लेयर। Doing this is a different level coming back to this stage, and of course he was with Bleed last year, didn't have much. Jemkin, Monie in unarguably a much stronger team with better historic results, but he's definitely got a point to prove here, and he needs to win a lot of people over, I think, before he's going to get a lot of trust. He's got a lot of great tools though, like Cushy as well. Unbelievable debut from him in kickoff. Jemkin, maybe the best duelist in the league. Monya, I think, was kind of mixed, I would say, but maybe he didn't have a lot of space overall. And Xfero, a little bit mixed as well, although he did struggle with some illness as well, particularly in some of the important make or break games. Yeah, that's actually huge. We could see very visibly how ill Xfero was. And yes, it did impact some of the Now, we can't stop talking about this because it is actually crazy how many rounds they played on Lotus, and it's like they know each other inside out at this point. I mean, both Nongshim and Boom have brought exactly what they did in Ascension to Pacific, that entertainment value, the long games, the overtimes, the misplays, the big plays. They bring the entertainment value into this league with as the newcomers here. And this series was an absolute banger, one of my favorite series from kickoff, and I'm very eager to watch the rematch here yet again. Yeah, I mean, RRQ will have
left that match with such a sour taste in their mouth, knowing how close they were to 2-0ing Nongshim, carrying on all the way, you know, they were ready to make a run through that bracket, but Nongshim put a stop to that. So it's revenge for RRQ today, and hopefully they can do it in a tighter time frame than we saw in kickoff. Yeah, I mean, things have changed. Xfero's definitely feeling better. Crazy Guy is on the roster, so we'll have to wait and see. And I don't know if we're going to end as late as last time. Surely lightning doesn't strike twice. I would believe it will. All of those same maps are in the map pool still. I mean, I want to see if the veto changes up very much. Yeah, absolutely. You know, but then of course we do have Ascent and Icebox coming back in, so now could be the time for pocket picks. But if there's one thing I want to see today, it's Danby on the Waylay. I totally agree. I think it fits their style perfectly. Yeah. To be honest. Danby used Neon, you know, at its peak, being incredibly aggressive, right? That was what he was good at. He was playing very fast. Waylay also has options to be very fast with the double dash. You can recall map video दिखते हैं. Lotus ban. Shame if we don't see that today. Teo Breach, they've got players who can play. इसने fracture ban किया. Icebox, Ascent, RRQ pick है. As we get into the veto here, Split, nice. Icebox ban होगा. As someone who's followed Nongshim a lot, I mean, we are going to have to see an evolution from them in this veto. Because these are two maps that in Challengers Korea and in their Ascension run, these were not maps that they played very much or liked very much. Ascent was a map that they avoided in Challengers Korea and they let it through in 1 or 2 vetoes, but they didn't go towards it. And Split wasn't one that they played very much. So those being the first 2 maps, I'm a little bit worried about that, and we're going to have to see some new stuff from Nongshim. And for Pearl, that was the decider that Nongshim won in the series between RRQ and Nongshim in kickoff. So that's going to be a safe ground for a 3rd map decider. Well, you know what? I think there's a case for Waylay on these 3 maps, at least definitely for Ascent. And like you're saying, Nongshim does need to switch things up a little bit here. Maybe this could be it. Because I don't think Waylay is necessarily that one-for-one replacement for Jet, but there is that surprise factor, right? If you're able to bring out something people haven't seen as much from scrims, then, you know, we saw it in the first series with Boom's Ascent comp. It was very different, so I wouldn't put that past Nongshim, so I'm very optimistic. Fingers crossed. Okay, well then we're gonna have to talk about predictions here. I don't think it is as extreme as the last one, but still, it's actually reversed now. So more on the favor for RRQ. Are you guys? I think we're both RRQ. You're both RRQ today. All right. Kilios, Quack, and Komodo on the Nongshim train. All right. RRQ, even with the IGL change, you guys are going with RRQ. I think I was pretty convinced by RRQ in the last stage of kickoff. You know, they've really gone from strength to strength. They've improved a lot. They need to work on closing out games, and I think maybe adding someone with a lot of experience who can maybe help in terms of IGLing this English-speaking mixed nationality rosters could be a good thing for them. So I think it could be a very positive change. And I'm a big Crazy Guy fan. I have been for ages, like almost 10 years now. Yeah, I'm on a very similar train of thought, I think, where communication should be a little bit easier now. The level of English should be a little bit better, so that will fit nicely for RRQ, as well as I kind of feel like they should have won this game in kickoff. I think they lost map 3 partly because it was so difficult mentally to come back after such a long game where you lose. So I think in the run back, I'm going to give it to RRQ. I think this is there a case for Nongshim though? Because I think even though whatever our predictions are, this is going to be a really close one. I mean, it was a close one at kickoff. I think that continues to be the case here for both of these squads. They're both fantastic. Yeah, there's a massive case for Nongshim. You know, they won this matchup before. They looked very strong, and I feel like there was another argument where they could have gone further on in kickoff. So we've got to wait and see. Yeah, we do have to wait and see, and we're going to see if it's going to be another really long overtime. We're going to see Nongshim Red Force facing against RRQ again for Stage 1.
VCT Pacific. Stage 1. Rise Pacific. Nongshim Red Force. Here in Asia, we say add oil, 加油. But today, we're going to be adding hot water. Whether it's Nongshim ramen or pop mee, we all love our nudes here in Pacific. Now, Nongshim here is a red force to contend with in Pacific, matching against RRQ once again, where records were shattered in kickoff. RRQ though switched up a major player, bringing Vietnamese IGL. Bro, आप किसका साइड हो? मैं दोनों का साइड हूँ भाई. Crazy, or is this a good idea? I mean, it can seem crazy, but we have to trust that they know. दोनों ही अच्छी टीम है. This match is so exciting for me. It's the rematch of arguably the best series. What? Wow, they're wearing their bundle. Oh, that's it. They're the bundle. That's crazy bundle. promotion. Bad respect, actually. I hope those capes are custom made. Let me get my credit card out. Look, you've sold me. I'll definitely support RRQ. I want 100% of my proceeds to go to promotion तो है. if they win this game. So Promotion तो है. prepared for us. They do have a star-studded coaching ये क्या कर रहे हो भाई? of Ewok and यार. We'll see what they prepared here. यार ऐसे नहीं टीम चूज करो. नहीं यार टीम विन चूज नहीं करते. हम दोनों के साइड हैं. Delivered a lot of entertainment value, and I want to see if Nongshim has figured out how to play in this current meta. Out comes the coaches. कोच भी आए. अरे भाई हेवी प्रमोशन. हेवी प्रमोशन हो रही रे बाप. Promotion I've seen. Yeah. Oh, I'm buying the bundle tonight. Yeah. This is fantastic. Oh my god. इस चीज के लिए मेरे को RRQ को सपोर्ट करना पड़ेगा क्या? I've never seen the coach join in on this before. This is historic walkout moment here. I was hoping he'd had the suit on just with the cape over the top, but not quite. He's all in on it today. Looking ahead to this veto, we are starting on Ascent. Yes. The new map coming into the pool. And what do you think we can expect from this Well, map one? this is the thing. I was kind of waiting to see if Waylay was going to be a replacement for Jet on this map, and we have seen some teams adopt that. G2 over in NA did play that, so I want to see, what different approaches teams have. RRQ will be the team to select this, and this is, as I said, not a map that Nongshim has a lot of history on. It has been historically. भाई वो पीछे वाला सूट पहन के खेलेंगे क्या वो लोग? अगर वैसे खेले तो बहुत कूल लगेगा. They are going to have to figure out ways to play that they can either play their style that they brought into kickoff or try to adopt their patented style, which they really struggled to do, I felt like, at the start of Pacific. I mean, it's hard to know. We got to wait and see for this map. That's what's so fun about this kind of rotation, is we get to see new things. Nongshim, of course, are they going to go for that patented style? Do we see Neon on Ascent? Because even when Neon was strong, obviously Ascent wasn't around. So it's hard to know. There we go, Nongshim. I mean, there you go. Teo is the sub for Sova. You are subbing out Jet for Waylay, so it is Waylay, Dambi is playing. of the metacom. But make no mistake, these guys will be setting up Dambi to make भाई ये इंडोनेशियन प्लेयर्स है कुछ अलग ही. इंडोनेशिया थाईलैंड इनका अलग ही लगा हुआ है वेले एजेंट से भाई. We got that double drone, so it's, are you going to be able to stop Dambi? That's the question. That's right. Well, I'm very excited for this first map of today. We're going to send back to our casters, Achilleos and Paperthin. Welcome back. Here we go. Match number 2 and a big rematch at that. RRQ. Achilleos. Approach onto the stage there. Now going once again up against Nongshim. I, for one, think that with the signing of him as a co-streamer, Nongshim should dress up Chobra in a Shin Ramyun cup outfit. Yeah. And he should walk and escort the team out. Yeah, I support embarrassing Chobra. Absolutely. Yeah, I think that would be phenomenal, and we need to see it. So we'll try to make that happen. We'll get in touch with Nongshim to see if it could be put into the works. But here we go. Our first cast of the Waylay in the hands of Dambi. When I saw this agent unveiled at Bangkok, I was like, Dambi. Yep. All day long. Yep. That looks like a Dambi agent. He was in a lot of folks' mind that are keen on Pacific.
definitely were like, yeah, Donby seems like he'd be a good fit. So let's see if he can take advantage of some of that high speed ability that Waylay can bring to the game, like he does with the Neon. Kind of curious what this is going to look like for RRQ. We saw something kind of similar with Boom. Different duelists, different sentinels though. The meat and potatoes are kind of the same. It's just the trimmings around the edges for RRQ are going to be a little bit different, but a little bit early control of space. Persia going to tuck himself in the line. And the rest of Nongshim fanning out across the map. Worried about some of the maybe Yoru shenanigans that you could see. Drone doesn't identify anything in the mid. Now a counter drone comes through. Jemkin sees some Cypher activity and says, let's wait this out. Let's see exactly what Nongshim's up to. That's not enough info to really make a good decision off that. Cam is going to be set up to look down tree for the side of RRQ, so they're going to have a decently good idea of this push. It's just pretty heavy, going to be coming from a couple different angles. Are they going to be able to really slow it down too much? All right, well, dashing forward, Dambi, taking some space there around Jen. Again, this thing tucked here at Hell. And going to be spotted, but France is able to find one. Pharaoh going to be taken down there at Heaven. Some stray shots coming out. Munyet steadying the aim, but has to go for the reload, and Dambi's able to run him down. Heal out, crazy guy. We'll find one. Francis is low. दिक्कत वही है. Still not yet going to be planted here in the hands of Francis. Now going to be going for it. Just here outside of Hell. Spike in play. 3v3. A little bit of damage taken there by Cushy, but still HP bars in the favor of RRQ for the moment. EV को थोड़ा heavy clutch करना पड़ेगा. Get full information on how many players actually committed to that push through the doors. Do have a flash left. And we're just waiting it out, trying to get that salvo cooldown back, ready to go. Francis now stuck, trapped, dead on Ivy, and he's already taken an immense amount of damage. I believe a headshot there through the corner as the salvo is going to be coming out, but the fuse held to half. RQ very well primed to find the first round, and they shall. Pistol nice. Yeah, tremendous patience being shown here by RRQ, and again, somewhat similar ideas to what we just saw in the previous match, with using kind of those double info initiators in a sense. I mean, Teo's not exactly an info initiator, but we'll sort of drone. Yeah, he's got a drone. So does Sova, and that Sova util is what allows them to get one of these kills, and then they just buy their time, set up a nice retake. Jemkin, probably the most consistent player we have in the league. He's topping the charts in a bunch of relevant stats for Pacific, at least in kickoff. He really just does a great job of providing value, and he gets 2 big kills in that department. So a little bit of control of the orb space. See if Munyet wants to push any further forward, but with the spot of the KO knife, opts to back off. Because that was a pretty deep KO knife, went more towards Wine. So he doesn't want to try to contest that angle. Maybe if he was on the other side. Grab of the orb there. 4-1 भी भाई बड़ा. 4 charges built up here towards that convergent paths. I have something I want to say. Read तो अच्छा किए लो. Kind of long. लेकिन you. I felt like they could have gone for Prism. Prism would have been a great name for that all. I agree. I think it also could have been a decent one for the Refract, just because you kind of become a Prism as you. Either's good. And Prism's a cool word. So I would have liked to have said that on broadcast. You know what? I did say it on broadcast, but. There you go. Zombie. Huh? Over the top. Landing there at market, and it's just going to be shots coming in now. The ping reveals. Jemkin able to collect 2. आयुष वर्मा जी, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मेरे भाई. क्या हाल है, कैसे हो, रैंक क्या है तेरी? भाई फिलहाल तो रैंक डायमंड है. ये नाइटबोर्ड अपडेट नहीं है क्या? नाइटबोर्ड में अपडेट नहीं हुआ है क्या ये? नाइटबोर्ड प्लैटिनम क्यों बता रहा मेरे को? रुको तो एक बार. Comments. So this is going to be kind of the name of the game here. Generation you know, we've been seeing a lot of rank, attacks presence for teams in Pacific, but with this RRQ composition, it's nasty to get through here undetected for free. Updated. And gonna have to kind of keep our eyes on Nongshim and how they're gonna deal with this. आयुष वर्मा जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? स्वागतम आपके स्ट्रीम पे, हमारे स्ट्रीम पे. I mean. 3 of them only have either the half or the recharge armor. Shot gonna be used.
spotting out the Yoru. He knew that he was there, so nothing much going to be gained there from Nongshim. As Margaret wanted to try to challenge into this angle. Does get a nice bit of damage there. ये round main है. Down to 22. Kill, however, still not found. And now it looks like Nongshim trying to make up their mind as far as where they want to go. Spike is going to be handed over to Dambi as he starts working his way across the B. Looks like maybe an attempt to add a fake here. Yeah, the early conditioning from Nongshim has been to sort of put some presence of Margaret at B and then pivot. So they're trying to sell that. That's continuing to be the case. उसको नहीं पता होगा पोजी ना कुछ इधर खेल रहा है वो सोचा घूम के आके मार के जाऊंगा Gets him into the site, but doesn't gain too much off the back of that. Now 13 seconds remaining. Spike working its way down. Now it's on the floor. Persia able to find one, but gets traded out. They just don't have the time. They don't have the position. This Spike is not in their hands. They're not going to be able to get it fast enough, you would suspect. Yep. Couple seconds remaining. नहीं होगा. I mean, Cushy doesn't have to fight for this, but he will. And he's going to find them both. 3 kills in the rounds. 3 rounds on the board. RRQ coming out swinging here with their map pick of ascent. So tough to get through the way that RRQ is playing on these sites. They're really smart about the way they have their YouTube set up and how they're playing off the back of it. I think this is just a bit of a gamble there. इसका कोई इन्फो ही नहीं था ना. अबे लेकिन सोवा तो ड्रोन किया था. साइफर को तो बोलना चाहिए कि सोवा का ड्रोन आया था, टैग भी हुआ था. तो डाम्बी ऐसे नाइफ आउट क्यों भाग रहा था? क्या सोचा वो सोवा के पार तो it's a mishmash of guns. It's a pumped shotgun for Donby. That's something I've seen a lot of streamers be doing with the old Waylay. Trying to just kind of crushing. A little bit. There's not much more to be said. Well, that one, it's an eco. You're just trying to sort of get the Waylay through and put that Bucky to good use, and then everybody else just tries to flood through the front door, and it doesn't really go anywhere. Cushy doesn't even take damage. I don't think he gets a single pump of the Bucky out. I think Cushy, I don't know if I'm not sure if some of Donby like went through the smoke when he was coming down or something, and maybe just let Cushy see him, or hard to say, but yeah, that didn't go good. Nope. Well, much needed timeout going to be called here from Nongshim. As I mean, you heard it there in the post-round comms from RRQ. They don't need to have any discussion. They're just giggling. That's a terrifying prospect. No doubt. On the opposite side of the stage. No doubt. ये क्या हुआ मतलब? क्या क्या हुआ पॉकेट का स्टार भाई? This is kind of a tough timeout, for RRQ, because you're like, well, what do we say? We're destroying. We've got pretty good reads so far. Maybe you could show them a few different looks, try to create a little bit more pressure at B main or something. Other than that, you don't have the same way to create pressure that a lot of teams play Ascent do with the Yoru, right? You're not going to be able to do any flashes and dashes or anything like that, so kind of have to play a little bit more diligent on the back side of it, and so far they've been, A+, no notes on that. But I want to see them try to get aggressive at a main, just to see what they can do. They're actually going to tuck Jemkin Stream glitch. He's got the TP set up at Garden. क्या stream glitch क्या हो गया? And they do put a little bit of ये round कब खत्म हुआ? अभी तो खत्म हुआ. Just going to absorb it. पॉकेट का स्टार भाई. Back a bit. 4 तो आला. Convergent paths all available. अभी तो खत्म हुआ. बोनस आ रहे फिर. Clear sight here for Donby. फिर वो लोग साइड एंट्री लेने का ट्राई किए इस पे एमएन पे मर गए. पॉकेट का स्टार भाई ध्यान इधर है तो. कहाँ स्ट्रीम ग्लिच हुआ? वेले उधर ऊपर डैश किया लेकिन मर गया स्मोक के अंदर. फिर ये लोग इधर मर गए मेन पे 3-4 बंदे. Just to further come up the works. Donby scaling forward, getting a bit more space now as 3 players work their way forward here. Up the pizza, now through market. Door gonna be broken down. Jemkin, however, able to find 2 spikes dropped in market. He's just got this off angle. Convergent paths is gonna be used, but now got the mask on. Donby. Oh नहीं. Forward, refracts his way back in the market, and Jemkin's there with McGraw. वो कॉल तो आया होगा पीछे से क्लियर. Jemkin just absolutely demolishes them.
10 seconds left. Curious how he played that. I think he threw the clone and then played off the back of it and TP'd over. Something like that. TP back over to B, I mean. Timing. Yeah. Timing. Well, 5-0. Timeout. Not working a treat. Nongshim not finding value. And this is a very devastating way to start off your ascent, given that you're on the attacking side. Oh no, it was over there. Yeah. Through mid. It's I thought base of the ramp. Still over a tree or something, yeah. Oh my god. He's so good, man. Jemkin is just outrageously talented. Stingers into Sheriff. That's all that Nongshim is going to be able to go for on this round. It's going to be another high-tempo attack. Ults will be coming into cycle for them. Potentially you will have a Hunter's Fury at some point for Cushy, but one way or another you're going to have Francis and कोई glitch हुआ पता नहीं. Glitch तो कुछ नहीं, मेरे को तो पूरा दिखाया. Find some value if you could somehow sneak a Thrifty out. Could string together 2 in a row. Right now, RRQ has been all over this map. See how the Stingers do hit. Saturate not going to be connecting there. Jemkin able to find one yet. Another. Just get traded. Push for him. Yeah, just spraying into the smoke. Margaret not able to catch a break here. 6-0 bay. Stealth drone spotting the push. And Persia will be able to go ahead and close that gap. Clean up a kill on the Jemkin, but crazy guy getting out of the drone. Defends himself. Weapon क्या ये 1v3 निकाल सकता है guys? A 1v3 clutch. चेक करो स्ट्रीम मोबाइल में. Deep breath. Salvo's no connection. Spotting one, finding the first kill, but cannot find the follow-ups. 2 survivors on the side of RRQ, with a couple players getting cash capped. Defuse will be handed off to Cushy to go ahead and get the Hunter's Fury online, and RRQ maintain dominance here on Ascent. Yeah, I really like the ideas that RRQ has here, because the way they're playing up their information is either we're going to react to it quickly and just try to cover off some of these angles. You can see here, they're like, okay, they're coming through tree. Let's get a couple players to set up some. हाँ मैं देखा पकड़ गया स्टार भाई. पता नहीं बीच का फिर ये मेरे को सब दिखाया. OBS का कुछ इशू हुआ होगा फिर. OBS कनेक्ट नहीं किया फिर कुछ. आपका बफर कुछ हुआ था क्या? Is this just going to be some kind of big fast hit? You know, use the tail. बफर वगैरह कुछ हुआ था? Try to clear through. मेरे को दिखाया मैं समझा क्या आप बोल रहे हो. He's way on the other side of the map. Jemkin is out so wide. It's just completely unexpected, unread. Jemkin is just भाई डाम भी पूरा शटडाउन हो रहा है बे. नहीं खेल पा रहा है वो वेले. 2 spotted there with the drone. Ping onto 1, the push for Jemkin looking for a little bit more, maybe a bit of an overheat. Gonna play off the information gathered, but you can see Nongshim is so scattered. Hit from every single angle. ना सब कुछ जगह No mercy shown. Another damn near सब कुछ जगदम से हुआ. जगदम We joked about it. जगदम क्या है? You know, oh, the huge streak. जैक डीएम से हुआ. जगदम से हुआ. जैक डीएम मतलब समझा नहीं. Basically no window right now. It has to be off the back of the ults, which they don't even use in this round. They never get into a comfortable spot to do it. I think when Francis dies, everything just kind of crumbles in terms of their thought process and how to execute that round. Second timeout. Yep. Has to be used. You got to talk them through this round. You got to talk them through how to use these ults, how to set up some kind of big A dump hit where you just pop the no command, use the Armageddon to clear out tree or something and scale into sight. I don't know, but I mean, I'm scratching my head a bit too, Nongshim, because RRQ has you read at every twist and turn. And that's the first round where we've seen RRQ get kind of aggressive out towards a deeper part of the map. We've seen them contest the mains a little bit, but just walking up courtyard there, that's a great read from Crazy Guy and from RRQ, which, you know, welcome back to Pacific, Crazy Guy, by the way. Yeah. You're having a pretty good start. Vietnam once again has a representative here. Very happy about that. Saw the fan asking for some spiciness. Crazy Guy नया addition है ना RRQ में. This is about as mild as it gets. Oh look, dude. I think like a UK person, big time, could eat this I dish guess. right now. Wouldn't be breaking a sweat. दो नए players हैं, एक Crazy Guy और
which is Indonesian ramen, and it is mega spicy. Pharaoh? Spicier than anything I've ever had in Korea. लग रहा I'll है just leave it at that. And Indomie is my new favorite ramen. Oh, bye. Well, भाई खत्म है तो Jemkin just continuing. सब कुछ एकदम से हुआ अच्छा तब पता नहीं यार फिर ये कुछ बीच में हुआ होगा फिर ऐसा कभी हुआ नहीं है थोड़ा हम भी शॉक हो गए देख के Very little of the map that's unaccounted for. strange things happening Why not? Against an eco, why take any chances? Maintain the streak. Flash not going to hit. अरे दैया Not reading on the angle with the Odin. Does push up into the smoke though. A little bit of greed going to be shown. Dambi able to collect one. Refracts back. Spike recovered. गन लिया भी नहीं अरे डाम्बी Just भाई that stinger though, not wanting to bring that Odin in. Yeah, that's kind of one of the few, I'd say, minor mistakes. This crazy guy walking back into that smoke. We could have just held that back. Just spreading the map a bit, RRQ. 30 seconds left. Assuming that could be B, but they're pinging out the negative space. Like, they're understanding of what they're giving up, and our Jimkin so aware. Oh, Okay. Does get pressured out. It's a bit too much from too many angles. As Dambi needing to get the spike planted. Hunter's Fury opening up. Plant interrupted here for the moment. Needing to re-stick it. They do so. But that Hunter's Fury does connect. Spike planted. Everyone other than Ivy dangerously low. Ivy still a world away. Standing ahead. As Monyet taking some damage. Getting hit there from behind. Perja able to find the shot there to the back of the skull. Cushy now. Off the lock in place. Snaps on for the headshot. Does he get the Armageddon out? It's going to be the salvos to start. Still a decent amount of time to work with here. It looks like Ivy just going to be going for the peak. Cushy spotting him. Retaps it. Cushy desperately trying to just get him to peek in to go for this one. He finds it though! And Cushy will keep the streak going with a Red Bull clutch. It looks so damn good for Nongshim. But the noodles that dropped all over the floor. खुशी मार दी बे Is ruined. it's one of the few rounds where I think they sort of outguessed RRQ, where Francis is able to outread them a bit. That pinch onto Jemkin, good understanding that someone might be tucked behind that box, and they reacted really quickly to it. Were able to spam him from a couple different directions, so he couldn't really get the aim stabilized. The aim punch screwed him up a bit there. Now this is भाई पांचों के अल्ट है बे पांच all the ults. पूरा Jemkin is an op. अल्ट यूज करके एक राउंड तो निकालो Spammed out, has to exit down to 2 HP. Frankly, he's lucky to get out. In the meantime, Convergent Path's going to be using. That's 3 players caught. Dambi is able to find one because she's going to be taken down. Second death thus far. His crazy guy is desperately trying to फेरो भाई cannot do so. Tucks back, avoids the stun, but Margaret eventually is able to collect. फाइनली एक आएगा Jemkin at 2 HP, and Monyet, nope, never mind, just Jemkin at 2 HP. Try to keep that win streak going, but he knows that that is not going to be possible. Makes his exit. Not going to be the 1 in 7, and it will be the 8 and 1. RQ still in a very healthy position, but Nongshim at long last get themselves a round win. Yeah, it's an attempt at a crunch into mid. Trying to come at Nongshim from a couple different angles, RRQ, but it gets read really, really nicely. Plus, you have the Waylay ult to hit 3 different players, trap them completely into Market, and then Margaret scales into B site. Was able to cut down a couple players from there. So, really nice reaction from Nongshim. I think saw the smoke and guessed pretty wisely. Okay. Jemkin on the knife's edge. जेंट्री स्ट्रीमर क्या हाल वेनम भाई वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम बढ़िया हाल है आप बताएं कैसे हैं भाई ऐसा चलता रहा तो मेरे को लग रहा है 13-3 भी नहीं जाएगा And you can see how brutal it is when you get hit by that hinder. It is so annoying. (12-4) for Jemkin. 5-8, the best that anybody can muster on Nongshim so far. Just being a little bit quiet. Cam set up. Just going to be cleared out. Cushy. Not looking to stick around. Recon at the ready.
Three players. Oh, rather shock dart at the ready. For the moment, I mean, oh, if he had just sent it, might have actually been able to get a significant amount of value. Smoke's got to be coming through. Armageddon to check out Ali, but no one's there to really eat the damage. Jimkin now just following in behind. Tommy on that entry immediately dealt with. Lightspeed not going to be fast enough to escape. It's a falling in Jimkin. अरे पर्शिया भाई, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलने लग गए वहाँ पे. Able to find Aero. Crazy guy fighting his way out from that A side of the map. Margaret will fall. Francis just bleeding out on the floor. Ivy now with everything to do and almost no way. एकदम टट्टी हाल है. जिम से घर जा रहा था, स्कूटी का इंजन बिगड़ गया, इतनी धूप में चल के गया गैराज तक. 30 seconds left. They're gonna know he's right around that corner here very shortly. वेनम भाई बहुत दुख हुआ सुन के. मतलब स्कूटी ठीक हो गया ना, और पैर वैर में ज्यादा चोट वोट नहीं आई ना, मतलब चल चल के छाले वाले तो नहीं आ गए ना. क्या कर रहे हैं यहाँ पे पर्शिया भाई? Idea the way that there's some patience here from Crazy Guy. He sends his ult after they send theirs. When Dombi dashes in, he throws his ult at the door, cuts off the reinforcements of Nongshim, and they're able to just kind of pick them apart piece by piece. And it helps when Cushy's just shutting Dombi down every time he tries to dash up and over. Yeah. I mean, even with the shortcomings of the team in kickoff, Cushy, stood out. Yes. Continued to look like, okay, is this guy Rookie of the Year? And right now, holy hell. Yep. He is continuing the narrative. Him and DOS9. Rookie of the Year. Yeah, I mean, honestly, between those two, it's going to be a tough decision, but tougher still is the round here. Is Dombi going to be taken down? Jemkin just peeking out from market, able to find that, so entry power. 11-1 लग रहा मुझे. सारा ऑलरेडी वर्कआउट के बाद एकदम लो एनर्जी थी, उसमें धूप में चल के गया. ये वेनम भाई एकदम कैसा फील कर रहे हो इतना? Francis wanting to try to pressure this out, but smoke comes in. Jemkin slowly drifting away, keeping his life intact. हेलो रिक भैया, वेलकम नियो भाई. क्या हाल है नियो भाई? वेलकम द स्ट्रीम नियो भाई. क्या हाल है, कैसे हो मेरी जान? As well as Crazy Guy with a double stack setup here in the spawn. अरे एंगल तो चेक कर लो. Margaret has absolutely no idea. Francis decently fast to go ahead and pivot, find that elimination, but I mean, what more is there to say? Well, not much. Just RRQ has great protocols built in. Again, there's so much ability to find some kind of contact on the map and then make a play off of it. I mean, Jemkin just goes on a bit of an exploration there. Way earlier, Dombi had cleared the trip, kind of anticipating that maybe somebody stuck around, anticipated correctly. आज Fears of Phantom खेलो. Fears of Fathom है वो भाड़ू. Phantom बोलता है, Fears of Phantom. साला चल के क्या आ गए? दिमागी रास्ते पे छोड़ के आए हो क्या, या दिमागी गैराज पे देके आए हो ठीक करने? मैं तो बहुत खुश हूँ, आप बताओ. मैं भी खुशी हूँ यार नियो भाई, पूरा एकदम सेक्सी पकोड़ा. अरे ये कैसे ऐसे पीक ले सकते जब पता है जेमकिन ऑप कर रहा है? Yeah. The ramyun's gone bad. Everybody on a function right now with a stomach ache, it would seem. RQ in position, ready to Phantom B. Crazy Guy watching for a late lurk, and he's correct about there being one. Persia, they're in mid, top mid rather. Fears of Phantom. Find Dombi, but not before Xpero and Jimkin both get taken down. Persia wins the fight in mid. It's critically 3v2, a 1v3. Cushy, the last one standing, lined up for him as he collects them both. The tap, he's got no idea. अरे भाड़ू, फैंटम नहीं है, फैदम है वो. फैंटम नाम का कोई गेम ही नहीं है भाड़ू, जाके देखो. फैंटम कोई गेम ही नहीं है वैसे. फियर्स टू फैदम है.
you know, that are won by और Nongshim, टी-बोन it's वाला still बोल रहा तो very CS2 difficult. फेदम ही है, कोई फैंटम नाम का गेम ही नहीं है. Making great decisions all across ये the board. साला I think you're भाड़ू gonna एकदम. be looking at what we've seen on Ascent here today. भाड़ू लोगों का ही Potato दिक्कत Sova है. combos. I think you're gonna be seeing a lot more of that because the way you can control the map is really, really powerful. मैं बोल रहा हूँ वेनम भाई एक बार चेक करो, आपके घर के नीचे आपकी स्कूटी रखी होगी, गैराज में आप आपका ब्रेन देख कर आए होगे. देखो एक बार चेक करके आओ, जाओ देखो, रिप्लेस करके आओ, ब्रेन लगा के आओ वहाँ पे और गाड़ी देकर आओ स्कूटी. बता रहा हूँ मैं. गाइस लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए. Significantly more likely to have the correct prediction at the moment, unless Nongshim can go on. टी-बॉन टोटी कर दिया टाइटल में, पहले फैंटम था अब चेंज कर दिया. वेनम भाई आप टोटी हो, ठीक है. आपको वो फेदम को फैंटम दिखा होगा, वो फेदम ही लिखा होगा, समझे ना. बकचोदी मत कर ला भाई, बकचोदी क्या भाई. देखो सच्ची वही हुआ होगा. गाइस और एक लाइक चाहिए 10 लाइक के लिए. कम ऑन यार, कर दो यार. फियर्स ऑफ फेदम, फियर्स टू फेदम है वो. फियर्स टू फेदम है या फियर्स टू फेदम है? फियर्स ऑफ फेदम नहीं, फियर्स टू फेदम. वो सोचा फैंटम कहाँ से आ गया, भाड़ू गेमर मतलब एकदम. वेनम भाई Which look, I was excited सो to जाओ. see Dambi on the waylay. Yeah, I was hoping for a bit more. इसका दिमाग काम नहीं कर रहा ब्रो. I haven't really seen the धूप में चल कर आ गया ना. You do have like a KO in there. ग्लूकॉन डी पियो, ग्लूकॉन डी वेनम भाई. But it really hasn't connected. You know, you think it'd be some similar ideas to Jet, but so far it doesn't seem like the pieces are quite fitting. ग्लैमर तो है बे. आँखों की गुस्ताखियां माफ हो. मेरे खुश होने का रीजन डिस्कॉर्ड पे दे रहा हूँ, रुको. So here's something I've been pondering. Yeah, go ahead. Okay. If you were going to become a MNT तो खैर जाने दो वेनम भाई. Think like Cheers. It's like a local, everyone. And you call me the boomer. You just reference Cheers. I mean, come on. It's a great show. Don't get me wrong. Anyway, dance, continue. Yeah. What would you name your pub? What would I name it? Yeah. Because I feel like that's the thing that kind of makes or breaks a good pub is the name. I don't know. I have to think about that for a second. Do you have something in mind? You asked the question. I was thinking Event Horizon because once you come in, you can't escape. You're here forever. That's pretty good. That one's not bad. I always like the ones that are named like places you could like convince like your like significant other or something that you weren't actually at the pub, you were somewhere else. Like the library, we had one in my hometown called the library. Yeah, I was at the library. Yeah. And then you're not technically lying. Correct. So yeah, that's not a bad one. But yeah, it's always something that I've thought about, and Event Horizon struck my mind. I like that though. Actually, I do. I mean, I'm a science guy, so I do like that. I'm also, that's why I like Waylay, science guy. Enjoy the references to the light speed. I think it's 3.8 times 10 to the 8th meters per second or something like that is light speed. I can't remember for sure. I could look it up, but shut up, nerd. Yeah, I'm a nerd. Yeah, well, looks like we're खेलना भी मत, MNT का ट्रेंड गया. Maybe not so much, but timer's starting to tick down on our screen, so we should be getting in the action. यही तो मैं चाहता था. चले गया क्या? सॉरी, ये नहीं चाहता था यार. वेनम भाई मैं खेलता यार, अभी ट्रेंड चले गया, अभी खेल के पॉइंट नहीं है यार. वेनम भाई मैं खेलने वाला था सच्ची में, ट्रस्ट मी भाई यार, लेकिन अभी ट्रेंड जब चला ही गया है, खेल के क्या करूं मैं. छोड़ो फिर, रहने देते. छोड़ो. वेनम वैलोरेंट खेलता है? नहीं नहीं ब्रो, पकड़ के शार्प भाई नहीं खेलता है. देख लिया, ऐड आ गया जॉर्ड. अरे देख लिया, रुको रुको देखते. Man, oh man. What a half, but who knows? ओ समझा समझा. Some solid defensive plans. कॉन्गो नहीं हो भाई, कॉन्गो. अरे भाई ये हो रहा भाई, मैं बोल रहा हूँ 13-2 हो रहा, 13-3 भी नहीं. मैं बोला ना प्रेडिक्शन मेरा 13-3 तक नहीं होगा. छी. 2 kills found. Refract used here by Dambi.
खेलता था बट करेंटली मेरे लैपटॉप पे चल नहीं रहा. Just wait it out. Stick around here on the site with that sheriff in hand. In the meantime, stealth drone checking in towards B main. तीन ही तो बंदे हैं, एक इधर होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना ही. I think RRQ here trying to get a sense of maybe where Ivy's at. Worried about those salvos a bit before they make this execute. I don't think you have one more TP. You still have a TP available for Jemkin. There it goes. Ooh. They're going to use some salvos of their own. Recon going to be cleared out. Domby needing to hit some absolute heaters. It's going to be Ivy who does manage to find one to start. Cushy finishes off the waylay. As it's now just down to Margaret. They have to have a very strong idea where the approach is going to come through. I mean, door's already shut. And all of RRQ just get clustered up here in main. Oh, this is... It would take एकदम सही चलता है. जैसे ही एनिमी सामने आया स्क्रीन स्ट्रक तो वही तो होता है वेनम भाई. नॉर्मली तो सब सही चलेगा, वो कुछ सामने आया तो वो फिर रेंडर प्रोसेसिंग वो सब होता है ना, फिर सीपीयू प्रोसेस नहीं कर पाती. वैसा जैसे अब फोन्स में देखना है, एंड्रॉइड में वो जब बंदे होते तभी लैग क्यों होता है, क्योंकि तब फिर रेंडरिंग ज़्यादा होता है, वो उनका आउट ऑफ प्रोसेसिंग लीग में होता है, तभी तो वो लैग होता है एंड्रॉइड्स में. वही होता है ना, वरना नॉर्मल में आप नहीं रहोगे क्योंकि तब प्रोसेसिंग एक लिमिट में होती है, फिर ऐसे हो जाती है ना बार. होता है वो. It's so good. You know, Nongshim trying to catch RRQ a bit off guard. And I want to talk about this execute here. They use a lot of the utility to get the identification that Margaret is behind Dice. And then when Ivy steps in to get that first kill, immediately he's hit with a paranoia from Manyet. And Manyet steps through and kills him. I mean, the protocols, it's obviously... बहुत पुराना लैपटॉप है पापा का है, अब पापा को चाहिए लैपटॉप वापस, तो पीसी बनाना पड़ेगा वरना सब काम अटक जाएगा. Gotta love this map choice. पीसी तो बन जाएगा वेनम भाई. आप को तो मैं जो बोला था वो वाला करना है. Light speed up and over the top, playing distract as Margaret comes in from behind, is able to find that kill. That was sick. Not pushing out though to try to collect weapons. They're still just playing this a bit warily, starting to go for the rotate across towards this A site. In the meantime, RRQ do drift back over. वो साइफर को मारा लेकिन मारा सोवा. ब्रिलियंट. कल जैसे मैं रेस को मार रहा था, मारा गेको. ब्रिलियंट. Good news is Gundens gets scooped up by Dongshim, so RRQ is able to keep that. Still, sheriffs abound and some cool ideas. उस वजह से बहुत खुश हूँ. सुबह देखकर रोना आ गया कि क्या हो गया. चॉट 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 चॉट. Francis getting another crazy guy, answering back 2 kills now all alone. Gets down into the site, can get the plant, get that money, get an extra charge. But can he close out? 3 more players. Can he clutch it? Ooh, with an ace. Dami, ooh, hitting the headshot through the box, and crazy guy makes a little bit of a go of it. We'll find Persia, ensuring that they can't carry forward quite. खुद का जंट्री गेम प्ले ये प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये सब केओस वाले नामा ने. एकदम टट्टी हो आप. आप जाओ ब्रेन उठाओ अपना. Fears to Phantom वाले, अब ब्रेन उठाओ. To use those waylay dashes, and it comes to fruition. Little wry smile there on the face of Ivy. Played that very nicely out the rip. Caught RRQ completely off guard. A great opening shot from Danby. Immediately into the salvos and him dashing through. Beautiful stuff. I thought maybe Margaret was just a hair off being able to slide in unnoticed. Clearly, none the wiser were RRQ. So really good capitalization. Some energy starting to come through. Something to feel good about there for the side of Nongshim, but there's still an immense amount of work to be done. Crazy guy going to be picking up a Marshall and a half armor. क्या लगता है? Comeback होगा? Rifles across the board here for Nongshim here as salvos shoving them away, stopping crazy guy from trying to grab that orb for the moment. कहाँ उनका और कहाँ तुम्हारा aimless game? Coming back into the pool is going to be the orb control. वेनम भाई, कोचेस डोंट प्ले, ठीक है? इतना याद रखना बस. मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा.
Stun connecting there on him on yet. Door quickly going to be broken down as Marshall shot connects on the Persian. Puts him to 49. RRQ for the moment here in control of the site. Couple players whittled away at. Ivy similarly at 42. Fragment out just to check the corner, make sure no one's playing switch. Sparrow looking to try to push up. Jemkin's going to be taken down. Dash in, Dombey arriving here at Gen, drops down, does get the ping reveal. Crazy guy with a headshot, able to find Margaret, but now it's just Cushy all alone. Can't find any further damage, so some HP whittled away at. वेनम भाई ऐसे खुलेआम सच नहीं बोलते. Hello, excuse me. Rally back for a 4th round victory. What खुलेआम? I mean झूठ. Hello. At least kind of anticipating Coaches नहीं लवड़े aim वाले don't play. Of the RRQ players, a couple times we've seen where Jemkins wanted to be up on Raptors and he's just dealt with. कदर ही नहीं है भाई. Just he likes to play No behind that qadar box. at all. Couple nice shots of the Marshall. But other than that, just a good flood retake here for the side of Nongshim. Even though it's a good read initially, frankly, by RRQ to take a small pause after the salvos come out for the A main orb and then be like, you know what, we hear him going the other way, let's just see if we can get through to A for free. And they do, and they get the plant, they get the money. Now they've got the guns to work with. Salvos to send Ivy a little bit further back. Smoke in response from Persia. We're gonna set up the TP on Old Boy. Going for the spray. Surprisingly little damage. Cushy, they're at 72. Oh, that dash onto the box. Yeah, light speed across the side, but Jemkin able to find two as he TPs into hell. One yet gonna be put down, but the flood is just far too much. Jemkin with the entry. No one looking in his direction. For another elimination. Swing out Margaret, unable to make it happen. RRQ not allowing for a, in quotation, Map point. You could say here for the side of Nongshim to get into the round win and get themselves up to map point. It's all about the timing of when the Yoru stuff happens. Like, Persia pushes around the corner to try to catch the Sova player off guard when they're sending the drone. That's why the smoke is a little bit further out in the main like it was. So he has a little bit extra safety to do that. But right as that's happening, that's when the TP goes through it. It's not noted, I think, by anybody from Nongshim. And that's why it goes into the back of hell. And there's just no identification at all. मैं आता थोड़ी देर में. Okay वेनम भाई. Sending himself back there. And sending them to the graves. And he's got the ult. So what's the plan with this? Is he going to go through tree? Try to clear out the front of A. But he's pinging out mid. Nope, okay. It is going to be tree. I was suspecting. General warnings, but yeah, it's going to go forward. Spawn of the one. Doesn't turn back, I believe. So Persia unnoticed. Jemkin exits that dimensional drift. He is met with his demise. This round completely gets flipped around just because Jemkin doesn't look into main. 13-4 तो नहीं. 13-5 होने के chances हैं. See if Xpharaoh can do any more damage. Any kills that he could find would be value, but in the end, not going to check over towards that right side. So Ivy from Switch able to find it. Nongshim hold on by a thread. A 5th round win. It is a bit strange because that's how Persia played the previous round. They just seemingly didn't anticipate that he'd do it twice in a row, but Persia, you don't want to give him any opportunities. We know what he's capable of at his best. Phenomenal controller. One of the big reasons that Nongshim is here in the first place. Absolutely. Jemkin 29-8. Cushy not far behind. He said Persia trying desperately to catch up and to keep the team in the mix here. Salvo's out. Sparrow on the wide swing. So the flash will connect. As does that massive suppress. Virgin path's going to be used. Dombey dashing forward, looking for it, but Sparrow just go ahead and find that elimination. Tucks into the side. बेचारा डाम्बी कुछ निकाल ही नहीं पा रहा है. RRQ take one step towards pulling off a bit of a threat to their own to go ahead and close things out on Ascent. Persia around the back. Maybe not quite noted. No, not noted at all. Strikes finding one. Paranoia. Dodgeable. As they shift over to the side. Ivy looks to reinforce his position here at Tiles, but Jemkin finds another to swing out. Just trying to go ऐसे for पिक it, करोगे Jemkin तो होगा ही. to it, ready. Just far too हाँ, good. advantage को disadvantage में डाल दिए. Drove that reveal. Margaret, 1-2, needing some more. And Francis
Put him down on the floor. Monyet still standing, closes the distance with a stinger, and comes up with the goods. 13-5. भाई वो टप दूसरा तीसरा भी टप हो जाता ना, टप्पा था. Just brilliant stuff, top to bottom. Can't say enough about how impressed I am with RRQ's game plan and the way that they've got these agents all lined up, the way they've got the protocols in place. बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. And it's truly impressive. And what's even more impressive is this match between these two teams the last time was so damn close. Yeah. And they just come out here and they just rack them on map 1. They really did. I mean, it was maybe Victoria said that she had talked to Gem. 31% volume, 61% getting clicked. Okay. Yeah. Fast day. It's like, all right, sure. ठीक है. Sure. But a very fast map, at least, to start off this series. Plenty more to be played. Who knows what's going to happen when we hit the split, which, of course, is Nongshim's map pick. Plenty of opportunities for them to try to turn the series on its head, get back into the driver's seat, and take this the distance to a third and final map. But what a roaring start here for the side of RRQ. I mean, Jemkin, Cushy, good as ever. Yes. But I gotta say, I'm more so impressed by the integration of Crazy Guy into this team. How quickly he has just gotten in step with the rest of these players, and the reads that he had on how Nongshim was going to look to pilot this composition. He really RyuK भाई तमिलनाडु से हो क्या नहीं? a handful of rounds where I felt like he got outgassed. अर्नव भाई वेलकम बैक. क्या हाल है? Just sneaking underneath their noses, understanding when the crunches were going to be coming through. Just brilliant. मतलब मुझे और अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा क्या? और अच्छा थंबनेल और अच्छा कंटेंट, एवरीथिंग ब्रो. It's a good day to be in Indonesia. ओवरऑल दिखता है, खाली थंबनेल बनाने से नहीं होगा. कॉज वो क्लिक करेंगे, 5 मिनट बाद आपके स्ट्रीम से चले जाएंगे, तो इट गिव्स अ रिकमेंडेशन टू यूट्यूब दैट योर कंटेंट इज नॉट गुड, इसलिए व्यूअर्स चले जा रहे हैं आपके कंटेंट से. तो वैसा भी होता है. तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थंबनेल हेल्प्स योर पीपल टू क्लिक. कंटेंट इज ऑल्सो नीड, क्योंकि आपको देखे बिना चैन नहीं मिलता. अरे ये वाला मैं अभी अपने उनको लिखता हूँ, रुको. ये वाला अर्नव भाई बहुत बढ़िया था ये वाला, लेकिन ये अभी मैं लिखता हूँ, रुको. अच्छा, थैंक यू. यस, वेलकम. माय प्लेजर. एनी टाइम. मेंशन नॉट एवरीथिंग. रुको. Yeah, I have to agree. I think RRQ's comp is a nice iteration of that previous meta comp. You know, the Teo missiles can replace that KO molly when it comes to stall, but do it even better. You still have flashes, so you're able to go up mid, and you have Yoru who's able to break through those chokes. So this is a really well thought out comp. But Jemkin has to take map MVP there. Look at that, 9 first bloods. I think I'm reading. If I'm even reading that right, 9 seems. मैंने भी मेरे उनको लिखा था, फिदा हो गई. ये रुको. To such ridiculous off-angle. He was all the way down mid. Yeah. He was as deep down mid as you could be, playing that off-angle towards top mid. It's me here, bye. Welcome to stream. क्या हाल है? कैसे हैं? RyuK भाई बिहार से हो क्या? नहीं. तो पटना. ओ भाई. हैवी बातें हो रही है, हैवी. It's one of the things that makes Yoru so strong on defense is you can always be on the right side when you need to, and you're able to just have that global map presence, just TPing wherever you want. Yeah, props to the coaching. हाँ भाई, और आप ऐसे करके सारे स्टेट्स का नाम पूछ लो. बिहार से नहीं, सॉरी, यूपी लिखना था. पटना तो बिहार में है, अर्नव भाई. I mean, MVP for Jemkin, it's undeniable, but Cushy was fantastic as well. Totally agree with the casters as well. Crazy Guy on the Teo.
the reason why it's so easy for him to integrate into this role is because he's not doing anything different from what he was doing in Tier 2. You know, this is very much exactly what he was doing in, you know, VCL SEA, and now he's just coming up into the Tier 1, but it's a stage that he's used to playing in already. What else is funny to me is we got to see Ewok earlier. He came to say hello to us. Very cool, wasn't he? He was playing it down. He was playing it down. So hard. We asked him like, "Oh, are you ready?" He's like, "I don't know. I don't know." I was like, "How's crazy guy?" He's like, We'll see. He shrugged his shoulder. Yeah, but he was like implying they weren't ready. You know, he was trying to make us a little worried. Then they do that crazy walkout. Then they play like that. Ewok was definitely just pulling our tail. He's baiting us. I don't think he's baiting us. I just think he's been burned too many times. He doesn't want to curse it. Like, he does not want to curse. RyuK भाई गुजरात से हो क्या? नहीं, बट मेरी सूरत अच्छी है क्योंकि आपकी सूरत पे मर गए हम। आइए I'm not convinced by them. I wasn't convinced by them in kickoff either. They've been, you know, trying to put the neon on split and try to make their patented style work on a map where historically you don't really see teams play like that. To be honest, I think they're going to have to integrate something a little bit different. Once again, they can play things like Breach Teo because I think that fits Nongshim's style very, very well, but yeah, their Ascent did not convince me, and it's not a map that they've played historically, and they looked like they did not know how to play it up against RRQ. They got completely outclassed there. And for Split, I have a very similar feeling, although they have had some reps on it in the past, back when they used to play in Challengers Korea, which at this point is almost a year ago now, is quite a long time ago. It's not really a map that had a lot of reps when they played on their Ascension run, and when they did play it in kickoff, it was kind of hit or miss. Yes, they beat a Zeta that really struggled in general, but then the game after that against T1, they got absolutely stomped. But then on the flip side for RRQ, we can see that they banned it out during kickoff. And we know Cushy loves Sova, and it's hard to play Sova on this map. Maybe they're just taking it there because they can sense a little bit of weakness from RRQ there. Maybe it might not necessarily be Nongshim's map. They might just think they could get a leg up there. Well, either way, for sure, both of these teams have been working on this since kickoff. Otherwise, I can't see why else Nongshim would pick Split. I mean, a lot of these teams. RyuK भाई दिल्ली से हो क्या? क्योंकि आपके बारे में दिल ही नहीं लगता। आपके बिना ही दिल ही नहीं लगता। अच्छा। टर्बोग्रानी मतलब समझा नहीं हो भाई, क्या मतलब क्या? This feels very personal. I know, that felt very personal. They have more information on their split than we do, right? Well, they must be going well for them in scrims, so whatever they're going to bring out, they're going to feel like they can beat RRQ on. That's all you need to know from them picking it. We're yet to see if it's going to work. 2-0s do happen. It's the hindsight Andy's, isn't it? It's you got to trust them. Have some faith, have some belief. It's easy to say, why did you pick it when you lose? I think that exactly like you said, they've kind of picked it because RRQ has not shown it yet, and they've even banned it in a lot of series. So it's almost like force us to show us that you can play it. You know. We were talking about playstyle earlier, and there was a slight change in how Nongshim has been playing. Even though we do definitely love the way they used to play. On a map like Split, how do you see their playstyle fitting into this? I mean, I'd like to see them kind of doing what they did in the क्या? right? I want क्या अर्नव भाई? What क्या? He's a very, very strong What क्या? I mean, we saw them try to do that on Ascent, but every गाइस हम लोग 1 सब्सक्राइब दूर है आज के टारगेट से पूरा, मतलब पूरे होने में। तो कोई एक शेयर कर दो यार अपने दोस्तों को और वो सब्सक्राइब कर देगा, तो समझ रहे हो? आपके कोई स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उनके ग्रुप में शेयर कर दो यार। कोई वैलोरेंट का दोस्त होगा, शेयर कर दो यार, क्योंकि आप शेयर करोगे तो जॉड होगा। Well, they definitely need to do something, otherwise this is going to be a 2-0 kind of day, very different than the last time these two teams. रैंडम है भाई, कुछ भी बोल रहा हूँ। वैसे भी अगर कोई जानता उसके बारे में तो कमेंट कर देता। Indonesian team here. Ideally, you know, you seem so passionate about certain. वैसे भी भाई, वैसे भी अगर कोई जानता उसके बारे में तो कमेंट कर देता। किसके बारे में? Stick with the way, like if you know, Danby was great on Neon because he was a really early. No, meaningless. and make it work, but अच्छा समझा। Yeah, I agree. I think Nongshim
Nongshim is the kind of team that they really try to abuse what's broken early before other people really commit to it. So the problem is I don't think Waylay is that broken, to be honest. I think it's just a choice. So let's see what they're going to be bringing into this map pick of Split. They need to turn this series around, and they are going to back themselves. Almost a kind of similar comp. Dumbies again, Waylay, Francis. But the Teo is the single initiator. You're going to get Danby on the Waylay, and Ivy is going to be on kind of a secondary sentinel in combination with the double controller of Omen and Viper. A little bit more of a classic look coming out for RRQ. We see that breach tail, which is still so strong, paired up with the Yoru, but then of course the split staples of Viper and Astra, allowing them to lurk and go a little bit slower. I'm shaking my head at that sign there in the audience. What is he doing? All right, we're gonna send this back to our casters for Split. It's Achilleos and Paperthin. Alrighty, here we go. Time to jump into the action. Map 2, Nongshim's pick. Sticking with the Waylay, bringing a deadlock into the fold, something that we don't really see that much of here in Asia. How does this look for Nongshim, and can they get this over to a third and final map? Yeah, you know, you got to feel confident in terms of a team that could pilot the deadlock well. That's definitely Nongshim. They've done it in the past. Ivy, a very good player on that agent, but with how impressive RRQ looked, and they're not running something super different here. You know, a little bit of congestion for mid. Going to use the salvos to clear the space. I mean, some pressure going to be onto Monyet with the Astra, but he's no slouch on that agent on this map, as we know. Back when he was on GE, had some stellar performances. I think he was when he stole the land kill record. I believe he was playing Astra, and oh yes, it has. Is she going to be taken down? Margaret, nice and elusive here, looking for a little bit more, but Xfero to widely dodge out a lot of those shots. Scoops up the Sheriff for himself. All of Nongshim now shifting back over towards his A site. Still going to be triple stacked though by RQ as Xfero taking a really aggressive position. He's just sprinting at him. And Nami says, well, thank you very much. I think the smoke on the other side of the map might have convinced him that they weren't going that way. Goes up and over the top here. Does RyuK चोर भाई ये बंदा एनीमे की बात बोल रहा है, देखा है बाय द वे, पसंद नहीं आया. नियो भाई टर्बो ग्रैनी. Goes for the reload. छोड़ भाई ये बंदा एनीमे की बात बोल रहा है, देखा है बाय द वे, पसंद नहीं आया नियो भाई टर्बो ग्रैनी. डन डन डन. Right foot forward, finds himself a 3K as RQ are 3 for 3 on the pistols. अच्छा, Just good ऐसा बात है क्या? You go on a bit of a fact-finding mission. Nice dodge there, using your own toxic screen to get around the drone. But pop flash didn't really matter too much there. Crossfire angles very difficult to deal with in that position. So well handled by RRQ, and a buy up here from Nongshim. They're going to force. They're going to try to see if they can turn things around. Stingers and a Sheriff try to break through. Saturate in the back site, no one there to receive it though. क्या sound है बे? He's playing a bit more disconnected. Feel like they're widely happy to go for a retake, but Nongshim forcing up 4 Stingers and the Sheriff. Try to tie things up off the rip here. RQ, how do they want to pilot? This is the question. Gate crash at the ready here for Jemkin. Sends out the fake out, drops down off the rope. Might have caught a glimpse there into the smoke, but is able to find one down. We're going to be taking down some decent kills. Traded back with Cushy coming away with 2. Fishing for some more. The Guardian delivering. Persia and Francis now needing to clutch this out. The smoke dissipating. Persia about to be in the open, and he will fall. RQ not going to allow for the Forest to find value. Get themselves a 2-0 lead. Really break the economy from Nongshim. Yeah, it's tough there for Nongshim. I mean, you're able to get into the site basically for free. You're able to get your post plant set up. You're able to get that barrier mesh at the alley door along with the smoke to create a little cheeky play. But, you know, the flood retake here, so efficient. Able to cover each other really nicely. Cushy doing a great job. Oh my God. Stunned up, but with the Guardian, not that big of a deal. Backing up Chemkin's entry really nicely there. So, RRQ continues to have impeccable protocols. Teamwork looks really, really nice. Dash to try to get some space. There's no one there, so Bucky at this range.
to close the distance a little bit more, so goes sliding forward. And Jemkin had an outlaw. He's going to cover the other angle there. I mean, it's Bucky v. Judge there on the entry into heaven. Sparrow likely favored. And it's going to be Crazy Guy, never mind, who just wall bangs him out of position. So it seems like they kind of had an understanding of what they were going to try to do. Cushy does get taken down. Persia able to find that, but Sparrow cuts him in half. Slides down through the vent. Margaret trying to stay tucked away. Sparrow pushing. Finds one more. So, I was going to say spots him out, but it's far too late. रुक भाई बहुत उदास हूँ मैं क्यों अर्नव भाई क्या हो गया क्या सीन खो गया इट्स मी हियर खो गया तारे जमीन पर क्यों भाई आपको क्या हो गया वही अर्नव भाई क्या हो गया बताओ Not going to connect. Minor damage through the wall. Just the aftershock to slow the approach. Grab net there, Crazy Guy. Locked up for the moment. But Monyet, here from Garage, does this get read at all? That's going to be tough. They've only spotted one. I don't think they have any idea about Francis being on the site as well. So for now, that uncertainty works to Nongshim's advantage. Splash. Oop. For the spot out, Monyet finding Francis, and the judge cannot be put to use. RRQ, get the defuse. They get themselves. चैट कॉल पे करो दिख जाएगी चैट मेरी चैट कॉल पे ही है कोई अपना नहीं होता बीसी साला खुद का Everybody getting involved in that final kill. That's still alive for RRQ. Just, yeah, understanding that maybe somebody had tucked in behind that wall. I mean, Persia's still able to find his. तो उदास ही रहो भाई आप. Xpharaoh, I was a bit worried initially. Can't help in this. Set up a crossfire there, coming out of ropes on the top of Xpharaoh. But he just didn't quite register that he saw a gun. Maybe he was looking at the map or something. And, yeah, now you're still able to just bank up a ton of money. Jemkin's got his ult already. Things are getting a little bit scary. Outlaw's carried over, so not going to be able to find the most amount of value, just innately with one shots. Only one player going to be vulnerable to that, which is Dambi. For now, though, Nongshim scaling forward. I mean, A site is completely open. And you can play for retake, you know, having the Yoru ult. Oh, well, second shot. Shot! And Ivy's going to be eliminated. Deadlock now out of the equation here. Spike brought forward, plant here in the hands of Francis. Going to be 2 charges away from having that Armageddon online. But right रुको मैं ना इसी ऑन करके आया. With Jemkin at the same time, while he is, you know, whittled away at taking a little bit of damage. साला सब टीम्स में सब गोलू मोलू बंदे क्यों है? कोरियन टीम है ना. Wires get crossed. Salvos to try to force a position. Cushy does end up getting traded, but it's hardly the kill that they were looking for. But Margaret and Persia start fighting back. आया रुको. Player advantage now in their hands. Margaret tagged up on Monyet. A hell of a headshot. Now it's just the 2 low HP players remaining on the side of Nongshim. Spike is not planted for them either. I mean, it's just over. There's nothing more to be done. Surely. Never mind. How did he have just enough of an angle to find the kill? He must have. Okay, I got scrambled. I thought it was done. I might have missed it. I apologize. A rare flub from me. I thought it might be a little bit different because I thought they were going to have to go a little bit wider on that angle. Yeah, but maybe they just was just enough. That was a great reaction from Margaret. This one, Oh, he just swung out on rafters and managed to just absolutely nail the shot. Okay. My mistake. Either way, Nongshim now on the board. Solid effort there. As once again, Lightspeed just trying to take some space. Persia as well. TPing forward here in the mid. Checking the mail. Nothing going to be spotted here. It's widely just been Monyet alone over towards this B site. Portal closed. Cutting through. Jemkin looking for that close quarters contact play. Sends out the TP, but that was a huge round for Nongshim. Their economy would have been busted. They weren't able to get that through. Wow, the fade away for Jemkin. Just barely able to find it. Crazy Guy. Fault line. Gonna be sent, pushing up, finding Dambi. Hinder is there. Aftershock to try to keep himself protected. Francis
trying to swing out, but Smoke is there obfuscating. Crazy guy just dancing around the bullets as the collapse comes in from Xfero. Gets in behind, and Ivy all alone here in Garage. And I don't think I'm going to curse it this time. But surely the round is over. Well, say it with me, Sliggy. Yeah. Surely we can't goof this. He's already saving, I think. Yeah. There's just no money. इतने दिनों से कोरियन टीम्स ही लड़ रही है, कोई दूसरी भी टीम लाओ भाई. कोरियन टीम कहाँ लड़ रही है भाई? ये NS रेड फोर्स आपकी इंडोनेशियन टीम है. RRQ कोरियन टीम है. Just a lot of really nice individual plays from RRQ. Jemkin playing that angle early. कल थाईलैंड की टीम खेली थी, सॉरी फिलीपीन की टीम खेली थी. कहाँ हर दिन कहाँ कोरियन टीम? कल फिलीपीन और इंडोनेशियन टीम थी. आज कोरियन और इंडोनेशियन है. उसके पहले इंडियन थी. क्या अर्नब भाई हैं? कौन जीता? And then the salvos to flush Purge out into the open for Monyet. Really, that was a good combo play. So, yeah, you're right. Timeout has to be thought about. Things are very difficult for Nongshim today. And, you know, the desk was talking about this has been a map that RRQ has been widely avoiding. They haven't really wanted to play it. You know, so as Nongshim, you're thinking, surely they don't like this map. Let's test them on it. Well, they're really leaning into this Yoru, you know, breached AO meta. And they look very, very strong on it already. And then you can put Monyet under his comfort of Astra. Phenomenal on that agent. A lot of things slotting into place nicely for RRQ in that regard. And Nongshim toying around with the new agent, trying to get Waylay integrated, trying to get a way to figure it out. We have seen it in some other regions, you know, China, Americas, where some teams have had success with Waylay, but so far for Nongshim, I haven't seen sort of what I'd like to. And I think on this map in particular, without like a breach or something there to set her up, I think it's pretty challenging. Yeah, it feels like for now, maybe just going to be Forsaken who's able to find the most individual success. True, yeah. With the agent. Yeah, who else, right? But प्रेमी को भी तो मिला था. प्रेमी भी तो वेले में अच्छा ही खेला था. Not only 4 seconds. Some salvos out the front, take some space forward here in mid. Not fully scaling off the back of that though, but space is going to be given up. Xfero pulls all the way out of vents across in towards A heaven. Spike for now still going to be on the floor over at Ramen. This has been the way that a lot of these rounds have been playing out, and RRQ's happy to try to control the area outside of vents or at mail to shut Nongshim out of these rounds. They'll give you that mid space. They'll let the Taeho use the abilities early. I think now for Nongshim, maybe if you pause a little bit longer before you try to make your attacks, you can get those salvos back into rotation. Try to make something go off the back of that. What's the play call here? 45 seconds remaining. Two players, I mean, in heaven, not necessarily going to be finding too much contact, too much to dissuade them. Looks like they want to try to keep some interest over towards the A side of the map. Ivy swinging out, wins the fight. Jimkin, bit of a rare whiff. Does end up getting taken down. Now the cut through the vents coming through. Monyet filling space, gets himself forward here into the Nebula. Paranoia not connecting, finds the first, knows that there's another here in Garage in the shorty. He's able to go ahead and scoop the kill. Cosmic Divide now going to be called out. The Spike is stranded here alongside Monyet. They can't push forward. They bounce the concussant, and they're just going to lose on time, if not deaths. Fantastically done from Monyet, and he will be the finisher to find the third. Gorgeous. You talked about the comfort. You talked about how smart he is playing this Astra, and he puts it all out on display right then and there. He just refills the space after Jemkin gets killed. Ivy doesn't feel comfortable wide swinging that angle, backs off, and that gives Monyet the space he needs. Persia was just about to turn, and Francis reloads the classic, thinking he might be safe, and Monyet just pressures him, sees the spike is down, instantly reacts with the Cosmic Divide. Absolutely unreal. The way he can react to stuff sometimes. Even then, maybe minor in the long term, but you can tell things are off. Just very
drifting back and forth, eating. ओए मिड पे देखो Does find the headshot. फिर से जिमकिन Monyet still using that shorty, finding another quickly traded out by Francis. मोनिए तो है भाई Advantage to Nongshim. मतलब कितनों को रोकोगे बे मोनिए को मारोगे तो जेमकिन है जेमकिन को मारोगे तो फिर क्रेजी गाय है Assuming that they're going to try to make a play towards B because they haven't heard anything over there and they haven't really seen much going on in that part of the map. Instead, Nongshim just holding the line outside of A main. RRQ isn't pushed any further forward. Stealth drone checking over through the vent. Nothing spotted there. Looks like France is going to have to go wide swing out back through the spawn. This is widely relying on Margaret and Tommy to be able to find some openings, and they're going to find absolutely nothing. But now they're committed to this side of the map. Persia going to try his luck, but Crazy Guy has been absolutely unscouted. They're just messing with their minds. And he's immovable. Uh-oh. Okay, maybe a bit of a timing here, so Francis is able to find one. Sparrow putting up the wall, the bite at his feet. Francis eating some damage, going to be made vulnerable. Going to be made a nice little coffin to be laid to rest in. 6-1. RRQ, similar scenes to Ascent. Perhaps it's not just a map pick scenario here. Perhaps it's just RRQ being the absolute better squad. No, I'm starting to believe that myself. And it's so many different things that they're doing, but Nongshim just has so many ults in this round, and they never get to use any of them. They're just chewing through ult cycles without any kind of ideas behind it. And, you know, credit to RRQ, they're kind of getting ahead of the curve a bit, catching them before they can even really use them. Looking for a net play. Oh boy. Not going to get caught by that. Not going to take a lick at damage either. He's able to just dip out. Downbeat still pushing forward. Persia TPing in behind. As the drone going to be cleared inside. Oh, kya mara. Elimination. Annihilation does go across. Is able to go ahead and grab up one. Jemkin, Crazy Guy, both going to be taken out. As Monyet will fall, and it's the best chance at a round victory that Nongshim has had since round 4. Cushy, however, salvos out. Margaret dead to pit. Dropped Ivy. Taken down. Sparrow clearing out the wall. Oh, they're both so low HP. 13 health between the two of them. He's got to pick what direction does he want to face as he pushes out of the smoke. Swings, finds a burst, looks for the transfer. And by the skin of their teeth, Nongshim will get the second round win. Just Francis to survive. And if they don't, I thought he had it there for a second. Oh, yeah. घुमा तो लिया था कर्सर Nice annihilation through the smoke. But it's still so much committed. Yep. To be able to pull off the thrifty. And just not much energy behind the calls. Had to do it. 3 ults used. Still have the convergent paths. Quick dash again. This time not off the back of salvos, so trying to see if they could catch RRQ off guard. See if maybe Jemkin had shifted back over there. Oh, like Sparrow. Oh. Noting to Monyet. Able to tuck back. Net going to be used, but ends up going short of the mark. Ivy not wanting to push out of the nebula. Rotates away. Persia now going to be taken low. Rolling Thunder sent over towards ramp. Not going to connect there onto Francis, but it doesn't matter because the bullets they connect onto his teammates. One enemy remaining. Ivy just cannot win the fight. Francis now once again alone. ये क्या क्रेजी गाय भाई हेलो क्रेजी गाय भाई मेरी तरह खेल दी थोड़ा सा And Xfero slowly and steadily is making his way across through sewer. Riding the rope up top, and right now, I mean, it's just not even an afterthought in the brain of Francis. Xfero, no way. Yeah. Doesn't want to go for it. Realizes he's not going to get the angle to get a clean shot at the back there, so we'll just go ahead and show him some mercy with a bullet to the back of the head instead of a knife between the shoulder blades. But there's no mercy in this scoreline. 7-2 now. What I love about the way RRQ is playing this map right now, there's a lot to love, but there's a couple big things. One of them is that they're willing to absorb contact over towards A, and then just kind of fight for A tower control because of some of the util they have. You know, they can send the Tejo stuff. They can use the Yoru to keep them off balance.
They can use the toxic screen. Oh boy, okay. That's aggressive. Yeah, just a self flash out from Jemkin. Able to find one, but quick trade. Weapon potentially recoverable here. There's Xpero trying to get away. It cannot. 3v4 डुएबल तो है. Too aggressive here for the हाँ side. देखो ये पकड़ेगा ना. ये दो को मिस कर दिया. Shut down the push. He's like now open money at crazy guy. उनको पता नहीं है वाइपर का पुश ही नहीं पता. Turn the tide. A lot of T words. A tongue twister, if you will. Might have just invented one. अरे ऐसे क्या घूम रहा है भाई? That's down to Moniette. Disrespects the Sync bite, creeps forward, looks for it, cannot make it happen. It's going to be another thrifty here. Nongshim get themselves a third round win. Potential to still yet make this a 7-5 half. And it's a different look from RRQ where they heavily contest mid. And they pay the price. A nice little exchange of fire there, using the util to bait out for Persia. That breaks things open for Nongshim. भाई चैट में कोई सिनाट्रा को जानता है क्या? Use it to trade out Cushy. Get through, get that man advantage onto the site. See if they can string a few more together here. Dombi's still on his ult, but you have a bunch of big ults for RRQ. You're almost another cosmic divide in cycle for Moniette as well. So this time they're gonna set up the crossfire. Those salvos. Oh, okay, well TP in from behind. Persia is able to find Chippy. Finds Xpero as well. जाग गया परशा जाग गया. परशा जाग गया भाई. 1-for-1 trade, but big show up there from Persia. Get them in with an advantage, and Cushy nearly getting timing, but still so fast to readjust. Didn't take any damage. .3v3 with things grinding to a halt. Moniette still here to try to hold things down. Jiggles out, spots one. Nebula immediately popped. Another star going to be set. So damn fast with the util. Net does get a catch. He gets slowed up. Grab well. Stop him from advancing forward. The salvo's just not in position. It's going to be Francis actually able to find Crazy Guy. Moniette nearly finding the pull at the time. He falls down to 42. Cushy looking for a timing. Can't make it happen. Ooh. Hits that. Ooh. Little headshot there on the Ivy, I believe. Takes him to 2 HP, but cannot stay alive. Nongshim continue to fight back. First time getting 2 consecutive round wins. If they can find a third, they will widely have rescued this half. Yeah, it's another round. It's a different look again from RRQ to try to contest mid, and Persia's just having none of it. Stellar couple rounds from him to break things open, clear some space, and give Nongshim some really good looks. That was close. That was real close. If he gotten that first one, who knows, but just enough of the ground in the way. Oh boy. Ivy looking to try to go for the ult, but ends up getting the fake and still is able to hold his ground, finding one, but Cushy fights back, finds 2. Ivy Francis both going to be taking down Crazy Guy, caught up in the crossfire here. Is Spike still on the floor, now going to be grabbed up. Downbeat unable to chase fast enough there with the speed of light. Refract now expended. Could use the ult to clear back sight. Convergent paths are available. Persia just going to look to TP. Has to cancel though. Or is broken. Cushy continues to try to stave them off. Are they gonna really read that? Oh, Margaret. Xfero's right there. Jiggle peeks out. Just no hope in hell to scope in that fast. Gets picked off. Moniette drifting away from the angle. Now just a cut through the vents. Through sewer for Persia with the spike in hand. Rotation being matched. Xfero gets a crossover towards screens. No chance of a punish here for Dombi. 30 seconds left. Just gonna wait. Make sure that they commit to this. Gotta worry about that judge. क्लोज तो खेलना नहीं चाहिए. हाँ चलो क्लोज नहीं खेले. That's why they're pulling away. Smoke dissipates. Xfero back around the दे दिया corner. पोजी. Dombi dropping down. Be the one to try to take space here on the site. Through elbow goes Xfero. Moniette, Cushy out. अरे. They find their kills. 7-5 not to beat. We'll be 8-4 at the वाइपर को फाइट ही नहीं करना पड़ा. Front by 4. Yeah, but I mean, this started to look decent from Nongshim. They started to get good ideas off the back of some of that mid control they were taking early, just constantly sending those salvos out to create space. And when they stopped doing that, they started setting up little trap plays for Persia, open up some of these rounds. I mean, poor Yoro clone, stuck in the cocoon.
You know, maybe it is time to nerf nerf Yoru. Nerf Yoru? Maybe we should stop the clones from being able to absorb critical ultimates such I would as appreciate the that. kill contracts, the annihilation, all that kind of stuff. I would appreciate that. Maybe that would be a good idea. Either way, though, RRQ looking to give, I mean, the best day of Valorant for Indonesian fans ever, perhaps. Yeah. Given what happened in the first series, given what's happening right now. It is definitely looking to be that way. SCA is picking a fight against Yeah. Korea, and they are winning. They're angry. They're angry about the way that kickoff went, and they have come back in full force. And this makes me very, very happy. You know, as much as you don't really root for too many teams, you want to see some of these regions step up. And certainly today, with Boom earlier, RRQ now, they have definitely done that. Oh, especially, you know, some of the more underrepresented ones. Vietnam. Yep. Rex They're a Regum crazy Gwen. guy. He's back in, and my God, is he looking better than ever. Had some really good moments with the breach util. Just in general, the way he's calling has been pretty good. Now it's on to them to try to take this attacker side. Nongshim desperately needs a pistol win. And it's looking like some kind of big A push. All 5 members of RRQ are here, and they're looking to send the fault line. It looks out early. But the wall is up. So let's see what they want to do. They're going to see it. Looking for anybody trying to play off the back of it. Jemkin's going to hold the angle while they try to clear it. Ivy's got the grab net. See if he wants to try to throw this over. Oh, hello. We're They're biting off ready. a little bit more than he can chew, but looking for the grab net set up with those salvos. Monyet does get taken down. A little bit of extra chip damage there as well on to Cushy. Takes a shot into the arm, now down to 15. Jemkin trying to lead the charge was huge in the opening pistol. As they look for the stun, can't quite find the elimination. Domby just forced down into the vent. Minor amounts of damage taken. As Ivy lingers back behind the screen. Locating targets. Just going to get the spot onto a couple players in heaven, but... Oh, what a drive-by by Francis. Strips across, peeks that back out. Expero on the floor. Francis, potential for an ace, if he can find them. 30 seconds left. This crazy guy, Cushy, join up together here. And it's likely going to be a cut across towards that B site. Seems like it's going to be the case. That makes sense. You know, you've got at least 3 players working around there. Francis quick to get through sewers. They might even be able to prevent it just on time. Even. Yeah, I mean, okay, well, is able to find one. Stun. They try to slow him up. Dobby, however, still able to find one at Cushy. No real hope with that little HP. Pistol, first one of the set for Nongshim. Get them Nice up to one. 5. On the road to recovery here on Split. Yeah, and off the rip, this is something I actually thought they might do earlier when Monyet got caught outside a B door with a grab net, that I thought they might send those salvos on top of him. Instead, they use it to clear some space around where the grab net landed. And this time they get the combo to go. Monyet just screwed. And it hurts to lose your Astra like that. Yep. एनएस जीत जाओ. Especially on a pistol round. मुश्किल तो है. Love to have those extra layers of smokes to try to scale ये जीतेगी भी तो डिसाइडर में अब तक तो जाएगी. Okay. क्या मारा भाई. I mean, sometimes क्या you get जंप lucky. शॉट दिया भाई. Sometimes you play roulette and you get a direct hit on your number. That's, I mean, Domby style. So again, the early barrier mesh. Yeah, needing to clear this. Not exactly the अरे deep वो crash टूट नहीं location. रहा भाई. There you go. 12/3 बचा. Does get spotted and cleared, however. That's interesting. It is a good counter to the Yoru. Now that you start kind of seeing what Nongshim has thought through. So RRQ might have to make a different adjustment with where the TPs are going to be leading into the next round. But they're just going to stack up through mid. Domby. Yep. Sending out the saturate. Hinder will expire. Pop flash sent into the nebula. Is Persia going to be distracted? Eyes, however, not turned away here from Margaret.
Bridge on the repeat, able to find one. Paranoia goes across. Cushy going to be caught by that. As I do believe it's Jemkin. Either way, easy pickings there for Dambi. As they're looking for a flawless here. Just Sparrow 30 seconds left. stuck here on the rafters. Realistically, nowhere to go, and Dambi will peek back in, finds the shot, so maybe starting to come alive here is this Waylay. Nongshim, flawless anti-eco, now just 2 rounds away from tying things up here on Split. Yeah, so the deadlock giving you a lot of control in these early rounds, especially against the weaker buys, and they're able to kind of force their opponents to the other side of the map. They're able to take B main control and just kind of wait it out. Shut everything down, nicely handled by Nongshim. See if they can string some more together, see if they can get a bonus of their own. Guardian, a couple Stingers, a couple Bulldogs. Well, round over round, these last 2, Dambi has doubled and then doubled again his kill count. So if this continues, if there's exponential growth like ये round main होगा. Boy, trap in. Well, Oh! peek. Jiggle there from Ivy. Perfect bait. Jemkin ends up falling. Nobody's covering Jemkin there. Seems like a bit of a mistake. Shrug that off. Yep. Regen shield in. Well, for now, RRQ has to figure out how to get through onto the site without their entry agent. It's going to be real annoying with the Tejo there. Seemingly, though, a little bit of breathing room garnered. How they want to get through. Ooh. It's close. Spray just a bit off. Saturate out again. Look at the try to get the slow, get the salvos out. RQ able to dip away from those. Stay safe here for the moment. It's Persia walking towards heaven. Crazy guy just kind of strafing in. Paranoia connecting onto both. The drop down the site, firmly in control of Nongshim. Munyet trying to open things up, but that smoke just sticking around for far too long. Can't find a damn thing. 15 seconds remaining. Looks like RRQ just gonna make the call to tuck away and save these weapons. Nothing more to be done. Nongshim converting the bonus in flawless fashion. Great stuff. They're really well drilled on their defensive protocols here on Split. Say flawless. Oh. Still not, okay, never mind. Last one. Expecting someone's gonna try to play off the salvo pressure there. So they do manage to find one more, but Nongshim not gonna be bothered by that whatsoever. 1 away from tying things up. I was kind of thinking there might be a timeout from RRQ. Wouldn't mind seeing them hitting the stop button for a brief moment, but Ewok's gonna let it go. I mean, he's gotta be feeling good with how they played throughout most of today. And maybe give Crazy Guy a chance to try to kind of rally the troops on his own. Would be a great confidence builder for sure if Crazy Guy was able to find a way to break through. Ivy gonna throw the sonic sensor a little bit further forward this time. He's been setting it up mostly towards Mail, but he's gonna kind of anticipate that maybe there's gonna be some mid-pressure attempted by RRQ set up for a trap play for Persia. They've done a great job with that in mid, giving Persia the opportunity to play off contact or play off someone's utility, find kills. Persia. Not taking the bait here. What if that was Jemkin? He's Well, checking. He's double checking. He would have ended up dying is what would have happened. Francis making some noise here around A main. As all of RQ getting grouped up aside from Munyet, who still sat back. Oh, okay, okay. The attack, saturate, sent to try to slow up the approach, and Jemkin, he's just got nowhere to go with 6 feet under. Some damage on the downbeat. Refract gonna expire. Gun barrel gonna be spotted there. As he opens up with a spray, Sparrow eventually will get caught. 30 seconds left. As RQ is starting to lose the plot. Cushy dead, Spike on the floor, 20 seconds remaining. It's gonna be another round from RRQ where they have to just sit back and watch this clock drain down. This is so oppressive. The amount of utility 10 seconds left. that you can throw at your opponents. Just deny them any ability to make entry onto the site. I mean, it's salvos, it's snake bites, it's grab nets, it's concusses, it's the waylay utility.
I mean, there's so much stall and delay built into Nongshim's comp. And so far, RRQ just still struggling to figure out exactly how they want to deal with it. All right, I see. What was that? The cat. I know, but I wasn't ready for it. Feels like you can't get through with the way that Ivy's been playing. So that really limits what RRQ has been able to accomplish. You're always going to be scared there's some kind of trap play. You try to clear the barrier mesh. Well, there's a grav net into salvos. Well, good luck for, good news for them, I should say. The deadlock's on the opposite side of the map from where the stack is. That's true. On yet the lone lingerer. It's one of two rifles they have at their disposal. Well, and you can see that Nongshim said it during that timeout. Look, they haven't really tried B too much. Let's set up some extra defenses there. It's kind of where we're anticipating that they're going to go. But I would say, yeah, after you see that drone with the Teho over there, Teho hasn't been at B at all. If Crazy Guy can kind of parse that information, they might be able to find the weak side towards A. With a push up, the flash is there, and Margaret completely blind. Perfect timing. Yeah, Moniette plays off it beautifully. Finds one to get RQ into an advantageous position. Still quite a bit of work to be done, though, in the round. Their time's ticking. Drone going to be cleared out. GravNet sent, avoided. RQ continue to work their way across over towards the A site. Ivy still going to be lingering there on B. Left on his own, and everybody else starts working their way across. Zombie. They got to go. This is way around the back. Yeah, I mean, the time is ticking again. Good multiple rounds in a row. 9 seconds remaining. Zombie able to find one. Crazy Guy answers one back, but they have to get this spike planted. He's trying to go through elbow. It's over. They've absolutely squandered it. They find the opening kill. And then they wait so long to make a decision, to make a call. And Nongshim now licking their lips. Oh, for sure. Just looked like they might have finally had it. You get that opener, a nice flash setup from Moniette. And then they just kind of gambled that nobody's going to be in that corner. They gambled wrong. क्या खेली बे? It's a little bit troubling. Haven't really been able to find the answer. Credit to Nongshim. We have a phenomenal defender setup there. Yeah. No way that's going to work. Salvos once again backing them off, but they're going to re-clear this space. लेकिन फिर भी चलेगा, वो इको राउंड था. Trying to put some attention ये वाला राउंड अगर हारी तो फिर थर्ड मैप डिसाइडर जा रहा है. Clone through. Barrier mesh going to cut off the entry into sight. There's the wall. TP's in. Demkin, he's just cut off. Wall's broken down now, but Moniette dead to rights. Armageddon just continues to just keep the rest contained back. They're going to have to likely save again. They should. Maybe they try to play it out or pick up here for Crazy Guy. 2 charges away. Salvo's going to be sent. It looks like Xfero's going to start working his way across towards his A side. Have you met आयुष भाई? आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मेरे भाई.
क्या हाल है भाई, कैसे हैं? स्वागतम चैनल पे आकर स्वागत है भाई, क्या हाल है? Opening kills and having RRQ take way too much time to make up their minds. For sure, that's part of it. Ooh, this is oh god, crazy guy. He's not going to be ready for this. Even if he dies, he gets his Rolling Thunder. Oh, he is going to. So Rolling Thunder in death can save that. It's the one consolation, the one silver lining you can glean from this round. देखो अगले राउंड जेमकिन का वो है, अल्ट है, तो उसके अल्ट पे इन्फो मिल सकता है, फिर एंट्री मिलेगा क्रेजी गाय के इससे, अल्ट से, रोलिंग थंडर से। तो अचानक क्या हो गया? 8-4 हाफ के बाद 10-8 लगातार 6 राउंड, क्या हो गया? अटैकिंग हो ही नहीं रही है आरआरक्यू से तो। Ruins everything that RRQ wanted. Opposite side, but they've been keeping him guessing. So Rolling Thunder, but not much behind it. Jemkin 1 away from having his ult online. Maybe if you could secure an orb, send him on a scouting mission, go for the Rolling Thunder off the info gathered, try to storm a site from there. But Downbeat, he's in a good spot to try to slow them down. Convergent Pass is online. Oh yeah. See, he's at the ready with it. So waiting to pull the trigger. Wall going to be sent there in mid, so they know where the deadlock is. Gotta try to clear it. दोनों टाइम आउट्स गए आरआरक्यू के। Unable to find the timing, unable to find the shot. Margaret cuts back around the opposite side of that B pillar. 3-man approach here in mid. Dombi, the one to try to slow it down. Some salvos sent. Forces him back down the vent. Ivy taking some space there in Mail, just widely able to ignore the clone. 45 seconds remaining. Just given how things have been going, we have to keep a very diligent eye on that clock. Well, they used the ult. Ult sent Hinder out onto these players. More time bought. 15 seconds gone. No space gained. 30 seconds now remaining in the round. This has to be a perfect execute towards B. Rolling Thunder going to be sent. It's a clip here onto Ivy. He's down on the site. Margaret. Looking back, swinging out, ends up falling. Kushi able to find one, turns back, finds खुशी another. 2 निकाल दिया। Spike, however, still in the garage. Now on the floor. Ivy and Persia. They turn it on its head. Kushi doing his damnedest, but it's not. अभी इतना लेट क्यों कर रहे? देखो अभी हो जाता है, ये निकाल देते हैं। And it looks like this map is as well. भाई एक एचपी में और एक निकाल दिया। And RRQ have no clue what to do. भाई इतना टाइम क्यों ले रही है? Just nothing they can dial up seems to go correct when you finally get some sign of hope. When Kushi finds some big kills, there's still 2 players stuck in this smoke. Ivy guesses correctly where Monyet's going to be standing. Just gets him through the spam and is able to adjust for the player stepping out. And Ivy able to hold on, but they couldn't scale off the back of that Rolling Thunder through Garage. They're just stuck. And who's next? Yeah, you're gonna try the ult this time. Dimensional Drift just spotting one. Gate crashes back over here towards A. Salvo's now gonna be sent out. Try to cut off the rest of the team. Dimensional Drift running thin, and it's just point blank. Francis says thank you very much. Finds another crazy guy dead on the थर्ड मैप जा रहा है तो over towards ramp. उनको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं।
looking for map point. ये थर्ड मैप जा रहा है. 11. That was just very awkward. Trying to get the setup. Xfero's now pinned. Wall to try to get across. Tiny bit of damage taken, but I mean, you gotta save. It looks like it's going to be the case again. No money on Jemkin, no money on Crazy Guy. No health on Monyet. This feels like the most attacker side saves I've seen in a half of Valorant. They just, I mean, this time it's kind of a little bit of disjointedness there. So you're trying to set up the stun off the back of the Yoru dimensional drift into him, you know, pulling out the shotgun close range and taking out his opponent, but the stun misses, and Francis just is already looking at Jemkin when he's coming out of the drift, and he had bumped into Jemkin, I think, at some point during the drift, kind of had a sense he was around. Margaret. Does he push? Looks like the answer is going to be no. Doesn't want to risk it. Doesn't know who could be waiting for him in that spawn. Monyet is one away from having the Cosmic Divide online, but Nongshim now, they're one away from taking us over to Pearl. What a rally back. Flawless in this second half. And RRQ have just been round over round, just running around like chickens with their heads cut off. Yeah, I no mean, clue what's happening around them. No. And you could see Crazy Guy there trying to भाई क्या कर रही है, एक राउंड जीतने को नहीं हो रहा है, जितना छोड़ो प्लांट ही नहीं हो पा रहा है उनसे, क्या कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको. It is fruitless. Nothing they can really do. Trying to create some mid pressure, but there goes the barrier mesh, so maybe that's the goal. If you could get that popped out, you know where Ivy is. Now you can try to play around that a bit. Gotta be careful. Contest for the spike, or excuse me, the orb, but spike in the hands of Cushy. They try to wrap towards the other side. They have to use the salvos to clear garage because they have no idea what's going on in there. That's a huge tool, potentially, for an execute out of their hands. So are they just going to pause and wait the clock out again? Oh, they're going A. What a way for this to come to a conclusion. That's going to be the case. Crazy Guy going to be taken down here. अबे aim duel से हार जा रहे हैं. To a swift ending, it would seem. Spike on the floor, Monyet on a flank, Xfero on the A site. There's nothing more realistically to be done unless Monyet goes absolutely nuclear right here, right now. Finds the first. 34 more seconds, 2 more players in mid to try to deal with. He cannot make it happen. Xfero with 21 HP. Finds one. Realistically though, no hope in hell. 13-8. As it is a colossal streak from Nongshim to take us into a map 3. That is one of those maps that I think RRQ is going to find difficult to recover from. It was a flawless defender side from Nongshim. Extremely, extremely impressive. And it all revolves around that deadlock and the way that you're able to control space around the map, particularly with the barrier mesh. Saw a cool combo with the grab net into the Tejo salvos as well. Little things like that, but every answer that RRQ tried to find was thwarted quickly. And it just took them so long to try to work through the rounds. And that allowed Nongshim to be very reactive as well. Good start on their defender side, 8 forward, not bad, but clearly not nearly enough. I don't know if there ever was going to be enough rounds on that defender side. Not enough rounds, not enough time. Give him 5 minutes. I don't know if it would have made too much of a difference. There's not really a specific word in Korean for melons, it's just melon, but call them subak, I guess. Well, Watermelons. Watermelon. Yeah. Out of time, and the water was crystal clear. Nongshim was able to see right through it. I don't know. I'm grasping at straws, much as RRQ was on this map, but they need to be able to rally back. Otherwise, Nongshim get themselves into the driver's seat. We have Pearl coming up next, the third map to decide it all. For now, we'll pass things back over to the analyst desk.
It looked like it was going to be a clean sweep for the Indonesian teams, but then Nongshim found their second win when things flipped into the second half, and they caught up and ended up closing this out, finding a lot more confidence too along with it. They woke up. They woke up. There's no like they woke up finally in that second half, but what happened to RRQ? They went missing. They fumbled. They completely fumbled. Multiple thrifty losses, allowing Nongshim back into the game, and then not a terrible attacking side, it has to be said, and I think that's got to be a bit of a question mark in the camp of Crazy Guy. Multiple tack timeouts, multiple chances to adjust, multiple chances to find answers to what Nongshim was throwing at them, but the same pacing time and time again, and they just भाई वो planned ही नहीं कर पाए भाई. way down against the deadlock comp when you're not really spending much time breaking the deadlock's util. It was extremely frustrating to watch, and Nongshim, they took full advantage, and the core of players 9 राउंड में सिर्फ एक ही बार प्लान कर पाए हैं भाई. for the majority of kickoff stepped क्या up once बोलोगे? again. Persia was back to his normal form, and his debut form in kickoff, but Francis and Ivy also had some pretty good performances on that map of Split. Yeah, definitely. It's, you know, we spoke about the supporting players on this Nongshim team, how they stepped up in kickoff, and they seem to be carrying that through into stage 1. Danby, though, was on the waylay, but it didn't seem brilliant, even in that second half. I don't understand how you can lose to a team where their duelist has no impact. It's crazy. Well, it's crazy, but it happened. The first half for RRQ was looking pretty solid. Yes, they were... it was still winnable either way for Nongshim, but it was really nice actually seeing Monyet. It reminded me of the 2023 Monyet when he was on your squad big time as that Astra, as that controller, and just mid was absolutely impenetrable. Yeah, did a pretty good job holding mid. I think a lot of the set mid takes from Nongshim, though, they had some great ideas, and this is a perfect example of it, where you do get the double dash, the Teo utility to be able to clear out vents. You get the drone straight up in towards Mail. It's a very clean way of taking mid and running a mid default. Didn't really help out Nongshim too much, because once it got to the mid to late round, you know, they weren't really able to close out a lot of these rounds, but you can see some of these default ideas with Waylay and Teo and the Omen. You get the double dive potential. You get the control of the utility, and you can really just wrestle control of these important parts of the map with this comp. Yeah, they love this mid take. They did it again and again, and I think this is a very, very strong mid take. We often saw RRQ manage to close out those rounds on the defense, but yeah, it's a really nice idea. So I think we like how teams are starting to use Waylay, but I'm still waiting for the game that makes me go, yes, this agent is incredibly strong. Oh my goodness, what have we missed? You know, I feel like it's starting to fall into the category of just being kind of a niche pick. And I mean, here you see what you saw time and time again. RRQ running around like headless chooks into a site with 20 seconds left on the clock and getting absolutely obliterated by Nongshim. Persia in particular, but the rest of Nongshim as well, who had all rotated to the right side of the map because there was not enough map pressure elsewhere. I mean, we saw from that initial graphic on the attack half, RRQ had one plan out of all the rounds. One plan, and they lost the post plan. How? You're not getting the site. They were saving guns every round. That it's so slow. That's not what we're used to seeing from RRQ at all. We want to see them take the fight to them. I want to see Gem King go. I want to see Monyet TP towards them on some Omen stuff. But this felt reserved. It felt too slow for me. Now, as we look across the Pearl, they can't be doing the same thing. Their Pearl comp was incredibly fast during kickoff. What do you think then that Nongshim was doing right that they can carry forward into Pearl? I think actually quite a lot, because they were playing some slower comps on Pearl, where you see a lot of teams play these defensive sided comps or slower comps on the attacking side, because you can play quite a slow attacking side on Pearl. You've seen the popularity of that G2 comp with the chamber, where you take a long time defaulting, you wait around. So I think Nongshim, looking back at what they played in kickoff, they played Pearl multiple times. They had some success on this map. They even beat RRQ last time head-to-head with their slower comp against the double duelist comp that RRQ was bringing with the Phoenix Jet, like you see here. And you see multiple iterations of this Nongshim comp, but the core of it remains the same, which actually stays kind of true to their old identity in a way, where Danby's on the Neon, he's a big space creator, he's a big space taker, sometimes he's bringing out the op, and the rest of the team is quite slow. Only the single Enit with a lot of Senti and a lot of stopping power on the Astra. So let's ask the question, are we expecting to see Waylay here, or do you think Danby will stay true to his roots and go with the Neon? Ah, man.
Honestly, I think I would rather see the Neon. I've seen enough Waylay. It's been terrible today. I would much rather see the Neon, to be honest. And I think if it's not broke, don't fix it. Nongshim won this map against RRQ head-to-head. We'll see if RRQ is going to be the one to change, or whether they do want to back themselves with that double duelist style. Because outside of this game, it actually did look kind of good in some of the other games we saw this comp. Yeah, like I don't mind RRQ staying with this comp, because the one thing they needed to do on that attack off was find ways to go faster, find ways to dominate in those kind of main areas of the map. And that's what this competition is built for, right? You want to farm your orbs on the Phoenix in those kind of main areas and hit those sides. Look at that, 78% attacker side win rate. I think they need all the help they can get on that side right now and trust in their defense. You know what I like? I like how invested you guys are, and the reason I know that is because you don't want to see anything crazy. You don't want to see anything new. You want them to stick to what has already been working for them, and you want to see them do it well. I feel like you've also grown here on the analyst desk. I like Waylay when it's time for Waylay. I've seen too much Waylay now. That's just it's not hitting the spot. So No bad Waylays. Only good Waylays. I hope Morgan has grown. He's about 5 foot tall. I'm 6 foot for the people at home. 5'11". Come on, guys. Well, going to Pearl, you know, at the start of the show, we would have been like, yeah, 2-1. But then by the end of that first map, we're like, RRQ. Looks like they're totally on form. Oh my god. I'm worried about the choke factor. I have to say, what do you mean you're worried about it? It's happening. They should have won 2-0, They were dominating right? this series, Morgan. But yeah, this and is then the I problem. watched attack split. What was that? It was Pearl map 3 against this Nongshim side last time as well, where they ended up losing 2-1. So they're going to try and do everything they can to stop history from repeating itself, but they'll be having flashbacks right now. They'll be thinking back to that time in January where they got defeated, where they got eliminated, and they can't let that happen again. Oh, 100% no. I think that would be really traumatizing to have that happen twice. But Pearl, overtime? Overtime? Sure. Bets on that? I mean, it's these two teams, right? We're not going home. It's fine. We can be here all day. I have nothing else to do tomorrow, so let's just keep it rolling. Let's go, like, I want a 102 to 100 RRQ win. That's my prediction. Yeah. Now, we were talking about this on the walk back to our desk here, that this is a really big year. मजाक चल रहा है यहाँ पे big time भाई. 100 200 year by year, month by month, and we feel like the time is right for RRQ to be a top 4, maybe top 3 team. But then we see moments like this where they kind of lapse back into bad habits, and these are the things that we want to see cleaned up. And Pearl, I want to see it. I want to see this happen, frankly speaking. You got to learn how to close. That's the big thing for RRQ. I mean, it's hard though. It's such a difficult skill. It's really hard to kind of almost express in words how hard that is, because it doesn't seem it from the outside. The ability to close games, the closer you get to the end of a game, the higher the level of pressure gets, right? So it's about dealing with that pressure, but they need to find some answers for it, because this team has so much potential if they can just figure out that one part of their game. Now, Jemkin has been sporting the Yoru. Even on Ascent, I actually didn't expect a Yoru pick on that. What are we feeling? What are our for me, hopes and dreams here? I feel like if he's showing Yoru on Ascent, there's a big chance he could play it on Pearl, because it kind of seems like, you know, post-Masters, Yoru is coming more and more into the meta, so they might adopt that. But for me personally, I want to see them stick with what was so good for them in kickoff. I really like the Phoenix on this map, so I've got my fingers crossed that's what they're going to do, but who knows at this point. Who knows indeed, but we will find out in seconds what exactly will be happening. Oh, all right. Well, Nongshim, they're going to back what works for them, and they're going to trust in their game plan initially. No more Waylay for Danby. They are going to back themselves with the comp that won them this series last time. RRQ swapping away from that Jet Phoenix style that was so strong for them during kickoff. We are seeing that Yoru, so they clearly have a lot of faith in this agent, but they're slowing it down with Vax, with Astra. दो Sentinel खेल रहे हैं defensive half, but don't get caught too slow when you're attacking. All right, well, both teams did change things up, but hopefully they don't disappoint our analysts. Either way, we're going to send it back to our casters for the last map of the series, to Achilleos and Paperthin. Thank you. Here we go. A map 3. See who is going to be walking away victorious. RRQ needing to bounce back. A critical failure on split. Not able to close out so many of those rounds, any of the rounds, frankly, on that attacking side. Nongshim get themselves into the set. And now Dambi is back on the Neon. And that's scary. He's so annoying.
it's not just his individual skill, it's the way that he sets up his teammates by running around like a madman. Oh, those are some good salvos. Francis just about able to go ahead and dodge out that damage. But that opened up the space on A. Now, okay, well, Smoke going to be following Monyet, able to come away with two. Persia and Dombey both going to be taking down Francis, trying to get that transfer, but cannot make it happen. RRQ looking for yet another early advantage here. Looking for another pistol. Spike planted. Found the opening there, even with two Sentinels on the map. Able to scoot through Art, set up the pick. Really nicely dialed up. So Ivy and Margaret with classics in hand at range versus Ghosts. All three players here in main. Start, set up, tap. Just trying to bait out. This util here. So there you go. Grab well going to be used. Swing coming through. Margaret eating some damage. Minor amounts in reply onto Cushy. They try to play forward, but in the end, looks like it's just going to be Margaret answering one back as Monyet gets himself 3 kills in the round. RQ picking up the opening pistol. Yeah, just a really good idea off the rip. Use some of that util towards the elbow on A main, and then just come from a couple different angles. You can see they're swarming. Francis just tries to hold the line, recognizes that he's getting crunched from a couple different directions. They're still able to do it. I almost flashed you. Yeah, that was a good flash though. It was an almost, but he got 2 assists out of it to Cushy at the end. Very nice with the KO. Now Nongshim put some pressure. Solo player, just an outlaw. Xvero might be able to be overwhelmed, and he will, at the cost of 2 players on the side of Nongshim. Dombey scooping up that outlaw very quickly here is Ivy. Setting out the flash, swing in the corner. Quick little turn, regaining vision. Jemkin finds the headshot. Mitigates their losses. Really falls on Dombey's shoulders to try to see if he can find some hefty value here with this outlaw. Isn't buying in for the fake. Does manage to get the double pump shot there. Jemkin going to be put down. For now, given the disconnected positions from RQ, that is going to be a Vandal on the floor. 2v3. Play to try to retrieve a tap on that spike. Persia just going to go pushing forward, try to go ahead and lead the charge here. Eventually does fall. Cushy able to find it. Stealth drone on the hunt, waiting for Dombey to come peeking back out. Nothing noted there. Fragment now to delay. And looking for the no-scope. Won't be able to get it. No scope though. Very solid damage dealt. Vandal going to be recovered. Outlaw carried over here instead of the Guardian. RQ, though, still off to a 2-0 start. well, it's still better than it looked on split, that's for sure. Yeah, good recognition here by Nongshim that if there is going to be a solo player over at Long B, they can punish that, give themselves a pretty good chance here, do at least a ton of damage. And so they've got probably the two most important pieces of the puzzle there, the Vandal and the Outlaw back. You at least force out mostly full shields. Jemkin just disrespecting that. And gets punished for it. Yeah, gets annihilated. Just tries to get through all that util, and Dombey's like, yeah, I know what you're doing. Quickly takes him down, looks for a bit more here, does Francis. And I'll pop here at the double door. Money force away for the moment, swings out. Whoa! Fight, Margaret, take it down. With a ghost! Ghost Vandal. Shots. And push in to try to recover the weapon. At least not for the moment. Had to be wary about potential pressure coming in. Other sides of that link position, but all the same. Good trade back. As now RQ getting gathered up outside of B. Just Persia on the site here for the time being. This could work out nicely. There's no vice wall here. Just Persia's smokes and util. A Nano at the plant spot. Ambi is shifting over. All right, Nano at the plant spot, but Killjoy dead. Oh yeah. 30 seconds left. Wiley is nullified. Downby just able to stabilize down to 1 HP. Now the spot out here is Persia. Finding one yet. Still some damage taken. Potential opportunity, but time dwindling once again here for RRQ. One gonna be found. That's Francis gone. You're gonna low hai. Ivy still alive, still healthy, but Dombey finds himself a
third. साला ये 1-1 एचपी में बच जा रहा है भाई. Nongshim will deny a bonus conversion. Yeah, just good patience there. Getting Donby over in position to get the crossfire set up. Oh, he just caught a glimpse of him before the flash hit. The timing. Arrow off on the timing. Yep. Salvo's there probably made that a little bit trickier because he had to do a little bit of jumping around. Might have slowed it up just enough. It's the little things. Xpharaoh does have an ult, so does Donby. Let's see if the Steel Garden finds some value, but Donby could, you know, let loose with the lightning fingers at any moment and spin around on its head. They're stacking up towards mid, but they're really playing kind of passively, trying to react to the info that comes out to clear the utility of Killjoy with the salvos. Gets rid of the turret there. Portal closed. So alarm bot as well as one nano set up. Thorns as well here on that A site. Jemkin just a quick little peek around. Really being seen, no real attention being tied over there. Still fanned out our Nongshim. They're trying to sell a bit of a fake with Jemkin on the other side. Big cluster here in towards Ard. Really, they're only showing the Vice right now, RRQ. Haven't let loose with any other info, so they've kept the heavy stack on the B side. This has worked out about as well as it can for RRQ. Jump back, crossover into the spawn there for Jemkin. Try to catch up here alongside the rest of the team. Ivy gonna get hit by the suppress. Steel Garden though, Wiley not catching anyone, and Ivy just swinging around the corner, able to find one crazy guy dead, finding three. Potential for an ace. Never mind, it will be Tommy and Friends is finding the other two kills. But solid movement here from Ivy. Quick kills results in Nongshim closing the gap and now tying us up at 2-2. That's tough. You read the map well, but in a tactical situation, you're outplayed by your opponents. Ivy here, able to dodge a lot of that util that hits the back of the site. A great relay bolt from Donby too. He's able to get over there quickly with the Neon. They just shut everything out. Hitting on all of them, flawless fashion to tie things up. RQ now. Gonna be in a bit of a rough spot, so Stinger, two Sheriffs, Ghost in a frenzy. A big, oh no, big mishmash is what I was gonna say. And then the dreaded pause. Yeah, what tech I pause? like that color. Yeah. Well, hopefully this one's a little we had the short like our last one. We had the one earlier. It was fairly quick. We got through it in record time. So one can only hope that it's going to be the same thing here and now. I've got a good joke for you. Okay. Yeah. I'm sure you don't, but I'll let you say it anyway. Yeah, I know you're not gonna like it. That's why I'm gonna say it. Yeah. So, man, he's not feeling very good. You know, things aren't going great. His life's kind of crumbling a little bit. You know, it's just he's having a rough time of it. And so he decides, you know what, I gotta go to the doctor. I'm just feeling horrible. So he's just kind of getting more and more stressed out, more and more worked up about it. This isn't you that we're talking about. This well, is Joe. It could be. Okay. Continue. In this case, no. So he gets to the doctor and he's just losing his mind. He's just having the worst day of his life. And he gets in there and he sits down and he's sweating profusely. And the doctor's just like, God, you look horrible, my friend. Are you feeling okay? He goes, well, doctor, I can't shake this feeling. I think I'm a pair of curtains. And the doctor goes, well, pull yourself together, man. If production and Jake Shin are listening, I would like to submit my resignation. I think I've had enough. This was a good day. This was a good day. God. This tech pause needs to be fixed now. That was my my very good one that I've been saving for a tech pause. Yeah, very good one. This is some bold words. Yeah. There's a lot of exaggeration. I hope Golden Boy's listening, because he'll appreciate that. He's asleep. He's old too, so yeah. Well, it's also 5:48 in the morning. Well, for him. maybe he's up then because he's old.
You know, old people wake up early, supposedly. I don't, but... Oh, boy. Well, just wait. I will remember this joke. Yep. And I will tell you my true feelings about it. Yeah, I'm sure you will. When we're 5 minutes deep on Black You don't Chat even later have tonight. to tell me. Yeah, exactly. When I can use the language I would like, I will let you know how I feel about that joke. Oh, boy. Well, it's just another struggle for me, a struggle for us all, as we wait for this tech pause to be alleviated. Monyet having a nice little layback, nice little micro nap. Dose that sleep. That's right. I'm all about those. A good nap every now and again. Nothing better. Looks like Francis is just short and sitting far away. Doesn't really appear that he's leaning back at all. Yeah. He's usually like got great posture. You know, he's sitting in there and just straight up, straight faced. Next Pharaoh, do something. Entertain me. Oh, okay. A lot of Nongchim fans here today. Like, okay. Ton. Well, I'm being told that we need a bit more time to fix this. So it looks like we are going to be going to a break. So apologies, ladies and gentlemen, but hopefully we'll be quickly taken care of, and we'll see you guys on the other side of this, so don't go anywhere.
Pulsar by Naomi. Pulsar by Jenny. Oh, baby. Ooh, there it is. Oh, I'm so happy with it. Look at this. Isn't this perfect? It even has my name on the side. 마우스 누가 만들었는지 알려주는 것도 같이 들어있고. Thanks, Joshua. This mouse is ready for a fashion show. It's Pulsar by me. It's by me. It's by me. It's by me. It's Pulsar by you. Red Bull gives you wings. क्या एनिमेशन है? कौन सा वाला? इनेगाकी जी। By the way, welcome to the stream. इनेगाकी जी, क्या हाल है? Red Bull gives you wings. इंटेल, अच्छा इंटेल वाला ना। एनिमेशन तो है। और बताइए इनेगाकी जी, क्या हाल है? आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? आरआरक्यू या एनएस? बताएं। भाई ये टेक पॉज बहुत खराब सीन होता है भाई। टेक पॉज नहीं होना चाहिए भाई। टेक पॉज नहीं होना चाहिए भाई।
भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिलीवरी एप्स होते हैं इतने हरामजादे क्यों होते हैं? नो ऑफेंस, बट एक ऐप में जो केला मिलता है, मान लो 4 केले मिलते हैं, एक ऐप में वही 4 केले का प्राइस अगर 30 रुपए है तो दूसरे ऐप में 50 रुपए है। हाँ, एंड अभी जो ऐप में 30 रुपए में वो केले मिल रहे हैं 4 बड़े वाले, अब उस ऐप में दूसरे सामान जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल रहे। अब मैं उस ऐप से खाली केले मंगवा नहीं सकता, वरना 30 रुपए के केले मुझे 90 रुपए के पड़ेंगे, डिलीवरी चार्ज, स्मॉल कार्ट हैंडलिंग फी, वो सब। और जिसमें वो मिल रहे हैं वो 50 रुपए के केले हैं। मतलब इतना भारी डिलेमा है ना। दिमाग का बीटी हो जा रहा है पूरा, क्या ही बताऊं भाई। 거쳐가야 할 단계 중에 하나였고 저에겐 아직 가야 할 길이 많기 때문에 피고프승했다고 끝나는 게 아니잖아요. 남들한테 지는 거는 싫어하기 때문에 절대 안 지고 이겨보겠습니다. 이번 스테이지온도 데렉스가 가져가겠습니다. 저희 알파조에 우승팀들이 많이 이거 말이 좀 어려워요. 퍼시픽 챔피언들이 다 모여 있어. 저희 알파조에 퍼시픽 챔피언들이 다 모여 있잖아요. 오케이. 그 챔피언들끼리의 싸움을 눈여겨보시면은 그것도 재밌을 것 같아요. 저희가 킥오프 때 좀 많은 시련들이 있었지만 그래도 방콕은 갈 수 있지 않을까라는 생각은 하고 있었는데 결국 못 가게 돼서 좀 개인적으로는 충격이었던 것 같아요. 일단 제가 잘해줘야지 팀원들이 올라올 수 있다고 생각을 해서 제가 개인적으로 노력했습니다. 알파도에 굉장한 팀들이 많아서 전부 다 경제 상대라고 생각하고 있고요. 일단 당연히 젠진 들어가고 그 다음 DRX, PRX 저는 그래도 개인적으로 DFM이 올라가지 않을까. PRX 이기는 거 보니까 잘하던데요. 戦に勝った後は、周りからもすごく褒められたんですけど、自分たちの納得いく結果ではなかったので、マスターズを目指してもっと上に行けたらなと思います。グループアルファにはみんなが全部のチームがパシフィック優勝してるチームだと思います。だからこそ、戦うのがすごい楽しみです。グループアルファの方が、6分の4が突破できると思うんですけど、その4に入るのが難しいかなと思ってるんですけど、最終的にどのチームにも勝たなきゃいけないっていうのは同じなので、グループアルファですけど、突破できるように頑張りたいと思ってます。About our group, I will say, it's the same thing with Omega, have insane teams, have just good teams, have decent teams, so just basically, we just need to game to the tournament, to the stage 1, and start immediately being stronger, being strong on the stage. I think VRX is traditional powerhouse in the Pacific. We let the other team take the trophies twice, but the tournament is ours. We're gonna do our best to qualify for playoffs first, and then qualify to Toronto. As I've seen, there's a lot of good teams on our group. There's like Genji and Derek and so on. So I think for sure we're gonna make it into the playoffs, like top 4. For me, we're keeping an eye on almost every team, on our group. But I'm focusing more on the top teams because I know we're capable of defeating them. Okay, so going into stage 1, since we have had more time to prepare, we'll be more confident and just trust in our practice. And with that, we'll take down the rest of the teams. We play a match like in scrims. I think we're pretty confident that we're gonna at least make it to top 4 and also good. It will be a different Boom Esports than what you expect. 저희 첫 상대가 공인데 그냥 이길게요. General service here. I have a big respect for the 3 players, but for other 2, I don't know who are they. I'll go for a stage 1, destroying everyone. It's okay what the rest of the team think, because we also think that they are all the weakest in the group. 2025년은 DRX 해가 될 겁니다.
しばらく日本チームがスタートに行けてないので、スタートで日本チームがいるレースゲームに出れたらなと思います。Now it's time to reclaim the honor. It is far from over. We are going to overtime. 저희가 계속 연장을 계속 가면서 체력도 딸리고 많이 힘들만도 한데 우승을 딱 결정 짓고 나서는 혼자 다른 세계에 간 듯한 약간 소리가 끊긴 느낌? 아, 내가 진짜 우승했구나. T1 are your Masters Bangkok champions. 퍼시픽의 세계 챔피언이 돌아왔습니다. You're never gonna forget who I am. My name and boss go hand in hand. Things just work in my command. 오메가 그룹은 뭐 1등 팀은 정해놓고 나머지 순위를 좀 정하는 경쟁이지 않을까. 딱히 큰 생각 안 했던 것 같아요. The first thing that crossed my mind when I saw the group, I think it's doable. GG's in another group, that means we're gonna go to playoff. 킥오프에서 만난 팀들이 꽤 많은데 스테이지 1에서도 이길 수 있지 않을까요? So Genji's Alpha, your X Alpha, your X Alpha, we're chilling. 올라갈 것 같은 내 팀은 일단 농심이랑 T1. 탈론하고 RRQ가 올라오지 않을까 싶습니다. T1 is, I think, the best team in APAC right now. T1이 제일 잘했던 거는 개개인 퍼포먼스가 좋았다고 봅니다. Meteor has been proving himself as like methodical and very fast at approaching the game. Their macro, Stacks is pretty good with macro. 저에 대한 얘기한 사람은 없었나요? Talon, I think, better than last year. Now finally being a full-time roster. I look forward to play against Killua. Hey Killua, welcome to Pacific. ก็รู้สึกว่าเข้าขากันได้ดีครับแล้วก็จริงๆก็รู้จักกันมาตั้งนานก็เลยรู้สึกสบายใจที่เล่นด้วยกัน So this stage 1, we're gonna destroy every team mechanically. 농심으로 어린 선수들도 되게 많다 보니까 경험치 챙기다 보면은 강해질 것 같아요. I think our team has a very solid team. They seem to have a hard time closing out games, but I think they're still very strong. 농심, it was a pretty fun game to be honest, but I'm scared that like all of us, like our energy, especially if you lose the game. 다 즐겼었던 것 같고 갈 때까지 가보자라는 생각으로 텐션 높게 재밌게 했었어요. Noxing, the next time we meet, we're gonna crush you because I'm gonna be in my best form. For RRQ, they always beat us, but we always take their playoff spot, as always, in every year. For Team Secret, kind of same like last year, like they don't change any roster. I don't think like their roster is good enough. Nagselos na ata kayo sa team namin eh. ステージ1のゼータは各選手の強みが出る、ちょっとアグレッシブな試合がより見れるかなって。NSにはちょっとリベンジして勝ちたいですね。 저번 경기에서 매운 걸 덜 먹어서 그런가 너네 신라면 먹어봤어? 라면? 라면? 라면. So before retiring, I will always want to lift a trophy. So as soon as I lift one, I think that's it for me. Confident kami ngayon sa station. Since dami kaming iniba sa team namin, and yun, tatry namin yun sa kanila. 첫 퍼시픽에 와서 못한 게 좀 마음에 많이 걸리더라고요. 더 좋은 성적 गोटी बोलो गोटी एडिटर बोलो. Mines are coming to stage 1, probably no respect. Good luck to everyone. Wish you no mercy. 今のデータディビジョンは前とは違い、プレイスタイルもいろいろ変更して、僕らの強みがどんどん बोलो गोटी क्या सीन? なので、いい流れに乗って全部勝ち切りたいと思います。 저희도 아무래도 와서 우승하고 분위기도 좋고 자만하지 않고 ऑर्डर कर रहा हूँ कुछ खाने को. 때문에 스테이지 1에서도 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 세계 최고의 팀 T1은 지금 바로 확인해 보시죠. बोलो कुछ भी बोलो बोलो है.
It's Victoria here. Now, Masters Bangkok has just wrapped up, and with Valorant Champions Tour Pacific Stage 1 just around the corner, I think it's time for a little refresher on what went down earlier this year at kickoff. And with that, it's time for the official kickoff recap. Even looking back now, kickoff was incredibly intense, with most matches going the full distance. Not only that, we saw Ascension teams exceed expectations, a Pacific powerhouse PaperX struggle, and DFM at last देख रहे हो guys, ये देखो placements with a completely new look. All signs point to 2025 shaping up to be a whole new era. भाई तुमने RRQ का एंट्री नहीं देखा ना भाई, वो अपना कैप्सूल प्रमोट करने के लिए वो वाले ड्रेस पहन के आए थे भी, कितना सेक्सी दिख रहे थे. Right behind them was T1 in their first ever grand final. And Gen G, who dominated in 2024, and Talon Esports, the sole Southeast Asian representative in the finals, were next in placements. Ultimately, DRX and T1, who secured first and second place, earned 3 and 2 championship points respectively. Meanwhile, Gen G and Talon finished 3rd and 4th, each claimed 1 point, marking their first step towards champions. And after Masters Bangkok, T1 now stands at the top with the most championship points. So I've already mentioned earlier just how intense kickoff was, right? Now comparing it to last year, it really highlights just how competitive it was. In the Pacific 2024 kickoff, there were 19 matches with a total of 47 maps, averaging 2.4 maps per match, meaning many series ended in a clean 2-0 sweep. However, this year we saw 22 matches with a staggering 63 maps, averaging 2.8 maps per match, meaning that most of the series were pushed to a full best-of-3 or best-of-5 battle. Shut up, Victoria. We don't need to hear your video anymore. We're back, baby! And it looks like this game is finally ready to resume. किसी का टेक्स्ट आया है मेरे को, क्या किसका? Let's get back to the action. As it is किसका टेक्स्ट आया है वेनम भाई? weaker by, if you remember. तैतीस जी, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. क्या हाल है भाई? ये लोग कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं? ये लोग भाई 60% वाला कीबोर्ड यूज करते हैं. लाइक यू कैन से डकी यूज करते हैं ज्यादातर. स्पोर्ट्स प्लेयर्स डकी यूज करते हैं. उसका डकी नहीं तो फिर एचई कीबोर्ड्स भी कभी कभार कोई कोई यूज करता है. प्रेफर मतलब डिपेंड करता है इस एक ही स्पोर्ट्स प्लेयर टू एक दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर. कोई कीक्रॉन तो ज्यादा लोग यूज नहीं, वो तो कीक्रॉन तो नॉर्मल क्रिएटर्स लोग यूज करते हैं. स्पोर्ट्स प्लेयर लोग ज्यादातर डकी यूज करते हैं. कोई रेजर भी यूज करता है. कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को कोई स्पॉन्सर्स रहती है तो वो उनका यूज करता है, वैसा भी रहता है. कंपनी डकी कंपनी का नाम है. वो इंडिया में नहीं रहती, इंडिया में इंपोर्ट होती है, तो स्टार्टिंग उसका 8-10 हज़ार है इंडिया में. नहीं समझे वेनम भाई? समझ रहे हो किसका? वेनम भाई नहीं समझे, आप एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो. A little bit more costly, but Dambi looking for an ace and will be able to find it. We are back from the break. डाम्बी बेचारा 2 मैच से नहीं चल रहा था, वेले लेकर इसमें नियॉन लिया, बहुत फाड़ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है. मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो ना किसका आया है टेक्स्ट. For context, we had to rebuild the lobby. They remade it, got to this 2-2 score line. So I think timeline-wise, things might be a little messed up, but we'll try to keep everything as aligned as humanly possible for you guys. जे कौन है अब? Oh, thank God. I saw the timer stop. I didn't want to say रुको. anything as I was praying. This is going to be a timeout call, and it is. Yeah, so RRQ going to take this moment in time to consider how they want to work. क्या बात कर रहे हो वेनम भाई? Of Nongshim, who have been very stalwart when they've been given the opportunities to play. है सच्ची में भाई, सडन हिट किया बे. Really have much in the way of room to maneuver there, but on split. रॉयल क्लच रुको बताता हूँ. We've seen that today, that this has been
क्या बात कर रहे हो वेनम भाई हैं? बट अब तो मतलब ब्लॉक्ड वॉक्ड का सीन चल रहा था ना। नहीं भाई रॉयल क्लच यूज नहीं होता, रॉयल क्लच, दैट इज वाई रॉयल क्लच यूज नहीं होता। या लाइक कोई अगर स्पोर्ट्स प्लेयर यूज कर रहा होगा अपने पैसिफिक रीजन में तो पता नहीं, बट ज्यादातर एनए रीजन, ईएमए रीजन, ये सब इवन यहाँ पे भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं पैसिफिक रीजन में मैक्सिमम वही यूज करते हैं। रॉयल क्लच बहुत कम यूज होता है, या में भी यूज कर सकते हैं, नेवर नो, डिपेंड। दो ऐड आ गया, अरे भाड़ू हो क्या थोड़े से यार। वेनम भाई क्या बात कर रहे सच्ची में? So much Sentinel util to try to meander your way through. Oh, just flash in. I mean, you're just locked in at that point as well. Solid, patient play here from Nongshim as things continue to unravel for RRQ. Don't even get the chance to use any of the alts. टेलीग्राम पर ब्लॉक करना भूल गए थे, वहां पर आया, वहां बर्थडे विश किया था मैंने। Jump out into the open. Kill gonna be found, but there's the lineup. Not quite able to collect them both. Urja with a third will fall in Monyet's hand. Spike planted, but Dambi right there, ready to strike. Finds the kill. क्या थैंक यू आएगी? मतलब वो मैं आपके मैसेज का ही रिप्लाई है ना, ऐसे वो अपने तरफ से खुद कुछ नहीं लिखे ना। अच्छा किए वेनम भाई, वो वाला ऊपर वाला रिट्रैक्ट कर लिए, अच्छा किए। Get a free kill or two in this case. Relay bolt along with the salvos, and then just Persia holding it down. They love to set up Persia. I mean, kind of interesting that, you know, a lot of teams are going to use their util to set up their duelist. Well, on Nongshim, the duelist sets up the people behind him. That's, you know, one of the cool things, even though Dombi's 12-2 in that round, you know, he's willing to use that relay bolt and kind of break some space, break some angles. Now Jemkin going to go on a walkabout. Ult in hand, that's going to be dodged there by Margaret. He's not seen. It doesn't really matter. Just quick exit right here, center of the site. Rest of the team dropping down over the wall. Ivy trying to push forward. But what is that? Ivy had stolen the horseshoe from Victor. As he comes away with that kill, Margaret's still going to be taken down. Monyet able to find one. क्रेजी किल मार दिया क्या? Anticipating Dambi going to be noted there on that flank. ना ना अपनी तरफ से भी लेके वेट ऐसे देता हूँ, देखा देखा। स्टार्टिंग 10-12 के here I'm satisfied with my 850 वाला कीबोर्ड माउस कॉम्बो। अरे नियो भाई, मैं अभी जो कीबोर्ड लेने वाला हूँ हाई ग्राउंड का, वो 100 थीव्स का है। वो स्टार्टिंग इंडिया में उसका, वो इंडिया में नहीं मिलता, वो वहां से यूएस से भिजवाएंगे। वो स्टार्ट होता है 16,000 से, स्टार्टिंग है। एंड मैं जो वाला मंगवाने वाला हूँ वो 24,000 का है। $160 उसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो प्राइस है, $160 प्राइस है। फिर $45 लगेंगे, बेस प्राइस का बात बोल रहा हूँ। $160, $45 लगेंगे इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट ड्यूटीज और जो भी शिपिंग का, और $10 लगेंगे, 10 या 5 to $10 लगते हैं इंश्योरेंस के लिए। वो पूरा कंट्री रीजन स्विच हो रहा है ना, तो कुछ भी डैमेज हुआ तो फिर उसके लिए एक इंश्योरेंस टाइप $5 to $10। तो टोटल वो स्टार्टिंग ही 16,000 हो जाता है। Basically, it's $200 starting, with including shipping and all. क्वालिटी भी वैसी रहती है ना कि भाई कुछ भी थोड़ा भी लाइक सब सिंक में रहेगा, थोड़ा भी डिले नहीं होगा, लेटेंसी नहीं रहेगा वैसा। ओ भाई ये तो अनलकी हो गया भाई यार पर्शिया। और अभी टेंस ने नया माउस लॉन्च किया है, ये देखो VCT का ही टाइटल स्पॉन्सर है, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, पल्सर नाम का। देखो ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में पल्सर अभी आ रहा है, देख रहे? तो वो पल्सर ब्रांड के साथ अभी एक कोलैब किया है, और वो अपना टेंस का खुद का डिजाइन
10th एडिशन माउस निकाल रहा है। अब वो यूएस में निकलेगी ऑब्वियसली, उसको अब इंडिया में लाने के लिए वो भी मान लो 12,000 की पड़ जाएगी आराम से, 12-14,000। तो वो अप्रैल को लॉन्च होगी, मैं सोच रहा हूँ खरीदने का, बट लेट्स सी कितना आता है, डिपेंड करता है। अगर अंडर 10,000 है तो मैं तो आंख बंद करके बाय कर रहा हूँ। अगर अबव 10,000 है, अंडर 10 मतलब क्या 8-9 हज़ार के तरफ तो मिनिमम रहेगा ही। 10th माउस है भाई, 10th एडिशन है वो, और 10,000 के मतलब 15-16 हज़ार हुआ तो थोड़ा सोचूंगा मैं, मतलब थोड़े 1-2 महीने बाद वैसा। भाई रॉयल क्लच कैसा है? दैट इज भाई रॉयल क्लच अच्छा तो है, लेकिन भाई आप किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो वो बताओ। रॉयल क्लच, रॉयल क्लच के 1-2 अच्छे आते हैं, मैंने सुना है बहुत। उसके अलावा बाकी सब उससे बेटर वही प्राइस पॉइंट पे और भी बेटर आ जाएंगे, मैं तो बोलूँगा। रॉयल क्लच कितना 6,000 में आता है ना, 6-8 हज़ार में आता है। उससे अच्छा और भी बहुत सारे हैं, वो आपको बता दूंगा ऑल्टरनेटिव्स रॉयल क्लच के। जो अच्छे वाले आते हैं वो 1-2 मैंने सुन रखा है। आपका बजट कितना है और आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो वो बताओ, फिर बता सकता हूँ। देखो भेजा हूँ, रुको देखता हूँ। भाई 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 अमीर लोग में जाता नहीं तो मैं मुझे भी यहाँ रहने का रेंट देना पड़ेगा। भाई भाई अमीर लोग में जाता नहीं तो मुझे, अरे नहीं यार नियो भाई ऐसी बात नहीं है मेरी जान। कैसी बात कर रहे हो नियो भाई? कैसी बातें कर रहे हो नियो भाई यार, ऐसा मत बोलो यार। For a moment there, thought maybe, but yeah, that was just too difficult, too much util layered, and just losing that first player on the off angle held by Persia, that's kind of just round over. That one kill just thwarts anything RRQ wanted to do. I mean, in some ways, you kind of just have to make decisions like that if you're gonna commit. Jemkin just slow walking down the ramp. I mean, there should be protocols where there's util off the back of that. You know, whether it's वेनम भाई इसके बारे में आज बीजीएमआई में आएंगे ना तो बात करते। मैं पढ़ा but instead they just ran out of ideas. Yeah. Maybe just better setups to try to get, you know, these gate crashes into the site for Jemkin rather than having him walk in. I agree. Then at least पढ़ा मैंने। pull some attention towards the back of the site, towards Flowers, Secret, whatever. It's like you are taken for granted. मैं इतना ही बोलूँगा। Simple, you taken for granted वाला सीन है। कुछ सजेशंस मैं अपने तरफ से दूंगा वेनम भाई एज अ ब्रदर, और बाकी मतलब बैकएंड में पूरा स्टोरी तो मेरे को पता नहीं है। मेरे को जितना पता है मैं उसके बिहाफ में थोड़ा कुछ सजेस्ट भी करूंगा और बोलूंगा भी। फिर आप एक बार देख लेना which one suits you better and act accordingly, cause your respect, your self respect, your career also matters, समझ रहे हो? Not everything revolves around J और समझ रहे हो आपके लाइफ में, तो वो भी है। तो I'll tell you some few things. मैं तो वैसे भी दोस्ती रखना चाहता था, अब किसी के बातों में आके दोस्ती खत्म करोगे, देन यू एक्सपेक्ट कि अब दोस्ती सही होगी। कस्टम का भी तो लेगा इंपोर्ट करने में, कस्टम का नहीं लेते वो लोग। उनके वो कस्टम का क्यों लेंगे नियो भाई? कस्टम का तब लेते हैं, कस्टम कहाँ पे लगता है? कस्टम वहां पे लगता है जहाँ पे अनआइडेंटिफाइड या अननोन पर्सन या कुछ भी थोड़ा फिशी चीज लगे या डाउट हो, वैसे में लगता है। ये शिप करते हैं शिपिंग ब्रांड्स के थ्रू, समझ रहे हो? अब शिपिंग ब्रांड्स ऑलरेडी चेक करते हैं कि क्या होता है सामान में, अगर वो इंटरनेशनल शिपिंग है तो क्या है सामान में, और कंपनी ऑब्वियसली
अब ड्रग्स तो बेचेगी नहीं, इतनी रिनाउंड ब्रांड है वो। अब शिपिंग का कुछ चेक वेक नहीं होता। हाँ, एक ऑब्वियसली स्कैन्स तो होते ही हैं, बट वो शिपिंग जो ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे में जैसे दिल्ली वरी है या वो DTDC है, तो ये लोग जो इंटरनेशनल भी करते हैं तो इनका चेक नहीं होता, कॉज दे आर अ शिपिंग ब्रांड। इनका कस्टम ड्यूटीज नहीं लगता, इनके लिए चेक करने का पैसा नहीं लेते। एक मास वो लोग चेक करवाते हैं ना, तो वो चेकआउट हो जाता है। अगर हम जैसे अभी मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं कुछ सस्पिशियस चीज़ लेके जाऊंगा या पूरा कैरी कर रहा हूँ भाई टेक का सामान 10-12 जो कि अलाउड नहीं है कोई दूसरे कंट्री से, तब मेरे को कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा ना। क्योंकि आप देखोगे, आप जब यूएस भी जाओगे, यूएस से इधर आओगे, तो यू आर ओनली अलाउड टू कैरी 1 लाइक लैपटॉप विथ यू, 2 फोन्स विथ यू, और अगर भी लाइक ये सील पैक का बात करो, अगर सील में अगर खाली है तुम्हारे विदाउट पैकेजिंग, तब तो तुम कितना भी रख सकते हो, तुम्हारा पर्सनल यूज दिख जाएगा। बट वो अगर वो सील पैक्ड के साथ ला रहे हो तो ओनली 2 डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, 1 लैपटॉप डिवाइस, और ज्वेलरी आइटम में तो लगता ही है समथिंग कुछ ग्राम्स का छूट रहता है, उससे ज़्यादा ग्राम का अगर लाओगे तो फिर लगेगा। तो ऐसा सीन है। गेमिंग के लिए वैलोरेंट, रॉयल क्लच, RK R75, अच्छा यही वाला जो मैं अभी देख रहा था, RK R75 यही वाला। हाँ भाई, इससे बेटर भाई ये आपको 5000 पड़ेगा ना, 4-4.5 कहाँ से खरीद रहे हो बाय द वे? दैट इज भाई, आप कहाँ से खरीद रहे हो? लिमिट ना ही बात करे तो अच्छा है, तुम्हारा मन करे तब दोस्ती, तुम्हारा मन करे तो दोस्ती खत्म, खिलाना नहीं यू। नाइस वन वेनम भाई, अच्छी बात है। क्या हुआ वेनम भाई? अर्नब भाई कुछ हुआ नहीं है, वो थोड़ा सा वेनम भाई के लाइफ के बारे में। अरे वो लेते हैं ना गाड़ी के लिए दूसरे देशों से लाने के लिए 50%। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, गाड़ी के लिए वैसा नहीं लेते, वो कंपनी से लेते हैं, वो कंपनी बियर करती है, क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, हमारा ये कंट्री में इतने कंटेनर्स जाएंगे, इतने कंटेनर्स का ऑल ओवर कितना होता है, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट दे देती है, ठीक है। अब जैसे मान लो, कैसे बताऊं आपको इसका समझाने का, कैसे समझाऊं, मतलब ये थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसा है कि वो पूरा कंटेनर, मान लो वो बोले कि मेरे इंडिया में 5 कंटेनर जाते हैं यूएस से, तो वो 5 कंटेनर में अंदर कुछ भी जाए, लेजिट सामान ही जाएंगे, अंदर कुछ भी जाए उसके अकॉर्डिंग मैं पैसा नहीं दूंगा। आप वो 5 कंटेनर का पैसा बोलो, मैं 5 कंटेनर का पैसा पकड़ा दिया। अब वो कंटेनर के अंदर ऐसा भी है 10 लाख का सामान जा सकता है, वो 15 लाख का सामान इम्पोर्ट करा रहे हो, समझ रहे हो, वैसा भी करा सकते हैं। तो इट्स ऑल ऑन देम, एज अ होल कंपनी वो पे करती है। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया को एक सामान भेज रहा हूँ, RyuK को ये कीबोर्ड भेज रहा हूँ तो इसका पर्टिकुलरली चार्ज करूंगा, वैसा नहीं होता उनका। भाई कंटेनर शिप होता है चीजें शिपिंग कंपनीज के, इसीलिए बाहर के कंपनीज ना या आटू शिपिंग कंपनीज यूज नहीं करते, वो लोग बड़े बड़े शिपिंग ब्रांड्स का ही साथ ही करते, क्योंकि उनको उनके कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं कुछ तो सारे निकल भी जाते हैं प्रोसेसिंग से। तो ये ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? वो थोड़ा वेनम भाई का एक अपने अंदर पर्सनल मैटर है, ऐसा बोल सकते हो। ऐसा बाहर से मंगा सकते हैं, कुछ बाहर से मंगा सकते हो। देखो बाहर से मंगाने का तो है, आप मंगा सकते हो, Etsy है, फिर StockX है, आपको कुछ भी चाहिए आप मंगा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप पैसा फेंकना चाहते हो के लिए, क्योंकि बाहर से मंगाओगे मतलब आपको पैसा, आप मान के चलो कुछ भी सामान हो, छोटे से छोटे सामान, आप एक माउस के लिए अगर बाहर से मंगवा रहे हो उसके लिए आप 15,000 देने को रेडी हो, या ऐसा है कि एक्स्ट्रा 15,000 आप देने को रेडी हो अपने पॉकेट से, जस्ट बिकॉज इम्पोर्ट और वो सब ड्यूटी टैक्स वैक्स का लगा के। बाहर से आप मंगा सकते हो, इंडिया में सब कुछ मतलब टेक का सामान आ गया, जैसे कीबोर्ड हो गया या मॉनिटर हो गया जो इंडिया में नहीं मिलता, आप वो चाहते हो आप मंगवा सकते हो।
लेकिन वही है, यू हैव टू गिव द इम्पोर्ट ड्यूटीज। जैसे एक कीबोर्ड, मेरा जो कीबोर्ड है $160 का कीबोर्ड है वो, अब उस पर मतलब वो मैं मेरा वाला तो वो $220 वाला है, लेकिन चलो मेरा वाला ही बोलता, $220 का कीबोर्ड है, उसमें 45 या $50 का वो लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, फिर $10 का वो टैक्स लगेगा, और $5 का वो इंश्योरेंस जो भी रहता है वो लगेगा। तो इट्स टोटल जो भी कितना 220 + 45 इज 265, 265 + 5 270, 270 + 15, इट्स ऑलमोस्ट $300 मान के चलो। $300 कितना होता है? 24,000। तो मैं इसलिए बोला ना कि मेरा कीबोर्ड 24,000 के आसपास लगेगा, तो मैंने 24,000 मान के चल रहा हूँ कि वो हो जाए, होगा $300। 285 290 के अराउंड है, समझ रहे हो? तो वैसा सीन है। तुम्हारा मन करे तो दोस्ती ऐसा सब होती बातें क्यों, गोटी बातें क्यों? अरे मेरे को नहीं बोल रहे अर्नव भाई, वो सिचुएशन को बोल रहे हैं, मेरे को नहीं बोल रहे अर्नव भाई। अच्छा कौन लेता है भाई, कौन लेता है भाई? मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट साइड रखकर बहुत कुछ किया था, अब नहीं है, खुद का मन करे तो बात करेगी, ना करे तो मत करे। ये तो वेनम भाई, ये आप उनको डायरेक्टली बोल दो कि देख ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है? बिकॉज उनका जो रिप्लाई आया है उससे तो मेरे को ये लगता है वो आपके सर चढ़ के बैठी हुई है, ठीक है? तो आप भी थोड़ा उनको उतार दो से साइड में, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के। मैकिस से ऑर्डर करोगे? अच्छा मैकिस से, देखो भाई अगर आप बेटर चाहते हो तो मैं आपको बेटर सजेस्ट कर सकता हूँ, बट Solid headshot, finds crazy guy, now suddenly the sight opened up. Monyet gonna be noted, Ivy waiting around the back. It's not quite prepared for Cushy, however. मतलब अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैं तो अगर मेरे को अगर ये बजट होगा तो मैं तो ये तो नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, तो मैं कुछ कमेंट तो नहीं करूँगा। अब अच्छी ब्रांड है, देखो ब्रांड अच्छी है, इंडिया में उसके अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आते, तो मतलब ऐसा बात नहीं है कि ब्रांड खराब हो जाती है, क्योंकि इंडिया में HyperX के भी अच्छे हेडफोन्स आते नहीं है, जो आते हैं बेस वाले आते हैं, जो क्लाउड सीरीज ही एक अच्छा खासा है, वैसे ही आप बोल सकते हो। इवन येटी के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आते इंडिया के अंदर, तो बहुत चीज़ें हैं, तो वैसा आप देख लो। कार परचेज कॉस्ट यूज्ड अप्रॉक्स 10 lakhs, इंपोर्ट कॉस्ट, शिपिंग, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, असेंबल्स। अरे भाई ये देखो, अरे तो नियो भाई, ये जो आप गूगल से सर्च करके लाए हो, कार और ये कीबोर्ड सेम लग जा होता है क्या भाई? कार और कीबोर्ड का जॉनरा सेम है क्या? आप जितना टैक्स आप रेस्टोरेंट पे खाने के लिए जाके दे कर आते हो, उतना ही टैक्स क्या आप अपने पढ़ाई पे भरते हो क्या? या उतना ही टैक्स आप, ओ टाइमिंग, हाँ, तो जितना आप मैं बोल रहा हूँ जितना आप एक रेस्टोरेंट पे जाके खाते हो, वही टैक्स आप अपने कुछ भी सामान खरीदते हो, पीसी खरीदते हो, उतना ही भरते हो क्या? एक ये तो वही बात हो गई, 40 लाख जो कमा रहा है महीने का वो भी सेम टैक्स भर रहा है, और जो 5 लाख कमा रहा है वो भी सेम टैक्स भर रहा है। आप वैसे बातें कर रहे हो, पता है? हैं? ये आप कैसे बात कर रहे हो? पता है अब महीने का जो मतलब साल का अगर जो 10 लाख कमा रहा है, साल का 10 लाख, ठीक है, वो मतलब कितना इन हैंड आ रहा है, कितना 70,000 तरफ, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना साल का 25 लाख जो कमा रहा है। भाई वैसा नहीं चलता टैक्स सिस्टम, कौन से प्रोडक्ट्स पे कैसे टैक्सेस लगते हैं एंड कहाँ पे कितने अमाउंट पे क्या टैक्स लगते हैं, वो थोड़ा सा नॉलेज मतलब रखना पड़ता है भाई। अब मैं जस्ट बिकॉज बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को इस सब चीज़ों में, फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट रहता है, तो मेरे को पता रहता है।
still, it's a nice little play to make sure. अपने इंडिया में अभी तो टैक्स सिस्टम वैसा हो गया ना कि 12 लाख तक नो टैक्स जो कमा रहे, तो हर चीज़ में वैसा ही है मेरे भाई, हर चीज़ का टैक्स सिस्टम अलग रहता है। ऐसा नहीं कि भाई आप कार का देख लिए तो वही चीज़ कीबोर्ड में भी अप्लाई होगा, वही चीज़ माउस में भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता। साला गवर्नमेंट टैक्स लेती, बीसी देश का भला भी नहीं कर रहे, एजुकेशन फ्री नहीं है, बीसी फॉरेन कंट्रीज में तो एजुकेशन फ्री है, हेल्थ रिलेटेड सब फ्री है, इंडिया में लर्न कुछ ऊपर से सलट। अर्नब भाई ये जो आप बोले हो इसमें मैं 2 चीज़ करेक्शन करना चाहूँगा। आई एम नॉट फॉर द गवर्नमेंट या नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैं न्यूट्रल होकर 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। ये जो आप बोले फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन फ्री है और हेल्थ रिलेटेड सब फ्री है, जस्ट बिकॉज मैं फॉरेन गया हूँ एंड मैंने फॉरेन कंट्रीज कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे को ये सब चीज़ें अंदर की बातें पता है। अब मेरे को आप ये बताओ, आप क्या सोच के बोल रहे हो कि फॉरेन कॉलेजेस में एजुकेशन फ्री है या हेल्थ रिलेटेड सब फ्री है? आप क्या कहाँ पे देखे हो, मेरे को एक बार ये बताओ, बस मैं फिर उसके अराउंड में आपको बातें क्लियर आउट करूँगा। ये जो आप ये जो स्टीरियोटिपिकल या बोल सकते हो रॉन्ग कॉन्सेप्ट में जी रहे हो, वो वाला थोड़ा मैं ठीक लाइक आपका रेक्टिफाई कर सकता हूँ। वैसे GTR R32 इज माय फेव कार, बहुत अच्छा चॉइस है यार नियो भाई, नाइस चॉइस। यूरोप में मैं भी गया हूँ भाई, भाई जाने से नहीं होता है। आयरलैंड गया था, अरे जाने से नहीं होता है मेरे भाई। अभी घूमने को अगर आप बोलोगे हेल्थ रिलेटेड टैक्स सब फ्री है, वैसा नहीं होता है मेरे भाई। सिटीजन्स का एक अलग सीन होता है, जो वहाँ पे टेम्पररीली रहने आते हैं, जो वीज़ा के थ्रू आते हैं, उनका अलग सीन होता है मेरे भाई। वहाँ बैचलर्स फ्री है, मास्टर्स पेड है, बैचलर्स भी फ्री नहीं है मेरे अर्नव भाई। साला मजे से जी रहे थे, फिर से टेक्स्ट आ जाता है। हाँ ना वेनम भाई, एकदम सही बोले, ऐसा होता है। मतलब उनको लग रहा था कि भाई इसके लाइफ में ये अभी खुश है, रुको अभी इसको थोड़ा सा देते हैं, दुखी करते हैं, ऐसा लगता है। हाँ सजेस्ट करो भाई, दैट इज भाई आपका बजट बताओ कहाँ तक कितना एक्सटेंड कर सकते हो। अर्नव भाई बैचलर्स भी फ्री नहीं है, बिकॉज मेरी कॉलेज जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी टाइप रखती है, तो मैं बैचलर्स के लिए एक सेमेस्टर वहाँ पे, मतलब ऐसा था कि मैं जाने वाला था, तो वहाँ पे पैसा वैसा का, तो बैचलर्स भी फ्री नहीं है। फ्री है ना भाई? नहीं फ्री है मेरे भाई, कॉलेजेस कोर्सेज पे डिपेंड करता है मेरे भाई, फ्री नहीं है मेरे भाई। और हेल्थ वाला सीन भी फ्री नहीं है भाई, आपको मंथली अमाउंट सर्टन अमाउंट देना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है? वो भी ये उनके लिए है जो बाहर से आते हैं, सिटीजन्स के लिए अलग रूल है वहाँ पे मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो आप, मेरे को पता नहीं आपको ये नॉलेज कहाँ से मिला है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे ही उनका माइंड पे ऐसे ही थ्योरी है कि भाई वहाँ पे ऐसा है, हमारे यहाँ पे इंडिया पे वैसा नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया में ऑब्वियसली वहाँ पे अगर 10 लाख लेते हैं उस पढ़ाई का, हमारे यहाँ पे 25 लाख लेते हैं। आई टोटली एग्री विद दिस। तो मैं इसलिए पहले ही बोल दिया कि आई एम नॉट फॉर द गवर्नमेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैं न्यूट्रल होके ये सवाल पूछ रहा हूँ और आंसर्स दे रहा हूँ। वहाँ पे पैसा कम हो भले ही, लेकिन भाई वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही हाई है भाई, समझ रहे हो? आप ये नहीं देखते हो कि हमारे यहाँ पे आप कॉलेज के पास में पीजी आपको 6,000 रुपये पर महीने आपको रहने के लिए दे देंगी। वहाँ पे आप स्टूडियो अपार्टमेंट भी आपको मतलब इंडियन रुपीज़ में 70,000 तरफ भरना पड़ता है मेरे भाई। आप ये नहीं देखते हो, ये देखते हो कि कॉलेज कम पैसा लेता है या पैसा लेता ही नहीं है। महीने का 70,000 का स्टूडियो अपार्टमेंट, जो यहाँ पे हम लोग का 1 RK होता है, वहाँ का वो लोग 70,000 लेते हैं, हमारे यहाँ पे 7,000 में हो जाता है। वो लोग नहीं देखते मेरे भाई हैं? एंड फिर हर रीजन का अलग होता है, यूएस का मतलब टैक्स सिस्टम अलग होता है, ये वो रूल्स अलग होते हैं, यूरोप का अलग होता है, यूरोप में भी यूके के अलग चलते हैं, फिर जर्मनी के उस तरफ भी अलग चलते हैं, तो सब चीज़ का है मेरे भाई।
कौन से कंट्री? RyuK भाई ट्रस्ट में सिटीजन्स के लिए फ्री है। अरे अर्नव भाई फ्री मतलब अभी वो आपको महीने में सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको देना पड़ता है। आप पूछना अपने, अगर आप जो बोल रहे हो आपके भाई हैं सिटीजन, उनको आप पूछना कि महीने का सर्टेन अमाउंट उनके सैलरी से कटता है कि नहीं, ठीक है? आप पूछना एक बार। जैसे आप यहाँ पे वो करते हो ना, म्यूचुअल फंड करते हो ना, कि भाई महीने का इतना कटेगा तो फिर एट द एंड मेरे को इतना मिलेगा, जो भी वैसे टाइप का ही कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। आप पूछना जाके एक बार। भाई मैं भी जॉब के थ्रू जापान में रहा हूँ, उधर हेल्थ चेकअप फ्री है, ट्रीटमेंट नहीं, एंड स्कूल कॉलेज का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि बच्चे पार्ट टाइम भी करते हैं, बाकी देशों का नहीं पता। लो इधर ही सुन लो भाई, अनदर एग्जाम्पल भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं होता है, आप जितना सोचते हो उतना आसान नहीं होता है मेरे भाई। कॉज आई वॉज दिस क्लोज टू गो टू पेरिस एंड स्टडी। आई वॉज दिस क्लोज। मैं बता रहा हूँ ना, वो एक थीन लेयर है भाई। आपको थीन लेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वैसे ही थीन लेयर था। आई वॉज दिस क्लोज, एवरीथिंग वॉज एक्सेप्टेड, एवरीथिंग, वीजा सब कुछ। फिर कुछ एक चीज हुआ जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया, ठीक है? पेरिस में बैचलर्स का, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी बोल सकता हूँ, एस्टा का यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग पढ़ने वाला था, ठीक है? आई वॉज दिस क्लोज, ठीक है? तो मेरे के पास सारे डेटा थे भाई कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं, क्या करना पड़ता है। एंड इट्स मी हियर भाई जो बोले ना कि भाई ट्रीटमेंट फ्री होता है, चेकअप फ्री होता है, ट्रीटमेंट नहीं, पूरा एग्जैक्टली वही बोले, सच बोले, ठीक है? एंड आप ये नहीं देख रहे हो, मैं अभी जो पॉइंट बोला आप वो नहीं देख रहे हो कि भाई वहां पे रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना एक्सपेंसिव है। मैं यहाँ पे अभी 3 BHK फ्लैट में रह रहा हूँ। 3 BHK फ्लैट का रेंट मैं 50,000 दे रहा हूँ। वहाँ पे वो 3 BHK फ्लैट का नहीं, 1 RK का रेंट है 65,000। आप वहाँ पे डिफरेंस यहीं पे सोच लो फिर कितना डिफरेंस है। डीएम देखो, एक मैसेज किया और को। As they get up to double digits, 3 rounds away from closing out this series and denying some revenge. Yeah, as good as Jemkin can be, just stuck around, greeted for the trade on the Donby, paid the price. There was just too many members of Nongshim there, no matter what. That was not going to be. यार वेनम भाई ये क्या सीन है? Looks like he's going to grab an operator for the follow-up round. इनेगाकी जी देखो लिख रहे 180 स्क्वायर फीट रूम इन योकोहामा विदाउट गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 58 के INR। भाई देखो स्टैट्स वोंट लाई, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं बिना प्रूफ के साथ मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं भी देखो ये 2 और एक आ गया तो मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा। अरे मैं मना नहीं कर रहा अर्नव भाई, यू मे बी राइट, बट मे बी आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा, या ऐसे आप क्लियर आउट नहीं हुए होगे पूरे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। भाई सजेस्ट कर दो ना कीबोर्ड। दैट इज भाई मैंने तो पूछा आपका बजट क्या है, आपने बताया ही नहीं आपका बजट कितना तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो तो बताओ मेरे भाई। हाँ कटता है 5%, तो अर्नव भाई 5% कटता है ना मेरे भाई, कटता है ना 5%। अब सैलरी मान लो चलो कितना, $100 पर मंथ तो नहीं, बहुत कम ही वो बोल दिया मैं। कितना $2,000 पर मंथ का मान के चलो। मेरे को पता नहीं आपके भाई का सैलरी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। $2,000 पर मंथ का सैलरी है, 5% मतलब कितना, $100 वहीं से कटता है। $100 कितना होता है मेरे भाई, 8,000 रुपया। यहाँ पे इंडिया में 8,000 रुपये अगर पर महीने के कटेंगे, यहाँ पे लोगों के गांड फट जाएंगी, ठीक है? कि 8,000 रुपये काट रहा है, कुछ सर्विस नहीं दे रहा है, वो भी तभी सर्विस देगा जब तुम्हारा कुछ तबीयत खराब होगा। उससे अच्छा मैं वो इंश्योरेंस करवाऊँ ही ना, और जब होगा तबीयत खराब तब का तब देखा जाएगा। इंडिया में थिंकिंग ऐसा होता है मेरे भाई। इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों नहीं चलती मेरे भाई, मेरे को बताओ। वो LIC बस ऐसे ही है। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी क्यों नहीं है? इसी चीज़ के लिए लोगों को नहीं पसंद कि लोग हर महीने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे जिसका कुछ काम नहीं है। उनको ये नहीं हेल्प ये रहता है कि भाई फ्यूचर में काम कर सकता है हमारा। नहीं, हम क्यों देंगे भाई, हम नहीं देंगे। जब होगा तब जाके देखा जाएगा, हम तो नहीं देंगे।
अर्नब टोक्यो में स्टार्टिंग होता है 1 लाख से ऊपर। अरे जापान तो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है भाई। चलो मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, जापान तो रहने का, टोक्यो तो बहुत एक्सपेंसिव है। जापान में टोक्यो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। इट्स लाइक यू आर स्टेइंग इन लास वेगस और लाइक न्यूयॉर्क सिटी। अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी, जापान का टोक्यो, वैसा बोल सकते हो। मैं वो भी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ, मैं सिंगापुर का ही ले रहा हूँ। इवन सिंगापुर में भी वैसा ही सीन है भाई। सिंगापुर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सिंगापुर इज मीडियम जो नॉर्मल डॉलर्स का प्राइसिंग रहता है वैसा ही रहता है, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं, वैसा मैं बोल रहा हूँ। छोड़ो भाई, वैसे भी कहाँ फॉरेन जाऊँगा। अर्नब भाई ऐसी भी बात नहीं है, फॉरेन जाऊँगा। देखो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। मैं फुल प्रिपेयर्ड था, मैं फॉरेन जाऊँगा। एंड देखो मतलब लाइफ आपके नेक्स्ट मोड पे क्या लेके आएगी, यू नेवर नो भाई। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जैसे बोला कि आई वॉज दिस क्लोज टू गो लाइक फॉर गोइंग टू पेरिस। तो वो वाला सीन अभी मेरे को मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ अभी। तो यू नेवर नो कल को क्या हो जाए एंड लाइफ आपको कहाँ पहुँचा दे। तो ये सब नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप ये वाला बात छेड़े बोलकर मैं खाली बोला कि आपको मे बी मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि असलियत ऐसा नहीं है भाई। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ज़्यादा है अर्नब भाई, वही मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। उनका पैसा अगर वहाँ बच रहा है तो पैसा यहाँ जा भी तो रहा है, आप वो नहीं देख रहे हो। अगर जैसे लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे कार्स इतने सस्ते मिलते हैं, जो कार यहाँ पे रेंज रोवर 80 लाख में बेचता है वही कार वहाँ पे 50 लाख में मिलता है, या 45 लाख में। अरे तो वो ये नहीं देखते, उनका जो रोड टैक्स है, फिर गाड़ियों के जो हर साल उनका रिन्यू वाला सीन है, फिर सब कुछ रहता है। वो सब मिला जुला के जो इंडिया में कुछ नहीं, मतलब मिनिमम के जैसा हम लोग का आरटीओ कुछ नहीं लेता भाई हमारा। वहाँ का आप आरटीओ का जो भी बोलते हैं वहाँ का आप पूछोगे, प्राइस पूछोगे ना लोगों की, यहाँ पे उतने की एक कार आती है। लोग यहाँ पे उतने में एक कार लेने को खोजते हैं जहाँ पे जितना उनका वहाँ पे आरटीओ वो प्राइस लेता है ऑल ओवर में, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है। रुक भाई, जिस दिन मुंबई आया ना उसका जो दोस्त या बड़ा भाई कहो मुंबई में ही है, जिस दिन मिल गया नंगा करके मारूंगा उसका। अरे वेनम भाई देखो, अब सामने वाला कुत्ता भौंकेगा तो आप भी भौंकोगे क्या? चिल करो ना, ठीक है, अब गया तो गया। अब ऐसे जो आप बोल रहे हो ना, मेरा भी जो था उसमें भी एक ऐसे ही एक कबाब में हड्डी था। उसका मैं नाम ऑन स्ट्रीम बोल सकता हूँ, अमित नाम था उस बंदे का, ठीक है। अमित नाम है, था क्या, मरा थोड़ी है। बट हमें भी जब हुआ था वो सीन तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आया था, और मैं बोला था कि भाई उसी के शहर में जाके ऐसे मार के आऊँगा। और उसके शहर में मेरे कॉन्टैक्ट्स भी थे, क्योंकि अब वो उड़ीसा में ही रहता था। तो उड़ीसा में ऑलमोस्ट मेरे सारे जो सिटीज़ है उनमें बड़े बड़े सिटीज़ के दोस्त थे मेरे पास। तो मैं सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल लिया था कि कहाँ पे था। तो समझ रहे हो, मैं भी स्टेट से गुजरा हूँ यार। कुछ फायदा नहीं मिलता, चिल करो यार। उसको अपने लाइफ जीने दो, ठीक है। वो वही चिंदीपना करते हैं बोल के वो वहीं पे रह गए और आप कितना ऊपर आ गए, ये सोचो ना भाई। तो ये सोच के इग्नोर मारो भी, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, चिल करो। इन्हें कहा कि भाई मेरे को भी जापान ले चलो। भाई जापान जाओ ना भाई, टोक्यो के घूम कर आओ, बहुत प्यारा सिटी है भाई, बहुत प्यारा सिटी है। मेरा तो वो 100% काट के गई थी। अरे अर्नब भाई 800 यूरो पर वीक, इसका मतलब लाइफ मादरचोद है। अर्नब भाई लाइफ मादरचोद नहीं है भाई। देखो 800 यूरो पर वीक ना, 1 यूरो कितना, 80 रुपए के आसपास। 8000 यूरो पर वीक, 5% कटता है। 5 मतलब समझ रहे हो, 400 यूरो, 400 यूरो पर वीक आपको कट रहा है। यहाँ पे ना लोग यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे अगर वैसा काटने लग गए इंडिया में, ठीक है अर्नब भाई। वहाँ पे लोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंटालिटी लोगों की वैसे बना ली है कि यू कांट एस्केप इट। अगर ये है यू हैव टू फॉलो इट और गो अवे। हमने आपको बोला नहीं हमारे कंट्री में आके आप रहो, उनका ऐसा है। हमारा इंडिया वो नहीं कर सकता।
भाई इंडिया में हो अच्छे हो, अगर जॉब लगे तो ही बाहर जाने का सपना देखो, या तो फैमिली है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर यू फाइनेंशियल समझा ना। हाँ मतलब पर्सनल सजेशन, ये तो इन्हें की चीज़ ने सही बोला, लेकिन अगर आपको अगर पढ़ाई के लिए जाना भी है, वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह बहुत अच्छा मिलती है, 75% 80% स्कॉलरशिप मिलती है, या आप कोई अच्छे बड़े इंडिया में बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे मेरा जो कॉलेज था बहुत बड़ा है, तो लाइक उसका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत बड़ा टाई अप चलता है, ठीक है, MOUs जो बोलते हैं, तो वो कॉलेज के थ्रू भी आप बाहर जा सकते हो पढ़ने, कॉलेज आपको हेल्प करेगा अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो वो भी है। फिर स्कॉलरशिप्स आपको मिल गया तो आपको पैसा, मम्मी पापा का पैसा लगेगा नहीं, और वहाँ पे पार्ट टाइम करके आप खुद का पेट खुद ही भर सकते हो, वो एक अच्छा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर जो अमीर नहीं है तो जा नहीं सकते, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है यार, क्योंकि हो गया जीजी हो गया एनएस का, तो जीजी जीत रही है एनएस। हाँ क्योंकि अब जो अमीर है उन पे ऑलरेडी बचपन से वो एक एडवांटेज है, बोल सकते हो एक बफ है कि उन पे पैसा है, ऐसा नहीं है। वेनम भाई आशो स्पीड बन जाएंगे मार सकते हैं भाई, वी नेवर भाई, मर सकते हैं भाई, वी नेवर नो। अरे 93 क्या कुछ है, 93 क्या कुछ है मतलब, मुझे कांटेक्ट है कि ज़रूरत नहीं, साला सिला लव दी शरीर है उसका, हर किसी को मैं गलत बताता फिरेगा। अरे ठीक है वेनम भाई शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। 4500 दैट इज़ भाई ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कीबोर्ड आपके लिए बेटर होगा। आपको 60% चाहिए, 65% चाहिए, 80% चाहिए, कैसा चाहिए वो बता दो एक बार। वेनम भाई शांत हो जाओ यार, चिल करो, कोई बात नहीं यार मेरे भाई, वो लोग रहने दो, झगड़ा वगड़ा करके किसी को कुछ मिला नहीं है। जापान जाना है तो N4 पास करो भाई, 2v2 है, ये वाला जीत जाए यार, RRQ थोड़ा फाइट बैक तो करे। चलो एक राउंड हाँ N4 पास करो एंड मस्त स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, यस। और अगर जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज में आपको B1 लेवल तक सीखना पड़ेगा या B2 लेवल तक सीखना पड़ेगा, फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो वैसा, तो वो सब है, मतलब कर सकते हो, देखो करने को तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। जर्मनी में बहुत बड़ा स्कॉलरशिप चलता है दाद नाम का, ठीक है, कोर लोगों के लिए DAAD वो स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो वो लाइक 100% कॉलेज फीस आपका माफ़ हो जाएगा, आपको बस रहने खाने का देखना पड़ेगा, वो आप पार्ट टाइम से कर सकते हो। दैट इज़ गो फॉर रेजर और एल्स क्रियो। अरे वो इसका बता रहा है वेनम, वो फॉरेन ब्रांड लेना चाहता है, समझ रहे हो। अरे भाई ईवी तो यहीं शट डाउन कर दिया, अच्छा नहीं 3v3 है। 5th नोज ब्लीड ऑफ द डे, क्यों अर्नव भाई क्या सीन? क्या हो गया अर्नव भाई, 5th नोज ब्लीड ऐसा क्या कर रहे हो आप? Effectively grouped up over towards A, and it looks like they agree with us. The alarm bot gets dropped. The spike was noted that it was dropped, and they instead went on an exploration to try to find a lurker or a flank. And instead it was just Nongshim taking their time to go pick it up. A 3v3. Spike now planted. Downbeat. पता नहीं भाई फालतू नोज ब्लीड हो रही, दुख नहीं रहेगा, जहाँ समझा मैं, वो कुछ एक होता है ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन लेवल ऐसा मैच नहीं करने से, या ऐसा कुछ एक रीज़न की वजह से होता है वो नोज ब्लीड, या जब आप वो जाते हो ना, जैसे कभी हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा नहीं रहता है, वैसा उसमें भी ब्लीड होता है लोगों के, तो वैसे ही कुछ अनबैलेंस होने से होता है। हो गया भाई एनएस जीत गई, बताओ। भाई RRQ जैसी टीम को हरा दिया एनएस। After getting absolutely bodied on ascent, and a first half of split that was rough.
they come roaring back and take the series. This Pearl still looking darn good. Don't need to change up the comp. नागपुर में कहाँ हाई एल्टीट्यूड है भाई? अर्नब भाई हाई एल्टीट्यूड के नहीं, वो बॉडी कभी कभार इम्बैलेंस हो जाता है तो होता है। ये 100 या 200 लोगों में एक इंसान को होता है। मेरे क्लास में भी एक बंदा था अनिकेत नाम का, उसको भी ऐसा होता था नोज ब्लीड। तो हाई एल्टीट्यूड का नहीं, वो बॉडी इम्बैलेंस के चक्कर में होता है, समझ रहे हो? बॉडी इम्बैलेंस तो हर किसी का ही रहता है, लाइक ब्लड ऑक्सीजन या कुछ भी ऐसा बोल लो, तो इम्बैलेंस तो होता ही है हर किसी को। लेकिन उसमें वो एक सिग्नल जो देता है बॉडी, वो नोज ब्लीड वाला सिग्नल है। तो वो सिग्नल 200 या बोल सकते हो 300 लोगों में एक इंसान का ही होता है वैसा। तो आप रेयर हो, आप ये मान के चलो। इट्स अ गुड थिंग एज वेल एज इट्स अलर्टिंग यू कि आपका बॉडी इम्बैलेंस है, तो थोड़ा सा देख लो ऐसा। मैंने चैट किया था एनएस जीत जाओ इसलिए जीत गई। ये नियो भाई जॉर्ड, नियो भाई एक बार आप बोल दें कि RyuK भाई का 4 मिलियन बहुत जल्द होगा, तो क्या पता आज 4K है, कल को 4 मिलियन जल्दी हो जाए। एक बार बता दो यार, बोल दो नियो भाई थोड़ा सा। भाई अर्नब भाई देख लो भाई, लाइट कम ग्लो कर रहा है, गाल ज्यादा चमक रहे। क्या लैंग्वेज है RyuK, बिहेव। रेड ड्रैगन K530 Pro 60 में खुद यूज करता हूँ, बट वो 4000 तक बजट है ना, तो उससे ऊपर जा सकते हैं ना, तो इसीलिए देखो मैं बताता हूँ। कीबोर्ड ना 60% का ही बताता हूँ, अगर यार इनका अगर वैसा है। भाई कितना शांत है भाई, ये इतना मस्त कूल माइंड में बोल रहा है। this W on the last map, and which he did. So he's pretty grateful for how today turned out. Now, let's talk about Waylay because everybody had a feeling that you were going to... आप हो दैट इज भाई, आप चैट में हो, आपसे वो कीबोर्ड के रिलेटेड बात करना था। क्या पता मेरे को मोटा बोल रहे क्या? अरे अर्नब भाई नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? वो मेरा जो दोस्त था अनिकेत, वो सबसे पतला था क्लास में, मोटा नहीं। आई एम फ्लैटर्ड भाई। अरे मोटा नहीं बोल रहे यार भाई। 4 मिलियन हो जाएगा। हाय ये बस भाई, अब तो मुझे किसी चीज का डर वर नहीं है। अब तो हो रहा है भाई मेरा 4 मिलियन, अब तो हो रहा है, खत्म है भाई। मैं एक काम करता हूँ, सीधा 4 मिलियन होने के बाद चैनल में स्ट्रीम करता हूँ नेक्स्ट। नियो भाई ने बोल दिया मतलब हो रहा है अब। चला इसके तो कल ब्लू बाल थे ना, हाँ तो आज चेंज कर दी। कितना टाइम लगता है भाई इनको, कितना लाख रुपए मिलता है पता है ये ऐसे होस्ट करने को? करती है जो हर दिन चेंज करती है लुक के लिए। कितना मस्त धीरे धीरे बोल रहा देखो। Well, yeah, I can't really say much. We're still working with how we want to implement Waylay, but अरे ग्लैमर भाई, मेरे को तो लगता है कैमरामैन पूरा IPL वाला ही है, IPL वाला कैमरामैन है। We thought she was really good for देखो defensive plays and also team plays in pro level as well. But I think I didn't get to show what Waylay can do fully yet. So in order to show the full potential when it comes to Waylay, I think we still need to tweak a few things. And I promise to show you guys better Waylay in our next matchup. I mean, it's been a while performing on this stage, you know, being back in Pacific. वो भी लड़के ऐसे ही चेंज करती थी। शिट, alongside ये आपके वो मैडम जी को बोल दूं अर्नब भाई, आप अभी भी वो उनको याद करते हो बोल के। So, you know, where would you place Waylay? 근데
또 타격대들 중에서 웨이레이는 좀 어떤 것 같은지도 들어보고 싶어요. 왜냐면은 좀 더 시간을 되돌릴 수 있는 Z다, 업그레이드된 네온이다라는 말도 있고, 아니다, 아예 다르다, 조금 더 레이나와 피닉스 같은 완전 들어가는 엔트리는 아니다라는 의견도 있거든요. 담비 선수 보시기에는 이 웨이레이 좀 어떤 캐릭터 같나요? 그 2선 엔트리랑 1선 엔트리 진짜 완전 중간이라 생각해가지고 어느 쪽에도 속하지 않는 새로운 유형의 엔트리라 생각해가지고 잘하면은 진짜 팀한테도 좋고 자기한테도 좋을 것 같은데 못하면 말 그대로 팀한테도 도움 안 될 것 같은 느낌이어서 진짜 승련도 더 쌓아서 잘하는 모습이 나왔으면 좋겠네요. I think she is a completely different type of a duelist than the duelists that we're used to. I wouldn't say she's entirely a dive agent like Jet or Neon, but I wouldn't say she's sort of a laid-back type of duelist like Reyna and Phoenix. She's RyuK मारा जाएगा रे. With how to pilot this agent, then you are a great help and you're a great asset to the team. But if you don't know how to use her well, then you might as well just troll the whole team. So I just really hope that I get to master this agent and help out my team. Now, next week will be T1. Oh, they're coming back into Pacific Stage 1 with the trophy. Are you ready to play them? 이제 T1을 다음 주에 만나게 되는데 챔피언 타이틀 갖고 돌아오는 T1이거든요. 준비됐나요? 자신 있나요? 자신 있습니다. 왜냐면은 저희는 언더독이기 때문에 좀 더 부담 없이 경기. यार वेनम अब तो छोड़ दे, कितने दिन और ये 좋을 것 같아가지고. याद में जिएगा. बाय द वे आगे क्या है तेरा? एज्यूम मुझसे तो छोटा ही होगा तू. वेनम कब कुछ बोला? वेनम कुछ बोला क्या? वेनम भाई का चैट क्यों नहीं दिखा रहा मुझे? ये तो अर्नव भाई ने लिखा. साला इसके तो वो भी लड़के ऐसे ही चेंज करती थी. इट्स मी यार भाई. वेनम भाई कुछ और लिखे हैं क्या चैट में? मेरे को दिख नहीं रहा है. 네, 이렇게 해서 오늘 하루 마무리 지었고요. 윅 1도 이렇게 지나가게 됐습니다. 저희는 여기서 인사드리도록 하겠고요. 2주차 경기로 돌아오도록 할게요. 모두 좋은 밤 되세요. 감사합니다. बाल तो अच्छे हैं. डाम्बी के भाई, डाम्बी के. तुम क्या समझते हो? मैं लड़कियों को कम्प्लीमेंट नहीं करता भाई, सर पे चढ़ जाता. माय मिस्टेक. वेनम भाई की लास्ट चैट तो वो रेजर वाली थी. यस 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 यस, नेमिंग मिस्टेक. तब ठीक है भाई. मेरे को लगा वेनम भाई का अचानक चैट क्यों नहीं दिख रहा. Would it be RRQ Nongshim if we got home on time? I don't think so. No, I think this is a core part of this matchup, to be honest. But as you say, RRQ just kind of, it felt like they fumbled this game. For me, there's no two ways around it. This was their game to win, and Nongshim snatched victory from the jaws of defeat. Yeah, I feel like in contrast to the other series, I thought Boom was going to let that series slip through their fingers. Unfortunately, RRQ were the ones to do it in, the two Indonesian versus Korean derby matchups. I mean, I feel like it was fumbled on the second map split where some of these backline players for Nongshim really got involved on the defense, and they continued that through into Pearl. And in the same fashion that we saw in the last time these two teams faced, a big streak of rounds on the attacking side with that slower comp that Nongshim does bring to Pearl. मेरी एज 36 है अर्नव भाई, झूठ तो ना बोलो. अगर आपकी एज 36 है और आप अभी भी लड़की के साथ डेट पे जाने के बाद पे खुश हो रहे हो, या लड़की ने ये पूछ लिया कि डेट पे चलोगे, ये, और अगर 36 है और आपको ये नहीं पता कि क्लिनिक कौन सी ब्रांड है, ये क्लिनिक नाम की ब्रांड लड़कियों का फेवरेट है, तब तो भाई आप एक काम करो, लड़की के साथ जाओ ही मत. क्योंकि 36 साल तक तो इतना एक्सपीरियंस एक इंसान को, एक लड़के को हो जाता है कि लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं. तब आप एक काम करो, डूब के मर जाओ 36 साल के अगर आप सच्ची में हो तो. अर्नव भाई, टू बी ऑनेस्ट. अर्नव भाई एकदम पानी में, सॉरी चम्मच लो, चम्मच में पानी लो थोड़ा सा और उस पर डुबकी मार के मर जाओ.
So we have to say, both Ascension teams played today and they both won. Yeah. So maybe there's something in the water over there. And मारा जाएगा रे predictions correct. साला That is a mere coincidence. A clock is right twice a day, and so is Quack. Why would you take his credit away? He got 2 for 2 on the prediction, so all kudos to him, and you know, kudos to you too for the boom prediction. So close. So and you know what? You guys were the minority. Like all the predictions for today with Nongshim and with Boom Esports. So kudos to you and your belief in them, and it totally you know, panned out great. Persia is our match MVP. There was a little bit of अच्छा अर्नव भाई बाय द वे आपका वो वो वाला भी लिख रहा हूँ आपके भाभी जी को रुको चेन्नई वाला कहाँ है चेन्नई वाला I think this series he really was the rock that Nongshim needed. He was the one to bring them through a lot of difficult late round situations. Like I said, he was the one to get the ball rolling when they needed it on flipping things over onto that defense. So, you know, he's the big brother of the team, and he really held their hand through that series until players like Danby could get online and get back into form like we wanted him to see on Pearl. By far the most consistent in that series. I feel like a well-deserved match MVP. Oh, absolutely. Now here we are on the standings. This was a really amazing first weekend here at Pacific. I think it was really cool that we are seeing both T1 and DRX. अरे नहीं यार पहले आगे एज पूछ लेता हूँ नहीं तो रिप्लाई कैसा दूँ उसको लोचा हो जाता है क्या पता किसको बुरा लग जाए आजकल तो बच्चों के आगे के हिसाब से रिप्लाई देना पड़ता है सही बोले इट्स मी यार भाई आप मेरे चैट में देखे होंगे कुछ वैसे बच्चे हैं बोल दो कि उनको कम एक्सपीरियंस है तो ऑफेंड हो जाते हैं या जो भी XYZ चीजें बहुत टाइप के बच्चे होते तो यू नो यू कैन टेक रिस्क भाई ग्लोबल स्पोर्ट्स टॉप में है गाइस इंडियन टीम टॉप में लेट्स गो 8 पॉइंट के साथ टॉप में quantities and the big names of and orgs of Pacific that we're used to seeing starting off with a loss. We're going to have to see them bounce back a little bit, particularly in Alpha for me. Yeah, I mean, you say the boom win is massive today. It's me rap खुल के बोलो पे बात नहीं हाँ लिखो yes लिख रहा हूँ Snatching a win against such a big team like Gen.G is massive for this boom team as they move forward. They will feel much more confident about their play. India on top. Yes, Venom bhai. India on top. साइड में ना फ्लैग होना चाहिए बे मजा आता गाइस अभी नेक्स्ट मैच सीधा वॉच पार्टी हमारे 29 को होने वाली है डे 4 डे 5 डे 6 ठीक है बीच में हम स्ट्रीमिंग तो नहीं छोड़ेंगे अपन अपना स्टोरी मोड गेम्स और वैलोरेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे ऑब्वियसली बट ये वीक 2 का है देख लीजिए आप लोग शेड्यूल नेक्स्ट मैच में हम लोग का डे 6 में ग्लोबल स्पोर्ट्स का मैच है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बट उससे पहले T1 वर्सेस रेड फोर्स बहुत तड़कता फड़कता मैच है पीसी वाले वॉचर कौन कौन है मैं हूँ क्या बस Zeta 12 अर्नव भाई ऐसा ना बोलिए Zeta 12 नहीं है अर्नव भाई दो अलग अलग ग्रुप्स है दो अलग अलग ग्रुप्स के वो नीचे में है तो ये इधर है तो आपको लग रहा है 12 भाई -12 अच्छा -12 अच्छा वैसा बोल रहा हूँ अरे कोई बात नहीं यार भाई हंसते नहीं है एक टाइम पे हम भी ग्लोबल स्पोर्ट्स से नीचे हुआ करते थे यार हंसते नहीं 2023 में हम ऐसे ही नीचे थे पूरा सबसे दूसरी टीम हम पे हंस रही थी ऐसा फिर से गोटी गेम प्ले देखना पड़ेगा अरे साला देखो आराम से आते Thanks for joining me at the desk again, and the rest of you have a great night. And this is VCT Pacific signing off. चलो गाइस अपनी वॉच पार्टी तो हुई यहाँ पे खत्म अभी हम करेंगे गेम प्ले फुल ताबड़तोड़ रेडिएंट लेवल गेम प्ले
अब क्या खेलोगे? अब तो सोच रहा हूँ वैलोरेंट ही खेलने की, क्योंकि ये साला जो क्या ना, हॉकाई को मैं बोला कि भाई हॉकाई अवे आउट खेलते हैं, वो गांडू तो रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। रुको उसको फिर से टेक्स्ट करते हैं। ज्यादा काम बाकी है बहुत। ओके इट्स मी हियर भाई, बाय बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू। नहीं तो ऊपर वाले कर्ज देना चालू कर देंगे। ओके रात को जरूर आइएगा। ये हॉकाई गेम में नहीं है यार। आज खेला है क्या? हाँ आज खेला है। किसके साथ खेल रहा है भाई? तोरू। डोसा मेरी जान के टोटी, वेलकम वेलकम डोसा टू द स्ट्रीम। क्या हाल है डोसा? कैसा है डोसा? कैसा है मेरी जान? स्टोर पे क्या है आज? प्रेमोडियम। अर्नब भाई जो आप पूछते हो वही वाला देखो, जो आप पूछते रहते हो वो। रुको कलेक्शन में नाइफ में जाके प्रेमोडियम। हाँ कहाँ गया? नहीं। हाँ ये रहा, ब्लेड्स ऑफ प्राइमोर्डिया। यस यस, ब्लेड्स ऑफ प्राइमोर्डिया लिखा है। मैं सोचा पी में कैसे नहीं है। ये वाला जो आज पूछ रहे थे, ओमेन पकड़ा था जो अर्नब भाई का। अगेन जेंट्री गेम प्ले। भाई एकदम सेक्सी। और एक सेक्सी चीज देखोगे तो दिखाता हूँ। ये देखा, अब इसका इंस्पेक्ट देखना। चाइनीज फैन भाई, इतने सेक्सी सेक्सी है ना, क्या ही बताऊं। ये देखो एक मेंबरशिप बताना कब खत्म होगी? बता, देख के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। डैम ब्रो देख के बताता हूँ। अगेन जेंट्री गेम प्ले। अबे साले जेंट्री गेम प्ले बोलता है? इतना अच्छा खेलता हूँ फिर भी जेंट्री गेम प्ले।
अर्नब भाई मैंने लिख दिया है आपका वो वाला तमिलनाडु वाला, ठीक है। लेट्स सी अभी क्या होता है, रिप्लाई क्या आता है बताता हूँ। मेरी लेग्स, क्या हो गया तेरी लेग्स को? एक सेकंड, तेरा मेंबरशिप ना, तेरा मेंबरशिप एंड 9 दिन 9 days है तेरा मेंबरशिप तो। मैच फाउंड। क्या रिप्लाई है RyuK भाई चेन्नई वाले लाइन पे? अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं, अभी लिखा जस्ट, तो देखते हैं। ओ भाई Are you ready to have some watch or witness some heavy radiant gameplay guys? लोटस की मैप पे हम लेंगे। आज दोबारा गया था फुटबॉल खेलने, बिना वार्म अप करे खेलने चले गया। एग्स में दर्द, एग्स अंडे में दर्द हो रहा है, गोटी मतलब गोटियों में दर्द है? ऐसा कैसा फुटबॉल खेल रहा था भाई, गोटियों में दर्द हो गया तेरे? भाई मेरे को लग रहा है तू गलत फुटबॉल खेल रहा है भाई, फुल फीलिंग आ रही है भाई। Stand in my way. I dare you. यूज रेना फॉर दिस मैच प्लीज। डोसा रेना को हटा दिए हैं, अभी बैन किए हैं, रेना है ही नहीं गेम में। The enemy brought a spike. Kill them. रैशेज आ गए होंगे। ब्लिंकिट ऐड, अरे ऐड आ गया क्या? शिट। डिफेंस है पहले, तेज ले लिया। क्यों हटाया बीसी? मैं क्यों हटाऊंगा? क्या हटाया मैं? अच्छा क्यों हटाया? रेना को क्यों हटाया? उसके वजह से गेम में बग्स आ रहे थे, तो अभी टेम्पररीली रेना को हटाया गया है। फिर वो आ जाएगा वापस। कमिंग। Kill that shit. Base smoke. Enemy spotted A. Next. Concussing. One enemy remaining. इधर है। Spike switch. down A. Right there. Flawless. How did they spike? Reloading. Bro, there is not switch. There is doors. Broken. हाँ सॉरी। मैं डर गया भाई, स्विच तो मैं नहीं वो डोर्स बोलते स्विच बोल रहा है। बैड Bro, me and ISO will play C. Okay. I'm playing B then. Bro, why are you kicking me out? What the fuck? Chamber. साउथ के लोग आ गए। क्या बोला RyuK भाई? मैंने क्या बोला? छी मूड तौबा कर दिया वालों ने। क्या हुआ डोसा? बग फिक्स करे, एजेंट को हटा दे। अरे वो एजेंट को हटा के फिर वापस लाएंगे। यूरू के साथ भी वैसे ही हो रहा था। Multiples. Sova here, Clove here. You guys had to push from main, bro. You guys had to push from A main.
हाँ चेंबर आया था सो वेट I saw wait. 70 लो सोवा और 35 क्लोव बी के बाहर थे, रोटेट कर रहे थे। Bro, रेस कर दे सेज। मैं तेरे से गुस्सा हूँ। वही ब्रो। हाँ इधर ये आ रहे, सेज ये आ रहे दोनों। Bro, reload कर दे पहले। Yep, I just want to deal. Both on side. Spike थोड़ा रुकना planted. ओमेन, सेज को आने दे। One enemy remaining. Also side. Line up. He's 70 low. He's 70 low. Last player standing. Nice one. भाभी जी का मैसेज आया, देखा नहीं यार, रुको देखते हैं। Chamber will marry you, bro. गाइस टाइम टेबल बन गया मेरा, क्या टाइम टेबल? Fun सा और destinational wedding, court marriage, temple marriage. Zenfire, let's not complicate it. भाग के पहले थोड़ी इमोशनल वाले इमोजी अर्नव भाई, फिर ऐसा लिखती है कहाँ से सीखी ये बकवास लाइन? चेन्नई एक्सप्रेस। हेलो 3 कबूल है इस वक्त इसको। भाभी जी नेम, हाँ मैं सब अपना सब बता दूं। ओमन तू दे सकता है घोस्ट अपना? यस सर। फेंक दो मैं ले लूंगा। ये हो गया अभी यार रीटेक। चेंबर छोड़ दे, रीटेक कर लेंगे। देख क्या बैक साइड हो सकता है। Spike planted. Last player standing. नहीं का भाभी जी हूँ। अरे मैनम भाई कौन भाभी जी? कोई भाभी जी? Nice shot, bro. One enemy remaining. नाइस वन बे। क्या हुआ? वो लॉन्ग खेल रहा होगा। Barrier created. अरे नाइस वन बे। रुक भाई बोल दो आपके प्यारे दुलारे देवर जी ने सजेस्ट की। I need this. बाइक ये दे क्या? मैं तो बचाते आ रहा था लास्ट। सेम मैंने भी बचाया था। कोई ना, मेरा नेक्स्ट राउंड बाय आ जाएगा। सी Smoke bro, fast bro. डरो मत। God, let's fucking go guys, free as. One enemy remaining. Flawless. Nice one रे। एक गन फेंकना गेट की तरफ। Dies meaningless. Sage, the life मिला? you give. हाँ मिल गई। Wonder where it's taken. I need a gun. I should get it. Thank you. हाँ रुक भाई बोल दो आपके। अरे साला सच्ची बोलोगे? अरे Breach. तो आप बोले। यस सर। Nice stun यार, उधर 3 लोग stun हो गए थे। यप मैं वही वेट कर रहा था कब वो एंट्री मारेगा। तेरे को घूमने आ गया भाई स्मोक। रुक भाई आप उत्तर प्रदेश में रहते हो क्या? नहीं अर्नव भाई क्यों? पे मेरे को जिगल पिक कर रहा है। सुनना इधर खेल चेंबर, तू इधर खेल, मैं तेरे लिए स्टन और फ्लैश देता रहूंगा, तू वहां से पिक करके मारता। Only one though. 2 है। नहीं इधर हो रहा है, आजा 2 है। Bro. Take push. Play slowly. One enemy remaining. Bro, hold main. I'm holding C. What do you want me to smoke? Right there. Shadows traveling. I don't know if he'll come from our spawn. Someone has to watch our spawn. I can't watch twice. Nice shot. रुक भाई, because I'm try my luck now. ये वाला लिखता हूँ। Surrender. Keep swinging.
ये वाला लिखता हूँ मेरे को, फिर वो बिहार वाला लिखूंगा। You want to play? Let's play. ये आ रहा है I guess. फ्लावर बन गया भाई यार, सपोर्ट आया नहीं। वो एबिलिटी भाई ये क्लोव मरा नहीं कैसे? क्लोव के जगह कोई और मर गया मेरे हाथों। वो हरामजादा क्लोव ही बच गया। My turn. Not your best. Last player standing. I thought he was dead. Nice try. I survived obliteration. I will survive them. रुक भाई, अगर मेरी इन लाइन से भाभी जी पट गई ना तो मेरे को चुपचाप से 200 पेटीएम कर देना। भाभी जी और फिर पटना, भाभी जी फिर पटेगी कैसे? वो पटी ऑलरेडी है तभी ना भाभी जी बनी। I want exact stun it there. Okay, okay. इधर से stun करो या फिर इधर से, because that motherfucker jiggle peek. Breaking them. Flash. Concussing. Flash. यहाँ पे रहो ना। Right there. Show me a target. Enemy spotted. Off your feet. 1v guys, 1v. Nowhere to run. Nice try. से जाके यहाँ पे दोनों इधर है बी सी सी सी। You can rest here, bro. या मेन पे ही मरा हूँ मैं। Spike planted. देख मेरा गन पड़ा है वहीं पे। He's on it. वॉल कर और रेस कर दे। Switch gun, bro. Your duty is not over. वाह, क्या वॉल किया है भाई तू। Last player standing. अरे नहीं, wall. 78 है। फिर 1 HP है, मेरे से भी 40 का है। ये वॉल टूटी कैसे? पता नहीं। अरे वो वॉल के ऊपर ही रिवाइव हो गया ना, तो वो ऑटो ब्रेक हो जाएगा। मैं ऐसे वॉल देने बोल रहा था, मैं ऐसे वॉल देना था, मैं इधर मरा था, तूने टेढ़ा वॉल कर दिया। कोई ना, नहीं वो टेढ़ा वॉल उसके लिए कि साइड में स्पाइक लेने की जगह रहे। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ और कैसी बात? सारी गलती ब्रीच की। ब्रीच किया? हेलो, मैंने क्या किया? एस मार सकता था। Nice try. और एक है क्लोव नियर बाय। दो है क्लोव और जेट दोनों। उठा ले एक को। No distractions. कवर नहीं दे पाएगा। Last player standing. वही पीक मत लो, सुनो उनको ऑफ कर रहे थे। अरे हर राउंड पे चेंबर आता है तो पूरा अग्रेसिव पीक ले ले। कच्ची बनियान पहनो अर्नव ब्रो बेस्ट। क्यों? मेरा प्लान था चेंबर को। रुक भाई, टुमारो इज माय डेट, बोलो क्या पहनूं? मेरा वेरी गुड वॉली भाई। अच्छा वॉल कच्ची बना। वाह पॉकेट का स्टार भाई, क्या बोले हैं। Keep up the pressure. Bro, मैं इधर खेल रहा हूँ प्लीज, so if you can still stuck. Oh, अच्छा अरे तो मना क्या सेज ब्रो। स्मोक दे यहाँ पे अमन। 140 लो है, टीमर 140 लो है। दोनों स्मोक यूज इधर से। अच्छा दोनों। सोवा का ड्रोन आया था इधर।
कहाँ रोटेट कर रहे थे? कौन? ये I heard 2 in A already. Okay. Tree hold कर तू. Op. Chamber is op. Okay. Bro, they are committing A, bro. Last player. दो उठा सकता था. Spike planted. ओमेन भाई क्यों पीक किया यार? रुक जाते यार, मैं आ रहा था, फिर सप्रेस करते दोनों को. ये भी था ना. I had no choice but to pick one of those angles. अच्छा. इधर था ना. इससे दिख जाता ना. जेट ट्री हो सकता है. सोवा ऑन साइट. चेंबर ऑफ कर. ये पहला पिक मत दो, ये वाला. Time to stock back up. Do a wall or whatever. पीछे खेलो. वो स्लो खेल रहा है, नर्फ कर रहा है. इतने गोटी सेंटिनल यूज करते हैं भाई ये लोग. वही ना, क्या बोले. कल की डेट के लिए पॉकेट का स्टार, उसके ऊपर भी कुछ पहनना पड़ेगा ना. डेट पे जाता हूँ कोठे में. Let's have some fun. वो क्या बोला भाई. चेंबर ए लॉन्ग. नाइस 20 चलेगा. 2 more. Nice. ये लॉन्ग चेंबर है. Not in yet. Didn't take chambers. No smoke. Smoking B. I'm a short. Concussing. One in. Running. There. Bolts ready. Spike down B. One close red. Last player standing. चेंबर 34. लेफ्ट में ऊपर. हाँ तो क्लोव था. यार क्यों नहीं पता. कोई ना अपना इको राउंड था. I didn't bring a snack. चेंबर तू कहाँ पे था? Did anyone ये bring a चेंबर मेरे snack? पे यहाँ से फायर कर रहा था. मुझे No, यहाँ I'm से not able देख to. रहा था. I'm not able to. मैं सोचा कि उसको मैं कार्गो पैंट्स और व्हाइट शर्ट पहनता हूँ. ओवरसाइज्ड कार्गो पैंट्स. क्रीम कलर की कार्गो और व्हाइट शर्ट. क्या माल लगूंगा? अर्नब भाई एकदम माल नहीं लगोगे. तौबा तौबा तौबा. अरे बच्चे लोग कार्गो पैंट्स रियली. कार्गो पैंट्स मतलब पहनते हैं लेकिन नॉट डेट में. Barrier clear. सेज तू यहाँ पे रह के तू ट्री देख. यहाँ पे आ. Right there. इधर से वाला मैं देख लूंगा. Break. Broken. स्टेयर्स जा सकते हैं. No smoke. They found my trap. B में. अच्छा नहीं होगा तो. इधर होंगे, पुश्ड होंगे. You had your fun. My turn. एक A7 चला गया पीछे. अरे माँ का. उधर ही है ब्रो. इसमें तो मारो ब्रो. Spike planted. हील था ना उसके पास. फुल हील. चलिए गया. क्लोव इज लो. Close 120 है. Last player standing. Got 3. One enemy remaining. बैक साइड था लास्ट सीन. It's ready. भाई ये क्या अंधा चला दिया गोली इसकी माँ का. सुनीता देवी जी आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है. चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. क्या हाल है? तो क्या पहनूं? अर्नब भाई आपके पास डेट पे जा रहे हो ना. कैंडल लाइट डिनर होता तो फिर मैं बोलता थोड़ा सा फॉर्मल, समझ रहे हो, पूरा वैसा वाला. तो इसमें जा रहे हो घूमने तो ऐसा वाला डेट में.
आप स्नीकर्स पहनते हो कि क्या पहनते हो? Let's play. बूट स्नीकर्स क्या पहनते हो? Off your feet! No distraction. Spike planted. Chamber is on ult. So nice one. Last player standing. Nowhere to run! भाई यार कुछ अच्छा तो क्या पहनूं? मेरे पे सब है, कुछ भी पहन सकता हूँ. तो आई वुड से चिनोज पहनो, चिनोज पे स्नीकर्स पहनो और ऊपर कोई अच्छा सा कैजुअल सा शर्ट पहनो, ठीक है? पूरा लेकिन मैचिंग होना चाहिए आपके वो स्नीकर्स के साथ. चेंबर गुली कर रहे हो हां ब्रो, गुली किया जा रहा है मुझे. बदला ले मेरा. एनिमी आरएनजी मार रहे हैं यार. अभी मैं और पे आरएनजी करता हूं. अच्छा उधर मत जाओ अभी के लिए, इधर आओ डिफॉल्ट एयर नहीं करेंगे. नाइस वन. पीछे आजा. हील ब्रो. Healing you. Cover going out. Shadows traveling. Reloading. सोवा भी उधर ही है. 10 सेकंड में स्मोक है. Bro, he's 60, that motherfucker. Kill him, bro. Knife him, if possible. He's in link. Nice one. Nice one, nice one. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. We are Valorant. We are fighters. चिनोज भाई कुछ कौन सा कलर पहनूं? स्नीकर्स कौन से कलर के हैं वो बताओ. नाइकी क्या है? कुछ जॉर्डन है क्या? चेंबर फर्स्ट शॉट इससे ले ले. मेरे को I can stun for you guys if you want. मैं ये वाला मैं सुनो grab my shield and I'll pick. मैं ये वाला स्टन करता हूँ, ठीक है? करो. मेरे को अगर पता था तेरे पे वो स्किन है तो मैं वही लेता. Cover going out. Got the spike. I'll put my trap. Come on. Spike planted. बैकस्टैब हो सकता है. Enemy spotted. C. Neutralized. Water it. One enemy remaining. Nice one. Bro. Sorry bro, I didn't listen. देख नहीं रहा था मैं. And fucking RNG कर दिया. मेरे पे 2 फैब्रिक के शर्ट्स हैं. पिस्ता बोल सकते. पिस्ता का स्नीकर्स पिस्ता के हैं. क्या बोल रहे हो भाई? कौन से कलर पूछा बे? फ्लेवर नहीं है? अर्नव भाई क्या सीन? कलर पूछा हूँ, फ्लेवर नहीं. डेट पे जा रहे हो एकदम ही. वहाँ पे स्टन वगैरह आएगा शॉक डार्ट तो देख के. मेरा टीपी मैं स्पाइक लेके आजा. Sorry bro, I throwed this round. Dead. Nice pick. सी इज क्लियर. सेज अगर आ सकता है. Nice one. सी आजा. सी कम सी. One enemy remaining. Go see bro. Come see. He was A-link.
हम लोग की गन ले सकते थे अपन। Nice round, guys. We have buy now. We have buy. किधर है? 65. 65. Hold. वाक 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 वाक। Don't go there. Don't go there. इधर है तेरे कांटेक्ट पे पिक लूंगा। क्रॉस कार्ड। Nice. not Wow. fight us. अरे बुलडॉग था उधर। अरे nice. हाँ इधर ही उधर मारा था ना चैम्बर। Friends of ours are not too friendly. लड़कर इनिशिएटर भाई बोनस राउंड पे अब क्योंकि गन्स अच्छे नहीं होते तो वैसे करके ही यू नो ऑफ गार्ड पकड़ सकते हो। यप रिक्वेस्ट करो। I need a gun. Thank you. शी लाइक स्ट्रॉबेरी भाई ऊपर की चैट्स पढ़ो ना। एक सेकंड मेरे पे स्निकर ब्लू व्हाइट और ब्लैक कलर के हैं। ब्लू व्हाइट और ब्लैक। अरे देखा तो उसको। अरे that's why. Full threat. स्टन दूं घुसोगे क्या बोलो? नहीं बैक स्टेप लगाना। सोवा ड्रोनिंग तोड़ ड्रोन तोड़। Making cover. Reloading. सुनो मैं राइट साइड स्टन कर सकता हूँ घुसोगे तो। I have this fight. Concussing. Wall raised. One seal. For you. सोवा इधर है। There. Here. I'm watching that. Enemy spotted. Defender spawn. One enemy remaining. Go heal. Heal है क्या? हाँ ऊपर पड़ रहा हूँ एक सेकंड। If you must fall, then fall near me. एक सेकंड ऊपर वाला पड़ रहा हूँ। मैं ना से था वैनम शायरी मिस भाड़ू। अच्छा वैनम भाई हाँ मैं अभी देखा आपका शायरी था। रुको 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 हाँ। एक सेकंड पढ़ रहा हूँ रुको एक सेकंड बस। पिक्स पे खेलो वैसे ही स्लो। सी पे जाओ सी पे चेंबर के साथ पिक लो। You want to play? Let's play. पूछेंगे। चार बंदे क्लो जेट और सोवा और ब्रिज। 4 बंदे गो सी मतलब जो भी करना है जल्दी करो। टी पे डाले। You can take the orb. वो वापस आ गया। अरे देखो भाई कितना स्लो रिफ्लेक्स है इनका। Nice one. कर ले इसको। चैट ना Healing. Reloading. I have this fight. यादें की कीमत वो क्या जाने जो खुद की यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिंदगी जिया करते हैं। ओह Bro is here. सैक्स पकोड़ा Spike down. C. सैक्स पकोड़ा ले। It seems these strangers want me dead. भाई सुनो इस चेंबर ये ऑफ कर रहा होगा सी पे। पहले मैं इसको स्टन 1 कर रहा हूँ इसको मारते पहले। बी पे 2 बंदे इधर देखो इधर होल्ड रखो ठीक है। सेज और आइसो भाई हाँ आप मेरे साथ आओ। चेंबर तू भी इधर आ मेरे साथ। अरे आज भाई यार बादल भाई वहां पे कर रहा था राइट क्लिक हुआ नहीं पता नहीं। आजा चेंबर। गेम ऑफ आइसो हेलो शील्ड लगा Spike down. C. भाई आइसो पहले पीक ले ब्रो तेरे लिए स्टन कर रहा हूँ मैं। Bro, I peek. अब पिक मत कर। सोवा और चेंबर सी पे।
You guys go A. Let's play. Go A, chamber. That's a good spot. Beautiful sex पकोड़ा. भाभी जी क्या बोली? I have the spike. अरे आपका वो लाइन ही भूल गया मैं, रुको. यूपी वाला के बाद क्या था? Barrier created. Spike planted. Last player standing. देयर से फकिंग मिनट. कौन सा? वो उत्तर प्रदेश वाला. लिख दिया. अभी देखता हूँ रिप्लाई क्या आता है. अच्छा इधर आओ. आइसो भाई इधर आओ. आप वो पहले पिक लो. आओ पहले पिक लो. मैं इधर स्टन कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला एरिया स्टन कर रहा हूँ. Behind me. Only me and ISO will pick. Yep. Concussing. हाँ वो टीपी कर लिया. रुको. Cover going out. उसको उठा ना, चेंबर को उठा. इधर होगा. Right there. No distraction. Stealing sight. चेंबर ही आया. Nice. My ult's ready. Reloading. प्लान कर. एक वाटरफॉल आया, साउंड आया मेरे को. वाटरफॉल देख सेज, वाटरफॉल देख ऑफ से. 8 सेकंड में स्मोक है. आया वाटरफॉल आया, मारना सेज. Off your feet. Shadows traveling. Tremor. One enemy remaining. पिलर गाइस. Oh, side. Wait for Last chamber. player standing. Student expert. भाई अगर तू वहीं पे वो मरता ना, तेरे को मैं वेजिटा बना देता अभी. अरे नहीं. आप बिहार से हो गया तो पटना. नहीं वो उत्तर प्रदेश वाला लिखा. और रुको रिप्लाई क्या था देखते हैं. आया नहीं अभी तक. यार बाकी लोग कोई चैट में है, बार बात करो. सेम आओ. आइसो और चेंबर ही पीक लो खाली. Get out of my way. Concussing. Cover going out. There are 3 इधर है. Right there. तीन है. वॉकआउट. Reloading. पीछे आओ ना, पीछे आओ. कोई है ओमेन? ये आओ गाइस, ये आओ. फाइट मत लो, ये आओ. Clear for now. Oh, Jet fucking pushed on me, bro, with his knife. ओमेन स्मोक कर. Right there. Smoke नहीं है. 3 से आदर्श. I'm holding flank for a while. Smoke में बहुत टाइम है. 15 सेकंड. Used. पता है उनको. Spawn यार ये आ रहे. My ultimate. Barrier created. Reloading. Last player standing. 122 I believe. 120 chamber. He's the one breaking the wall. गाइस मैं जब बोल रहा हूँ आप लोग ये आओ. व्हाई आर यू गाइस फाइटिंग हियर? They weren't fighting bro. मैंने इधर एक पिक लिया ना.
was going away, and I was giving cover to Sage because either Jet था. I know what must be done. Same how ISO and chamber come, and Omen and Sage, you guys go B and like try to enter B, but please don't die. अगर नहीं हो रहा है पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं. I have no Vandal. I'm playing with Guardian. Take this, take this, take this, take this. Don't let up. Smoke चाहिए हो तो बताना. A push maybe. Over there. Reloading. Breach stun आया था एक बार. रुक जा ISO. जा मत. 1B. Clearing out. He's been blinding. Enemy amateur. 1-1 for Clove. Behind pillar. भाई आके बचा सकते हो भाई. अरे bro, how you guys are dying, man. Last player standing. भाई तुम लोग कैसे मर रहे हो ब्रो? मेरे पास गन डिसएडवांटेज में मैं मार रहा हूँ. एटलीस्ट स्टे अलाइव ब्रो. Into battle. I'm not tired. Are you? Come will hit me. RyuK भाई गुजरात वाली भी लिखना. अरे नहीं वो तो सबसे कॉमन है, वो तो गैसेबल है बहुत. यूं तो आदत नहीं मेरी पलट कर देखने की, तुम्हें देखा तो लगा बस एक बार और देख लूं. अरे He got dinged. ओके होल्ड. ओमेन जब एंट्री करेंगे तब स्मोक दिया कर यार, इतना जल्दी तू स्मोक दे रहा है, तो जब चाहिए होगा तब नहीं रहता. It is 115. हाँ सोवा यहाँ डार्ट किया था खुद भी. यप सी देख कैसे जाके ले मत जा. रुक Sage. एक किल स्मोक. सुनो ए चलते हैं, ए जाने का साउंड देते हैं. विल देन ब्रेक द वॉल एंड कम बी. ओके बस आइसो तू बी मेन रह. ISO has ulti can ult someone. यप अभी नहीं जब मैं बोलूंगा अभी मत रख. अभी कर. चेंबर आजा. ओ मैं इधर आ भाई. स्टेयर्स स्मोक करो. सेज 30 seconds left. रुक जा. चेंबर छोड़ दे. आजा इधर आजा. नाइस पीछे. Cover going out. Concussing. Shadows traveling. You had your fun. My turn. Making One enemy remaining. 10 seconds. उधर ही है वो. I am not cleaning this up. ब्रीच स्मोक में मारा किसको था फिर पहले? वो चेंबर को. अभी सोवा को सॉरी. नहीं चेंबर साइड में मार दिया. वो उसको बचाने के लिए सोवा आया ना दौड़ के स्मोक के अंदर. ले ये ले चेंबर ये ले. मेरे को गन दे. आजा सी लॉन्ग आजा. चेंबर होल्ड करेगा. You want to play? Let's play. देख के रुक जा. और बुटा Bro, C will not happen, bro. We are losing there. यप और बुटा. और एक बंदा और बुटा जिस पे नहीं है. होल्ड. वो ए पे बैठा है लगा के. और सी पे नहीं है मतलब. अग्रेसिव एंगल होगा कोई. आइसो अकेले मत जा.
हाँ अपना ट्रिप इधर लगाया और उसका एक्टिवेटेड मतलब वो एपी कर रहा है। हिल दे। अच्छा ठीक है कोई ना। होल्ड विल होल्ड 37 seconds. अच्छा बी चलो ना, मैं अल्ट मार रहा हूँ बी पे, आओ। रिवाइव दे सकता हूँ उसको, कवर करना। They went back, bro. You ult link or their side. Go behind their back, bro. अमन भाई Stun set TP again. Take heaven. You have to cover. Reloading. मेरे को हील देना, सेज मरना मत, पीछे रह। इधर स्लो पे गाइस आई एम 10 HP। 1 second होल्ड कर Hold. One enemy remaining. Yep. I have flashes. Peek on my flashes. Right side. आराम से नहीं, one. Peek on my flashes. Stay here. Reloading. Last player standing. टाइम वेस्ट कर। 80 लो है। नाइस। भाई इनको मैं पीक ऑन में फ्लैश बोलता हूँ, इंग्लिश समझ में नहीं आता। Match point. खुद पीक नहीं करके मेरे को पीक करना पड़ रहा है अपने फ्लैश में। Breach by him, bro. Breach. Thank you. अच्छा बाय। ए कंट्रोल लेते आओ, मैं ये स्टन दे रहा हूँ। स्टेयर्स टू स्मोक दे मैंने। हाँ आजा आइसो, आजा तेरे को और दिलाता हूँ सीखा। जल्दी आ Stealing sight. एक साइड को स्मोक किया। Off your feet. Too late. सेज हमें वाह। अरे तो कुछ कर रहे थे नहीं। ब्रीच है साइड पे ब्रीच है, रोटेट कर दो ना, रोटेट कर जाओ। One enemy remaining. Nice. Spike दे, स्पाइक दे इसको, स्पाइक दे Spike drop. और दौड़ सी दौड़। Watch them run. You also run, Sage. 30 seconds left. मेन चले जा। Spike planted. सुनो मैन, तू ये खेल सकता है क्या? ये खेल। क्या? यू डोंट पीक, लेट सेज पीक फर्स्ट। उस पे स्मोक नहीं है तो अच्छा क्लोज स्मोक करेगा ना। Side. Cover going out. Not able to see him, bro. नाइस वन गाइस, वेल प्लेड। Attackers win. We move forward. ओह चेंबर पे जो फसा हगा है ना भाई, कौन? मैं तुम्हारा भाई सेकंड फ्रैगर है 25। ठीक है, हगना जब हगूंगा तब बोलना। तुमने फ्लैश गलत दिया ब्रो, सेज भी फ्लैश हुआ। लॉल डब्ल्यू टी उसमें सेज कैसे फ्लैश होगा? अच्छा वो साइड बाय साइड टर्न नहीं करके रखा था। मैंने फिर मैं फ्लैश दूंगा कहाँ पे? गाफ में, क्योंकि इस तरफ वॉल में दूंगा तो वो फ्लैश होगा नहीं, और इस तरफ दूंगा तो उसके पीछे फ्लैश होगा। फ्लैश मेरा सही था, मेरे को ही पीक लेना था, वो अलग बात है। चलो शायरी अगेन मिस। इतना प्यार करने के बाद भी जिसे मेरे प्यार समझ नहीं आया, उसे मेरी खामोशी, अकेलापन और दर्द क्या ही समझ आएगा। वैनम भाई ये शायरी नहीं, एकदम लाइफ फैक्ट्स बोल रहे हो आप, एकदम लाइफ फैक्ट्स बोल रहे हो, लाइफ फैक्ट्स।
एकदम लाइव फैक्ट्स बोली जा रही है। एक क्रीम कलर की और एक पिस्ता कलर की चीनोज है। क्रीम कलर की चीनोज है और कौन से ब्लू ब्लैक और कौन से स्नीकर्स थे एक बार बताओ, अभी अर्नब भाई हम लोग बात कर सकते हैं। क्रीम और पिस्ता कलर की। ओके Match found. गाइस लाइक कर दीजिएगा, जो भी स्ट्रीम पे नए हैं प्लीज मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम। ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ब्लू ब्लैक एंड मतलब कोई भी मैचिंग तो नहीं है। एक काम करो, क्रीम कलर के वो चिनोस पहनो, ऊपर ग्रे शेड में कुछ शर्ट है, ग्रे वाइट वाइटिश ग्रे में, ग्रे बट इन वाइटर टोन्स में ऐसे कुछ शर्ट है। ओमेन यूज करना। हाँ तो फिर वो वाइटर टोन वाला ग्रे यू पहनो, क्रीम चिनोज वाइट स्नीकर्स वो पहनो, क्योंकि आपके स्नीकर्स और शूज मैच करने वाले आसपास भी नहीं है कलर कोड के, तो कोई बात नहीं। वाइट स्नीकर्स ऑलवेज फॉर द रेस्क्यू। Stand in my way. I dare you. सबसे माल शर्ट है मेरा वो। एक्सेसरीज एक अगर चेन वेन तो दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर चेन देखना होता तो फिर आपको मैं वो ये पहनने बोलता, नॉर्मल ब्लैक कलर का इधर क्या बोलते हैं उसको, अंदर जो पहनते हैं गंजी बनियान ने, जो भी बोलते हो तुम लोग। हेलो बनियान वैसे ब्लैक का पहनने बोलता, ऊपर ऊपर एक ऐसा शर्ट डालने बोलता तो उसमें चेन दिखती, तो चेन मत पहनो, घड़ी पहनो, इट्स गुड। एक घड़ी ब्लैक कलर की है, सिल्वर कलर की, लेफ्ट साइड में। मैं लॉन्ग दे रहा हूँ यहाँ पे। चल मैं सीवर पे वो दे रहा हूँ, जल्दी जा। ओके ओके मैं फिनिक्स तू लॉन्ग पिक कर, मैं स्टन दे रहा हूँ। Missiles away. Concussing. Launching smoke. Stim beacon here. यार एकदम से आ गया वो। एक स्मोक में। Not in phone, not in तो डेडलॉक है, उनको मैं देखा ही नहीं बातचीत के चक्कर पे। I'll take it. Last player standing. That's a kill. Slow, we'll push slow. Killing them is easier than all these radio nights. भाई डेडलॉक ने अपना वो बिठाया था, फिर योरू तो क्या चलो लेट्स रश। नो रश। भाई इको राउंड है, कुछ जाना। चलो आओ, मैं पूरा बैक साइड मॉल कर दूंगा। चलो ओके, फिनिक्स फ्लैश करना है। आगे जाओगे फिर करूंगा। Smokes down. ओमेन। All missiles away. Okay. Blue ओमेन है। यार कौन है? Last player standing. Spike down B. 78 हेड खाया यार। मेरा भी ऐसे ही हेड खा के रुक गया वो।
ब्रीच 78 है. One enemy remaining. That's 3. Nice. They gave me a choice. Nice. Launching missile. You're better. You're better. The fools gave us a window. Smash through it. Your classic is better than that. Classic diff. सुनना तेओ तू अपना ना ये मॉली जो कर रहा है इधर कर. मैं स्टन भी इधर कर रहा हूँ उसके पास. इधर करो बता मॉली कहाँ करो बता. देख एक तो शॉर्ट पे कर रहा है, दूसरा जो लॉन्ग पे कर रहा है वो इधर कर. वो जो रेड मार्कर है वहाँ पे. ठीक. ड्रोन कर रहा हूँ. नाइस नाइस देखा. तेरा एक शॉट है शॉट. ठीक है. तुम्हारा भाई का कॉल आउट देख रहे हो. हमारा जेट ये I'm watching city. One enemy remaining. Is there any gun? हाँ ब्रिज सिटी जेट. बराबर है. नाइस बराबर लाइनअप. All missiles away. Wait. Flawless. Nice. Make peace with yourself before you pull. टाइटन पहनो कि टाइटन मतलब एनालॉग पहनो. ये साला स्मार्ट वॉच एकदम मत पहनो. चोमटिया लगोगे फिर. अर्नब भाई टाइटन. यस टाइटन. How are you bro? सेम आओ फिर से. जेट को किसी ने टैग दिया था क्या? टैग नहीं, मेरा स्टन पे वो हुआ था ना. टैग था. Right, take the spike. Let me run. ऊपर चढ़ा हुआ लेफ्ट में. 40 ऊपर है. ड्रॉप डाउन. गोस लेफ्ट. Reloading. अरे फिनिक्स घुसना. अरे वाह. क्या कर रहे हो ब्रो? हील कर ले. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. जल्दी आना थोड़ा और. अच्छा सुनो सेम करो. मैं स्पाइक लेके सी जाऊंगा प्लांट करने. ओके ओके. ब्रिम एक स्मोक ही देना. हेवन स्मोक देना इनको. ठीक है. एंड फिर मेरे साथ आ जाना ब्रिम. फिनिक्स मेक श्योर जब मैं बाहर आ रहा हूँ तू भी आना. साथ आना. फ्लैश भी करना. आजा ब्रिम. स्मोक करके आजा. आएगा योरू. क्या भाई मरना नहीं है ब्रो तुम लोगों को. डेडलॉक इज बी. आजा सी आ जाओ. सी पे योरू. सिटी है. प्लांट कैसे आरएनजी करता. Spike planted. Sit still. Nice. Spawn. Target down. Both spawn. Concussing.
Play safe. Play safe, play safe. He's low. Flash out. One more flash, bro. One enemy remaining. Last player टाइम वेस्ट standing. कर। ओ नाइस। भाई ब्रिज एक बात बता, दोनों सिटी से आ रहे तो तू उधर क्यों देख रहा है? अरे नहीं साउंड आया ना उधर से, उस तरफ से भी इसीलिए। एक ही नहीं आया यार। Need a drop. Need a drop. साउंड आया था ना मेरे को, नहीं आया था। Can someone by me? सिल्वर कलर की गोल्ड, सिल्वर सिल्वर। Thank you. 79 की असिस्ट किसको लगी थी? यूरू को। कहाँ पे? अच्छा वो। Get out of my way. Throw missiles away. Drone going out. Short. Launching smoke. Drone is down. रुक जा रुक जा रुक जा। Grenade is live. Reloading. Backside. Take shot. There. Multiple Last player standing. Blinding. Dusted. Euro 2 eh. Thrifty. Anti. I got your backs. Just you Don't know, look the short from the front. No, we can save. Safe. Sheriff skin, sheriff. And someone. I need a drop. Tuck. Give me a मेरे पास लेदर बैंड्स भी हैं पैटर्न की वॉच के। Need a drop. चेन वाले Let's pick पैटर्न, all- चेन वाले Alright, चेन वाले। Let's pick together. Watch this. बॉडी खाया मेरे से, शेरिफ बॉडी। बैक स्टेप आ रहा होगा। Checking garage. Locating targets. Drone is down. होल्ड कर वहीं पे, जेट वहीं पे होल्ड कर। Concussing. Taken down. My Nice. ult's ready. One front side. नाइस वन। मेरा पास मिसाइल है, कहाँ मारूं? ये गैराज विंडो मार। Reloading. All missiles away. Nice, चलो। Flash out. One enemy remaining. Come. Good one. Nice jet. बहुत बढ़िया। I'm overheating. इधर ही है ओए। Spike down. C. Thrifty. नाइस राउंड जेट। No charges left. मैंने लिपस्टिक के साथ थोड़ी चॉकलेट भी फेंक दी गिफ्ट बॉक्स में, सही है, अच्छा है। उसके फेवरेट चॉकलेट ही डालना, ये एक्लेयर्स मत डालती हूँ। Trade. Thank you. Gun here. अच्छा सुन, यहाँ पे डालना ओए। तेओ तेरा एक मिसाइल। Let's fly. हाँ ठीक है चल। All missiles away. वो दूसरी साइड है इस बार। ठीक है, वी हैव 5v4। रुको। ब्रिज भी आ गया, बी ब्रिज भी आ गया। अरे घुस जाओ चलो। शॉट चेक किया है? Yeah. Hard clear. Locating targets. Short clear. तो ब्रो आना स्पाइक लेके। आ रहा हूँ भाई, बी पे था। अरे भाई यार। पैर में पैर लगा है भाई, फिन्स नहीं। Planted. One enemy ओ remaining. भाई क्या सेक्सी स्किन। Hey. ओरियो सिल्क है वो हार्ट है। Let's go.
हार्ड इन द मिडिल वाली कर सकते हो, मतलब अब वो तो थोड़ा मेरे को क्रिंज लग जाता है, बट चलेगा। लवी डवी वाला सीन है, चलेगा। सेम इधर मिसाइल दे। Por Dios, someone get this Spike, spike, spike. I'm dashing to Suva. तुम डालना ये पे। All missiles away. नहीं गराज पिक कर गया वो। आजा स्पाइक इधर पे। One is backside, one is backside. Nice. Euro somewhere, I think. Nice. Easy. Nice. Side मिल गया, care backstab. Plant the spike. बैकस्टेप देखो, जेट आ सकता है। अच्छा ओमेन इधर है। ओमेन सिटी। Reach your all utils. यप ये ओमेन के कौन? Last player standing. 105 सॉरी Open up the sky. माय बैड यार, मेरे को इतना जल्दी आ जाएंगे एक्सपेक्टेड नहीं था। Clutch. भाई ब्रिम तुम्हें क्या कर रहा है? ब्रिज ब्रिम नहीं। Just swapping in the fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. Phantom. यार नर्वस है। Thank you. ठीक है ब्रिज तेरा गोल है। सारे राउंड में तेरा एक भी यूटिल बाकी नहीं होना चाहिए, पूरा यूज करना है। ओके ब्रिज गराज पे करेगा? हाँ करते हैं। ठीक है जो और डैश। Get out of my way. All missiles away. अरे वो एंट्री पिक करता डैश नहीं करना। Come on, let's go. This is how we end. Launching smoke. Enemy spotted. भाई तोड़ ले मेरे साथ कोई। तो अकेला। भाई Spike down. C. राइट से आ गया। जेट 105 बी। One enemy remaining. बी 100 नाइस वन। Sorry, Jet. Reloading. तू Ruin their day. समझा तक कसला नहीं। कोई उसके साथ वॉच तो तोड़ो। देखा गुड पूरा यूट कर दिया। गुड। फैंटम। I need a drop. इधर आ जा तेओ, फिर से अपना इधर डाल। अच्छा नहीं इधर डाल लेफ्ट साइड डाल। लेफ्ट साइड हां ठीक है, जेट तो राइट टिक कर। This is gonna be fun. लेफ्ट हम ये सब कर रहे हैं। All missiles away. ऊपर लेफ्ट साइड ब्रीच है। Reloading. जेट इज बी बैक साइड पे। Worthless. Nice. Two blood. I'm watching close लेफ्ट साइड। अरे यार ये सी पे सिलोंग पे है और यू विंडो पे ब्रीच। अरे यार फिनिक्स। Watch your eyes. हाँ दोनों सी तरफ है। All missiles away. I ultimated spot. Last player standing. पीछे आ गया पीछे। One enemy remaining. One back. Launching smoke. Grass. Thirty seconds left. सीसीटी प्लांट कर। Thrifty. नाइस ट्राई। Last round before the switch. गोटी ऊपर, गोटी लाइन मिस कर दी। क्या गोटी लाइन? Need a drop. ऊपर आपका चैट तो नहीं दिखा रहा।
Thanks. दियो ब्रिम, ये दियो वैंडल। तेओ इधर आजा, इधर कर, इधर एक कर, Someone watch short push. इधर एक कर और इधर एक कर। Take. I'm dashing to All missiles away. Smoke's down. योरू था। Drone going up. Who's next? रुक जा, होल्ड ब्रिम, मत जागे। अरे ब्रिम मना कर रहा हूँ ब्रो। Spike down A. 3 पीछे आ जा। Last player standing. पीछे नहीं आ सकता था यार। अरे ब्रिम बोल रहा हूँ रुकना क्यों जा रहा है ब्रो? कॉल तो सुन ले ब्रो। Switching sides. सही चल रहा होता है, एक ऐसा बीच में प्ले बनाओगे जिसमें भाई पूरा टीम की मार चल जाएगी। Stick to your roles and we'll crush it. Come. तू lobby पे stand कर, take the ult off. No, sheriff can bridge. I need a drop. Bridge, come here. Bridge, come. मैं स्टन दूंगा ना, स्टन दूंगा। नहीं, तुम्हें ult off लेना है, तुम्हें, not me. मैं तुम्हें कवर दूंगा, तुम्हें लेना। तेओ इधर अपना मिसाइल्स फेंक पहले। Let's go. कैसी आदेशी। यप देसी। Spike planted. घुसोगे तो मैं स्टन दूंगा। बैक साइड स्टन दे रहा हूँ। हट भाई। Last player standing. अरे ये लोग इतना जल्दी चलाते हैं ना। एक से कैसे मर सकते हैं भाई? बॉडी ब्लॉक हो गया। नसीब की बात है, कोई नफरत करके भी प्यार पाता है, कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। All come here, everyone come here, we'll push it. मैं और ब्रिज लॉन्ग से स्टन देंगे, बाकी सारे टूर जा। मैं नहीं, मैं इधर से स्टन दे रहा हूँ शॉर्ट से। भाई तुम्हें ऑल्ट टॉप लेना है। मेरे साथ पीक लेगा तो हमेशा इधर स्टन करके ऑल्ट टॉप लेना। Enemies necessary. एक काम कर, फिर मिसाइल डाल। डाल रहा All हूँ। missiles away. कम। Locating targets. सी होंगे ये लोग। Come together. Spike planted. रुक जा। Reloading. Reloading. लोग को पता है। Grenade is live. All on the right. टू राइट। अरे भाई Last player standing. फिनिक्स भाई, ये तीसरी बार हो रहा है। NT. We doing this or what? कोई सी पे अच्छे सी जाओ। फिनिक्स पे आप सी जाओ। गार्डियन है। नहीं गार्डियन नहीं है। मेरा ये अच्छा है। नहीं, आप सी रहो, सी पे रहने के लिए कोई प्लेयर नहीं है। स्टैंड करना। तेओ भाई आप भी सी जाओ, तो भी। Concussing. ओके कम। भाई स्मोक क्यों कर दिया? Reloading. Beacon down. Spike down mid. अरे भी घुस गया वाली विंडो। Reloading. One enemy remaining. विंडो। Nice. You're tiptoeing.
They're all dead. Spike spotted B. Shoot the bad guys. How's that for a plan? Wait. No. वापस Phoenix. Brisk come. उसे ऑल्टर लेना है हमेशा. एक राउंड करो ना, एक राउंड वैसे करो कोई ना. कैसे? अच्छा हेलो ब्रिम भाई. ये देखना शायद ये सी हिट करेंगे. मैं आपके लिए ए दूंगा स्टन अगर बोलोगे तो. ए पीपी बंदे भाई वेट करना है यार, साउंड तो आने दे. ए सी आ गए. Launching smoke. Forever. Dim beacon here. Wait. Don't peek. Come back. Phoenix has ult. Spike planted. करने दो, एक गराज देखो बस. Embarrassing. अरे एक कभी पे है. अरे भाई उससे कैसे गराज से कौन आया ये गंदा बन गई. Last player standing. Remember, I hit them with explosives. Then you go in. No la एक को मारा था क्या तेओ? क्या हुआ? एक को मारा था क्या वो योरू को? हाँ योरू को मारा ना मैंने. हाँ अच्छा. फ्लैश हो गया वरना दूसरा भी मार देगा. पुश मत कर, छोड़ दे, आजा. पुश तो करना ही पड़ेगा यार, स्लो नहीं होता. पुश मत कर, छोड़ दे. हाँ. All missiles away. भाई ये कब आया लेफ्ट साइड पे? एक गराज है. Spike planted. गराज. ठीक है डुएबल है. रुको गन ले लो. ये सिटी पे गन पड़ी है अपनी. Enemy spotted. See. Flash. Live munition. Flash. Drone is down. Last player standing. All missiles away. सेव कर भाई. Phoenix please see kill लो. तेरे पास फ्लैश और वॉल इसके वजह से बोल रहा हूँ. भाई ब्रिम भी था, उसके पास मॉली थी. अब बता क्या करेगा वो. भाई लेकिन वो तेरे वाह उसके पास मॉली है लेकिन वो 6 किल वाला है, तो 18 किल वाला है. इससे देखो बोल रहे हैं. या कम ऑन इजी कम ऑन. सियान अब आने दो. सियान पहले मॉली रखता हूं अपना, यूज नहीं करता. इधर ही आ रहे गाइस. योरू था. बस जाओ, अब पीछे जाओ. बस बहुत. ठीक है हम लोग को पीक नहीं लेना. 63 लो साइट योरू. एपी भी लाओ. नाइस वन. आई थिंक ये होगा. डेडलॉक अल्ट मार सकता है. पोजी ये वाला पोजी में. दोनों इधर है. सिलो क्या शेम है. तू ये बताएगा एंगल होल्ड करेगा या पुश करेगा तू. लैंड पे माई मिसाइल्स. अल्ट मार दे भाई. This is how it ends. पुश कर दे. Grenade is live. Last player standing. 30 seconds left. अरे भाई ऐसे ब्रिम खेलेगा तो फिर
Who am I kidding? भाई My फर्स्ट knees are पिक gonna मिल kill 2 पिक after मिल गए this. फिर कैसे हार रहे हो? मैं कोई और खेल ले, I'm playing safe. भाई 2 जन सी खेलो, एक गराज खेलो, ए नहीं आ रहे वो लोग। आएगा ये हम देख लेंगे, चलो। Okay, let's go. नहीं आएगा ये भाई, ए रिटेक खेल लेंगे, चलो कम। मैं गराज पुश देख लूंगा। ठीक है। Okay. सी गैस फुल सब तीन लोगों का तो है। टीपी कर लिया वो। यूरोज लो 67। कहाँ टीपी किया है? अभी तो अभी नहीं किया, तब किया था। हाय हाय कैंपर विंडो बैठा है एक। वो तो डेडलॉक लड़की करता है, पूरा लेट ही आता है वो। Down you go. Last player standing. एक लॉन्ग एक वो। हाँ ये लॉन्ग है। One enemy No, remaining. you don't. Going up. All good. All good. Nice round भाई, nice That's round. going on a highlight reel for sure. Nice shot. This should be simple enough. कब तक आएगा बीजेएमआई की? आज बस वैलो बीजेएमआई खेलेंगे ना। तू बता कितने बजे आना है? ओडन कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। मोडिंग करना नहीं आता लेकिन। नहीं ठीक है, सी कर रहा ना, कोई बात नहीं, सी कर ले। ब्रिम भाई आप एक खेल लो, जाओ। अच्छा बी खेले, बी खेले। पीछे खेल, पीछे खेल, पीछे खेल। है क्या ये पे? Launching smoke. Bunch of guys, A. Trevor. Careful now. एक को ले लिया, 2 शॉट आ रहे। रिचार्ज प्लस कॉम्बो कर सकते हैं। यप जब प्लांट करेगा ना तब मैं अल्ट करूंगा, ठीक है? इधर अल्ट मारना। क्या नाम है? ब्रिम। No. ब्रिम अल्ट कर। My territory, my rules. I have them now. अरे मेरे को लिया था, कोई बात नहीं। बढ़िया। योरू अंडर हेवन, योरू अंडर हेवन। अंडर हेवन है। Last player standing. 74 है यार। No charges left. Spike planted. यार One enemy remaining. 74 है वो। मेरा भी क्या ही लग रहा है भाई इसमें। Match point. My ballistics set up easy kills. And if they don't, pues, you can't complain if you're dead. ये एक बंदा देख लो, मैं sound. Flash. Multiple enemies. See. विंडो Nice. Reloading. Enemy They might spotted. rotate. Carry. Ammunition. Smoke's down. रोटेट कर लेते ना, आ जाओ। बी देख के आना, पहले बता रहा हूँ मैं।
ये जेट इधर है। ओमेन किधर था? ये आ रहा है आई थिंक। ये नो है 65 लो। Planting. Spike planted. One enemy remaining. Off your feet! नाइस। भाई कुछ नहीं लग रहा है पिछले मैच में सब। इफ तो फ्री हो आ जाए तो आ जा 9:30 तक। अच्छा मैं तो फ्री हूँ, बाकी इनको पूछना पड़ेगा क्योंकि फिर ग्रूट को पूछते रुको। भाई एक भी नहीं मार पाया तुम यहाँ पर। क्या नहीं यार नहीं मार पाया, लग ही नहीं रहा इस मैच में। कोई नहीं भाई, तेरा छुट्टी लॉन टॉप है भाई। ओडन कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। धरात देखो भाई, ये राउंड मेरे को लगा धरात ला रहे। ब्रिम मास्क। फिनिक्स भाई आप भी देख लो, फिर मैं धरात देखता हूँ। बाय दे दो प्रेम को, आ दो। बाय करना फिनिक्स बाय। Get out of my way. स्टन दूंगा, पिक ले तेरा। नाइस। Easy, play easy. Nice. ओमेन भी है गैराज। ओमन शायद विंडो में है। One enemy remaining. Nice, well played. Careful now. Spike spotted mid. Come on, get me in the line of fire. मैं ये ग्रुप को टेक्स्ट करता हूँ, रुक कि आएगा क्या। भाई का रेड बढ़िया था भाई, गैराज ही आए। फिनिक्स तू पीक लेगा ना, अगर कांटेक्ट पे मैं स्टन दूंगा अगर कोई दिखा तेरे। Who's next? Short. I'm leaving. Nice. Trevor. Weak. Nice, well played. एक है हम शॉट। अबे भाई यार 74 है वो। नहीं स्पाइक किधर है? स्पाइक किधर है? Don't वे इधर लॉन्ग। खेलना भाई आराम से, स्पाइक है ना अपने पे। खबर दे उसे। स्टन कर। उस पे ऑफ है। स्पाइक ले जाएगा वो। नहीं इन पे जेट के पैर पे है। पर नहीं भाई अब नहीं होता भाई ऐसे। अच्छा वो वाला ओके जे ओमेन ना, मेरे को लगा कि अब नहीं होता वो। हाँ वो तो नहीं होता करेक्ट। मेरे को चाहिए ओमेन का उल्टा। किसका दिया? वो स्किन दे दो ना भाई, जिसका भी है यार स्किन दे दो। काली स्किन कौन सा? कोई भी वैंडल गिरा, वैंडल मांगना फिनिक्स, उसको दे दो। थैंक यू। फिनिक्स अल्ट कर दियो, थोड़ा सा रुकना। और तेओ तू भी मरना। भाई आराम से खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं। सी आएगा ना प्लस सी अल्ट कर दे। टेक ओके। ब्रिम वो देख, उधर देख, मैं देख। भाई बी छोड़ दिए हो क्या? नाइस। गैराज कोई देखता ही नहीं है यार। भाई गैराज कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ डेडलॉक है गैराज। ये जा रहे क्या जेट? ये ब्रिज था ये पे, उसके पास ही स्पाइक था। राइट आए। नाइस, स्पाइक डाउन। शॉट एक Flash out. This is how we clearing out.
मेन तो देख ले। One enemy remaining. Nice. 30 seconds left. Euro long. Good job. Nice one. Oh. Finally. Switching sides. Overtime. And give me phantom. Need a drop. अपने को पिक निकालना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। कोई भी phantom. Right here. Drop. Gracias. Thank you. आजा इधर आजा। ओ पहले इधर ये वाला हटाते हैं। कोई एक लॉक कर सकता है, किसी को करना है ना, लॉक करके पिक निकाल सकता है जिसको निकालना है तो। मैं कर सकता हूँ। हाँ तो जा तू जा, लॉक करके किल निकाल दे। मैं पहले वो स्टन करता हूँ, लॉन्ग क्लियर करता हूँ। एक इधर करना है इनके लिए, शॉर्ट वालों के लिए। हम एंटर नहीं कर रहे, ठीक है? All missiles away. Stim beacon down. छोड़ दे। बस नहीं उधर नहीं जाना। डेडलॉक मिड, फ्लैश दे रहा हूँ, घुसो। Blinding. He's there. जा तू जा। Flash out. This window nice. भाई जा प्लांट कर भाई। Spike planted. बी पे ये, बी से आ रहा है डेडलॉक। All missiles away. गराज एक सिटी। One enemy remaining. छी भाई। भाभी जी व्हाट्सएप, भाभी जी का रिप्लाई आया क्या? रुको देखता हूँ। Switching sides. Match point. They think they're Phoenix, so Vandal dona? secure. Phantom. I need a Need a drop. drop. Gracias. Please, come here. I need a All drone the equipment. They can come. कहाँ पे? ए पे? अच्छा। Yeah, come here. Just stand डाल दो और ऑल्ट कर लो। Stay safe. Concussing. Enemy spotted. भी आ सकते हैं गाइस, गराज देखो। गराज एक। ग्रिम गराज जा। Drone is down. गराज जा तू। है लॉन्ग है। I do not have it. अबे क्या टाइमिंग ब्रो। बी घुस गए, बी प्लांटिंग। Standing B. अरे यार। Spike planted. जेट एलिंग। जेट एलिंग डेडलॉक भी हो गई एलिंग पे। हाँ डेडलॉक एलिंग साउंड आया। Last player standing. कैंपर है साला ये। Get out of my way. My bad. पीछे आ जाता ना। Switching sides. जेट। Overtime. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? क्या कहा? भाई दो पीक लो इधर। भाभी जी ने 3 वो जो अच्छे शब्द, मैजिकल शब्द कहे, और फिर अभी रुको कुछ लिखा है उन्होंने, बताता हूँ वो क्या लिखा है, वो पूरा बताऊंगा, रुको। मतलब बस वो टर्म उन्होंने भी एक फ्लड लाइंस मारी है। Headshot. Ignition. Locating targets. Watch your eyes. Target down. एक सेकंड प्लांट कर रहा हूँ गाइस, रुको। प्लांट कर रहा हूँ, बोला तो रुको।
planted. My ult's ready. Care window. One enemy remaining. Launching smoke. अटैकिंग तो हेवी हो रही है हमारी। Flawless. Nice. जरा जल्दी बताइए, इस पहले उनको वो लिखने तो दीजिए। Switching sides. अरे गेमवर्स भाई कमिंग विद द RyuK के दोस्त मेंबरशिप। गेमवर्स भाई थैंक यू सो वेरी मच। गेमवर्स भाई थैंक यू गेमवर्स भाई, थैंक यू सो मच यार। हेलो हेलो, कहाँ थे गेमवर्स भाई आप? मैं 2 मॉल डाल। कहाँ पे? सी। ओके अरे मैं बहुत दूर हूँ। रुक जा अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा वेट। What the? गराज डालेगा। गराज डाल अपना। रुक जा, मैं होल्ड कर रहा हूं। बी मैन है बी। Smoke's down. Spike down. Spike down. C. One enemy remaining. C long, last C long. Dim beacon down. Spike ले गया. Defenders win. फाइनली पर आ गया। ये गेमवर्स भाई थैंक यू सो मच यार फॉर द RyuK के। देखो गेमवर्स भाई आए मेंबरशिप लिए और मैं ये हारा हुआ मैच जीत गया। 7-12 था गाइस, याद रखना 7-12 या 8-12। 7-11 था लेकिन 7-12 हो गया। भाभी जी के लाइंस बताना। लिखे नहीं अभी तक, वो लिखेंगे। वो क्या लिखे उसका सेकंड लाइन, जैसे आप बोले ना यूपी से हो क्या, फिर वो सेकंड लाइन भी है उसका पंच लाइन, तो वो पंच लाइन अभी तक आया नहीं है। वो आएगा तो बताऊंगा पूरा एक ही बार। भाभी जी लिखे RyuK आर यू अडोर। मैंने लिखा नहीं तो लिखते हैं कॉज यू आर अडोरेबल। टट्टी जितना ही टट्टी मेरा लाइन था यूपी लखनऊ वाला, उतना ही टट्टी बराबर के टट्टी है, तभी एक दूसरे के लिए बने हम। कौन है भाई भाभी जी? मतलब भाभी जी है। अब कौन है कैसे वो अभी थोड़ी ऐसे बोल सकते हैं बस भाई। रिवील पब्लिकली टाइम। अभी बिहार वाला लाइन मारा हूं मैं, रुको
अर्नब भाई सच्ची में कोई लड़की है ना या फिर एआई वगैरह? अबे नहीं नहीं, लड़की है भाई। एआई इतना भी चोमटिया थोड़ी हूँ भाई, इतना भी डेस्परेट थोड़ी हूँ कि किसी एआई से बात करने लग जाओ गेमर्स भाई। रिक भाई एक चीज बोलता हूँ, उनको पूछो पीडीएलएम का फुल फॉर्म, वो बोलेंगे कि प्लीज डोंट लीव मी, तो आप बोल रहे कि आई प्रॉमिस आई वोंट। है अरे भाई रुको रुको रुको, अभी पूछता। अरे अरे हेवी सिनेरियोस बे, ऐसा कुछ और है क्या अर्नब भाई? क्योंकि मैं कभी ऐसे लैंग्वेज में बात नहीं करता, तो आज बहुत शौक में हूँ। रियुक भाई आ रही हो? मिरर नहीं नहीं, मिरर तो नहीं हूँ, शीश महल हूँ एकदम ही। बस आई कैन सी माई फीचर इन यू। अरे ये वाला तो कॉमन है थोड़ा सा, मतलब बाकी सारे भी कॉमन है समझ रहे हो, लेकिन ये मिरर और गुजरात सूरत वाला ना, ये बहुत गेसेबल होता है, समझ रहे हो? ये वाला मैंने कहीं पढ़ा है, मिरर वाला तो। और कुछ अरे भाई, और कुछ तड़कता फड़कता एकदम, समझ रहे हो? ये ग्रूट आज टेक्स्ट करेगा तो कॉल ही करता हूँ इसे। आ गया आ गया आ गया। रेवेंजर को बोल देता हूँ 10। मैं कुछ दिन स्ट्रीम पे नहीं आया, रियुक भाई ने भाभी ढूंढ ली हमारी। वाह, अरे गेमर्स भाई नहीं नहीं, भाभी ढूंढ ली नहीं, भाभी थी ही पहले से, वो तो बस इधर पता चल गया। गेमर्स भाई आपको मिस कर रहे थे यार, कहाँ थे आप? बिकॉज आई कैन ड्रेन माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स फॉर यू। रियुक भाई आर यू अ बीटीएस फैन? Blood, sweat and tears for your blood. अच्छा, मैं ब्लड स्वेट एंड टीयर्स फॉर बीटीएस सॉन्ग का नाम है। अच्छा ऐसा बात है क्या?
अच्छा वो कौन सा PDLM? साला यूरू से ब्रीच मैन बनता जा रहा हूँ क्या मैं? थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं RyuK भाई। थैंक यू भाई। जिंदगी थोड़ी सुधार रहा था, बहुत मजे मार लिया था। अब जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया, थोड़ा लाइफ पे फोकस कर। चॉट बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हमें अच्छा लगा इस। लव यू गेमर्स भाई। Match found. नियॉन लो। अरे ऐसा एजेंट क्यों बोलते हो जो मैं कभी खेला ही नहीं हूँ? Nothing stays hidden from me. Nothing. स्काई इस मैप में अच्छा नहीं है। ले तो सकते थे अबे, लेकिन उनका सेम कॉम्प है बे, बस साइफर नहीं है। देखो पूरा सेम कॉम्प है, साइफर और चेंबर में डिफरेंस है। have your intel. शीश। बहुत इंडिसाइसिव हो RyuK भाई। इंडिसाइसिव मतलब इतना भारी इंग्लिश मत बोलो। इंडिसाइसिव मतलब क्या होता है वो बताओ। Reloading. Scanning ahead. Enemy spotted B. One body. Shot that. Show me your target. I got ISO. वो जेट ऊपर आया। जेट किचन तरफ। One mid, one snowman. Mid and snowman. मैं लो जेट भी लो है। Jet right side. भाई मेरा हेडफोन खराब हो गया है यार। Pushing orange. दोनों Reloading. Enemy spot scanning. One ahead. enemy remaining. Right. Be at rest.
RyuK भाई खुद हमारे साथ ब्रेकअप वाले जोक्स पे हंसते थे, पता चला भाई खुद मिंगल है, दिल टूट गया। अरे गेमवर्स भाई, अरे अबे ऐसी बात नहीं गेमवर्स भाई, ऐसी बात नहीं है। अरे यार मैं आप लोगों के साथ ही, जितना भी हो जाए गर्लफ्रेंड वगैरह, जितने भी गर्लफ्रेंड बीवियां बन जाए, बट हूँ तो आप ही लोगों का RyuK भाई। कभी भी आपको ऐसा फील हो तो मैं आपको खाली थोड़ी छोड़ूंगा अकेले। ऐसे ना बोलो यार। Can I plant? Our spike carrier is killed. Spike down A. One enemy remaining. Give me the spike. Nice. Got. Kick them when they're down. वह नहीं रहते, बार बार डिसीजन बदलते रहते हो, बहुत एक डिसीजन पे टिके नहीं। अच्छा वैसा, अरे वो टीम के अराउंड प्ले बनाना पड़ता है ना। अब देखो मैं ब्रीच ले रहा था, फिर देखा कि नहीं ब्रीच इस मैप के लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर देखा कि ये ऑलरेडी जेट लिया हुआ है। some good headphones. बजट ब्रो, Budget 3K. go for the IMs. Here. Multiple enemies A. I have a spike. I got ISO. Last player standing. Spike down, attacker spawn. Enemy down. ऊपर आया। अच्छा। Congrats for the rise to watch party of VCT Pacific RyuK भाई, thank you gamers भाई, thank you so much यार, love you यार। आप लोगों का सपोर्ट ही था भाई, इसीलिए कर पाया मैं, वरना कभी नहीं कर पाता। Reloading. Play split. ISO here. B. I have a spike. No distraction. इधर आ जाओ गाइस, बी आ जाओ। अच्छा प्लांट हो रहा है। TJ भाई मारना मत प्लीज, मैं आ रहा हूँ, बैक स्टेप दे रहा हूँ। Land it for you. 80 है सर। One enemy remaining. Last player standing. Your kill man. Now go. Go. No. Bro. अटक गया। ID make for. लग दिया भाई। Cypher, just tell me where they are. I'll do भाई वो the rest. रोक्स में से जाता ही नहीं। यार ऐसे जगह प्लान नहीं करना। फुल बाय करो, ये राउंड सेव करेंगे। मैं कैम लगा रहा, रुक जा, ड्रोन मत कर, मैं कैम लगा रहा। रुक भाई, मैं आपको सुमी बुला सकता हूँ। देखो बुलाने का तो ऐसा कुछ है नहीं, जो ऑफ कर रहा है। Deploying drone. Reloading.
उधर गया बॉक्सेस के पास, प्लांट जहाँ पे होता है। Shadows traveling. Focusing. Reloading. Enemy spotted. Reloading. Enemy spotted B. My ult. Planted. 35 लो। Jet low, jet low. जेट किचन। Last player standing. Jet very low. One enemy remaining. सुम्मी हाँ, बुलाने को तो ऐसा कुछ नहीं बुला सकते, बट बाकी लोग भी फिर वो बुलाने लग जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए RyuK ठीक है। फिर मैं नहीं चाहता यार मेरा जो ओरिजिनल नाम है उससे मेरे को लोग बुलाने लग जाए यार, बिकॉज आई हैव मेड अप अ नेम, जो लोग मेरे को जानते हैं उस नाम से, फिर मैं वापस से उधर चले जाऊंगा। रिप्लाई नहीं आया। 9:40 ना खाने गई थी। I have retrieved the spike. Revealing area. I saw it. Show me a target. Neutralize. Reloading. बिया। अरे भाई वो ऊपर ट्यूब पे चढ़ा हुआ है सोवा। 80 ISO. ओ माय गॉड। भाई नहीं देखा भाई तू। ओ Two mid. I'm 5 HP. My ultimate is ready. Last player standing. It's you and me. Oh. B-man. वहीं है। नहीं एक साउंड आया पीछे से, डिफ्यूज कर रहा होगा। अब उधर नहीं है बे। दोनों में। भाई ऊपर चढ़ा है जब सोवा एटलीस्ट कॉल तो दे दे तो। किसका कॉल? वो ऊपर तेरे ट्यूब के ऊपर बैठा हुआ था चेंबर। मेरे सामने नहीं हुआ ना कुछ, मैं तो ट्यूब के अंदर घुस गया, बाद में टीपी साउंड तो आया होगा टीपी का। टीपी करते ही मत है। राइट। भाभी जी क्यों ऐसा कर रही है? भाभी जी ऐसा क्यों कर रही है? मतलब क्या की भाभी जी? बोलते रिप्लाई आया क्या? Focusing. I saw. आजा। You can block off now. Close there. Last player standing. Spike down A. Their backs will be towards at least one of us. हेड मार रहे हैं क्या भाई ये लोग? तो हैं हेड मारने लग गए हैं। कम भी Don't get cozy. Deploying drone. Revealing area. No distraction. See ya. Can we rotate? We got the pick. Spike down, attacker spawn. ऊपर चढ़ा है। Last player standing. स्पॉन में ऊपर। One enemy remaining. भाग जल्दी भाग। I have the हल्ड कर ले।
Where will they go this time? Reloading. भाई यहाँ बैठा था. Yes, this should do. Should I ult? No, wait. Our spike carrier is killed. Spike down A. पीछे आ गया यार. Last player standing. Wow. Put down. I have retrieved the spike. Tagged. What do you say, drone? Ready to अल्ट मारो भाई. नहीं मना किए तो. अब देखो जो सेंटिनल होता है ना उसका काम ही होता है कि पी टीम जो करेगी उसके अराउंड ही आप लंड चला रहे हो, मतलब गोटे बन के घूमो. तो अब मैं सेंटिनल खेल रहा हूँ तो आई डोंट हैव एनी कमांड. अब जो टीम बोलेगी वही. I'm saving. Got the spike. GG. It's you and me. I'll remove. Give me a corpse. Come on. Where is everyone hiding? Take flight. I am the hunter. One enemy remaining. मिड आया था. भाई भागना, साइड भागना. ऐसो लेट हो गया वो तो. गुड ट्राई भाई. नो वरीज. गुड ट्राई मतलब अच्छा वो वाला. और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया हाल है प्लीज भाई. आप बताएं कैसे हैं? उधर ही बैठ. नाइस. दिख जाएगा उसमें. दिखता है. Well played. Race to the spike site. लो कर लो अल्ट. रिप्लाई उनको नहीं पता पीडीएलएम का मतलब. Can you buy me ISO? I need this. Reloading. My thanks. बस अब तो पेपर खत्म हो गए. आज से वन पीस चाली करूंगा. ये ब्लेज भाई चोड़. ड्रोन मत करना सुबह. ISO is here. Right side. I have the spike. Your fault. Yep. Take flight. Enemy spotted B. दो हैं. Enemy spotted B. Yeah. भाई जो हिलते मारते हैं ना. ऊपर. स्नोमैन एक.
चेंबर. Don't peek. 3. Jet ऊपर है. Last player और वो standing. स्नोमैन है. स्नोमैन साउंड आती है उसको. आज मैंने नेटफ्लिक्स पे नार्कोस कंप्लीट करी. ओ भाई नार्कोस भी बहुत प्यारी सीरीज है. हट बेइज्जती नहीं करने का. रीज की माँ चली. Last round in the half. वन पीस. lose everything after this. अच्छा वन पीस. अरे Reloading. I need this. This is gonna be fun. Get You out want of to my play? way. Let's play. दो हैं ए पे. चलो बी चल लो. Going B guys. Spike down. Attacker spawn. Last player standing. 114. Omen. Out of charges. Omen one shot. Nowhere to run. क्या खेल रहा हूँ मैं अभी भाई कुछ. Switching sides. हाँ अर्नब भाई देखो all of us are dead. I'll make you dead if you're saying anything bad about One Piece. ये एकदम चकलंड. ऐसे बोलते हो ना ब्लेज भाई तो लोग और टिल्ट हो. क्या पता अपने इंडिया में ऐसा होता है. अगर आप किसी को कुछ ना बोलो तो वो ज़्यादा करते हैं लोग. बचपन में ऐसा नहीं होता. तो मम्मी बोलती थी अगर नहीं तू ये वाला मत कर तो हम लोग ज़्यादा करते थे. पानी से ज़्यादा मत खेल. पानी में ही खेलते थे. वैसे आप जो बोल दिया ना अभी तो मैं भी बोलूँगा वन पीस भाई. लो तो ये वाला तो मत बोलना कभी क्योंकि अपने यहाँ पे पसंद नहीं लोगों को ये सब. That goes there. I got ISO. Multiple enemies. दो तो उधर दिखे. 30 so bad. 30 jet. All three. Stay down. Enemy spotted A. Where is chamber? The chamber is also here. Both pipe. Belt. One enemy remaining. Jet was belt. Spike down A. 30 low. Enemy spotted A. Team Ace. They were blind. Stay taut as a bowstring. सीजन 2 अप्रैल में आ रहा. द लास्ट ऑफ देखना 365 डेज मैंने भी नहीं देखी. मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है. 365 डेज देखो भाई. आई सी रेड. आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल? We must shore up our defenses. There they are, going A. Not enough. Down. So bad. Sheriff is there. Jet है. हाँ इधर बी पे और बुटा रहे. अरे
One enemy remaining. Spike down B. Camera taken out. Wiped clean. Gun here. We get a pick, we move in. Got it? पूरे परिवार के साथ टीवी पे देखना। अरे पूरे परिवार के साथ देखने तो फिल्म है वो। Eyes up. I need help. Coming. Multiple enemies A. Camera taken out. Ouch. Last player standing. Save कर लो। Oops. One enemy Enemy remaining. kill. Planted. Spike planted. No charges left. भाई ये गन से खेलने वाला है अब से। Are you sure? If I may, I'll go in first. Thin out their numbers. छोड़ दो सोवा। Scatter. Next, my ult is ready. Enemy spotted A. No more. Enemy spotted B. रोटेशन में। Last player standing. Spike planted. Distraction. अभी अर्ल्ड करके क्या कर रहा है ये? And that's the end. 17 HP है। चलो ये तो भाई हेवी माइनस 20-25 माइनस होगा। रुको पता है मेरी एक कजिन मेरे को स्वीट होम में अलावा देखा कि मैनिपुलेट करना चाहती थी। वाह ना ब्रोकन बाय है ना। This goes here. Get out of my way. One with kitchen.
Mid, two mid. Kitchen. जेट चले गए यहाँ से. ISO kitchen. One more. No hard feet. Ultimate is ready. Where is Spike down everyone B. hiding? One side. One enemy remaining. पूरा लॉस्ट खेल रहा हूँ मैं. They demand a fight. Who are we to disobey? Yalla, mshina. This You is a want to nice play? Let's play. There they are. I am the hunter. पहले अपने ही बंदे मर रहे, बस मैं भी नहीं मार पा रहा बोल के. It's you. Spike down A. Last player standing. Spike planted. 114 क्या होता है ब्रो? और वो मर कैसे नहीं रहे 114 में? Match point. उनका जेट मार भी नहीं रहा है. Track them down. Yes, this should do. Watch this. उधर है बी पे. Right here. Deploying drone. Here. Enemy. My eyes are down. Enemy down. Reloading. Spike down B. जेट चेंबर also लो. Last player standing. Attackers. मैं जो win. हग रहा हूँ भाई, इस हगांड के साथ तो मेरे को खेलनी ही नहीं चाहिए भाई. गेम ही अभी बंद कर देना चाहिए. हगू मैं हगू. आ रहा हूँ रेवेंजर, आ रहा हूँ. कितना माइनस हुआ? एटलीस्ट 30 पे 100 तो है. -2 कम गया गुजरा गेम. RyuK baby, do you have a license? Cause you're driving me crazy. लाइन मार रहे हो? इश ऐसे अर्नव मुझ पे लाइन मार रहा है. RyuK भाई, are you a magician? Cause whenever I look at you, everything else disappears. देखो वे देखो. ही भाई, लाइन मार रहे हो मुझ पे अर्नव भाई.
ची 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 ची। अर्नब भाई मेरे को लग रहा है आज भाभी जी सो गई हैं, उनको बोलने वाले लाइन सब मेरे पे मार रहे हो। एकदम अरे अरे भाई गैस जो भी नए हैं सभी का वेलकम है यार स्ट्रीम पर, एंड प्लीज हो सके तो लाइक कर देना यार स्ट्रीम, ठीक है? आप स्ट्रीम लाइक करोगे तभी तो 20 लाइक्स हो पाएंगे। रुक भाई आर यू अ ग्राफिक कार्ड cause we can render our future together। ये वाला बोलता हूँ। ये वाला बोलता हूँ गेमर्स भाई। ओफी ओफी गेमर मैं हूं पर गेमर्स भाई, गेमरवर्स भाई, एक्चुअली ये गेमवर्स नहीं है गेमरवर्स है, आज से नाम चेंज गेमरवर्स। गेमरवर्स भाई ओफी जो लाइंस उस पे काम की वही आपकी बता रहा आइए। RyuK is your name Google cause you have everything I've been searching for। तो एक पे एक हैवी लाइंस मार रहे हैं, हैवी। RyuK are you a power supply cause you power my whole world। भाई आज मैं लगता है आप लोगों से ही प्यार में पड़ जाऊंगा। कैन आई फॉलो यू होम बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी टू फॉलो माई ड्रीम्स। नहीं 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 अर्नब भाई ये नहीं बोलूंगा बिकॉज मेरे ड्रीम्स कुछ अलग है। माई ड्रीम इज नॉट टू यू नो इज नॉट ओनली अ गर्ल whom I can marry or stay with, like stay forever। My dream is not that। ये तो नहीं बोलूंगा मुझसे because I have something else, something big। एंड अपने ड्रीम्स के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने पास्ट में वही किया जिसका रिग्रेट होता है, बट जब गांधी बापू वाले नोट का स्मेल सूंघता हूँ तो फिर और रिग्रेट खत्म हो जाता है। अरे भाई है कनेक्ट नहीं हुआ। रुको बस हो तो जाता है यूजुअली कनेक्ट, आज क्यों नहीं हो रहा है कनेक्ट। क्या हो गया रुको
Game capture HD. Rigby, are you a CPU because you are the core of my thoughts? Hmm. नहीं हो रहा है, रुको। NVIDIA ऐप खोलते हैं। भाई ये सब क्या लिख रहे हो तुम लोग? ग्राफिक ड्राइवर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करता हूँ, लेट्स सी इससे कुछ होता है क्या। डू यू हैव कंपास बिकॉज यू आर डायरेक्टिंग मी टू योर हार्ट। हेवी हेवी हो जा रही है। डायरेक्टिंग, आई एम डायरेक्टिंग यू टू योर, डायरेक्टिंग यू टू माई हार्ट। अच्छा रिक भाई, आर यू अ कीबोर्ड बिकॉज यू आर जस्ट माई टाइप। ये सब बोलूंगा ना, कुछ अच्छा सा बोलो भाई, जैसे वो ग्राफिक कार्ड रेंडर टुगेदर वो वैसा वाला, वो भी अच्छा था। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन सा हो जा रहा है। आर यू अ सॉफ्टवेयर अपडेट, वाई। झट रही। तो बोल दो ना वो ग्राफिक कार्ड वाली लाइन भाभी जी को, वो बोलूंगा बोलूंगा, आने दो रिप्लाई। अरे वायरस कॉज यूर मेकिंग माई हार्ट मेल फंक्शन। वेनम भाई वेलकम बैक। गैस 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड्स के लिए ना स्ट्रीम बंद हो सकता है या बफर हो सकता है, तो आप लोग कहीं जाना मत, क्योंकि ड्राइवर अपडेट हो रहा है। ड्राइवर अपडेट के बाद वो बंद होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, 5-10 सेकंड्स का ही टाइम है, ज़्यादा नहीं लगेगा। भाई साहब इतनी लाइन्स अगर आप किसी से बोलते तो सिंगल नहीं रहता। अरे गेमवर्स भाई कोई बात नहीं यार, आप सिंगल भी हो तो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। आपको आपका फ्यूचर में कोई और लड़की भगवान ने सेट करके रखा होगा, तभी तो आप अभी देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलो। अभी अगर आप
Am I? Yes, yes. I'm live, I'm live, I'm live. Are you the motherboard? Cause you're the power of house of the... यार क्या हो रहा है? अभी इतने दिन एलगाटो अच्छे से काम किया, फिर अभी क्या दिक्कत हो गई भाई एलगाटो को? हैं? यही ना, हाँ, मतलब एकदम टट्टीपन मेरे को पसंद नहीं है एलगाटो को। स्काउट भाई गाली देते तो एकदम सही करते थे भाई एलगाटो को। गाली खाने लायक ही है ये सब। अब क्या खेलोगे विजय? मैं पता नहीं क्या भाई। गेम कैप्चर का है भाई, ये ना एकदम ब्यूटी फन है भाई। कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अभी माइक माइक झंटरी स्ट्रीमर माइक क्या हुआ? माइक तो चल ही रहा है, और क्या माइक थोड़ा सा गांडू हो गया। नहीं चल रहा है। डोवन से एक बार ट्राई करते हैं। डोवन से दिक्कत ये है कि वो हरामजादा ना साउंड डिले बहुत होता है उसमें। हरामजादे में बहुत साउंड डिले होता है, खेल ही नहीं पाता हूँ उसमें।
नहीं हुआ तो स्ट्रीम बंद करके चले जाऊंगा, और क्या करूंगा भाई। साउंड डिले के साथ गेम खेलने से अच्छा भाई ना ही खेले हम। रुको गैस, क्या हुआ बे, क्या सीन? अरे वो एलकाटो का सीन है, थोड़ा बफर होगा, रिस्टार्ट कर रहा हूँ, रुको। देखो अभी होता है क्या। अरे, दिमाग तो बीटी कर रहा है और कुछ नहीं गेम। प्लीज हो जा भाई। अभी भी नहीं हो रहा है भाई। कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बोल्ट भाई, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है यार मेरे भाई। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैच खत्म हो गया भाई, कब का ब्रो? वो तो मैच 7:30 को ही खत्म हो गया था मेरे भाई। वो तो नहीं रहा है, लेट्स सी। अभी है। क्वालिटी की एमसीबीजे होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
Here. Here. गोटी. बोलो बब्बर शेर. साला ये हॉकाई जो जिसका वैलो खेलता हूँ, इस भाड़ू को मैं बोला था बहुत पहले से कि हम लोग ये वे आउट खेलेंगे, तो उसने खरीद के डाउनलोड करके रख दिया है. अभी मैं 2-3 दिन से उसको बोल रहा हूँ, दोपहर में टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये मतलब तब ऑनलाइन ने आके रिप्लाई नहीं देख रहा है. हाँ, अभी रात को बोलता है अरे आप बोलो ना जब मर्जी तब खेलते हैं ना. इतना मारूंगा ना भाई हॉकाई, तू अगर देख रहा है मेरा स्ट्रीम, इतना मारूंगा ना, हैदराबाद आके मारूंगा तेरे को. अरे नहीं, वो एक दोस्त साला गांडू को साथ एक गेम खेलना है. मैं उसको 3 दिन से दोपहर को टेक्स्ट कर रहा हूँ, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा. अभी मैं बोलता हूँ कब खेलना है, तो बोला तुम जब बोलना तभी खेलते हैं. ये एकदम ग्रुड जैसी हरकत है. ये है एक हॉकाई नाम का दोस्त, वैलोरेंट जिसके साथ खेलता हूँ. अच्छा. एक ग्रुड जैसा है. आज ग्रुड को पूछता हूँ कितने बजे आएगा, तो बोलता आप जितने बजे बुलाओ. मैं बोला कल जैसा मैं तो बुलाया था कल 10-15 बोले, मैं 10-15 को आया, ठीक है, मैं ठीक टाइम पे आया. साला अरे नहीं मैं अरे ग्रुड तेरी गलती नहीं बोल रहा, मैं खाली बता रहा हूँ. आज भी खुद लेट आए हैं आज और खुद ज्ञान दे रहे. देखो तो भाई मैं 10 को मैं निकल गया था. मैं 10-15 से आया था एग्जैक्ट भाई. मैं 10-15 को बोले थे, 10-15 में आया. कर भाई, स्टार्ट कर दे भाई. अंदर बच्चे इवेंट लगाओ. 1 सेकंड रुको. Isla Ayame ji, welcome to my stream, buddy. If you are new to this channel, please make sure to like and subscribe the channel. And thank you so much for coming. Thank you so much. कल वनम भाई के बिना ही चिकन निकाल दिए थे. Yes. As an Indonesian, I support 2 teams RRQ, even though they lost while BME won. Isla ji, I also support RRQ. It happens. It's a round robin format. It's okay if they lose one match. It's totally fine. Hopefully it can be India versus Indonesia one day, BME versus GE. अबे यार ये माइक ऑन क्यों रह जाता है यार, बच्चे भी करने लगते. रुको मैं तकिया लेकर आता हूँ. सो मच जाना लड़े तकिया लग. अबे यार कौन मुझे गेट खोल देता भाई. RRQ versus GE, it's finished. Next BME versus GE. RRQ versus GE is not finished, bro. I guess BME versus GE is on week 2. That is 30th of March. साला जैसे ही BGMI ऑन करता हूँ, अर्नव भाई एकदम निकल जाते हैं. पता है ना तुम्हारा हग्गू गेम प्ले देखने फट जल रही, एकदम जल रही है. वेलो का हगास गेम प्ले देखना है. और खड़े होके मार. आजा और खड़े होके मार साला. मेरा किल चोरी कर दिया भाई. अबे लूट मत लौड़े रहते. अरे ऊपर से पड़ जाएगा इधर. अंदर आओ, आप अंदर आओ. हेल्थ किट है. अरे माँ की भाई. कुछ नहीं है, तेरे को संभालना पड़ेगा. ग्रोथ वेनम
ये है आप पे। उठाओ। तो देख ही रहा हूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। चल फटा। वेनम तेरे सामने और एक बंदा है। रुको मॉली किया है। राइट पे बंदा है वेनम, मत जा। गन उठाओ। अच्छा गन है तो ले ले रेवेंजर, ये हील ले। अच्छा है अभी ऊपर भी है। है हीलिंग के लिए। अरे मुंह के सामने क्या मंडरा रहा है साले। अरे सॉरी चल गया ना। बंदा देख रहा हूँ। कर रहा था मैं। अरे कितना मादरचोद बंदा था भाई। मैं उसको फिनिश डाल रहा था, फिनिश भी नहीं डालने दिया, उसका भी किल ले लिया। और क्या, वो किल में खेल रहे हैं। इधर तो किल चोरी करने ही आता है। चलो देख के सारा बेबी डॉल वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल है सारा? जाने जिगर जाने मन, क्या हाल है? हाँ भाई दीवार का आर पार ही मार दे। किधर है? आगे बस इधर है। लो नहीं दिख रहा हूँ उसको। कवर दियो। सेफ हो थोड़ा राइट हो। अरे कोई ना, कौन मारेगा साला। मार तो भाई फुल कैंप। पीछे से आएगा इधर से। पीछे देखो मैं आगे देख रहा हूँ। मैं पीछे देख रहा हूँ। और एक बंदा बचा है ऊपर, और एक लास्ट बंदा है। अरे नहीं, अबे खाया। डीबीएस साला लगता ही नहीं है, क्या फालतू है बे। तो चलाता क्या है जो गन नहीं करता भाई। ये देखो मारा मैं भाई, आपके सामने मारे, थोड़ा तो सपोर्ट करो। कैसे आया भाई? क्या है भाई? अरे ऑर्गेजम आ गया बे। लूट देख के बोलता है आराम से आपके सामने मारा, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो भाई। वही भाई, बुलेट लगा भाई पूरा। लगा मैंने भी देखा, लगा था वो। नहीं भाई ठीक है भाई। तूने कब देख लिया बे झंडे? टीममेट है साला भाई। तो नीचे से कब देखा भाई? क्या मारा भाई, रिफ्लेक्स दिया था भाई। माँ देखो ये और एक। अबे रुको बे, कुछ तो एक गन दो यार। देखो माँ कसम झंडरी सब सारा मस्त। आप बताओ। बस मैं भी मस्त। आप आए स्ट्रीम पे, चैट पे। चलो अब नीचे चलो, बकचोदी नहीं। चलो फट डीवीएस का एमो दो रोड भाई। चल कूद। अरे मेरे को 5 का एमो चाहिए बे। अबे मेरे को हीलिंग चाहिए। ये देख, इसमें है ये वाला पेटी में। Marked an enemy's death crate. इसमें है मेरे झंडरी। को हेल्थ किट चाहिए भाई। ले उठा लिया ये। कोई हीलिंग विलिंग दोगे या हम ऐसे ही घूमे? मेरे पास भी फर्स्ट किट नहीं है। ऐसे घूमेगा तो मना नहीं करेंगे, लेकिन चलो ठीक है तेरा भाई। ठीक है थोड़ा सा। कैसे टीममेट है भाई। टीममेट्स बढ़िया है भाई। इधर ये M24 है। सप्लाइज ऑन मी। 8x भी गिराया था। चलाएगा तो चला। 8x उठा लो ना कोई, मैं तब चला लूंगा। 8x को ले आओ ना। यहाँ पे 4x गन तू उठाएगा, स्कोप हम उठाएंगे। क्यों? स्कोप से हम मारेंगे। अरे यार उठा लेने बोला भाई, छोड़ो। वेनम तो कूद गया, मैं भी आ रहा हूँ वेनम भाई। अकेले नहीं। जल्दी चलो। चिकन नहीं है मैं। आ गया पीछे ही। अपार्ट्स बोलेगा तो एरोप्लेन से ही गोली मार। वही बोलने वाला था। अरे मारना इसको।
मारना है इसको अभी साले नॉक को, फिनिश हो मारू। जाता है। तो फिर कहाँ कूदना, पूछेंगी या रोजो? लो जाओ कूद जाओ। अरे इधर बंदा है। भी गिरा है, बंदे हो सकते हैं। किधर बंदा है? हाँ तो लो बंदा ही मारने जा रहे हैं ना बे झटरी। अरे नहीं इधर नहीं, कहाँ बंदे है? प्लेयर्स मैं 2 है जिधर आया और हूँ हम उधर 2 बंदा है। है क्या? नहीं। चुमटिया है क्या थोड़ा अच्छा, सा? मैं सोचा ये कुछ अलग चीज दिखाता। कोई ना, माय बैड। रोड से गाड़ी जा रही है, रोड से गाड़ी जा रही है। रुको रुको, ग्रुड में जा गाड़ी रहा रोड हूँ। से ही ना जाएगी भाई। गिराओ क्या, वो दूर चले गए, बुलाया तो हमें ना, वापिस आने चाहिए। किस साइड गया? फुल स्कूल अपार्ट साइड गई वो लोग। चलना है तो चल सकते हैं। अरे नहीं भाई, बात सुन रहा, तू चलना जा है तू जा, मेरे कॉल पे चला जाऊँ। हाँ तू जा, जा साला झटरी। तू जा, मैं यहीं से कवर दे दूंगा। जा स्प्रे है। यहाँ से अपार्ट सरेंडर नहीं हो रहा, हम कवर दोगे। यही तो बात है। ये सब केओस वाले एकदम हवाबाज। लावड़े मेरा में केओस नहीं लगा हुआ है, देख लो अच्छे। वो तो उनकी दोस्त। लैग हुआ। वाह लैग हुआ। आ रहा हूँ मैं, थोड़ा डर का माहौल है। आ रहा हूँ मैं, तुम पे आ रहा हूँ। कोई तो आओ यार, स्प्रे मारने का बहुत मन कर रहा है। कोई तो आओ। भाई तो मैं भी आ ही रहा हूँ, आके फिर क्या ही करूँगा, थोड़ा लेट ही जाता हूँ सब। अरे ग्रोड भाई, तुमको खाना नहीं है आज? क्यों भाई, कोई है क्या खेलने वाला? अरे वाली नहीं बुलाओ बुलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये देखो, इसकी तो है भाई, अरे नहीं, वाली मेरे सब है। मेरे हाँ वो तो मेरे को पता है कौन सी वाली है, कौन है सब पता है, कोई यस दिक्कत नहीं यस बात। यू आर राइट। कौन? किसका? वेनम भाई का? वेनम भाई का कौन कैसे पता तुम्हें बे? कुछ भी मेरा हाँ, थोड़ी ये है। देखो, और एक आए बहुत बड़े डिफेंड करने वाले। हाँ तो मेरा थोड़ी है कोई। तो भाई आपको तो पता ही है। वही जो मेरे को, वही ना, है। मेरे को ही पता है वेनम भाई को, किसी को पता ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो? वही तो मैं बोला। वही आप ही को पता है खाली, मेरे उनको भी क्या ही पता है, कोई है होगी तो पता होगा ना उनको भी। क्या झंझरी बात है एकदम। कहाँ है बंदे? होगी तो पता लगेगा ना। अबे ये रिकॉल पे नहीं है। नहीं अच्छा, ये कोटियाड का है? कोठी का है? कोटियाड बोला मैं भाई, क्या सुनता है भाई ये लोग। वो दीप्ति तेरा उसके पास जहाँ पे कोनार टॉकीज के पास। ओह मेरे को तो नहीं पता था। ये आजकल के निगले छपरी बेरोजगार किस्मों में बेरोजगार कोठी बंगले वाले, कोठी में रहने वाले, बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लड़कियों को पटाते हैं। इधर से वेनम को देखना, उसको पता नहीं, वो पूरा अट्रैक्ट, मैग्नेट जैसा अट्रैक्ट हो जाता है स्कूल से। वो चिपक गाड़ी देख रहा हूँ। नहीं हिल के उस तरफ नॉक हुआ तो रिवाइव देने आएंगे भी नहीं, तू बैठे रहना फिर। है ही नहीं उधर, कोई बंदे ही नहीं है। जब तक इस पार नहीं आएगा छुएंगे ही नहीं भाई। वही भाई, देखो ग्रोड गया, देखा ग्रोड गया, देखो। वो तो स्नैप देखने जाता है, उनको तो पता ही है। अरे कुछ कर ये नहीं तो सकते। प्रॉपर लौंडिया आवाज है भाई, प्रॉपर लौंडिया आवाज बोलता है। स्नैपचैट चोदेज हैं, स्नैपचैट। यार ए तुम 14 इधर आ। ला 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 ला। अरे आप लोग इस साइड तो पूछेंगे जाएंगे। चला शर्मा नहीं चला। रोड भाई देखा जब तक देखा भी एरोप्लेन से आ रहा है, तो एरोप्लेन में टाइम था तो थोड़ा सोचा कि फोन में देख कर आ जाता हूँ। लैग हो रहा हल्का सा। चलो फोन में थोड़ा देख कर आ जाता हूँ, है ना ग्रुड भाई? ये रिकॉल पे पहले चेक कर, बॉट ले अबे तो बॉट किधर है? वाह, अरे पीछे और एक बॉट है। अरे किसको दिए गाड़ी चलाने, किसको दिए? लेफ्ट लो थोड़ा लेफ्ट। लैग तो हो रहा है, अब प्रॉपर लैग हो रहा, बंदे हैं। देख कैसे उतरा, देख। मेरा वाला मार का नहीं रहा भाई, इतना हेलिंग लेके रखा है भाई। अमर है वो। ओ नहीं गिरेगा अपने पे, गिरेगा ये।
गिरने दो ना। क्या गिरने को? मर जा भाई, मेरा दूसरा ग्रुड किल है भाई, तू रिवाइव मर कर जा देना। भाई प्लीज। रिकॉल है मैं। ओके प्लीज भाई, रिक्वेस्ट कर रहे भाई, मर जा मादर चोद बॉट। मर गया मर गया मर गया मर गया कोई और मार देता ना, मजा आता। देखो और देखो कैसे मैं आ देखो, जाता तुमको। यहाँ पे हो सकता है, देख के थोड़ा। अबे चर्च पे कोई है क्या? मेरे को लगा वैसे। नहीं है। पेटी सेटी तो बना हुआ है। इतना स्लो दरवाजे लेके भी जा रहा खुले ना हैं। भाई, एक स्प्रे में तीनों गिरेंगे। कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है सच में। देख रहा है, ड्रॉप का इज्जत ही खत्म हो गया। इन्हें कहा कि भाई गेम ओवर। अरे गेम ओवर नहीं, अभी तो शुरू है। कहाँ है भाई? अभी नहीं मिलेगा पता, उसके बाद जैसे ही हाथ थोड़ा सुस्त पड़ जाएगा ना, फिर आएंगे माँ की चीज। हाथ को गर्म करो, हाथ को गर्म करो। पैंट में, अरे शिट। हाँ हाँ, पैंट में हाथ डाल दिए, डाल दिए। मार रहा हूँ मुट्ठी, मुट्ठी मार रहा हूँ मैं। छूट रहा हूँ। शिट निकल जाएगा बे। छूट रहा हूँ निकल जाएगा, मत चला। छूट रहा हूँ मैं। ग्रुप की माँ की ऑफलाइन है क्या? अच्छा आ गया क्या? भाई मम्मी पापा तो मैं क्या हो गया? अरे बोल रहे थे तुम, मम्मी खाना बना दी तुम्हारी? नहीं आज नहीं बनाई थी, बाहर से मंगवाया। बाहर खाए क्या? हाँ बाहर से मंगवाया। थोड़ा चिल्ली विल्ली खाइएगा बताइए, पूरा तीखा है मतलब। नहीं रे, मैं तो रोज ही बाहर खा रहा हूँ यार। अरे बड़े ये लोग देखो झटरी चौदह को, ये देखो। थोड़ा इधर आना ग्रुड, गाड़ी लेके। ये उसली वाले बहुत आज कुछ ज्यादा ही गाली गलौज हो रहा है। कल आता हूँ बाय। अच्छा इन्हें कहा कि सॉरी गाली नहीं बोलेंगे, माफ करें। नहीं RyuK ना भाई, फुल टॉक्सिक है यार भाई जगह होगा, अभी तो फिलहाल जगह नहीं तभी होगा। वो छोड़ के गई है, ऐसे टॉक्सिक लोग पसंद ही नहीं है किसी। कौन पूछ रहा है जगह होगा? तृप्ति भाई। अबे लैग हो रहा भाई, बहुत गंदा लैग। बेटा ओए। कौन भाई? तुम हर किसी को जानता थोड़ी है, तुम आना इधर, गाड़ी ठोक। अरे नाम तो बताओ, नाम ही नहीं सुनाई दिया। कोई नाम नहीं है, नामलेस भाई। अबे गाड़ी ठोक वहाँ पे भाड़ू। अच्छा रेवेंजर भाई रुको। और अपने टीममेट को कौन उठाएगा है? ए भाड़ू तू भी इधर आओ। ए भाड़ू छोड़, चलाने दो भाई, अभी नॉक होंगे। देखो चलाना रहता है ना भाई बीच में। अबे लैग हुआ था भाई, बहुत गंदा। रिकॉल पे चल। अबे टावर चर्च पे बंदा उतरा, लैंड किया। हमको भी बहुत गंदा लैग हुआ था। पकड़ मत। जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है वही भाई, मैं तो सिर्फ मरने के लिए जा रहा हूँ लग रहा है। इस झटरी का ड्राइविंग पे हमको एकदम भरोसा नहीं है। देखो फुल झटरी है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। पेड़ पौधे नदी के समझ सकते, इतना स्नाइपर टावर नहीं दिख रहा। स्कूल साइड से रोजोक से सीधा जॉर्जपुर, बस। पहले स्कूल ही बोला। कोई नहीं होगा। एक तो बंदा ही खत्म हो गया भाई, कहाँ गए बंदे? बंदे अपार्ट ही रहते हैं, आप लोग अपार्ट चलते ही नहीं। जा तू जा। ये देखो खुद के नेट में मर गया। देखो जा ना जा, खुद के नेट में मर गया। अपार्ट्स में ऐसे ही बंदे जाते हैं, पगलू छूत पगलू। ये वाला रिकॉल पे देख, ये वाला रिकॉल पे चल। इधर जा रहा, चल सब रिकॉल पे। मैं भी अपना नाम बदल दूंगा, जी पगलू। अरे 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 शिट, मैं ए पगलू रख दूं क्या? हेलो। लेकिन वो तो खत्म, वो तो एक दिन सब ठीक होगा। नहीं हो रहा ना ठीक, तो वो तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये
ये थोड़ी मरा कि मरा मैं मरा ए मरा। पगलू रखना बंद कर दूं, बताओ। हाँ ये वाली और कोई हो सकती, सही बात। Point. अबे ए वाली एक ही है, वो बताओ अच्छा। कि ए वाला रखूं कि नहीं। ठीक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यार प्यार तो प्यार है। Same team. ले रहे लंडके, कहाँ है बंदा? अबे क्या बे, पूरा मैप ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। बक वही भाई, रोज साइड से ही आएंगे, गाड़ी आएगी, चलो उस साइड ही यहाँ पे चलो। गाड़ी गाड़ी शायद वहाँ पे गाड़ी, चल चल चल, हमको लगा वैसा। कौन है वो? स्पॉन गाड़ी अच्छा देख स्पॉन के। दिख गया क्या? अच्छा इसके अंदर बाइक तो रखा हुआ था क्या? हमको लगा पीछे ग्लिच से दिख रहा था। ले रे, ये तेरा दूध, ये तेरी अब क्या ब्रेड। ऐसे ही घूमते रहे भाई, ले 23 से 18 हो गया लंच। अरे ये कहाँ मार घूमते रहा है ये? घूमते शॉट चिकन आ करो। जाएगा। गाड़ी रुका तो चिकन गया, बता रहा हूँ। गाड़ी वही जब तक तो। चल रहा चिकन हो जाएगा। बोला ना, हाथ पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बंदा मिलेगा, लिख के ले लो। अब तो वही वाला अच्छा रिकॉल पे खत्म हो गया लैंड, अब झुनझुना बजाओ। अब तो रिकॉल सब में जाने का भी फायदा नहीं है। देखा एंड में अपार्ट जब से है जोन ना, के बाहर पहले जा रहा, बोला देख रहा लौड़ा, लौंडा। पहले आते ही नहीं हो। कहाँ, कौन जा रहा है पार्ट्स? वो तो बोलने के बाद गाड़ी हो रही है। नाइस वन। ये देख नहीं, भाड़ू को देख। बोला साथ में आ जा, नहीं उनको कूप में अलग से आना है। आ जाओ भड़वो। i7 स्पार्क्स यही नीड में मरा था, काफी जिंदा भी हो निकल गया। चुका है। ये लग रहा अपने ही हाथ से मरेगा i7 इस बार। इसका दिन अभी मसला धीरे धीरे हम आ भी रहा रखे है। हैं पहलवान। ये देखो गाड़ी देखो इसका बस। दिन बहुत करीब आ रहा धीरे धीरे। भाई कहाँ है भाई बंदे? आज कार रेसिंग खेल ले RyuK भाई, आज कार रेसिंग खेल ले पूरा। यार ऊपर चढ़ाना ही नहीं है। लो माँ की चूड़िया भाई, माँ की चूड़िया। वैसे भी बीजीएमआई अभी उतना खास लगता नहीं। जब आईडी थी तब अच्छा लगता था, जब से आईडी सेल कर दी तब से बंद कर दिया। अच्छा अरे देखो, आईडी नहीं है तो कहाँ से मजा है? ऐसी बात है क्या? नहीं का कीजिए, आई कैन फील यू। मेन बात अभी लॉबी जरूरत है? सस्ती है ना दोस्त भाई, के इसीलिए साथ बंदे बकचोदी मिल करने नहीं रहे। को। जब तक अभी तुम एस पे नहीं जाएगा ना, बंदा ढंग का आएगा ही नहीं। अरे ये देखो 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 देखो, ड्रिफ्ट कैच देखो। क्या भाई? आज ड्रिफ्ट, कार रेसिंग सब खेल ले भाई। भाई मैं एक गाड़ी का पेट्रोल खत्म करके दूसरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने को आया, बंदे नहीं। अबे लैग हुआ, अब लैग हुआ, अब बंदे हैं, बंदे हैं, बंदे हैं। इधर ही कहीं बंदे हैं। अबे लैंड है मेरे। है एकदम है। लंड तो है ही, सबके पास है वो। तुम्हारे पास नहीं है तो अलग बात है। मर गया माधव भाई। और एक मिराटो दिख गया, चल चल चल, और एक का तेल खत्म कर। दिन मर जाएगा माटी के मोर। देखो देखो मिरांडो चलो। क्या मेरा आंट दो? अबे यार जोन, एक तो जोन कटे जा रहा है, डर एकदम नहीं है भाई, पता है बंदे नहीं है। भाई 2 राउंड घूम लिए इधर। कैंप कर रहा है क्या बंदा लोग? भाई भी दे कर रहे हैं देंगे तो भाई क्या चिकन हुआ? यार, पूरे चिकन ग्राउंड ले में ले घूम भाई, लिए, लेकिन कहीं से भाई तो निकल निकले। भाई। देख रहे इतना गंदा ड्राइविंग के बाद भी अगर कोई नहीं मार रहा ना भाई, बॉट लोग मार कसम। बॉट नहीं है, सांप एडोनास हमको लोग है। पता है कौन मिलेगा, i7 मिलेगा, देख लेना रास्ते में ही कहीं i7 या होगा। तो ये शॉर्ट वाले तरुण या कौन परफेक्ट सा है है पीछे वही शायद? दोनों में से मिलेगा। जॉर्जो जॉर्जो। अब लैग तो बराबर हो रही है।
अब मस्त लैग हो रहा है। अब हो रहा है, अब हो रहा है। हो रहा है, मेरा तो कांप रहा है। नहीं नहीं यहीं पे रुक जा, यहीं पे रुक जा। हील पे बेस्ट लो ना अभी एक के बार, लिए हील सही पे। है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, ये सब कहेंगे मर गया मानुष। मारना, छाती तान के खड़े मारना। ऊपर बंदे, ऊपर बंदे। अबे अबे मैंने बोला हील पे चलो। लेट जाता हूँ फट से। कहाँ बंदे दिखे चल रहे? कोई स्नाइपर पकड़ा तो मारो ना फट से। गाड़ी एक वाड़ी नॉक, एक दिखा मेरे नॉक। को, गाड़ी पार हो रहा। दिया दिया नॉक भाई ओ मैं दिया। भाई noob क्या हूँ भाई, स्प्रे कहाँ था से भाई। knock? स्प्रे थोड़ी मारा है भाड़ू, वो था बस्ट। बस्ट बस्ट। बस से इधर मारा, गाड़ी। बस से मारा। Danger ahead. Danger ahead. वो तो बंदा भी दिख हाँ रहा हाँ है। हाँ, ऊपर ऊपर है, ऊपर है, दिख गया दिख गया। मारो ना स्नाइपर पे। कौन है ये? चिट चिट। ये चुना। वाह ये है ए रेव दे फट से रेव दे। शॉट वाले ही ये हमारे जनरल स्नाइपर को देखो, M4 से मर रहे हैं हम लोग। ये देवा, हम मारे क्या बस्ट एक कुछ आ रहा, पीक करो तो पहले रेव तो G3 से देखो। बस्ट मारेंगे। दे तो दिया। देखो M24 से हग रहे हैं, बताओ। ये जा रहा है बीच में। अल्लाह उड़ा, उनका कहाँ से लग रहा है? तुम 8x नहीं लगाए हो, 3x से कुछ ये 6x से कुछ नहीं होगा। अबे तो 8x कहाँ से मिलेगा? ऊपर तो इतने सारे तो थे। अबे 4x नहीं लिया क्या? ऊपर तो 4x भी था। ले फाइनली यो होवे बस्ट, यो होवे बदला, बस्ट। बदला ले लिया बदला। क्या बस्ट मारा, लेकिन खुद को यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो, आईफोन में सब लगता है। ये देखो। अरे इसकी माँ का। पड़ी पड़ी, इसको भी पड़ी है। 3 गोलियां पड़ी, हेड नहीं पड़ा बस। मार मार। हेड पड़ा, उसको भी हेड पड़ा है। एडीएस ब्रूट मार, नॉक कर भाई। जोन इधर रहना। जोन अगर नहीं कटेगा कटेगा। और ये कटा लो। अरे वाह, मैं एंगल बढ़िया कटा है। लेकिन वो भी जोन में है, वो भी जोन में है। बट जोन उनपे भी है। बट बाकी बंदे कहाँ है भाई? उधर 4 है, चलो ठीक है। सुनो मैं एंगल ले 4 भी नहीं, 2 है बाकी किधर है? शायद। तो एंगल लो चाहे कुछ भी लो, आप ही से बच्चे रहना बस। भाई ये तो ओपन में है, इसको तो मार। ब्रूट खड़ा है भाई। रोड भाई नशा किए हैं एकदम हेवी। गांजा वांजा मार दिया भाई यहाँ। अरे भाई किधर है? नहीं दिख रहा है ए मेरे मर को। गया वो। फाइट हो रही है, उनकी फाइट हो रही है। कोई मारा पीछे, पीछे से दिया इनको। इनका i7 चोको हो गया। स्पार्क, ये अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल, अच्छा लो दिया i7 को 2 नंबर। जिसका तारीफ करता हूँ हक देता है। मरा नहीं है, नॉक हुआ है। लो अच्छा ले उसका बंदा नॉक कर दिया भाई। वो भी भाई रोला है, रोला है भाई। 2 नंबर फिनिश। ओ तेनू अच्छा है भाई, हेलमेट वेस्ट डैमेज करने दो उनको। अबे 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 बंदे बंदे इधर से भाई। मैं तो इमोट वो करने आया पेड़ था के यार। पास उधर है। अच्छा हाँ, दिखा दिखा दिखा। दिया 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 उसको। वाह वेनम भाई, क्या साइड ब्लॉक किए हो, बढ़िया। बाहर जाके मारो ना, M24 का क्या आचार करोगे? बच गया बे, i7 स्पार्क बच इसकी माँ। वाओ ना, वेनम एक गोली नॉक। तो लगाओ। क्या देख लिया मैंने? ब्रूट नाइस वन, नाइस वन। ए छो बे छो। अबे पैर, अरे यार फिर से नॉक हुआ i7। इस बार खत्म कर दे भाई। अरे यार फिर बचा। हेल्थ किट गिराओ, हेल्थ किट गिराओ, और स्नाइपर भी गिरा दो मुझे। अब DPS चलाओ। अब उसका बंदा आया।
मेरी माँ का दिया भाई, भाई एक ही एम से मार दिया। एक पे टच करो, नहीं नहीं मैं हील कर रहा हूँ। रोड भाई इफ यू डोंट माइंड स्नाइपर दोगे? भाई स्वैट वाला एक स्क्वाड को तो पेल दिया भाई। मैं डीबीएस दे रहा हूँ आपको, लो। स्क्वाड बंदे कहाँ है बताओ। अबे अपना गाड़ी कैसे फोड़ रहा है? कहाँ से अपना एंगल अंदर मिल एक रहा है? गाड़ी है, अंदर ये एक बाहर रखा है ना चोंटिया ग्रुप। अच्छा नाइस वन। अबे फिर नॉक हुआ i7, इसकी माँ का बोलेगा पर धत तेरी माँ की। हेल्थ किट है नहीं क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हेल्थ यहाँ पे किट देखो, दो यहाँ ना। पे देखो। Watch out! एक ये पेड़ पे गया है। Watch out! आने तो नहीं देंगे किसी को, जब जोन साथ दे रहा तो चिकन निकाल। एक स्मोक हुआ है। स्मोक किया, ऊंट पे बैठेगा। ये देख ये पेड़ पे है। Watch out! अब तो जोन, अच्छा उस पे जोन है। खाया हेड खाया। अबे इन लोग आगे बढ़ रहा, देख के इधर से। हेल्थ किट है क्या? स्मोक में बड़ी इसको देख, इसको देख, इसको देख। अबे हेड पड़ा उसको। अरे वाह वेनम भाई। वेरी गुड वेनम भाई। अब तो इनको आना पड़ेगा, इनके तो रविंद्र भाई डालो तो हेल्थ किट या कुछ। ये ले ड्रॉप किया, ले ये ले मेरे से ले। अबे अभी तो डाला। ले कौन डाला? नाइस चलो। वाह वेनम, बहुत बढ़िया वेनम। पूरा आईफोन का पूरा पूरा मैं भी दिया उसको। We are number 1. पूरा मेहनत का 5 के चला गया। अथर्व करवे जी, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वॉच पार्टी परमिशन कैसे मिलती है ब्रो? वॉच पार्टी परमिशंस ऑर्गेनाइजेशंस खुद देखते हैं वो कैसा क्या है, वो फिर एक्सेस देती है उस हिसाब से, वो खुद देखते हैं पहले। कोई पर्टिकुलर चैनल का स्टैट्स एंड कंसिस्टेंसी, फिर बहुत कुछ फैक्टर वो इन ऑन स्ट्रीम। वेयर हाउस में रुकने का नतीजा देखा तो बोला रुकने, पूरा जोन ही कट गया वहीं पे। सारा फैक्टर्स देखने के बाद वो खुद देते। इतना बढ़िया जोन था ना भाई, अगर आगे कोई भी बंदा रहता तो हार जाता। अच्छा क्यों ऐसा क्यों? थोड़ा तुम लोग बोलो किल चुरा, मेरा डैमेज दिख, सबको मारा है मेरा डैमेज देखियो, मेरा डैमेज देखियो, मेरा डैमेज देखियो कितना था देखो 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 200 था सर। स्टार्ट रुक, मेरा डैमेज है 740 पे 3 किल, ठीक है। हाँ तो मेरा 1500 में 10 किल है लो। हाँ तो बात तो एक ही है ना। 700 तो साले 700 में भी 3 किल, मतलब मेरा भी किल तो चोरी हुआ है। कम से कम 10 किल में तुम्हारा ना, 10 किल में 1900 से 2000 होना चाहिए। हाँ वही एकदम होना चाहिए था। तुम एकदम लंचट हो जन्म भाई, पूरा किल चोरी। हमारा किल चोरी किया लास्ट में, हमारा किल चोरी किया। देने का क्रूड भाई, स्नाइपर देने का फायदा देखा भाई मैं वो ऊंट वाले को हेड मारा, वेंचो दी, एक बॉडी मार के किल ले लिया। हाँ वो ऊंट वाला तो चोरी हुआ, ऊंट वाला तो चोरी हुआ एकदम। और ये लास्ट में भी तो वो दोनों को मैंने स्प्रे दिया, ठीक है। सुन ना, साले पत्थर वाले को मैंने स्प्रे दिया, जाके देख स्ट्रीम पे, ठीक है।
I won my last match. लास्ट वालों को तुम लौड़ा भाई जाके स्ट्रीम देख के आओ अगर नहीं पता तो। अरे उसको मैंने भी मारा था भाई, उसको सब मार रहे थे। ये गांडू है ना। बिल्कुल बिल्कुल खत्म बे। स्नाइपर वापस आ रहा है मेरे अंदर, जल्दी वापस आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या बोलना फिर से? रुको, कौन सा गाड़ी है भाई? गया। कौन सा गाड़ी है जिसने ट्रिप मार? बगानी है। नहीं बे, बुगाटी है। बुगाटी है। लाभ होती और दे नॉयर। क्या बोला था रेवेंजर भाई? क्या बोला था? ये गेम चिकन है बोल दिया था, पहली प्रेडिक्शन सही। कब बोला था बे? कब बोला? नहीं बोला था इसीलिए चिकन है। चुपचाप रहो। बोला था चिकन है का ना बोल दिया आप। लंड ऑन स्ट्रीम पढ़ा है मैंने, बोला था। हां लैंड बोले हो। नहीं वो बोलता नहीं हूं मैं। यही होगा, निक्स होगा। सीजन 19 पॉइंट कर रहा है शायद। मारेंगे इसको भी मारेंगे। हां उसी का गाड़ी है। इसके मुंह पे चले जाएंगे। उसका गाड़ी ले लियो भाई बस। ये देख इसको डाउनलोड ही नहीं है, क्या कूद चलाएगा भाई? मेरा डाउनलोडेड है। RyuK भाई एक स्ट्रेटजी बताऊं, यहां से लूट करके सीधा मेन आ जाओ। अच्छा सर्वाइव हो रहा। मेन नहीं आना यार। हां यहां से लूट के मेन चलो। अच्छा वहां से लूट के, हां वो कर सकते। हां लूट के डायरेक्ट तो एकदम खत्म है। पीछे बंदे। आज चक्कू मार लेगा मजबूर भाई इसको। कवर दो मेरे पास हीलिंग है। नाइस वन। स्किल चोरी कर लिया कोई। अरे इधर बैठा है, जल्दी मारो। ऐसा बैठा था रे भड़वा, बिना साउंड के। भड़वा था ना भोसड़ी वाली। भाई अरे सुनियो, ये तो सुनियो निकला बे। चलो इसका रिवाइव हो जाएगा। ये कहाँ पे मारा था? बोलना मेरे को, बोलना। Watch out. अरे मारो बे तुम। ये अरे मेरे पे हीलिंग नहीं है। अबे तो ये जब मैं बोल रहा था कि जा रहा है क्या, तब बोल नहीं पा रहा था हीलिंग नहीं है मेरे पे। अरे यार अबे यही तो कम्युनिकेशन तुम लोग करता नहीं है ना। इधर आना। सुनो RyuK भाई, मेरे से मॉली ले। मैंने एक मॉली ड्रॉप किया मॉली पे। अबे इनको पूछना पड़ता है कि भाई पुश करना है, तो फिर इन लोग बोलेंगे कि भाई हैं। हां अब छू। अरे भाई खुद से बोलो ना जब मैं पुश कर रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे पे है नहीं हीलिंग। वेरी गुड ग्रोथ भाई, वेरी गुड। इधर मैं क्या बताऊं? अबे जब मैं और रेवेंजर बोल रहे थे पुश का। अच्छा उसको अरे तब तो घुस ही रहा था। रेवेंजर भैया पीछे थे तब ना ये हुआ। रेवेंजर भैया भी पीछे थे, वो घुसते तो मैं भी घुसता। मैं बोला रुक नेट भाई, मैं बोला हां तो बस RyuK भैया का गलती, मेरा गलती भी नहीं भाई। मैं क्या रेवेंजर भैया का वेट कर रहा था, एक साथ घुसता मैं। अबे नहीं तेरा नहीं, RyuK भैया का गलती। आप मेरा क्या गलती है भाई? मैं तो तुम लोग को बुलाया। तू मेरे को क्या बोला? हाँ तो तू क्या बोला उसके बाद? तो मैं रेवेंजर भैया के साथ था। देखो अभी रेवेंजर भैया घुसते तो मैं भी घुसता। मैं बस बोला सुनियो से मर गए। Don't give up. Your teammates can still रिकॉल पे जाना कोई, मेरी तो इधर बंदे हैं। वो लो है 1 HP हीलिंग मार रहा होगा रेवेंजर। हां मैं जा रहा हूं। उसका टीममेट उतर। सुन ना ऊपर चढ़। अरे यार तू तो वो भी ऊपर ही चढ़ेगा जटरी। देख निकाल सकता है, उतार सकता है क्या? अबे उतर क्यों रहा है? यहाँ से तू थोड़ी यूजी अभी मार पाएगा। I'm recalling a teammate. अब उसका बंदा को बैठाया नहीं, ऐसे चल गया भाई। अबे दूसरा बंदा होगा फिर कोई। आ रहा हूँ मैं, रुक। अरे नहीं यार। अरे वाह। रिकॉल दे। मैं देख कहाँ पे मेरे को गाड़ी मारा, देख कहाँ पे मेरे को गाड़ी मारा वो देख। हैकर है क्या?
अबे नहीं बे, वो होता है I'm भाई। recalling a तेरे teammate. को मैं बोला एफपीएस वाला बकचोदी होता अरे है। मेरे को भी बिठा लो। Thanks. मैं क्या रिकॉल ही करते रहो। कोई ना जाओ। हाँ जल्दी आ। मारना है क्या उन दोनों को? वो मारना तो तो था। है लेकिन भाई छोड़ो। मैं भरोसा नहीं कर रहा भाई अभी। अभी अभी हक कराए हैं मेरी टीम के साथ में जाके। अरे बहुत बंदा ही बताओ, हगास। मैं जाके नॉक हो जाता हूँ। नहीं नहीं। 2 मिनट में जाके नॉक हो जाते हैं। अरे तो भाई मेरे पे 40 FPS है, वो क्या दे दे करूँ दे मैं? दे दे, आ रहा है वो सुन। अबे गाड़ी। हाँ तेरे पे ही आ रही है। रुक रुक रुक। तू दिखा नहीं है ना उनको। चलो 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 चलो, आज तो पूरा नॉक होगा। फायर क्या है क्या तू? कुछ तो बोल रहे हैं। जल्दी आ जल्दी आ। अबे वो लोग इधर गाड़ी रोकोगे पड़ेगा। जाओ उनको लेके आओ। बैठेगा क्या रेंजर? इसकी माँ का। आजा आजा कवर आजा। दे कवर दे कवर दे थोड़ा सा। हाँ वो नहीं मार सकता रिच है। हाँ वो इसीलिए मैं नीचे आ रहा था, पता है फिनिश नहीं कर पाएगा। आ रहा है वो गाड़ी लेके। अबे तू हिल कवर उसका चाहिए। बंदा कूदा। उसका बंदा कूदा पीछे ठीक है कौन सा पीछे? मेरे पास। अबे यार, रेवेंजर बैठ दो रेवेंजर बैठ साइड से रेवेंजर फट बैठ गया। रेवेंजर बैठ। भागो 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 लगा। भागो 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 भागो। मेरे को रिकॉल चाहिए भाई। अरे ये झंटरी अरे तो। थोड़ा लेफ्ट राइट करके जाओ यार। अरे नहीं 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 मार पाएगा, यूएमपी से नहीं मार पाएगा। वो लोग भी भगा रहे हैं अभी कूप अपना। वेनम तू सामने है वाले क्या? कूप पे अगर फ्यूल नहीं है तो। हाँ हाँ, मैं तो इधर यासना के पीछे अबे भाग इन रहा हूँ, लोग तो मेरे को आगे पीछे ही पड़ बंदे ही गया है। बे। अरे इसकी माँ का, अबे गाड़ी वाला है भाई ये तो। वही गाड़ी वाला है। अरे मारो यहाँ। अरे मारो। अबे इतना हेड वेड मारा भाई, मारा ही नहीं मार इसको। आप रोड भाई, हम दोनों चिकन निकालेंगे, रुको। मैं एग्जिट कर रहा हूँ भाई। मेरा बहुत ये हो रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तुक अबे भाई तू दुख। इतना दूर क्या कर रहा है भाई? हम लोग फाइट ले रहे हैं माँ की यहाँ की, इतना दूर क्या कर रहा है भाई? कौन? अबे यार क्या गांडू है भाई, इतना देर से फाइट ले रहे हैं भाई, आ जा भाई। ये बाहर निकल जा, दोनों स्टार्ट करते टू डू। मैं तो निकल गया हूँ। इनको उनको भी निकाल। बोल दिया आएगा तो आ जाए। अबे तो ये लोग तो मैच खेल रहा होगा ना। नहीं नहीं, हम लोग भी बोल रहा था निकल जाएगा। कहाँ निकले? बोल तो रहा था पता। अबे भाई तू मेरे को ड्राइव दिया, गाड़ी में बैठाया, गाड़ी से निकले, अरे भाई इतना देर में तू वहां से आ जाता। क्या बोलूंगा मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, बोलने से फिर इसलिए भाई ना। पता नहीं 3 हेड लगा, किसको लगा भगवान ऐसा जाने, ऐसा टन टन टन। ऐसा होता है मेरे ना, लगा। तब मैं फिर सेल्फिश गेम प्ले खेलना शुरू कर देता हूँ अपने किल्स के लिए। फिर मैं आता नहीं रैप देने में, फिर ये करने लग जाता हूँ क्योंकि भाई जब अपने वही को भाई। चाहिए क्या होता है क्या तो। था भाई, उतना देर से नहीं पहुंच रहा, देख रहे हैं फाइट हो रहा है, इधर बंदे अपने नॉक हुए जा रहे हैं, वो अपना अलग खेल रहा है भाई। खेल ले भाई अलग तो। डुओ कर ले आजा, वो लोग खेले नहीं तो उनका मैच चल। आजा आजा छोड़ दे, निकल अब हाँ। उससे अच्छा तो भाई ऐसे ही खेल ले भाई। इतना बकचोदी भाई, इतना तो नहीं सही है भाई। साफ मारा।
माइक ऑन ऑफ कर बे। वो लोग बाहर निकल गए शायद से। वो बाहर आ बाहर आ। बाहर वो है। लोग शायद वो निकल गए। मुझे आ रहे यार। चलो एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, कर दो एग्जिट। कहाँ गया बाड़ू? ये कौन? पता नहीं, ये भाग गांडू गया, गांडू। मर तो गया। जिंदा थोड़ी बचेगा वो। कुछ तो कपड़ा मिला भाई। माय गॉड। क्या हुआ? कहाँ है ये? भैया भाई काफ मरा रहा हूँ भैया। एक तो इनके चोंचले मतलब भाई इतना झेलना पड़ता है ना। एक तो 10 घंटे स्ट्रीम करो फिर इनका चोंचले भी झेलो। भैंचो बाहर है लॉबी में बुला रहा हूँ नहीं आ रहा है फिर भाई। गुस्सा है वो, मनाओ उसको भाई मैं साला एक को नहीं मना रहा है। हाँ, तुम मेरे को इसको मना रहे बोल रहे हैं। अरे भाई जो जैसा है वैसा ही रहे भाई। हम किसी को कुछ भाई नहीं भाई एक दिन सब ठीक होगा, बस लावड़ा होगा साला। सबको अपनी औकात पता चलेगी। Good luck, mates. जैसे अभी आप देख रहे हैं सामने से टेक्स्ट आया ना। वही मतलब उनको भी याद है ना आवड़ा यार, वो देख रहे हैं अच्छे से जी रहा है, ऐसे कैसे जीने दो उनको अभी करना। देख ये झटरी 14 स्नैपचैट वाला देख फिर बात। अभी बोल रहा होगा बाबू मेरे सारे दोस्त खराब है बाबू, तुमने सही बोला था बाबू, सब माजे चोद है बाबू, तुम ही अच्छी है। अरे भाई साहब मेरा वो मेंबर वाले में सारा लिखती है वीडियो में कि एक मेंबर वाला वीडियो है जिसमें मैं ना वो दिखाता हूँ कि लाइक थोड़ा साफ सफाई कर रहा हूँ। तो उसमें लिखते हैं आओ मेरे घर का भी मेरा कचरा भी साफ कर दो। घर का नहीं लिखी, मेरा कचरा भी साफ कर दो। तो मैं अभी उसको कमेंट बैक करूंगा कि लाओ दिमाग लेके आओ इधर। दिमाग नहीं, अरे तुम खुद ही आ जाओ बाहर, मैं फेंक दूंगा। वो लोग घर में बहुत बड़ा कचरा है, 30-40 किलो वाला कचरा है, फेंक देंगे आओ। इतना भारी कचरा घर में नहीं रखना चाहिए। अबे कहाँ नॉक खाया रही हो? अरे मैं कवर दूं? मैं हील कर रहा हूँ, रुक जा। अरे नहीं, लास्ट कहाँ है से वो। कवर? सीढ़ी पे बैठा है, 1 HP होगा या 10 HP होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। भाई एक दिन सब ठीक होगा। आजा आजा। बहुत बढ़िया। मर गया मादर चोद लाला। नहीं मरा नहीं है, नॉक वाला फिनिश हुआ, ये मुझे खिलाया। एक बचा होगा। भाई मेरे पे बंदे हैं, आपके ऊपर बंदे हैं, बहुत बंदे हैं। वो जल्दी बोले आप। 4-5 बंदे। अरे मारो। अरे सीढ़ी वाले नीचे है, ऊपर है, हर जगह है। यस यस हेवी सीन है।
ये वही है ऊपर जो हमसे मरे ना वही मरे। जॉनी के कपड़े वाला था। जोनाथन वाला सेट को तो मैंने मारा। हाँ इधर भी आया ना, मुझे उसने मारा नीचे। अरे अरे साला कहाँ से मारा बेची। अरे आना भाई। ए यार मैं वही सोचू कमरे में कोई आया नहीं, पड़ी है। इनको देखो ना, पड़ी ही नहीं है। इनको मतलब इतने किल मिल रहा है, किसको मारूं किसको छोड़ूं कुछ समझ नहीं पा रहे। यही तो रेंजर भैया कर रहे हैं फुल कैंप। वो साला कैंप नहीं भाई। कैंपर है, कैंपर। वो बंदा को मैं आने का वेट करो। आजा आजा और थोड़ा सही आ रहा भाई। आजा आजा आजा। अबे अकेले आना भाई, 2 जन मत आना। अकेले खुद नॉक होगा देख। अकेले हाँ मैं बोल लिख के दे रहा हूँ, खुद नॉक होगा देख। हाँ एक एक करके आओ, सबको प्रसाद मिलेगा, एक एक करके आओ। बराबर मिलेगा, बराबर प्रसादी मिलेगा। अब ये नॉक होने वाले हैं बस। गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। यहाँ पे और एक मॉइस्चर ट्रक रखी है। गुड भाई गाड़ी लेके आ जाओ। अबे ये झटरी पता क्या कर रहा था, गन छोड़ के आ रहा था। कोई तो नहीं है। कोई तो नहीं है बोल के सब है यहाँ पे। अब मेरे लौड़े लगे। मैंने बोला ना मरने वाले, बस एक को मारना है, कैपेसिटी खत्म हो गई। आ जाओ वेनम भाई बैठो। चलो चलो हो गया हमारा लूट हो गया। अरे गुड भाई थोड़ा आ जाओगे वहाँ पे मॉइस्चर ट्रक लेके मेरे पास, मैं फिर उठा लूंगा आपको। गुड भाई का माइक बंद है, भाभी जी का कॉल आया शायद। यार यही तो दिक्कत है भाई इन बच्चे लोगों का, जब देखो लड़की लड़की लड़की। मैं तो स्नैपचैट तोंद फुला के लड़की को छेद के भूखे, तोंद फुला के लड़कियों से बात करेंगे बस। मैं बताऊँ रुक भाई कहाँ चलो अब बताओ। अब समझ गए होंगे नहीं जाना है इनको। ये रेवेंजर भी क्या स्नैपचैट गया है क्या? स्नैपचैट एक तुम मारो एक मैं मारता हूँ। मारो वेनम भाई, वेनम भाई मारो। बुलेट्स नहीं ज्यादा। तो मैं फिनिश कर रहा हूँ ना। ले 4 गोली मारने पे टाइटल मिल गया, देख रहे हो। 4 गोली 5 गोली मार देता तो शिट टारगेट हो जाता। क्या रेवेंजर एक बार जा रहा है, बारी बारी करके लोग जा रहे हैं, क्या सीन? एक ही लड़की दोनों को स्नैपचैट के फोटोज देख रही बारी बारी। मेरी पहले तेरी बारी अब तेरी बारी। ये वे रेवेंजर हेलो रेवेंजर क्या सीन भाई। और पहले ग्रुप का माइक बंद था, रेवेंजर भाई का बंद है। कुछ तो गड़बड़ है। दया ये दया कुछ करो भाई। मैं फिर इसके बाद जा रहा हूँ, इनका तो बकचोदी ही खत्म नहीं होता। बैठ दोनों गए अभी, अब दोनों को एक ही बार में भेजिए। रेंडर तो हो रहा है। दो बंदे सामने। गाड़ी हो गया जी। कौन अरे साला दो स्क्वाड है इस पे। उधर रुक एक लेट। अरे नहीं पोजीशन पता चल जाएगी तो। देख रहा हूँ मैं भी लूं। अच्छा जा रहे हैं एक और भी जा रहे शायद। बॉट मारे। चलो रिकॉल पे चलो लो
रिकॉल पे थोड़ी जाएंगे, 2 बंदे हैं हम लोग, 3v6 थोड़ी करेंगे। अच्छा नहीं डायरेक्ट मतलब हमारे पास रिकॉल भी नहीं है, साला मर गए तो खत्म हो जाएगा गेम। बे रेवेंजर हेलो, रेवेंजर ये दोनों का क्या सीन है? चौंकिए हैं लो ना डायरेक्ट लो ना, अब मार सकते चलो। अभी ये लोग नहीं है ना, क्या मारेंगे। बोल भी तो नहीं रहे भाई, मैं जा रहा हूँ अगले मैच। ऐसे थोड़ी होता है, माइक ऑन ऑफ कुछ नहीं बोल रहे भाई, दोनों का माइक बंद है। आगे गाड़ी आगे गाड़ी जी। अच्छा हाँ दिखा स्लो है बहुत। एक यहाँ पे आ गया जी। उसी को लो किया, हिल मार रहा होगा। हाँ चलो उसको पकड़ने पहले आजा। उसके पीछे वाला बंदा पेल लेगा। वो देख पीछे ना, वो टुकुर टुकुर हाँ पीछे। दिखा नीड कर रहा है। पीछे से ग्रुप आया अपना बंदा। रुक जा भाई, किधर है बंदे? बहुत हालत खराब। क्या हो गया? ये दोनों का साथ में माइक खोला, कुछ तो गड़बड़ है भाई। सामने कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। फोन का गेम ग्लिच है, फोन ग्लिच। अरे फोन का माँ छू दिया मारे छू। क्या हो गया? नेट बेड है कुछ? नहीं 0। निरंजन भाई आप इधर कूदो ना पीछे, आप यहाँ कूदो तो आपको रिजॉर्ट दिखेगा। हाँ दिख गया मेरे को, एक बंदा दिखा। हो गया जी। यहाँ पे वहाँ पे भी है। और कहाँ है पे? वहाँ पे भी एक, मतलब और कहाँ है? यहाँ पे एक ये घर में है, इधर एक मेरे आगे है। नीड वेड है क्या इसमें? बोलता है वहाँ पे भी है, और कहाँ है? अरे एक तो भाई माँ छूट गई है भाई, आज पता नहीं क्या हो रहा फोन। बोलूंगा गांड मार लो मेरा, ले बस गांड मार लो। दोनों वॉल पे है। कौन सा वॉल? ये मेरे आगे वाले वॉल के पीछे है दोनों। रेवेंजर भाई को दिख सकते हैं वो साइड से। ब्रूट मैं वो कवर। अबे और एक है बे, फक यार दो है बोल तो रहा हूँ, 2 है। ब्रूट तू मेरे को देखते रहे, मेरे सामने एक बंदा आएगा, मैं उसको मारूंगा तो तू कवर देना जैसे स्मोक हटेगा। इनको मेरा पोज ही नहीं पता, ठीक है? मैं इतना पोज कर रहा हूँ, मेरे को दिख गया। एक नेट रहता ना 2 नॉक होता। थोड़ा सा लो है। वो पीछे भी एक है। ओहो अरे लौड़ा, अबे अरे ये कौन आ गया इधर? अरे यार ये साइड से कोई और ही आ गया। लो मेरे को भी देखा है। अभी उसी का बंदा होगा, नहीं तो इनको नहीं मारता क्या? इनको मारा। इनको मारा क्या? नहीं अलग बंदा क्या? अच्छा RyuK भाई थोड़ा देख क्या, शायद अलग है। वो आया नहीं है, अलग है। अलग नहीं है बे। रुको भाई नेट जुगाड़ करते। नेट ही नहीं है साला। सप्लाइज ऑन मी। 2x का क्या करूंगा मैं? पीछे वाला नॉक हो जाएगा ना, काम इजी हो जाएगा। अच्छा अलग है, अलग है। फिर इनको मार दिया होगा, इनको मार दिया होगा कंफर्म, इनको मारा। नहीं ये वाला मारा उसको, जो वेनम को मारा वो नॉक है। जो बॉट को मारो, मेरे को मार रहा है वो। अबे अभी तुम लोग बॉट को नहीं मार सकते हो क्या? अबे उसके दोनों बंदे नॉक है पे यहाँ पे।
एक का मैं फिनिश लिया, एक ब्रोकन वॉल पे। मैं बोला ना भाई राइट इसके पे। आगे दोनों बंदे नॉक है, मान ही नहीं रहा लड़। इधर सामने है। दोनों नॉक है, दोनों नॉक है, दोनों नॉक है। वो दूसरा वाला भी नॉक है। मारो, वो मारो। बस पीछे से कवर दे रहा है। कुछ उसको मार, उसको मार। नहीं है ना, कुछ नहीं सुन ना, है। तू कवर दे, रुको। मैं आगे जा रहा हूँ, तू कवर दे, मैं आगे जा रहा हूँ। डन है। जा दे दे कवर दे। गया गया। ओए बंदा 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 ये घर पे। हाँ हाँ, अबे मैं तो बोला लौड़े। वॉल का इस पर आ गया तो मैं नॉक दे दूं। भारी जिटर हो रहा है बे। और उसका और एक बंदा फ्लैंक कर रहा है, सुन ना। और एक बंदा पीछे घर में ही है, वो फ्लैंक। अरे भाई क्या लंबा फ्लैंक कर रहा है वो बहुत लंबा फ्लैंक कर रहा है। मैं घुसूं क्या? रुको रुको, मैं घुस मत। मैं जा रहा हूँ, मेरे को कवर मत दे। घुस, इजी इजी थोड़ा देख के। ठीक है रुको तो। एक उसका बंदा होते को पूरा दिख रहा होते, ओपन से होते पार हो रहा होते, देखो देखो रोड से पूरा पार हो रहा है। तू मत नॉक हो। नॉक नहीं होगा। ये तो सेल्फ हो जाएगा। मैं नहीं, बहुत मैं तो डैमेज है। बोला दे दिया लंबा वाले को नॉक दे दिया मर गया, बहुत डैमेज था वो। नॉक दे दिया। ओके ओके। तू पहला नॉक कहां किया था? फिनिश कर दिया पहला नॉक वाले को फिनिश कर दिया। वो फिनिश हो गया। अब आओ ना, इधर आओ। डालो सुन, ये दूसरा ये शैक पे, ये शैक पे, तीसरा शैक पे। मैं घर पे आ रहा हूँ। आजा, अबे मेरे पास आना। अरे झटरी मेरे पास आ, तू सेफ है, आजा मेरे पे। लेफ्ट से पड़ेगा फिर। नहीं पड़ेगा, कोई नहीं है उधर। आ रहा हूँ। इतना देर रेव हो जाता मैं। आजा। वो गया है अभी रिकॉर्ड देना। अच्छा मेरे पे फ्लेयर है, अभी मेरे को याद आया। रुक जा, आगे वाले को मारने तो दे। वो निकल गया होगा, अभी तक नहीं दिखा। वो फायर कर रहा था, अभी नहीं फायर किया मतलब। तो तू बोला शैक के पीछे है ये वाला। हाँ वही तो मेरे को मार रहा था। यूएस लेके आ जा रहा हूँ। हाँ तू जाएगा, अभी नॉक खाएगा। मैं बोल रहा हूँ साला बगल वाले नॉक होंगे, ये साला बोलता नहीं भाई नहीं है नॉक। गाड़ी तो लेके आ जाऊं भाई। भड़ैया का अच्छा रोड के उस पार वाले को देखते रहना थोड़ा, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ भाई। ठेलो ना बस, माँ कसम फ्यूल ही नहीं रखा है। सुनील भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है सुनील भाई? अबे बग्गी ले जा, बग्गी के पास। मेरे पास गाड़ी है ना, बैठो ना। लैग हुआ। वाओ लो है। कहाँ पे? यहाँ पे मार करियो। यहाँ पे मार। नीड मारा। वो हेड खाया। अच्छा नहीं अपना नीड आया देख के मार कर फिर से। बचाओ। इधर आ। मैं गया। अच्छा दिखा। छू लो। चलो प्लीज। बढ़िया। मेरे रेवेंजर भी अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जाओ मेरे को रेव देके भागो। जाओ। एक ही था ना? हाँ अच्छा। मैं बोला इस भड़वे को कि भाई हो सकता है बंदा, तू मत जाओ पेन में। नहीं अरे तो रेवेंजर भैया बोले बग्गी लाने, आप बोल रहे हो मत जा। मैं बोला कि कवर दे दो उससे अच्छा भाई। तो भाई मैं तो था ही नहीं ना, मैं तो बोला कि मैं गाड़ी ला रहा हूँ। अबे वेनम, अच्छा इसका रिकॉल नहीं हो सकता क्या वेनम का? अच्छा अपने पे गाड़ी है ना जी। मैं डाल ले फ्लेयर। अरे सुनील भाई क्या सीन। बैठो चलो। अरे यहाँ खूब ये भी तो है, मिरांडो भी तो है। ले लो। उसका क्या हो गया है? एक तो मेरा दिमाग खराब है और वो आ जाके क्या ज्ञान पेल रहा है पता नहीं। बैठ, उंगल करने का मन है क्या? कॉल पे आजा भाई। अरे भाई मतलब ये बच्चे ना, बच्चों में पेशेंस ही नहीं होता भाई। आजकल छोटे बात पे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं।
खाली इसीलिए Lag बोलता हो हूँ रहा है कम देख के। कम स्पाइसी खाना खाया कर, गुस्सा बहुत जल्दी स्पाइसी होता तो बहुत खाता हूँ मैं। है। हाँ इसीलिए गुस्सा जल्दी होता तो। ऐसा सीन है क्या? यस सर। फ्लेयर Lag चलाऊंगा, हो रहा इधर लग रहा चलो है, ना। इधर ही रिकॉल दिया है। उधर चलो ना, फ्लेयर चलाते सब बंदा आ जाएगा। ये क्या चलो पता साला अभी स्पॉट लोग हाउस अब पे। तक पहले नहीं से ही मरे हो, बंदा। जल्दी मरो अभी, जल्दी मरो। चिकन तो वैसे भी नहीं आने वाला। देखो बंदी के साथ बात, आके लगा आ दिया गया ना, बकचोदी चुपचाप। कर दिया ना। भाई साला वेनम भाई की बंदी तो बंदी के नहीं साथ है। बात नहीं, फोन चार्ज पे रखा था भाई, बंदी है ही नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ता अभी ये सब बंदी में। नहीं है क्या भाई? कट गई? नहीं है। अरे कट कट गई गई क्या बोलता मत, इसलिए। क्या लैंग्वेज काट है, गई क्या होता है? क्या लैंग्वेज है, मतलब क्या काट के लैंग्वेज चली है गई, भाई, सॉरी तो सॉरी। काट गई सॉरी क्या भाई होता है सॉरी। भाई? क्या हाँ भाई लैंग्वेज, काट के चली गई। कट गई कट गई, क्या लैंग्वेज। नहीं नहीं, अब तक मेरे रिलेशनशिप में सॉरी आया सॉरी ही नहीं माय तो बैड। कौन काट के जाएगी? साला की जैसे अच्छा दोस्ती की ठीक थी है, वो भी ठीक है, दूसरी वो वाले पता निकले। चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो भाई पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रियुक भाई का भी नहीं पता चला था, गलती होता है सबसे भाई, कोई है दिक्कत रुक नहीं। भाई, एक से दोस्ती की थी वो भी दूसरी वाले निकले। अरे भाई 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 अच्छा उसी का बात कर रहा है ये तो, तब क्या पता किसका बात कर रहा है। अच्छा मिराडो में फ्यूल डालना है या डासिया पे? अपने मुंह डाल में फ्यूल डाल दो। डाल, जहाँ डालना डासिया में डाल, मिराडो में डाल। देख रहा वैनम भाई नहीं है तो कितना आराम से किल निकल रहा है, देख रहा। अरे वैनम भाई भाई पूरा किल ले, चुरा लेता है, एक एचपी वाला को मार घंटा देता फट फुट। घंटा दी। मारो रुक भाई से, मारो सुबह मारो भी। वाह, स्कोप खोलते खोलते बंदा मर बे गया। बे बे ओए रेवेंजर, रेवेंजर रेवेंजर। भाई, ये लो बे ग्रूट जल्दी है, ग्रूट जल्दी है, ग्रूट जल्दी है, गए। ग्रूट पीछे है, ग्रूट अरे स्मोक करके मेरे पीछे है। सामने बंदा है। हाँ वही मेरे को नॉक किया। स्मोक नहीं है। अरे यार तुम लोग क्यों नहीं रखते हो स्मोक, अभी वो नेड करेगा तेरे पे, तू अरे डेड है। रेवेंजर भैया कहाँ है? वो एफके हो गया यार, रुक तो फिर उसको होल्ड करके रख, उसको होल्ड करा के रख। आया तेरे लेफ्ट में। बहुत ही बढ़िया, बहुत अरे ही बेहतरीन यार मारो, रेवेंजर, रोड के द्वारा। ये बे रेवेंजर जल्दी छू, छू जल्दी छू छू छू। अरे भाई अरे यार मादर चोद कौन है भाई, मादर चोद कौन है। अब नेड नेड आया। मारेगा अब तो अभी, नेड नेड कर भाई। देगा भाई। टट्टी कर दी वहां पे। घुसो घुसो, फट फट घुसो। अरे यार नेड ही नहीं किया साला। ये वेनम भाई पता कुछ कर रहे भाई, इसीलिए मरा मैं, पता है साला लग रहा है गांडू। तुम आगे हो वहां पे। तुम तो हगा है। थोड़ा इतना बकचोदी करोगे तो कहाँ से फुट्स आएगा? नहीं नहीं नहीं, लौड़ा, हमको तो बोले भी नहीं थे तब तो। 90 FPS में प्योर खेलते हो भाई फाइट तुम में लोग, तुम भागे 40 हो। में खेलता हूँ, जितना खेलता हूँ ठीक मैं खेलता हूँ 60 भाई, में ज्ञान खेलता हूँ, मत मेरा खेलो। 90 है भी नहीं, मेरा हाँ 90 ठीक है, नहीं है। जो भी है। अच्छा शांत शांत शांत, वो अरे नीचे ही है रुक जा रेवेंजर। भाई, हाँ इजी किल सब। कितना बंदा है? एक ही है बे। एक ही है। तो आना, तो इतना क्या बकचोदी करा। कूदो, तू राजा आजा आजा। ये भाई सुधे। स्टेज पे बैठा कर इस जमा का बंदे आ गए। भाग गया, भाग जाओ ऊपर, भाग जाओ। वो कहीं वो ड्रॉप लूटने चले गया आराम जगह पे। अरे माँ कसम रेवेंजर ऊपर ही है। नीचे नीचे। अरे कैसे आर पार गोली लगता मादर चोद। सुनो सुनो, एक काम करो, गाड़ी पे स्मोक कर अच्छा दी। जल्दी 1 एचपी है RyuK भाई, वो 1 एचपी है भाई। अरे और भी बंदे हैं बे। कैसे आर पार गोली लगता है भाई, मैं बॉल का इधर घर तक आ चुका हूँ, गोली लग गया। पीने गया ना वो, बस खत्म है फिर। एक तो फोन मादर लेडीज चोद है। गन क्या बोले। क्या मतलब एक सब। भाई उसको मुंह पे मारा भाई, S12 के मारे से नॉक नहीं वाला था। अबे रुक, तू एक गेम खेलने आ रहा। कहाँ जा रहा है? आ रहे अरे भिंच
ये भी गया, ये ग्रूट भी गया। ऑनलाइन था, देखो ऑफलाइन है। इनके लिए मैं रहता हूँ इतना लेट तक, वरना मैं स्ट्रीम कब का बंद कर दूं। ये साले चोमटिए। और कोई है तो बुलाओ। मैं आऊं सुनील भाई, आ तो सकते हो, लेकिन फिर अगर ये रेवेंजर वापस आ गया तो दिक्कत। ग्रूट नहीं खेलेगा क्या? पूछता हूँ। पता नहीं क्या, तृप्ति भाई नहीं है। वो तो ऑफिस का चौदह है, और आई मीन ऑफिस करना तो अच्छी बात है, करे जो कर रहा है। वो आया था 10 बजे पूछने, तब तो खाली नहीं था। आ गया ग्रुप आ गया। मैं एक मैच खेलूंगा फिर निकलूंगा। लो कहाँ गए थे सर जी आप? अरे वो नेट का क्या बोलूंगा। सुनील भाई आपका नेट का इशू है क्या? रेवेंजर भी कहाँ गए? वो बोले क्या एक मैच खेल आता हूँ, पता नहीं। ठीक है, लगाओ। घुमा भी ना, घुमा भी ना, घुमा आएगा तो टीवी में। Let's fight together. घुमाते हो गया हमारे अनेक घूम पच्छे। क्या बोल रहे हो? हाँ क्या फोन नहीं बना तो बताओ। नहीं, मैं बोल रहा कि घूम पच्छे हमारे अनेक घुमाते हो गए। साला इतना दूर सुना दिया क्या सुनाई दिया? तू भी कुछ बोल रहा था क्या? मैं तो भाई को बोल रहा था। और भैया जी कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया मतलब कितना बढ़िया? ठीक ठाक ही है अभी थोड़ा सा बढ़िया, और 1-2 महीना बाद पूरा बढ़िया हो जाएगा। वाह सही है। लेट्स गो। कूदो वेनम भाई, लेट्स गो नहीं, दोनों वेनम साले। वही भाई, साला सब सपेरा लोग, मतलब क्या बोलते, सपेरा भी नहीं बोलते वैंचो, इसको क्या बोलते नहीं पता मेरे को। सांप का ये क्या बोलते भाई, वो हिंदी टर्म ही भूल गया भाग। अबे बाहर कूदा दिया। सुनील भाई आप गुड लक हो मेरे लिए, पता है आपको बचाने के लिए मैं ले लिया। गन मिलेगा तो मारूंगा साले। अबे तू गधा जैसे उधर क्यों नहीं उतरा? मैं तो सोचा भाई अपना आदमी लोग उतर रहा है। छी भाई, हम तो कभी उधर उतरते नहीं है, तेरे को तो पता है। आ सकता है क्या? मैं सोचा भाई स्मोक ये कर रहा लोग का हूँ। नाम से आ तो जा रहा हूँ, लेकिन मार देगा। आ मसला रहा हो हूँ। गया, बंदे आ रहे हैं। आ गया, नहीं मार दिया, कोई ना।
पीटी डाल दिया सारा। वेट अबे वेट तो देख के उधर बाहर क्यों मत उतरता है बे? टीम के साथ ना उतरेगा। किसको किल मिला ये? क्या ही बोलो भाई, छोड़ो भाई। मुझे मिला मुझे मिला। ये सामने ही बंदा है। इधर भी बंदा है। Watch out! मैं अंदर ही आ रहा हूँ। डर लग रहा है यहाँ पे। ये दरवाजे से आ मसला रहे हो गया जी। आ रहे आ रहे आ रहे। मौली कर दी मेरे। अबे यार मत होना। नहीं नहीं नॉक तो नहीं हो। अरे यार आ गया, हील भी नहीं करने दिया। सो गया, इधर ही सो गया। खड़ा है, यहीं पे खड़ा है। मौली कर दो है तो वो आप पे कर रहा है मौली। अरे कैसा भड़वा है तो ठीक। नहीं हो रहा है, हम बहुत एग्जॉस्टेड हो गए। ये दोनों कहाँ उतर। जाऊंगा भाई इसके। अच्छा यासनाया है वो, तो इस वक्त दिख ही नहीं रहा कोई। गाड़ी लेके आ सकता है ग्रूट? भाई पे बंदा है एक। तेरे पे? रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ आ रहे से अब बॉट है या बंदा नहीं समझ आ रहा है। निकल के देख, अगर आया तो बोल, वरना गाड़ी लेके मिलता है। बंदा ही था। आ रहा हूँ। क्या हग रहा हूँ भाई मैं। फोन नहीं हो रहा है भाई मेरा, फोन से सबसे बढ़िया। फालतू एक साला फोन खरीद लिया। नया खरीदा क्या? अरे नहीं मतलब 1-2 साल हुआ है खरीदा हूँ, ये रिग्रेट हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा ही रिग्रेट। कौन सा लिया है, कौन सा लिया है? वन प्लस का 20,000 वाला साला, मतलब क्या गधा हूँ भाई मैं जो लिया था ये तब सोच के। दिमाग खराब, फालतू फोन, सबसे फालतू फोन है भाई। 20,000 में इससे अच्छा फोन आता है। क्या गधा जैसे डिसीजन लेके लिया मैं। तेरे टाइम पे 2 साल पहले वो पोको आता था, पोको ले लेता। F1 में जो भी पोको का फटने वटने वाला सीन था। मैं सोचा भाई वन प्लस तो भाई वन प्लस होता है, बहुत अच्छा है भाई। अभी ओप्पो के बहुत साथ, अच्छा है। ओप्पो के साथ कोलैब होने के बाद तो इतना अच्छा बन गया है कि कोई नहीं ले रहा। इतना अनरीचेबल हो गया वो, भगवान। भाई फाइट हो रहा है इधर तो रिकॉल टावर पे, भाई भागता हूँ। अरे जॉर्ड यार कैंपर
अरे अभी कैंपर वैम्पर देख, अभी माइक खुल गया, नॉक होने के बाद माइक खुल जाता है। बे तू बंद कर, माइक ऑफ कर, तू माइक ऑफ कर साला, तेरा बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है, तू माइक ऑफ कर, टाइप कर दे उससे अच्छा। बे इतना जो बैकग्राउंड में आवाज आती है, तुम लोग खेल भी पाते हो? भाई मैं तो एकदम नहीं खेल पाता भाई, अगर मेरे बाजू में इसका कोई रूममेट लोग जंगली है भाई, इसका रूममेट लोग जंगली है पूरा भाई, मतलब मैं नहीं, मतलब ऐसा आवाज आ रहा है ठीक है, मतलब लेकिन खेल तो मैं करते ही नहीं पाता भाई। तुम लोग को आवाज टीममेट मतलब कोई भी गेम में फिर दो क्या बोलते हैं एनिमी का आवाज कैसे आता है भाई, इतना फायर साइड में चिल्लाते हैं मैं तो क्या पता। मैं तो नहीं खेलता हूँ भाई, सब जब ये हाँ होता है भाई, वही मस्ती के लिए खेलना खेल सकते हैं भाई। मतलब भाई अब बंदे इतना बकचोदी कर रहे, इतना आवाज हो रहा है तो उसके कान में कितना आवाज आ रहा होगा उसमें भाई अरे बंदा। उसको सीनियर लोग भी है ना, वो हॉस्टल में है, तो अभी कुछ बोलेगा तो उसको कूट देंगे भाई। हाँ मतलब लेकिन कैसे खेल लेता है भाई, इसके लिए स्किल्स चाहिए होता है, तो मेरे में तो ऐसे स्किल्स है हैं भाई, बंदे पे स्किल्स है। बे तेरा बैक वैक लग गया, मेरे को सुनने में आया, सब पता चलता है मेरे को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा तुम। बंदा कूदा मेरे पे। कहाँ पे? हाँ दिखा दिखा आ रहा है मेरे घर में। ये अंदर आ गया। अबे क्या कर रहा हूँ भाई यार? हग्गू भाई, मैं नहीं खेलता हूँ एक भाई, ही है क्या? रहने दो। हाँ। एक ही है भाई, डैमेज भी है, लेवल 3 का हेलमेट है उस पे, देख के वेनम भाई, देख और के। एक कूदा वेरोस पे। और एक कूदा राइट पे। वेरोस पे घुस जाओ भाई, यहाँ पड़ेगा आपको मसला हो गया भाई। साला पुश कर रहा है सीधा मेरे। भागा पीछे ऊपर। नेड वेड है तुम्हारा ना ऊपर? नहीं नहीं साला उस पे नेड आ गया, मेरे पेटी से ले ले। ये वाला पहला वाला। हाँ इसी पे सामने तरफ है थोड़ा, सीढ़ी के पास। ऊपर खाया ऊपर तो होगा। लगा तो है। नहीं खाया होगा। जाओ दोनों घुसो एक साथ, एक ही बंदा है। रुक सुन वेनम, मेरे पास ना वो ब्लेड है, ठीक है? मैं वो ब्लेड मार के फटाक से वापस आऊंगा, तू उसको तब तक ले सकता है क्या? मेरे एंगल में आ तो ले सकता हूँ। क्या करता है? यहीं पे रुक जा आजा। चलो हेलो है। Excellent work. Awesome. हेड ही नहीं लगा। बंदा आ रहा है कोई तो। बंदा की बैठे पता नहीं। मौली आई रुक भाई। ओ हक दिया उसने। कोई ना हील। Awesome. और सड़ी है ना P90। रिलोड कर लो। बे नेड पिन क्या है वो? मार रहा है? सीढ़ियों में। पीछे भाग रहा है ये तो। मेरे को कुछ आवाज नहीं आ रहा है, नेड मेरे कान के पास पिटा बोल के। ये पीछे जाने का आवाज आया बस, और कुछ नहीं आया बस। तो एकदम बंद हो गया इसका। एक बग्गी वाला भी आया था, वो रिकॉल देने गया। ये लोग आएंगे वापस रिकॉल होकर पूरे चारों तो के बोलता हूँ चारों। पोजी चेंज करते हैं अपन। हाँ ये घर से तो निकलो। आ जाओ, सुनो आओ। चलो स्मोक करके निकला वो। रोड के उस पार चलते हैं। आ जाओ। मैं ये कर रहा हूँ। Awesome. अच्छा
अरे कुछ नहीं, ये इधर ही है शायद, ये बॉट नहीं है। बग्गी आ गई। आई आई आई। कहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख तो कुछ नहीं है, सिर्फ साउंड आया बस। हाँ ये दरवाजा मसला खुला। हो गया जी। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है बानोस पे आ रहे हैं वो लोग, उनको भी वही लग रहे हैं वो लोग। उतारने का ट्राई करना है इसको। बग्गी में नहीं, ओपन में ही आ रहा है वो। नीड है, अरे नीड तो है ही नहीं। कौन नहीं बोल रहा? ओके ये मैंने मिली। बग्गी निकाले, मेरे को ये दिखा। रहा मसला ओपन हो में गया निकलेंगे जी। ये लोग। वाला पछड़ी वाला बेड बना। अरे नाइस, वो उधर ही है। आ सकता है क्या? बचोगे बचोगे। पीछे, हाँ पूरा आप पूरा। आओ ना मैं मेरे पास। मैं पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, तू पीछे आ, वो भी पीछे जाएगा। रुको रुको रुको, तू घूम पीछे के आ है। रहा हूँ मैं। अरे मेरे को ना जस्ट वो इधर वो तेरे आ पर। रहा है बचाने। हाँ वो बचा नहीं है। इधर हाँ, शिट, दो आ बंदे गए वो रह लोग। गए। शिट, नहीं आता मुझे। अरे कैसा भरा हुआ है रे, हट। नहीं आता मुझे। साला तभी ये वॉल की पोजीशन पता नहीं अच्छा नहीं लगता। लेफ्ट राइट खत्म। क्या है ये, रेवेंजर आ रहा है कि नहीं? अरे रंजन भैया आ रहा है कुछ नहीं है। हाँ पूछता हूँ, रुक एक बार। आएगा तो खेलते, वरना क्या होगा। पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन तो है गांडू तो। और गुड भाई, आज क्या खाए डिनर में? आज चिल्ली और रोटी। अरे shit, चिल्ली से है। क्या वो कुछ रिप्लाई नहीं मिला? क्या रिप्लाई? कुछ रिप्लाई नहीं दी क्या सीन? कौन नहीं दी? आप। अच्छा कोई रिएक्शन नहीं मिला भाई। अच्छा वैसा। खाने पे रिएक्शन नहीं मिला भाई, दुख। अरे नहीं नहीं, वही तो हाँ। मैं तो बोला। आवाज नहीं आया क्या? मैं बोला शिट यार, आज चिकन बोल दिया। मैं तो अच्छा आज अच्छा। चिकन खाने का मन कर रहा था, लेकिन आज ट्यूसडे तो खा नहीं सकता। भारी नहीं अरे खाई। उल्टा सीधा। पीछे न जाए तू। पीछे न जा। पूरा सठा रहा है क्या? है, पीछे न जा एकदम। हल्के में नहीं लेने का, बोल बोल 80 किलो का हूँ, बैठ जाऊंगा तब जाओगे। क्या 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 क्या? बोल रहा है अगर भाई पीछे नहीं हट रहा है कि बैठ जाऊंगा आप पे तब जाओगे। कार्तिक भाई आ गया। कार्तिक चला भी भैया गया। तो अकेले खेलते हैं भाई, वो भी एक।
क्या वाओ क्रिएशन मोड के रहे तो आ रहे क्या रेवेंजर भैया मैं कॉल किए थे टेक्स्ट किया हूँ, रिप्लाई दिया था 1 मिनट लिखा है, आ रहे हैं 1 मिनट। क्या बोले वो लिखा है आ रहे हैं 1 मिनट। आ रहे हैं ना बस अब वो 1 मिनट लिखा है, आ रहे हैं हाँ या नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं। मैं बोला आ रहा है तो लिखता है आते हैं 1 मिनट। अच्छा तब ये को जाना पड़ेगा जाना। सुनील भाई डू योर नीडफुल बाय बाय। रुक जा सुनील भाई रुक जा। सो जा बे पढ़ाई कर। अबे ये तो पहले BMW में थी ना। अच्छा मार्च में छोड़ दी BMW। अच्छा मेरा हेडफोन गया है या आपका वॉइस कम है? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा आज लो हो गया भाई स्क्रीन दुखी दुखी। चिकन नहीं आ रहा है एक चिकन के बाद। भाई अभी लेकिन ये BMW छोड़ के ये कौन सा लंचेट जगह गई है? लोपो बस क्या है ये? सैलरी ज्यादा दे रहा होगा इसीलिए। लगा लो आ गए रविंद्र भैया। क्या सीन रेवेंजर क्या हो गया? अबे आज फोन फट जाएगा जैसा लग रहा है भाई फुल हीट। अबे तू तेरे को कूलर अभी तक नहीं आया क्या? हैं? मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा ना। क्यों? मैं उस टाइम दूसरे लोकेशन पे था, मेरे को भेजा गया तो लोकेशन पे। अबे तो वहां पे मैं ऑर्डर किया, एक हफ्ता दिखा रहा था। मैं तो इसी संडे आ गया ना, सैटरडे को वापस इधर भुवनेश्वर। अच्छा तो कैंसिल करना तो पड़ेगा। यहाँ से कर ले तो फिर इधर ऑर्डर कर, यहाँ से कर ले। फिर इधर से कहीं भेज देगा लंड। वही भाई अभी मेरे को पहले एक हफ्ता का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से भेज देगा मतलब तेरे काम पे तू तो वहीं पे भी रहेगा ना? अभी अरे मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हमको अभी इंटर्न चल रहा है ना, तो मेरे को भेज रहे हैं इधर उधर, समझा? बस घुमाए जा रहे हैं। अच्छा ये मैच चिकन आया था कि नहीं? कहाँ भाई तेरे बिना चिकन कहाँ? कौन खेल रहा था चौथा बंदा? वो इस गुरूद का एक दोस्त I है। got 5 eliminations just now. सुनील भाई के साथ तो खेला होगा तू। अच्छा डेमन सुनील। हाँ डेमन सुनील। डेमन लैंड के डेमन। बेचारा डिप्रेस्ड हो जाएगा भाई ऐसे मत बोलो उसको। लैंड के वेनम। अरे अच्छा अपना भी वेनम भाई का नाम वेनम है ना? सॉरी शिट मैं तो भूल ही गया। अबे उसका डेमन है भाई, ये वेनम है। नहीं वो डेमन वेनम नाम है उसका अभी। सॉरी। हाँ अरे वेनम भाई सुने तो नहीं ना? वेनम भाई माइक ऑफ है आपका। यस सुने तो नहीं ना कुछ? वो भी टेढ़े वाले। क्या फोन फटा नहीं, बच गया। अब हम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है RyuK भाई। क्यों भाई अचानक क्या हो गया? भाई क्या फुटस्टेप आ रहा है? लो मिल गया था। देख ही नहीं दे। नाच रहा लंड लेकिन गन नहीं गिरा रहा। अरे तो मिला तो आपको इसलिए तो नहीं दे रहे थे। अरे उसमें 30 एमओ है, वो एमओ उठा के चला गया है। ओके चलो मेन चलो सीधा। मैं तो बोल रहा हूँ चलो। कहाँ जाना? मेन आ जाओ इधर। मेन पकड़ लो मेन पकड़ लो।
पकड़ो पकड़ो आजा आजा आ रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे 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 पकड़ लिया भूतड़ी वाले ने। अबे एक एचपी है, घुस जाओ। ये अकेला है, वो अकेला है, कोई भी नहीं उसके पास। मैं आ रहा 1 सेकंड। अरे यार ये शॉटगन तो हमारी 2 गोली, उनकी 1 गोली। हेलो लग गए मेरे, इधर भी लग गए। अरे यार रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। हाय मत बोल, सुनाई नहीं दे रहा। ऊपर है। अरे 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 रुक जाओ, एक सेकंड रुक जा मत जा। भाई क्या आया हूँ भाई, मौत का मुंह। वहीं मर पे गया सामने। क्या? कहाँ पे कहाँ पे? सामने तो था इधर। और लास्ट रह गया। पूरा सीधा पे था एक दिखा। नेड़ा रुको रेवेंजर पे नेड है। और एक नेड है। गार्ड फट गया। देख देख यहीं पे है, यहीं पे नीचे में कहीं पे। बेटा हाँ नाइस। नॉक बंदा था। अबे उसी को नहीं वाह। और एक बंदा आ रहा है। थोड़ा मैं उसको ना गुंजे थे। और एक बंदा है, बाहर है बाहर है। सॉरी नहीं पता था। माय साला कितना आसानी से बोल देते हो। यहाँ मेरी गांड फट गई। मेहनत पे मुझ के चला जा रहा है। मेहनत तो मुझ के जा रहा है भाई, देख रहा था रविंद्र। बंदा है 3 है। अबे लेफ्ट से आ गया। कहाँ लेफ्ट से आएगा? हाँ फुट आ रहा है, किसी का तो फुट आ रहा है। हाँ आया। मौली किया। अरे नहीं यार मौली, मैं तो बोला पीछे एक बंदा है। नहीं होगा भाई। अबे कहाँ यार, तू तो गांडू है ना। तुम्हारा तो और दिक्कत है भाई। यहाँ आया है, ठीक है। ये देखो एक तो भाई ईयरफोन ठीक कर ले साले। तू कहाँ आया, क्या आया, क्या करता रहता है अरे यार साला। वो जगह ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है भाई। कॉम्प्लिकेटेड तू है, कॉम्प्लिकेटेड ठीक रोज़ोक पे है। जाके दे रहे रिकॉर्ड है। कौन मर गया है? अच्छा सपेरा मर गया। अरे यस मैंने बोला तो वहाँ पे जहर लास्ट रह खत्म हो गया। चुका है बे, इसका जहर लास्ट खत्म रह हो गया। चुका 3 तो मारे, 1 बच गया सिर्फ। अरे देखो तुम सांपी है भाई, एक साथ 4 को नहीं डस सकता। 2-3 ही बहुत है तुम्हारे लिए, जहर खत्म हो जाए। डस के तो किधर उतरना? रोज़ोक पे उतरो ना, मैं रिकॉल पे उतर रहा हूँ, उसको कर दे रहा हूँ। बस बंदे ना हो, नहीं तो घोड़े लग जाएंगे। यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे ज्यादातर नहीं रहते। ज्यादातर नहीं रहते मतलब सेंट्रल कैंपर हुआ तो हो सकता है। ये ज्यादातर क्या होता है? अरे जल्दी नहीं आते यहाँ पे रिकॉल करने। अच्छा चांसेस कम है। अच्छा RyuK बंदे से सेंट्री हुए कैंपर, वो हो सकता है ये हो जाए। वाओ यू आर सो ट्रू ब्रो। ए रिकॉल मत दे किसको तो। कैंपर बोल रहा है देखो। रिकॉल मत दे तो। RyuK भाई को किसको कैंपर बोल। रिकॉल मत दे। बड़वा बहुत बोल रहा है, रिकॉल मत दे इसको। सही में नहीं दे क्या? सोचो आप ऐसे डांस कर रहे हो और बंदा गिर जाए आप पे, मैं रिकॉल के लिए आप भी तरसोगे भाई। मैं उस बंदे पे मुंह दूंगा, बह जाएगा सारा साइड से, वाटर सिटी चला जाएगा इधर। सामने आ जा रहा हूँ ना, सामने से मारो। लो 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 नहीं मार लो, एक तो मार लो अच्छे से। रिकॉल करूँ कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी ऊपर मार तो देख तो नीचे आता है कि नहीं। ठीक है ऐसे नीचे थोड़ी आएगा। कट्टा पकड़ लिया है, पगला आ गई है भाई ये तो।
वो चूप पगलू हो गया भाई। सही में भाई। सही में क्या? What do you mean by सही मैं में? दे रहा हूँ इसको। दे 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 दे। Recalling a teammate. ये बंदे आ गए। ओ भाई पूरे स्क्वाड। वही भाई बॉट मार लिए देखो। मैं तेरे पे बंदा आ गया। बोल रहा हूँ। कहाँ पे? अबे पूरा 1 HP पे ऊंट और एक सुन, और एक बाइक में जा रहा है तेरे पास। रुको मैं भी आ रहा हूँ भाई। अबे पूरा लो है उसको, देख मार पाएगा तो देख। गाय दिखने चाहिए मार्क। भाग गया पे ब्रिज से भाग गया। अच्छा भाग गया, डर गया। ईएमपी था बे, इस कारण पर रहता तो गिर जाता। अच्छा भड़वा। तारीफ ये ड्रॉप पे लो, करूं क्या ड्रॉप पे लो। मेरी। कोई नहीं था उधर। चलो इसकी माँ का, अरे मादर चोद ड्रॉप है कहाँ वो तो दे। इधर ही तो है ये तो। अबे वो मेरे को भी दिख रहा है लौड़े। तो डरना क्यों फिर? बे हम लोग पे अगर बंदे आए और तो तुम लोग नहीं आए ठीक है फिर मैं देख लूंगा। लौड़ा सब उठा लिए। एमो तो दे। आएगा एमो दो। है लौड़ा P90 दो वापिस इधर। आपकी ये पकड़ो हानि नहीं एमो दो। तुम एमो दो। नीचे ये लो। लौड़ा लो दो। अरे एमो तो दे P90 का लौड़े। ये लोग यही करते करते हो जाएगा इसका एमो दो, इसका एमो। हेलो चलो क्या बोलेगा एकदम झटरी लोग। चलो मेरे को मीनिंग बताओ यार। सोलो चिकन निकाल देंगे बे। थोड़ा पता तो है बट तभी भी निकाल तो देखते हैं जरा। सोलो चिकन पर हल्के में ले रहा बे बेना। उसके मां की सुन बंदा गुड ए तुम लोग भी आओ जल्दी। मेरे मार्क देखो मैप में। मार्क दे मां चोद। किधर मार्क मैप में देखो। बुल्ले मिला देंगे। मार्क करो। मैप में तो तुम ही लोग दिख रहा बस। मैं मैप में मार क्यों भूमसड़ी का। चलो इसकी माँ। अरे मारना पे बहना गांड फाड़ देना। दिखना तो चाहिए, ऐसे ही मारो। नहीं मारेगा तो फिनिश होगा और क्या। इधर ही तो मार्क किया हुआ 100। अरे डीबीएस भी उठा लिया। ये घर पे आ जाओ। कौन से अबे माँ कसम बॉट था। सिर्फ बॉट आ रहे हैं। जोनाथन का कपड़ा पहन के आया भाई ये बॉट। मतलब समझ रहे हो बॉट ही है वो भी। अरे मतलब हाँ बस हो गया। ये तू तो गया बेटे। पकड़ लिया तू तो गया बेटे। कौन क्या करेगा गया बेटे। डरते थोड़ी है भाई, किसी से डरते हैं यार। अरे अबे लैग हुआ रेंडर तो मेरा भी हुआ। क्या सीन, कहीं से गाड़ी आ रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा कहीं से आता होगा। आएगा तो भी पास नहीं आएगा लेकिन। हाँ वो तो उठा रहा है। रिकॉल पे गया। चलो पकड़ भाई। चल गाड़ी ला फुल धप धुप गेम प्ले। ए छोटू गाड़ी स्टार्ट कर। छोटू गाड़ी ला छोटू। तुम लोग गाड़ी कहाँ है छोटू? अबे पीछे डासिया लेके आओ ना तुम लोग। डासिया लौड़ा तुम कितने दूर खड़े करे हो। देखो एकदम लंच। चलो हम लोग ही मार देंगे। चलो कोई बात नहीं। देखो हम लोग मार देंगे। खत्म दोनों जा रहे हैं। रिफंड में मरने जा रहे हैं दोनों। लग गए गुरुट भाई के लग गए। गुरुट नॉक हुआ। गया एक नॉक। बोल रहा है एक नॉक। रेवेंजर भी नॉक। दूसरा नॉक पक्का है भाई, श्योर है पूरा। बैठ देना। माइक किसका है माइक? चलो माइक ओपन करो।
ये देखो रोहित शेट्टी को देखो। हाँ, गए दूसरा दोनों। नॉक हो गया। हम दोनों ही मार के आते। P90 है, खत्म कर देंगे। अच्छा लौड़ा वो भाई ये कर लोग नहीं है। अरे कुछ बोल रहे सुनो। पता नहीं क्या बोल रहा है। मार एक ही जगह लूट रहा ऊपर में तीनों। अबे लेकिन डीबीएस है बे, डीबीएस और P90 है। देख लौड़े लगा देगा तुमने। नीचे कूद गया। 3 है। एक रिकॉल दे देता, दोनों अंदर घुस गया। लो अरे नहीं। तीसरा गया। अबे जब अपने टीममेट ही सीरियस नहीं है तो मैं क्यों सीरियसली इनको नॉक ये करूं भाई। बोल रहा हूँ भाई। कोई ना भाई मैं नहीं हूँ यहाँ पे। और बस ये भगवान। ये दोनों हम दोनों ही मार के आते हैं। लौड़ा दोनों मर गए वहाँ पे जाके। ग्रूट तो ऐसे जाता है जैसे साला उसको अभी बोल रहा था भाई मैं 40 FPS में खेलता हूँ। रेंजर भाई का तो कॉन्फिडेंस पता है मार्क कर P90 है। दिल्ली मजा आती कि ओपन जाके मार रहा। मेरे को ये समझा बस, इसका लॉजिक बता। लॉजिक समझ। अरे देखो मैं सोचा पूरा नया बंदा कूदा है अभी तो नया क्यों भाई? बंदा का 6 साल का पुराना आईडी है भाई। भाई सुन ना नया वाले। अरे नया मतलब जस्ट कूदा है, लूट नहीं है भाई। वही बोल रहा था भाई मैं रॉकला के सचिव की तेरी गांठ मार के जाऊंगा भाई। एक हाथ में ग्लव्स पहनूंगा पूरा टाइट वाला और एक चटाक करके लगा के आऊंगा। फिर ना जब भी बैठेगा तो बीजे में खेलने में याद रखेगा साला नहीं ऐसे पुश नहीं करना वरना ऐसे ही लगेगा। ऐसा बकचोदी कर रहा ना भाई। बोलता है भाई फ्रेश था। आप भी वही थे। तू भी वही था। तू क्या बोल रहा है बड़वे? हाउस है ना। P90 है। तू भड़वे। अरे भाई मैं उसको डीबीएस का एक शॉट मारा भाई। अगर फ्रेश बंदा होता तो नॉक। लेकिन लगा नहीं। मेरा पता है डीबीएस का गोली प्लास्टिक। डीबीएस लगा ही नहीं भाई। अरे लगा है भाई, मेरे में दिखाया तो लगा। मैं देखा भाई नहीं लगा। हाँ बकचोदी कर लो। अभी लगा है ना, अपने टाइम में लगता है डीबीएस। मेरे टाइम में नहीं लगा था साला। महान आदमी भाई उतना छोटा गेट में डीबीएस नहीं चिपकेगा भाई। क्या बात कर रहा, मुंह पे मारो। तो दीवार पे चिपका था आपका डीबीएस, पता है? गलत बंदा चुन है भाई। और जाओ या तो वेनम या और जाओ RyuK के साथ जाते तो कुछ अलग। और जाओ नहीं जाओ ना। जा अंधा भरोसा किए थे यार बेचारे। हम गलती से स्नैप वाले पे भरोसा कर लिए भाई। हम तो भूल गए स्नैप वाले तो लड़के ही नहीं होते। देखो ये गलत हो गया भाई, ज्यादा हो गया भाई। वो बोलना चाहता है अलीसा के साथ चल जाते हैं भाई। अरे भाई सारा भी अच्छा मार लेती भाई। अरे ले क्या कंपेयर कर दे। कहाँ दुख लग गया भाई। मैं नहीं खेल रहा भाई, एग्जिट मार देता हूँ भाई। रहने दो भाई। नहीं एग्जिट मत मारो, सिर्फ उतर के रिकॉल पे चले जाना, मारना मत। ठीक है भाई, अभी रिकॉल जा रहा हूँ। उतरूंगा ही नहीं, जाओ। अरे भाई ग्रूट आ ना। ये एक बकचोदी ये लड़ा। तुम लोग स्नैप यूजर लोग ही ऐसे बकचोदी एकदम बात को ना गांड में ले लेते एकदम। मैं भी स्नैप चलाता हूँ भाई, सब चलाते हैं। टेंशन मत। मैं नहीं चलाता। क्या बोला? मराने जा। मैं नहीं चलाता। अच्छा मैं नहीं चलाता। ओके साला एकदम सीरियस हो जाता है भाई। बैंटर की तरह ले। वही भाई। यहाँ पे मैं रेवेंजर को अब मैं रेवेंजर को बोलूंगा कि भाई रेवेंजर तेरी माँ चोद रहा हूँ रुक। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच्ची में। कौन मादरचोद नेड मारा रे? ये ग्रूट ही मार रहा होगा। ये ग्रूट बदला ले रहा है, मैं बता रहा हूँ। तूने उसे बोल कैसे दिया स्नैप के बारे में? भैया माफ कर दो भैया। अरे लौड़ा कौन है टॉमी वाला? गाड़ में देखो छुरछुरे काट रहे उसको। देखो ग्रुप को
से आ रहे बंदे। अच्छा RyuK भाई नॉक होने वाले हैं। नॉक करने वाले हैं। पीछे से रेवेंजर भाई पीछे से। अबे पीछे से मेरे को पड़ रहा भाई। मारो आजा ग्रूट, लेफ्ट से आ जल्दी तो मारे। जल्दी आ ग्रूट। रेवेंजर भाई हील करो ना आराम से। अरे इसको मैं आने बोला, ये भड़वा साला। अरे वो वहीं पे था यार। तो अबे तो गेट पे स्मोक करता ना भाई मेरे इंटेलिजेंट। ये पीछे वाले ने घंड मार दी पूरी। पगलू मार के चला गया भाई। अरे भाई इसका नाम भाई। यार पगलू मार के चला गया भाई। अबे चूत पगलू था तभी तो पीछे से मारा। भाई मैंने 90 FPS वाले बंदे को मार रहा था भाई। मेरा गलती था, मैं उसको मारा। मेरा गलती। अभी उधर लगा है रोजो। हंसना ही नहीं पहुंच सकते, छोड़ो। रोजो का क्यों नहीं पहुंच सकते? गांडू है क्या थोड़ा सा? अरे कोई होगा नहीं उधर रोजो में, फिर भी बंदे आ सकते हैं। गांडू है वो। ये देखो कूद के देखो। मार्क लगा हुआ तो मैं कूद गया भाई। डरने का नहीं, सीधा कूद जाने का। डरने का नहीं तो फिर अपार्ट आओ ना, डरते क्यों? आओ। अरे यार फिर अपार्ट भाई इसको अपार्ट से क्या नहीं सुनो, obsession है भाई? अपार्ट्स नाम का चीज मैप में लिखा नहीं है ना, तो इसलिए नहीं जाते भाई। मैप में बिल्डिंग है ना उसके बाजू में ही है अपार्टमेंट, वहां पे वो बाजू में इतना डायरेक्शन नहीं, मैप में लिखा है। अगर मैप में लिखा मैंने मार्क लगा दिया, इजी एकदम। मैंने मार्क लगा दिया। अरे एक बार चलते हैं ना इसका, ये वेनम भाई का बात सुन के। वेनम भाई खेले सुन रहे हो? वेनम भाई इसका बात सुन के ही जाते थे पहले। पूरा इसका उस दिन ही रेप हुआ है। तुम लोग भाग देते थे वरना इजी फाइट होती थी। उधर ही रेप हुआ था तेरा, याद नहीं है? घंटा भाई इजी फाइट होती उधर, लौड़ा पहले ही नॉक हो जाते हो फिर। वाह अच्छा घंटा बोला, मैं सुना नंगा भाई। मैं तो बोलने वाला था भाई नंगा ही होता है यार। अरे बंदा को था डेंजर है। नंगी तो वो होती है मेरे साथ। अरे RyuK भाई हेलो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो बंदे ही बंदे हैं भाई। अरे सॉरी। और बोल भागो में भैया जा रहे हो? अबे और एक कूदा। कहाँ पे? अरे रुको इधर, एक गन नहीं मिली। रुको यहाँ पे पूरे अपार्ट्स में कोई पोछा मार के गया, कुछ नहीं है इधर। सच में 2 फ्लोर लूट लिए, कुछ भी नहीं है। पोछा मार के साइकिल मिली एक, सोचो एक साइकिल मिली है उसका पूरे मतलब समझ अपार्ट रहे हो? में। साइकिल लेके जाओ अपार्ट जाओ, वहाँ पे भाई क्या मार कर रेवेंजर कहाँ दिख गया तेरे को बंदा? यहाँ पे लौड़े। कहाँ पे लौड़े? तो आगे लौड़ा लोड़ी चल रही है वहाँ पे। फाइनली एक शॉटगन मिली पूरे अपार्ट्स में से, एक शॉटगन। भगवान भला करेगा। फाइनली। अच्छा ये अपार्टमेंट बंदे आंटी टॉप फ्लोर पे पोछा मारने भूल गए शायद। काम वाली भाई हायर किए होंगे, सारा सामान एक जगह कर दिए। हाँ बंदा बताओ विराट। 0 किल मेरे जा रहा हूँ मैं। मेड अपार्ट्स 0 किल भाई, मैं नहीं खेल रहा। ऐसे ही बोल के अपार्ट घुसता था ये बंदा, ठीक है? अपार्ट में मैं तो नहीं मरता था, मैं तो वहीं पे था इसी घर का छज्जे पे था। पहले नॉक भी होता था तू बहुत मैचेस में, ठीक है? हमको चलो अबे मेरा बंदे हो और इनके से मरूं तो अलग बात। ठीक है अगर एक भी मैच में अगर तू पहले नॉक हुआगा, मेरे को बता क्या देगा तुम? अगला गेम अपार्ट्स चलेगी, ठीक है? देखेंगे। अभी तो ग्रूट है ना, तो अभी तो नॉक होगा ही नहीं पहले। नहीं अरे नॉक होने की तो बात ही नहीं है। फाइट कौन अच्छे से निकलता है वो देखिए। फाइट वाइट वो सब नहीं देखते भाई। तो ग्रुप होगा, सिर्फ मुट्ठलबाजी वाला बात है। वही फाइट है। अब मैं बोलूंगा बिस्तर आजा सेक्स कौन अच्छा करता है देखेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ से भी फूटा है एक। इधर सुनो। हाँ तो वही वाला बंदा आगे किया होगा ना, जो वहाँ पर लूट रहा था, जहाँ पे तू खड़ा हुआ। यहाँ पे भी बंदा है और यहाँ पे भी है, तो कोई आओ ना, इसको तुम मारना ही नहीं होगा पड़ेगा। क्या रे छटरी? अरे तो आगे आओ, फाइट तो लेना पड़ेगा। उधर भी बंदा है, ले बैठ। चलो आ जाओ, तो तू राइट से ही खाएगा, देख ये कूदा इधर।
ये जहाँ मार रहा है ना उधर जाना चल। कहाँ पे लोगों को बता, किस साइड जाना बता। रुको इसको नॉक दे रहा हूँ ऊपर वाले को। गया भाई साहब, सेक्स हो गया इसके साथ। ऐसे भी रेप नहीं करना था उसका। बेचारा ओपन में क्या निकला, सीधा समाधि बन गई उसकी। अबे ये घर पे बंदा। Watch out! कौन सा? वो ब्लू वाला। कॉफी हाउस आया। हाँ आया फुट आया आया स्क्वाड हाउस आया। भाई कॉफी कहाँ मिलता है? ये देखो आओ ना रुक भाई, इसको ले सकते हैं वैसे हमें। लेना है क्या? अबे किसका माइक है? अरे आओ ना, अरे आओ बे आओ। मैं तो तेरे पास ही हूँ बे। ये पीछे आते आते रुक कहाँ जाते हो? हे भगवान, उसका दूसरा बंदा इधर ही है। मार जा रहा है। और है क्या? ये नहीं होगा बे, उसका दूसरा बंदा। नहीं और नहीं होगा वही। और है क्या? यहाँ पे कहीं क्या पता। फुट से आ रहा था ना, अभी तो मार फुट्स तो नहीं आ, पीछे मतलब तेरे ही साइड है। सी बिल्डिंग। अबे एक इधर भी आया फुट बे। मेरे को वही बोल रहा था मैं भी। देखो मेरी ग्रेड आजा उधर है एक बंदा। हाँ राइट साइड इधर इस तरफ। Watch out! किधर? अच्छा हाँ अरे बहुत डैमेज है भाई। ट्रू चल। ये भी बॉट ही था। उसका भी असिस्ट मिला। सी बिल्डिंग आओ। दुख है। ये ले, ये बंदा था। एक तो किल ले दो भाई, सब असिस्ट। ये बंदा था लौड़ी। बंदा कूदा। अबे बंदा लैंड कहाँ पे लैंड किया? छज्जा पे लो है क्या? बहुत लो है। 2 बार खाया वो वेस्ट। अबे उसी को नॉक किया क्या? फिनिश। अपार्ट्स में बंदे हैं, देख के। है क्या सी बिल्डिंग में? डेंजर इधर बंदा। वही तो बोल रहा हूँ तब से। अबे ठीक 5 का एमो नहीं है बिल्कुल। क्या वॉल पे है क्या? किसका माइक है? डेंजर वेनम का है। अरे वॉल पे है क्या? वेनम भाई माइक नहीं, अंदर घुसा। जाओ इधर से अंदर जाओ, मैं कवर दे रहा हूँ। जाओ मैं जा रहा हूँ पहले। लैंड कर रहा है बंदा। और एक कूदा। जा रेवेंजर तू भी जा। अरे नहीं यार, क्या कवर दिया बे? कहाँ से मारा? पूरा ऊपर से मारा। अरे तू पहुंच गया तो मैं और कवर नहीं किया। नॉक मत होना बस, जो करना कर नॉक मत। हो गए। और एक आ रहा है। चल 90 FPS चल। लास्ट। अबे और क्या मारूं साले? तुम मारेगा? अबे तेरे सामने लेट रहा तू उसको मारेगा नहीं, और मैं क्या अभी क्या 1v4 करूं क्या हर सिनेरियो? कवर तो दिया था भाई, बहुत बढ़िया कवर था। अबे तू पहुंच गया तो मैं इसलिए वापस मैं खुद आने लगा, मैं इसलिए गन छोड़ के भाग रहा हूं मैं भी। कहां से मारा? वाह तू पहुंच गया था ना, तो साले पहुंचने के बाद भी तू नॉक खाएगा तो मेरी गलती साले। वो दिन आते आते बस गेम चालू होना चाहिए। वो दिन आते मैं ना चल जाऊँ भाई कहीं। अपनी बंदी के पास तो आ ही जाएगा। बंदी के पास जाएगा।
नहीं काश होती। ए हेलो, एकदम सेक्सी कवर। देखो देखो सब बजेंगे, सब मैं कवर बजेंगे। दे रहा हूँ। बे भाई मैं कवर दे रहा था, वो पहुंच गया था, उसके बाद वो वॉल तक पहुंच गया था कि नहीं? रुक मैं देखता हूँ, रुक लौड़ा दिए तुम। रुक रुक रुक, कुछ मैं भी नहीं देखता हूँ दिए। देखता हूँ, अभी जब इतनी बात अच्छा उठ ही मैं रही ना है पॉपुलैरिटी बैटल हार रहा हूँ मैं भाई। देखता हूँ, रुक। कोई मेरे बात को नहीं, भेजो ना कोई। देख ऐसा ये गेम है तो ग्रूट आगे गया, खेलो, ग्रूट छोड़ दो। नॉक नहीं हुआ फिर, ठीक है। और मेरा मेरा एक बार स्ट्रीम जाके देखो, ठीक है, वो जहां से मारा है और उस पीओवी में मेरे को दिख रहा है कि नहीं बंदा, मेरे को एक बार देखो जाके, जाओ। अगर मेरे को दिख रहा होगा तो फिर मैं फिर नूब हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, जाओ। ये जो कवर कवर बकचोदी पेल नूबो रहे भाई, हो, जाके देखो जाओ। कौन बोला नूबो? कौन है भाई नूब? कौन कौन बोला? बोला आप लोगों को? कौन बोला मैं भाई बोलूंगा ना, बताओ तो। अगर मैं कौन कवर बोल नहीं रहा दिया है? हूँ। अबे कौन बोल रहा है? देख कौन नूब साला बोला? रेवेंजर वही वही गांडू, भाई गेम भाई स्टार्ट करो भाई। तू वॉल तक पहुंचा, ठीक है, तू वॉल तक हाँ। पहुंचने के बाद नॉक हुआ है गांडू। अब मैं तब तक निकल अबे चुका तो हूँ। वो अंदर घुसेगा तब तो मैं घुसूंगा ना भाई, पूरा तो घुसने दे, मैं घुसा थोड़ी था पूरा अबे अंदर, मैं गेट पे ही था। मैं तब तक निकल गया ना, मेरे को थोड़ी पता वो छत पे कैंप करके बैठा होगा, ग्रूट नहीं को नहीं, नहीं सुनो मारेगा सुनो, और तेरे को सीन मारेगा। क्या पता है? सीन क्या है देखो, मैं बता रहा हूँ। रेवेंजर भैया नहीं घुसने का कारण ये है कि मैं डोर ना क्लोज कर दिया था, समझ रहे हो, तो डिले हो गया थोड़ा। तो मेरा गलती है, ठीक है, छट रही चलो है भाई, मैच क्या स्टार्ट करेगा करो। बता। लैंड मेरा साला, गलती है, चलो स्टार्ट करो। लैंड साला। मैं घुस ही नहीं पाया भाई, मैं आया दौड़ के, भाई अब पता नहीं उसमें कहाँ से, मेरे को लगा बचा लेगा भाई। तो भाई मेरे को मेरी तो भी अभी गोली वो मेरे बस को बस लगा वो ये गेम अपार्ट सा बात कर। लैंड आएंगे। वो वो जैसी नॉक, मैं जैसी नॉक हुआ ना, मैं समझ गया गेम खत्म। भाई चले तू ग्रूट 1v1 तो वो उसको सामने से अच्छे से लेता है, उस बंदे से उतना अबे तब मैं से मैं मेरे मैं आने पहले ही से। समझ गया था भाई, जैसे ही मैं नॉक हुआ ना और मेरे पास ग्रूट था, मैं समझ गया ये गेम तो अबे खत्म हो गया। उसके पास बंदा तब से वो फाइट कर रहा, मैं आके उसको मारा, उसके सामने गया लेटा हुआ गया, है। आप बोल के फायदा नहीं है, वो स्नैपचैट देखने का, पता मत है बोलो मेरे को, वो कुछ। स्नैपचैट देखने इसीलिए तो नहीं हो रहा है गेम प्ले। गेम क्यों नहीं हो रही है? स्नैपचैट में मुंह तो वन बाजी, भी हक दिया भाई, कम से कम उसको तो नॉक कर देता एक को। स्नैपचैट में चूतबासी खत्म होगी तब ना इधर गेम प्ले होगी। लो क्या क्या बोल रहे हो भाई। ईगो भाई वेलकम बैक। अबे आज अच्छा, अबे अब समझ में, आज पहला ही गेम में चिकन आ गया ना, अब लैंड कुछ होगा, हो गया जो आना था आ गया। वैरायटी ये गेम गेम चिकन है, स्ट्रीमर, मैं बोल रहा हूँ यस वैसे ईगो खेलो, भाई। चिकन है ये, वैरायटी भाई का मत सुनो, वैरायटी एकदम गेमिंग, वैरायटी बड़ा। गेम स्ट्रीमर हूँ मैं, यस यस, बात तो सही है। हम एक स्ट्रीम नहीं पे 3-4 गेम्स खेल लेते हैं भाई, ऐसा वैरायटी स्ट्रीमर कहीं अपना मिलेगा? दिन में एक ही चिकन लिखा है भाई, आजकल ज्यादा अच्छा एक चिकन भी का नहीं डिमांड खेलते बढ़ गेम, गया। लेकिन खेल के समय देखो वैलो में भी हगास, यहाँ पे तो खैर जाने ही दो। खैर जाने ही दो। वो रेसिडेंट इवल इतना खेल रहे थे, अब टट्टी उसमें जान फट के चार हो गई थी मुझे। सांप टट्टी होगा तो कैसे ही होगा, सांप ही साला टट्टी निकला। नहीं नहीं, रेसिडेंट इवल खेल रहे थे, उसमें गान फट के 4 हो गई थी इनकी। फिर भी खेल तो रहे थे ना। भाग रहे थे भाग रहे थे एकदम बोलते हैं। लेंडिस। अन्ना इधर बैग ही फुल हो गया साला। ये कोई तो गिरा। एक दो तीन, चल चलते हैं। किधर इधर ही बंदा है। नहीं वो साइड मत जा, वो साइड मत जा, मेन की साइड चलना है तो चल सकते हैं। चल वो वाले साला आ जाओ आ जाओ। और तू तो रुक जा लौड़े, ऐसे मेन दौड़ता है मादे चो, जैसे मेन में पापा बैठे हैं, अंदर चला जाता है। देखो ये साइड वाले मारेंगे। एक नॉक दिया, ये नॉक दिया। मॉली आया। और एक उधर ही है, देख के आओ।
किधर अरे है मैं किधर तो है? अपने पे नेट अरे ये इतना ये छोटी है देखो ना। क्या आ जाओ नशा मेन आ करता जाओ। हूँ भाई। चलो मैं आ गए आ गए आ गए। आगे खुश आ ऐसे, गए, आ गए। खुश तो ऐसा हो रहा है जैसे मानो तो महल आ गया। अरे देखो ये क्लियर है, इस बार देखना ये क्लियर है, कसम आपकी। आते हो किसका आते हो। माइक माइक है? माइक। पता नहीं भाई, मेरा ही होगा फिर। माइक ऑफ ऑन कर ले। वाह। ऑन करके ऑफ ऑन कर लो भाई। ऑन करके ऑफ ऑन कर लो। ठीक है भाई आओ यार करते। बिजी। कर लिया ऑन करके माइक ऑफ ऑफ। ऑन। ओ भाई सेक्स। पहले उतरते थे उसमें ही बैठे हैं बंदे, आओ ना। अंदर आया कोई, अरे भगवान देखो। मैं लूट रहा था भाई, मेरी इतना कोई साउंड नहीं आ गलती रहा है, नहीं ग्रुप भाई को साउंड ही नहीं आ रहा है इसको। है। अबे मेरे को दे, तू रेफ दे साले, क्या कर रहा है? ये है रेवेंजर भाई, मुझे डर लग रहा है। नॉक एक एक। अरे पूरा डाल कैसा? पूरा डाल पूरा डाल, उन लोगों को पूरा डाल, हरामजादे को मौली डाल, कुछ भी डाल, पूरा डाल दोनों को। वो तो ऑब्वियस डांटेंगे भाई। वो रैप नहीं होनी चाहिए। भाई नहीं होंगे। जल गए दोनों जल गए। अबे मौली आ गई, लो खत्म। अरे डैमेज है, यार डैमेज है, डैमेज है। ये ग्रूट रेवेंजर साला, भाई ये सुनो, ग्रूट आजकल ना वो तृप्ति ऐसा खेलने लग गया है इधर पूरा। इधर। ओपनिंग नॉक खत्म अपना ही देगा। अबे लूट रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बंदे मारना ही छोड़ देगा। नहीं मैं देखा ही नहीं, मैं पूरा वही focus ना, पे- हाँ लूट लूट पे फोकस था ना, कहाँ से फोकस होगा पूरा साला। ग्रुप का फोकस सिर्फ लूट। अच्छा भाई ये सब गलत है भाई, ऐसा मत बोलो भाई ये तो सही बोल दिया भाई, एकदम 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 हैं? पूरा राइमिंग भी कर रहा है ग्रुप ज्यादा ही तेरे सच लिए। बोल दिया भाई। क्या पता भाई, ग्रुप लड़की एकदम के लूट साथ बदलू हो चुका है। रात को बीजीएमआई खेले ये, बतियाए ये, और हूँ मैं पगलू, ये भी ठीक है भाई, क्या करिए। क्या चूत पगलू बोल दिया क्या ग्रुप में? हैं? नहीं वो बोला कि ग्रुड भाई दो के पीछे जाते हैं, एक लूट और एक ओ अबे बंदा है कि बॉट है ये? अरे ये फिनिश भी नहीं कर रहे। ओ पकड़ी वालों, बे बंदा। किया फाइनल नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप अबे तो वही है। अबे आओ जल्दी आ। अबे जाओ रेवेंजर पे, अरे ओए सुनना एक नॉक, एक रैप दे रहा है यहाँ पे, रैप दे रहा है, जल्दी आके मार इसको बड़े को। अच्छा तू छू मेरे को, ग्रूट तू छू मेरे को। अरे ग्रूट तू छू ना आके मेरे बाप। हाँ रेवेंजर तू बस होल्ड रख। क्या छुआ छूट चल रही है उधर। छी सुन, रुक जा रेवेंजर रुक जा। मेरा वाला मर गया। रैप देने गया। मैं मर गया, वो रैप नहीं दे सकता अभी। चल अबे शॉटगन है, पंप है, ठीक है देख। नाइस। कितनों को मारेगा तू बड़े? मैं होता तीनों को मार पहले पूछ। ठीक है रे भाई, मैं अबे होता हमको तीनों लगा को मार बॉट है, मैं तेरे को वही पूछ रहा था कि भाई साले रोड क्रॉस कर रहा है भाई। आया देख, और एक बॉट आया देख। अच्छा वेनम भाई है क्या? अरे सॉरी वेनम भाई। लवड़े हो तुम। वो भी छोटी लुल्ली वाले, वो भी टेढ़े वाले। अरे वेनम भाई, अरे ऐसा क्या कर रहे? अभी इसका और भी बंदा होगा भाई, कहीं तो होना चाहिए। होंगे, कैंप कर रहा होगा तो खत्म, मिलता तो एकदम कैंपरों से भरा रहता। हाल इतने घर है, गाँव बना दिया पूरा, खेती बाड़ी हो रही है, क्या क्या हो रहा है।
कोई चीप पगलू नहीं मारेगा supplies on me. अरे पगलू का माइक क्यों ऑफ हो गया? अबे यार चूत वूत बोल दे रहा भाई, कोई काहे कोई माइक ऑन रख लेती है। हम कुछ नहीं बोले, तुम लोग सोच के हंसने लगे। मैं तो बोला लूट पगलू, और में तुम कुछ भी जोड़ सकते थे। क्या जोड़ेगा? जोड़े। क्या जोड़ेगा? मूत है, मूत जोड़ेगा। ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है भाई। मैंने थोड़ी बोला। तो तू क्या जोड़ने वाला फंसाया जा रहा है? तू क्या जोड़ना चाहता है बोल? एकदम नीच। तू क्या जोड़ना चाहता है बोल? अरे जो मर्जी जोड़ लो, मैंने थोड़ी बोला चूत जोड़ो। छी एकदम। देखो देखो क्या क्या जोड़ने ओड़ने का बात हो रहा है भाई। एकदम घटिया सोच। दया दरवाजा तोड़। चलो चलो, ये लूट हो गया। चलो। अरे गुरुड़ भाई क्या हो गया? मैसेज आ गया क्या? अरे ग्रुड एकदम हेवी डाउनफॉल में चल रहा है अभी। हाँ गुरुड़ भाई सदमे में वो। ए गुरुड़ चीचा, एक तो ये लोग साला इतना भाव खाता है ना गांड में। अरे क्या हुआ बोलो? देख देख भाई देख, सो रहा है बोल के माइक ऑफ किया हो यार। देख रहा है, गांड का नाम लिए और माइक खोल दिया एकदम। डर तो है गांड का। ये भाई कुछ भी भाई ग्रुड में ध्यान मत दो, कुछ भी बोलते हैं लोग। खुद पहले बकचोदी शुरू करके गुरुड़ भाई ध्यान मत दे, बकचोदी करते लोग। इतना मारूंगा ना वेनम भी शर्मा जाएगा कि कौन सा वेनम उसको का डोज दूं। ठीक है डॉक्टर भी बकचोदी है ये तो। मैंने बोला लूट पगलू, और में आपने कुछ भी जोड़ दिया एकदम। ठीक भाई गंदी सोच। अबे कौन जोड़ा भाई? कौन जोड़ा? ये कौन जोड़ा? केओस RyuK जनरल। मैं तो सुना नहीं भाई। कब बोले क्या तुम? मेरे को तो कुछ सुना ही नहीं दिया। मैं तो साउंड कमा के रखा हूं भाई। देख रहा रेवेंजर तेरे को इग्नोर मार रहा है। कुछ साउंड कमा के रखा है। मेरे को कहां बोला भाई? मैं तो कहां, मेरा तो साउंड बराबर है भाई। अबे ये देखो बराबर ये और एक चूती। मेरा तो साउंड पर। अबे झंटरी तेरा भी फोन कैसा? बोल भाई क्या हुआ? कोई दिक्कत क्या? फोन कोई दिक्कत है? फोन के साथ साथ तेरा भी दिमाग का बैटरी खत्म हो गया। अबे मेरे को 1 रुपया दे भाई, इस गरीब को 1 रुपया दे दे। ले 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 भगवान तेरा भला कर। ले गरीब ले साला। अरे चलो चलो, बंदी नहीं बची, जल्दी चलो। बंदी नहीं बची? वो तो ऐसी भी नहीं बची। एक थोड़ा बंदा करते रहता है। ये है सारा पूरा गेम में बंदा कहाँ करते हैं। एनिमी नहीं बचे भाई, एनिमी। अरे एनिमीज तो आते जाते रहे, बस मरो मत। झाट भर का मोटिवेशन कैसा लगा? एकदम झाट भर। संदीप महेश्वरी का लेफ्ट गोटा। लेफ्ट गोटा। अरे गुरुड़ भाई तुम कुछ बोलो यार, तुम बोलते हो तभी एंटरटेनमेंट होती है। गुरुड़ भाई का एक हाथ में फोन है, एक हात कहीं और है। समझ रहे ये एकदम चट दे रहे हैं गुरुड़ भाई। ऐसे ग्रूट छूट रहा हूँ। ग्रूट छूट। बीजीएमआई देख के क्या आप लोग का होता है क्या? एक्सपीरियंस्ड हो गया। अरे भाई अरे आओ ग्रूट आओ। कहाँ है ग्रूट? आओ ग्रूट, अभी हम तुमको बाइक में बैठे आते हैं, दोनों हाथ से मार रहे हैं। अबे ये तो मैं हूँ बे, मेरे को क्या बिठाएगा? ग्रूट उधर है जा। अबे तू भी मार ले भाई। किसी को नहीं रोक रहे, सब मारो भाई। मेरे को मारने के लिए मेरे हाथ थोड़ी जरूरत है। तो अभी क्या करता बे? किसका हाथ मरवाता है? तुम्हारी भाभी से। वाओ व्हाट अ स्प्रे ग्रूट। खून निकल गया होगा बंदा का तो। किसको मार रहे हो? खून निकल गया। मेरा नेट ही नहीं चल रहा है। तभी मेरा नेट ही नहीं चलता है भाई। भाई ग्रूट जो अभी मारा ना भाई, मेरा कान से आंख हर जगह से खून निकल गया। Got supplies on me. भाई यही वाला दिक्कत मेरे साथ भी है ग्रूट, पता है? सेम दिक्कत। क्या स्किल्स वाला? हाँ भाई स्किल्स एकदम नहीं है वो।
अबे गाड़ी लेके आओ बे भंगरीज। लौड़ा लेगा लौड़ा। देगा तो क्यों नहीं। अरे अरे वेनम भाई कैसे पकड़े हो गाड़ी को, पूरा दद्दू वाला वाइब दे रहे हो। अरे दुद्दू नहीं। देखे ना दोनों झटरी क्या ड्रॉप लूट में। अबे आओ बे गाड़ी लेके, मैं क्या अकेला यहाँ पे मंडराता रहूं। गार्डियन ऑफ द एंजल बनके। आजा बैठ बैठ एक जन बैठ। अच्छा मत बैठ मत बैठ। लेके जाओ लेके जाओ। Form up on me. लेके आओ लेके आओ। Danger ahead. चलो भगवान भी बहुत अच्छे होते हैं पता है। अबे क्या गाड़ी मार्क खोज कर रहा ले है ग्रुप वेनम। भी। गाड़ी खोज ले, अच्छा। गाड़ी खोज ले रास्ते में। ऊपर वाला सब देख रहा भाई, प्रॉपर देख रहे हैं। ये झटरी दूरी भागे जा रहा है, मैं सामने आ रहा हूँ भागे जा रहा है। लौड़ा कितना लूटेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। देख देख कैसे शॉप पे कान मरा रहा है। खुद आ गया है, हैं? मैं तो स्कोप लेने आया था भाई, रेड डॉट है तेरे। मैं भी वही ले रहा था। मेरा बैठा ले मेरे भाई। पास से घुमा रहा हूँ। बैठा ले भाई मेरा मेरा 90 120 एफपीएस नहीं है भाई, धीरे लोड होता है भाई। रेंडर हुआ। अरे ये साइड मत आओ, ये साइड मत आओ, ब्रिज के उस साइड ही चलो। रेंडर हुआ लेकिन यहाँ पे बंदे आ रहे हैं। अच्छा जोन तो उधर है। अरे मच्छर की माँ की। यहाँ पे रुकना है क्या कि ब्रिज जाएगा। ब्रिज कैंप करके आ जा भाई मेरे को उतार देगा भाई अगर कैंप है तो सही हाँ बता। ना इधर रास्ते से बैठ। अल हबीबी अल हबीबी। अरे अंधेरा हो अल गया। हबीबी वल्लाह वल्लाह। लैग हुआ हैवी लैग। हाँ लैग तो हुआ सेम। ए ग्रुप ए वल्लाह भी ब्रिज कैंप करना है, ब्रिज कैंप करना है। वल्लाह भी वल्लाह वल्लाह। नीचे में डीपी है, किसी को चाहिए तो ले लो। नहीं अबे 4x भी पड़ा है। वाह मैंने गिराया। आप 4x ले सकते हो। अरे तो बग्गी, रेड बग्गी, डॉट से बग्गी। मार सकता है। गाड़ी किधर किधर इधर। Watch out! और ये अभी मुंह अबे लगा बे राइट पे बंदा है। वहाँ पे RyuK। यहाँ पे मेरी रेस हुई थी। अरे माँ का कहाँ है होम वाला मार्क। ये नीचे से यहाँ दिखा दे। हाँ उधर ही कहीं पे, वही उसी को मैं मारा था। इधर इधर इधर। Watch out! वो गिरा रिकॉल हो गया। अबे उसका बंदा लैंड के ऊपर। ये बग्गी वाले को रिकॉल दिया। फिनिश नहीं करते ना मजा आता है सब। मैं देखना भूल गया था। कड़क में देना था। अबे बाद में मेरे को भी दिखा ना, पहले दिखता तो मैं तो मना ही कर देता। I need a scope.
बट वो फंसा पता है, अगर वहां पे कोई प्रॉपर नेट डाल सकते हैं। आया, अबे पीछे भागा, पीछे भागा। Supplies on me. हाँ वो कैसे मिस हुआ ये? कहाँ पे? क्या लौड़े? वहीं पे उसी को नॉक किया। जाओ जाओ, अब दो उसके जो बंदे बंदे, आएंगे, दो उसको बंदे मारो। जाओ, दो बंदे जाओ। जा आगे, जा आगे, जा जा जा। इसको लेके जा, वेनम को लेकर जा, वेनम जा। चलो जल्दी जा, जल्दी जा। फिनिश बंदा करके तो वापस उसका आना, आएगा नहीं इतना ऊपर फिनिश ही। करके वापस आना। अरे उतना कहाँ, अबे उधर जा। कहाँ? अबे ये यहाँ शैक पे पे नॉक किया हूँ लौड़े लग यहाँ। गए। अरे भाई, पूरा झटरी है बे भाई। बंदा तो चूतिया ये है भाई, देखो यहाँ पे यार, नॉक कर रहे हैं तो क्या गेम झंडरी अवेयरनेस है एकदम ब्रो? झंडरी। अबे एक को आगे जाना पड़ेगा रियू। नहीं अब मत जाओ, वो आ रहे हैं बचाने उसको, डाके आएगी देखो। अभी स्मोक हुआ, बट क्या करेगा? ब्रो मैं देख रहा हूँ। जहाँ से आ रही है उसको निकाल अभी आएगी देखना बचाने उसको। जहाँ से हम निकल रहे थे वो लोग उनको मारने रुक थे। अरे अरे रवि भाई क्या हो गया? बुला रहा हूँ भाई। रैप दे रहा है क्या भी कोई, कि वही स्मोक नहीं करने अभी आया था? आया नहीं है, कोई नहीं आया, वो उधर ही आया नॉक नहीं। पड़ा है शॉप के पीछे। मुझे लगा ये पीछे लेकर ग्रूट गाड़ी घुमा के साला दे दी उनके मुंह पे अबे एकदम। यार यहाँ पे सच नॉक में नहीं दिए हैं, पता रेप था दे दिए, भाई, रेप दे अबे दिए। नहीं लिटरली नहीं नहीं, पता अबे था। रैप दे दिया, रैप दे दिया, रैप दे दिया। हाँ दे दिए। को देख, एक जन उधर है और एक जन Marked a इधर है। location. शैक के पास एक है, शैक के पास एक है। हाँ उसी को ही अबे नॉक किए शैकी थे। पे तो नॉक किया था गांडू, तुम लोग गांडू उतना दूर चला गया फालतू। मेरे हील को पार हो सही में गया, नहीं पता था, सही में नहीं पता हील था। पार हो रहा है अरे तो शाबाश। पूछो ना ग्रूट भाई। वो देखो देख, ग्रूट दूर भी से, लाइक लो भाई दूर से मारना और एक दिखा। ये लो। ग्रूट भी अबे लाइक, हो अबे गया तू भाई। भूल गया क्या? तू ग्रूट के साथ गया था। अच्छा हो गया, मैं नहीं गया भाई। अरे वो इजी इजी ब्रो। मैं नहीं उतर रहा था फिर भी ये RyuK भाई बोले वैनम जा, तभी मैं नीचे उतरा वरना मैं अब तो कूद ही यहाँ नहीं से रहा था कवर जल्दी। देगा। यहाँ पे एक बंदा आ गया गाड़ी ले। उसी को पहले नॉक करेंगे, रुकना मैं राइट पे उतर के उसी को नॉक दूंगा। ठीक ध्यान से ओम करना, वाले का ओम का कान में फट्टा बड़ी फीलिंग पड़ेगा। हो रहा है। हाँ वही तो। हम वाले को आइसोलेट करते, रुक। पहले मैं इसको मारूंगा Watch राइट out. साइड जाके, ठीक है? तू पीक मत लेना, तू बस होल्ड रख। इनका एक बंदा तो जा चुका है, 2v3 है। पीछे ठीक से है, मेरे हिल को से दिख ना गया, आ जाए बस मेरे को पहले। दिख गया एक बंदा। मैं इसको नॉक दे रहा हूँ, ठीक है? राइट वाले को, राइट मोस्ट वाले को नॉक देता हूँ। ट्राई कर। कूदा एक जन यहाँ पे Watch आया, out. इसके पीछे आया। तू बस होल्ड, देखते रहे क्या कर रहे हैं उनको। बग्गी, अरे माँ की चूत। लग गए लौड़े। वाह, फटा कैसे नहीं भाई? ये भगवान है क्या? उधर चला गया था उसके पीछे अरे नहीं यार। मौलिकर हाथ में नेड़ पकड़े हो आप। मौली वाली कुछ नहीं था भाई, इनको होल्ड कराना। बना बनाया चिकन जल गया। वही भाई क्या बोलेंगे यार। अभी गाड़ी वाले आके डिस्टर्ब कर दिया ना भाई, नहीं तो इनको तो हम लोग रनिंग ही उतार देते अगर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते।
तुम लोग खेलो बेंच होता ऐसे खेल के कोई पॉइंट है नहीं। एक बंदा को हाँ पता मैं ही भी नहीं, खेलूंगा। बंदा को पता ही नहीं है अच्छा कहाँ भाई। नॉक कर रहे हैं। वो साला अलग ही 7 समुंदर पार लेके जा रहा है। एक गाड़ी लेके सीधा अबे अच्छा अबे अबे झटरी तू ठीक सोच। है मैं ना अबे बाहर तू जाके खेलता तू हूँ भाई, सोच। अगर फिर मैं बात कर पाऊंगा। मैं यहाँ से रिकॉल वाला बंदा को कैसे मार सकता हूँ जो डाउनरीज है बता। और ऊपर से उधर उसने रोकी नहीं। ए साला ड्रिफ्ट मार के गाड़ी रोक दी उधर। ये लो मारो मेरी। हाँ कसम चल बे और मैं एक तो बंदा जा रहा लाए हूँ। उसको भी मारो। चलता है यार। जा रहे रेवेंजर। अरे एक खेल लो मत जाओ। अरे इस बार पूरा अच्छा से खेलते हैं, अरे अच्छा होगा से ही खेलते नहीं पूरा। रहता तो मैं खेल लेता। अरे चार्ज नहीं है तुझे चार्ज उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। अरे तेरे लिए ऐसे मैं मत, गेम छोड़ूंगा रे गेम। ऐसे मत करो यार। ओए हो गया भाई। अबे नहीं बे चार्ज नहीं है अब। समझ रहा हूँ। तुम तो पूरे आज मारने तो के वैसे चार्ज। मेरा भी नहीं नहीं है। भाई ठीक है। 25% ही है। गुड नाइट फ्रेंड्स गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। ठीक है चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। क्या सीन बताओ एक भाई खेलना है तो एक गेम हो सकता है वरना जाते हैं। बैटरी तो मेरा भी नहीं है। एक गेम जितने भी है बस। चलते ही हैं फिर। हम्म, क्या 4 मैन है फिर ठीक है चौथा चलो एक फिर। गांडू आ जाएगा कोई रैंडम। फिर तो ऐसे ही नहीं हो रहा। हाँ वो बिना माइक वाला आएगा वापिस। ओए भाई बेचारे को 2 जन कैरी करना पड़ेगा, मेरे को तो कर ही रहे हैं। अरे और एक जन आ मतलब जाएगा तो देखो भाई साले हम लोग मेरा खुद गेम प्ले गया है भाई। हम लोग खुद नहीं मार पा रहे। एक बंदा लास्ट 3 मैच में मैंने 4 किल मुश्किल से किया होगा और ये बंदा अपने साथ ही सब कुछ जोड़ रहा है भाई। क्या बोलेगा ये साला सेल्फ सेंटर्ड इतना है ना इंसान। ये खेलना बंद कर दूंगा भाई पीजे में, अभी तो लग रहा मेरे को सही में। चूंटिया। जरूर भाई एक दिन सब ठीक होगा। एक भाई दिन एक सब दिन ठीक होगा वाला तो छोड़ ही दो उनको भाई। उनका तो अलग ही स्क्वाड मिल गया उनको। तो अपन अपने साथ तो वो खेलने ही नहीं वाले आई गेस सो। अभी ये कोई लड़की है क्या? तो अपना ऐड करते हैं, क्या पता आ जाए। नहीं आया भाई, भाव नहीं दिखा। समय बदलता है लोगों के आसपास वाले भी बदलते हैं तो लोग बदलते टाइम नहीं लगता गाइस। ठीक है ये याद रखना हमेशा। अच्छा है ठीक है पहले अगर हमारे ग्रुप में मतलब अगर मेरे लॉबी फुल हुआ करता था तो आके चैट में बोला बोला जाता था कि मैं आऊँ ऐसा वाला तो मैं फिर खाली करता था। ठीक है आजकल तो भाई बोला भी नहीं जाता तो भाई मैं और क्यों भाई किसके लिए खाली करूँ भाई। समझ रहे हो वेनम भाई। सही बात है भाई मैं हमेशा थोड़ी इनिशिएटिव लूंगा। अब हमारा भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट बोल के चीज़ है। सही बात है बिल्कुल सही बात। पहले भाई तो टॉपिक किस पे चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले तो ऐसा खुद नहीं पे था ले ना। लूंगा ये वाला भी। अरे पहले ऐसा नहीं था ना कि भाई पहले भी तो मेरे नहीं थे क्या। पहले ग्रूट था वही रेवेंजर था वही सुनील भाई थे या ये डोसा था सब थे पहले भी। तो पहले वो चैट में आके वो टेक्स्ट आता था कि मैं आ रहा हूँ मतलब जो भी जेंडर वाइज। कोई बात नहीं फिर भी एक दिन। फिर से वो एक ही डायलॉग मारेगा। अरे आज वायन मोटिवेशन आया था नहीं पता सोचना है? चाहिए हाँ भाई। मैं देखा वो रेवेंजर के साथ खेल रहा था। मैं भी नहीं, क्या पता नहीं खेला मैं। रेवेंजर भैया के साथ खेल रहा था अच्छा टीडीएम। तू था मैं क्या? उसको इनवाइट मारा नहीं आया। अच्छा हाँ तब मैं पता उसको नहीं। इनवाइट मारा नहीं आया, क्यों नहीं पता। वो गुस्सा हो देख गया या मेरे तो पे। वो नहीं होगा। नहीं नहीं गुस्सा नहीं वो तो खुद 12 में बाहर पढ़ने गया है तो साला मैं भी देख वो अच्छा बोल हाँ ना वो बोल रहा था वही। क्या पता वो भी नहीं है उसका भाई भाई होगा कोई। लगा लो खेलते और एक खग्गू गेम प्ले। टीडीएम खेलते हैं भाई क्लासिक का और मन नहीं है भाई। भाई मन उठ गया बेचारे का। ना मेरा लग रहा है दुख लग रहा है। ना साला टीम प्रॉपरली खेल रही है। मन तो मेरा उसके ऊपर सट गया। मेरा भी हट गया भाई।
मेरा तो पहले जितना था अब तो उतना भी हट गया। क्या दोनों का? लोग अगर रिप्लेस कर रहे तो एक ही हम दिन भी पे था वैसे ही करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लोगों को अगर रिप्लेस करना इजी लगता है तो हम भी करते हैं। कॉन्टेक्स्ट। रैंडम बन के आए थे लाइफ में, रैंडम बन के गए, ठीक है कोई बात नहीं। गुड भाई कभी कभार ना, हेलो गुड भाई, मैं बोल रहा हूँ कभी कभार ना लाइफ में ना कुछ लोग आते हैं आपको ये सिखाने के लिए कि लाइफ बड़ी मादरचोद है। समझ रहे? आप लोग कौन से कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हो? नहीं पता मतलब मेरे को पता भी नहीं। नहीं पता नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ, तो ये आप जान के रखना, आपका फ्यूचर कॉलेज वॉलेज लाइफ में जब उसके बाद वाले लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। कि लाइफ में कुछ लोग आएंगे बस जाने के लिए, और तब आपको लगेगा कि लाइफ कितनी मादरचोद है। लोकेशन मार्क। अरे मजा आएगा। ऐसी सब बातें ना करो। हेलो नहीं मतलब वो इंसान मादरचोद नहीं है, लाइफ कितनी बड़ी मादरचोद है, क्योंकि लाइफ मादरचोद है तभी तो वो इंसान हमारे लाइफ में आया। 107 आज मतलब मेरा दिन ही खराब है भाई, टीडीएम में भी एक किल नहीं हो रहा है। उसको शायद से तू गलत नाम दे रहा है, उसको मेरे यहाँ शायद गेम प्ले बोलते हैं। दिन तो नहीं, दिन का पता नहीं, बट गेम प्ले बोलते हैं मेरे यहाँ। Danger ahead. Location marked. Location marked. रूट खाली मर ही रहा है क्या तू? Danger ahead. Reloading. ऑन शॉटगन पहले जा रहा हूँ। Location marked. Great. You're about to win. अरे वाह, सेम सेम के लिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला भाई। अबे मारा नहीं हूँ मैं तेरी तरह 7 बार। माइक किसका आवाज दे रहा है भाई? आवाज चलो मैं जाता हूँ, ठीक है।
मैं भी जा रहा हूँ। कल 10 बजे या 10:30 बजे देखते हैं। मेरा अलगाटो काम के तो खेलूंगा, वरना कल नहीं खेलूंगा भाई। अच्छा आज मत ही कल तो खेलो, कल मत ही खेलो, नहीं और नहीं दुखी हो जाओगे फिर। नहीं नहीं, कल तो मैं कल शाम के 7। अबे किसका माइक है, ओपन करना एक बार। रुको। हाँ मेरा तो नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कल तो वॉच पार्टी नहीं है, तो मैं कल तो 7 बजे स्ट्रीम करूंगा, तो एनर्जी रहेगी, तो कल तो खेलते हैं। कल खेल सकते हैं। कल से फिर वही जनरल गेम प्ले। अरे कल स्टोरी मोड खेलेंगे रे। तो क्या खेलना वे अभी? आउट। अच्छा स्टोरी मोड, तब ठीक है। क्यों, बीजीएम में भी खेलेंगे ना कल 10 बजे 10:30। हेलो ठीक है चलो। अच्छा हाँ वेना भाई वही सुनो हो रहा है भाई। सुनो हाँ सुनो। हाँ मैं बोल रहा हूँ अपना जो इधर मैं बोल दूं क्या, वो कैलकुलेशन फिर आपको याद रहेगा। हाँ नहीं इधर नहीं, ओके डीएम में ही। ठीक है ठीक है ठीक क्या कैलकुलेशन भाई, इतना सस्पेंस में रख रहे हो भारी भारी चीज। है। अरे वो ये थोड़ा सब सा, चीजें सस्पेंस में ही रखी जाती है। हाँ वो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, इन फ्यूचर सारे। कुछ नहीं भाई, छोड़ो, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ो। क्या? अरे बंदी का सीन नहीं है। अरे हाँ भाई, पता है मेरे को, काम का सीन है, थंबनेल का सीन है, ऐसा का ये सीन होगा। तुम समझदार तो हो, बस यस। तुम लूट के नहीं भाई, पीछे मैं पगला गधा हो हूँ। तुम थोड़ा अरे सा। लूट पगलू। लूट बोला, देखो मैंने लूट बोला, ये हाँ हंस रहे हैं तो जानबूझ। मैं वही बोला, लूट पगलू। इसका नाम अबे एडीएस लूट हम्म। पगलू रख ले बे तू तो। हाँ वे सब लोग नाम चेंज करते हैं, लूट पगलू, नेड पगलू। वही करना पड़ेगा। मैं क्या रखूं? रियूक मेरे को पगलू नॉक रख देंगे, ये रियूक पगलू। मैं नॉक पगलू रख दूं? नहीं नहीं, आपको नाम बता रहा, मैं आप नाम गांड भूल गया पगलू, हूँ, रुको स्क्रीनशॉट देख के आता, उसमें नाम आवा। देखो आप रख दो स्क्रीन। गांड पगलू। गांड पगलू। ये तो वही बात होगी, चुप पगलू की तरह ही होगी, क्योंकि गांड में ही होती है। एक आदमी को आखिर एक चलो औरत से क्या निकलता हूँ मैं। चाहिए। तू तो नाम देख के आ रहा कुछ था। नहीं चाहिए भाई। नहीं, मैं नाम क्या देखूंगा, छोड़ो, वो सब नहीं किया जाता, अच्छा चीज नहीं है। देखो देखो वो देखो। देखना होता और भेजना होता तो मैं ये भेज ही देता भाई, बड़ा सही में। बड़ा जल्दी रियलाइजेशन करता है ये भाई। मैं नशे एकदम में हूँ भाई। चोंटिया और है। तू कब नहीं होता नशे नींद में, आ तो रहा है बता, मेरे को। एक दिन बता तू जब नशे में नहीं हाँ। होता है। अरे तो नींद आता है ना, वो नींद वाला नशा, समझ रहे हो? तो मैंने कब बोला तूने दारू वाला नशा बोल रहा हूँ? ये वो होता क्या है? होता क्या, देख रहा, वो सब बात अच्छा सुन चीज रहा है, नहीं है। बात सुन। अच्छा चीज नहीं है भाई वो सब। हाँ, तुम्हारे लिए एक ही डायलॉग, अच्छा। चोदी मत कर लौड़े। भाई बकचोदी मत कर लवड़े। जो तूने फेयरवेल वाले दिन दोस्तों के साथ भाई जमाया तूने। बैटल हार रहा हूँ, आप लोग पॉपुलैरिटी दे दो आज तो, एटलीस्ट अच्छा कुछ रुक तो दे, अच्छा हो जाए। रुक ऐसा रुक। ऐसा गेम प्ले होगा तो तुम बैटल के सब हार जाओगे। ये ले, वही भाई, ये दिया सब ले। हार ये जाऊंगा, लो। देखो ये एक एक बेचते हैं भाई। रुक, नहीं हे रुको दे रहे भगवान। हैं दे रहे हैं, कितना ये गैप देख, कितना है बताओ। ये देख। सब फोकट रुको का बांट देख रहे, रहा। रुको। ये दो कितना? तीन बाइक ले लो, सब फोकट का माल बेच रहा हूँ। लो, ये लो एक दिया भी, ये लो दिया भी लगाओ। वहां का समय तो दिए जा रहा है। कितना है अपना? हो सोलह गया सौ ना है, उसका 1600, चार सौ उसका बीस है। 420 खत्म अब तो। हाँ। उसके अब नहीं उसका जीत लेवल पाएंगे उससे। 13 है ना। हाँ तो अरे वही 13 हो जाए बढ़वा 14। लेगा वो। अबे वो बढ़वा लेगा। अबे तो तू भी बढ़वा लेना, तेरे भी सोर्स कम है क्या? अबे गुरुड भाई, तेरे अगर पॉपुलैरिटी कम हो रही है मतलब क्या भाई, रॉयल क्लब में ज्यादा नाम नहीं बनाया लगता है। पॉपुलैरिटी, मैं तो भाई वो कुत्ता ना जाने भाई, भौंके ना साला। है कुत्ता ना जाने भौंके ना, कुत्ता भौंकता ही है भाई। क्योंकि सामने वाला एकदम अमीर है, M4 है, दासिया है, हाँ अरे रे भाई, रे। पॉपुलैरिटी इस बैटल में ज्यादातर इसलिए तो वैसे ही बोल। लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं भाई। हाँ, गेम ये प्ले भी झाड़ मत मार, करो भाई। बस हाँ बैटल करेंगे। हाँ वही। ओए वो भाई। चाहिए वो, गेम खेलने के रिवॉर्ड्स अलावा रिवॉर्ड्स बाकी बोल वाली। सब दिया। करेंगे। हाँ, वो रिवॉर्ड्स चाहिए, पता नहीं रिवॉर्ड की कौन सी बत्ती बनाएंगे ये लोग, वही मतलब कहाँ रखेंगे। क्या करेंगे। हाँ अगर भाई सच्ची में कुछ अच्छा मिल रहा तो जो हम लोग रिडीम कर सकते हैं रियल लाइफ में,
ये क्राफ्टन की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा होता तो ये समझ तो में साला रिवॉर्ड पगलू एकदम। इवेंट पब्लिश। अरे गुड भाई माइक ऑफ कर दी, गुड भाई को मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए। अरे गुड भाई कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो हमें, हम बुरा नहीं मानते। हमें आप 18 साल के समझे हो पागल क्या? तो हैं? मैं था क्या हो उसके गया, क्या पीछे। होगा? कुछ नहीं। एक तो ये ऐसे एक्ट करता है ना, इतना इनोसेंट पांडा साला, जैसे कुछ नहीं पता, सुन ही नहीं रहा है। चलो मैं निकल रहा, अबे सोने जाऊंगा भाई। ये डोमिनोज आज टाइम तो डिले। अच्छा कुछ 25 क्या तारीख को हुआ? निकलने वाला था ना वो GTA 6 का र्यूमर, ऐसे कुछ सुनने में आया है क्या तुमको? अरे ये तो भाई नॉट माय कप ऑफ टी। है क्यों? व्हाई नॉट योर कप ऑफ टी? क्या निकलने वाला है बोले? मेरे को सुनाई नहीं दिया भाई, कुछ मैं सुनाई बोला भी नहीं दे रहा भाई। GTA धीरे 6। धीरे डेड हो जा रहा हूँ। अच्छा, GTA GTA 6 वो क्या था? 6। नहीं पता भाई, मैं गरीब हूँ भाई। GTA 6 क्या होता? अरे भाई एक तो मतलब ये जो है जब बोल देते हो ना, भाई एक तो मेरा दिमाग का इतना माथा पार हो जाता है ना, साला ऐसे मन करता है जो ये बोलता है उसी को बेल्टे बेल्टे मारूं। गरीब हूँ, व्हाट इज दिस गरीब? तो मैं भी गरीब ही हूँ भाई। ऐसा मेरे है? बाप के पास पैसा सेटअप है, का मेरे पास प्राइस पैसा बताइए। नहीं है। सेटअप सेटअप सेम सेम, प्राइस। मेरे भी बाप के पास यूट्यूब पैसा है, का मेरे पास ये दे, नहीं ये भी स्टार्ट हुआ साला फ्रीलांसर सस्ता वाला। इतना छाप रहा है साला, महीना महीना में खुश रहे है। नहीं। लौड़ा छाप रहे, कुछ भी नहीं छाप रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आने दो। और केला किसी को मैं गूगल पेमेंट वाला देख लूंगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अरे अरे वेनम भाई एक बार वीडियो चलो सोच वीडियो लो, एडिटिंग। मान लो अगर मैं महीने के 5,000 कमा रहा हूँ तो साला मेरा 10,000 का तो खर्चा आ जाता है। अरे क्या फायदा 5,000 का? वेनम भाई एक बार वीडियो एडिटिंग सीख जाए फिर तू गूगल ट्रांजैक्शन देखना, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग अबे आती तो है, लेकिन मेरा लैपटॉप साला जंतरी एकदम हगाड़ दी सेम दुख है भाई, सेम दुख है भाई। एडिटिंग आती है बट लैपटॉप नहीं, दुख भाई। एकदम। वे क्रूड, कट्टी लैपटॉप तेरे एकदम को कौन सा कट्टी। फ्रीलांसिंग मारना है? तू तो उस तरफ जा रहा है ना। अरे कुछ तरफ नहीं, अब रखो तो भाई सब बोल दो भाई। तो मैं उस नहीं तरफ नहीं, बोला, सब बोल इधर दो कहाँ भाई। बोला मैं कुछ? एकदम नहीं सब बोल लंडिया दो ना बाज भाई, साला। बोल दो ना। नहीं बोल दो भाई, रहने दो। अलीशा जी रिक्वेस्ट सारा भेज रहे हैं, वाह, बड़ा जल्दी भेजे। वाह। एकदम एकदम अलीशा जी गुड लंडिया मॉर्निंग। बाज है तुम ब्रूट, समझ रहे? मैं तो उस तरफ में बोला, मैं इसलिए जानता हूँ तुरा रिवील नहीं करना है बोल के मैंने खाली उस तरफ बोला। ये साला। कोई मॉर्निंग, वाह ना, वाह, कोई ना। जल्दी आए आप, थोड़ा जल्दी आ गए। चलो ठीक है, मैं निकलता। बाय बाय, गुड नाइट। चलो मैं भी जा रहा। बाय 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 वेनम भाई, बाय बाय अलीशा जी, बाय बाय गुड नाइट गाइस। बाय बाय। ठीक है, समझ गया। हाँ। ला 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 ना 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 ना। गोटी एम बोलो, गोटी एडिटर। अभी वेनम भाई
आज मैं आपको भेजूंगा वो वीडियो वाला स्क्रीनशॉट, उसमें आपको थंबनेल बनानी है, इसी हफ्ते अपने को अपलोड करनी है, ठीक है? फ्राइडे से पहले मेरे को अपलोड करनी है, तो आप जैसे ही थंबनेल भेजोगे अपलोड हो जाएगी, ठीक है? अभी नेक्स्ट फ्राइडे तक तो अपने वॉच पार्टी है नहीं, सैटरडे से है। तो कहाँ है स्टीम? एम लैब्स करेंगे, 2 दिन से एम लैब्स नहीं कर रहे, इसलिए आज भाड़ू एम हो गई थी। डन सिम, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए ये गाना बजाते हैं, नॉन कॉपीराइट वाला, और मैं सुनता हूँ ईयरफोन्स में गाने। क्या सुनेंगे? गाने। क्या है ईयरफोन? बड्स 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 बड्स। इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो? इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? तुम चांद जैसा तो बिल्कुल नहीं। हाँ, चांद तुम्हारे जैसा हो सकता है। नाइस नाइस नाइस। नहीं यार, वो इतनी अच्छी नहीं है, चांद अच्छा है यार, चांद जैसी वो नहीं है अभी तो, बिल्कुल नहीं। To
हुस्न खुदा ने दिया था और आशिक हम हो गए, वो नसीब किसी और का था और बर्बाद हम हो गए। वेरी वेरी नाइस। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. मयंक सिंह भाई, आपका मेरे स्ट्रीम पे स्वागत है मेरे भाई। चैनल पे आप नए हैं तो स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो भाई, हेलो, क्या हाल है, कैसे हो भाई? स्वागतम। ये कौन सा गेम है भाई? ये गेम नहीं है, एम लैब्स है ये भाई। इसमें एम ट्रेन करते हैं।
बहुत लेट नहीं है स्ट्रीम भाई, बहुत लेट नहीं है, हम दोपहर के 1 बजे स्ट्रीम कर रहे हैं। पहले वॉच पार्टी किए, फिर वैलो खेले, फिर बीजीएमआई खेले, फिर रात को एज यूजुअल हमारे इंट्रिल करके हम स्ट्रीम करेंगे। I've also started playing Valo. It's a W game भाई, W game तो है, W game तो है bro, WM. Thank you Mayank भाई, thank you so very much, thank you भाई। Valorant W game तो है। आपकी रैंक क्या है भाई? मेरी फ़िलहाल रैंक डायमंड चल रही है। शायरी में अच्छा नहीं, शायरी तो दिखा नहीं रहा विनम भाई। आपका लास्ट शायरी वही था, उसने खुदा ने दिया था और आशिक हम हो गए, वो नसीब किसी और का था और बर्बाद हम हो गए, यही वाला ही था लास्ट वाला। मेरे से तो ये भी नहीं लगता वैलो में एसएमसी कभी कम तो कभी ज़्यादा लगती है। मैम भाई आप अगर अभी खेलना शुरू किए हो तो मतलब धीरे धीरे होगी, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगी, थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगेगा। प्लस आपको अपना सेंसी कौन से में आप सूटेबल है वो वाला, फिर कौन से DPI कितना DPI सब सेट करने के बाद हो जाएगा, धीरे धीरे होगा भाई। ऐसे सडनली आप बोलोगे कि मैंने आज ये गेम खेलना शुरू किया और इसमें मैं प्रो बन गया। FPS गेम्स हैं, इसमें टाइम लगता है। ओवर द टाइम यू ग्रो एंड यू गेट बेटर।
माउस से ज़्यादा मैं वॉक करके एम सेट करता हूँ, पता नहीं क्यों। आदत जैसी है, माउस से ज़्यादा एम वॉक करके, माउस से ज़्यादा मैं वॉक करके एम सेट करता हूँ, मतलब समझा नहीं क्या वॉक करके सेट करते हो, कैसे मतलब? मतलब WHD यूज करता हूँ। अच्छा WHD सेट करते हो भाई। ट्राई टू यूज द माउस एंड टू ट्राई करो। अब आदत जो है ठीक है, समझ रहा हो, बट समझ रहे हो अब गेम के मैकेनिक्स वाइज अपनी खेलोगे तो वैसे। मेरा भाई बहुत अच्छा खेलता है वैलो, आप उससे करोगे प्रूव? भाई रूम वैलो में अब मैं क्यों करूँगा? मैं कोई स्पोर्ट्स प्लेयर थोड़ी हूँ। मेरे से खेल के आपका भाई क्या कर लेगा? मतलब कहाँ कुछ दिखा देगा? हाँ? कहीं सर्टिफिकेट लगा देगा कि भाई RyuK को हरा दिया था। कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो क्या मैं? कैसी बातें कर रहे हो भाई? आप भी तो बहुत अच्छा खेलते हो। तो मयंक भाई अच्छा खेलता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि हर किसी से अपना रूम करते बैठूं। मैं अच्छा खेलता हूँ, मेरे को पता है। मैं अब किसी को प्रूफ थोड़ी करना है मुझे कि मैं अच्छा खेलता हूँ, या मैं किसी से चैलेंज थोड़ी लगा रहा हूँ कि भाई मैं अच्छा खेलता हूँ तेरे से, या XYZ whoever so it is। रूम भाई, ये रूम वाला तो मैं मतलब BGMI PUBG में सुना था भाई। ये वैलो की कम्युनिटी में भी रूम वाले आ गए क्या? पता नहीं भाई कैसे कैसे आ रहे। चलो गोटी के मार चलता हूँ सोने। वैनम भाई बाय 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 बाय। आप SS भेज देना तमिल के लिए। यस 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 मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ये ख़त्म करके मैं निकलता हूँ। ऐसे नहीं है भाई, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी भाई, बुरा लगा नहीं है भाई, लेकिन ये बहुत बहुत वो होता है भाई कि भाई रूम मतलब आप मेरे को खुद ही बताओ रूम का पॉइंट क्या है? मेरे को आप बताओ। आप जो ये बोले मेरे को लाइक आउट ऑफ नो वेयर यू सेड कि योर ब्रदर प्लेज ऑल्सो गुड एंड यू वांट टू डू रूम, तो ये आप क्यों बोले? मेरे को वो बताओ, क्या सोच कर बोले? वही थिंकिंग को बदलना है कि भाई क्या सोच कर बोले, मेरे को वो बताओ ना आप। अरे नहीं वो उड़ता है मेरे सामने, ठीक है उड़ता है, तो जब आप अच्छा खेल लोगे तब आप उड़ना, तो आप उसे धूल चका दो। भाई मैं किसी को धूल चकाने के लिए करता नहीं ये सब चीज़।
ठीक है, हर गेमर अपने नज़र में गेमर होता है, चाहे वो खराब खेले अच्छा खेले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर FPS गेम्स भी खेल रहा है तो वो सीरियस खेले और उसको अच्छा खेलना आना चाहिए। ही कैन प्ले फॉर फन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा ज़रूरी होता तो हर बंदा ई स्पोर्ट्स खेल रहा होता। आपके भाई को बोलो, अगर अच्छा खेलता है उड़ता है तो आपके भाई को बोलो ई स्पोर्ट्स